हाउ टू गेट क्लाइंट्स। आपके साथ आई एम गोइंग टू शेयर 150 प्लस आइडियाज जिसकी वजह से यू कैन गेट क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स, एंड ऑल दीज आइडियाज आर प्रूवन। क्योंकि एक मैंने ट्रेनिंग करी थी अपने कस्टमर्स के साथ जिसमें मैंने अपने 30 कस्टमर्स को बुलाया था, एंड आई आस्क्ड देम कि आपको आपका फर्स्ट क्लाइंट या फर्स्ट कस्टमर कैसे मिला था, लास्ट क्लाइंट या लास्ट कस्टमर कैसे मिला था, और सबसे हाई टिकट क्लाइंट और हाई टिकट कस्टमर कैसे मिला था। और वो 30 कस्टमर्स ने आके अपनी सारी स्ट्रैटेजी शेयर करी थी, उनके फर्स्ट, लास्ट और हाई टिकट क्लाइंट कैसे मिले थे, और वो एग्जैक्ट ट्रेनिंग आई एम शेयरिंग विद यू राइट ओवर हियर। सो दिस इज जस्ट अ इंट्रो दैट आई एम रिकॉर्डिंग, एंड इसके बाद यू आर गोइंग टू गेट इनटू दैट होल ट्रेनिंग दैट आई डिड। इट वाज ओवर 7 hours प्लस, लेकिन यू आर गोइंग टू गेट all these strategies that are working in the market right now, जिसकी वजह से you will be able to get clients and customers on demand immediately, just like that, right? So 150 plus new ideas that are working right now and they are giving the results right now. Go and watch that. Everybody who is coming for today's session to share their learning, to share their experience, you know, all of them are coming from different backgrounds. All of them are coming from different kind of experiences. Somebody is a yoga trainer. Somebody is a stock market coach, somebody is a Facebook ad service provider, somebody is a performance marketing agency, somebody is a Ayurvedic trainer, somebody is a, let's say, healing, you know, they are into healing their customers. Somebody is into law of attraction, somebody is into let's say SEO, technical services, so you know, freelancing. So understand this thing, your website development, so many things. So everybody is coming and sharing their different experiences. What we need to understand is, because at any given point of time a question can come into your mind कि यार the thing that this person is sharing शायद ये मेरे लिए applicable नहीं होगा, and the reason is क्योंकि मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ जो ये कर रहे हैं. But at the end of the day you need to remember that selling is all about solving a problem. All right. So it does not matter whether I'm solving somebody's problem by helping them run Facebook ads and somebody else is solving somebody else's problem by helping with their time management or by helping with their, let's say, you know, work management or by helping with their health. Ultimately, you are solving a problem. So what you need to understand is कि, you know, how did that person reached out to that end customer and how did that person was able to crack that sale जिससे कि they were able to solve that particular problem. अब वो प्रॉब्लम कोई भी हो, अब आप अपने कस्टमर के लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, that does not matter. In this session, what you need to grasp out of it is how other person got that sale. Because if you get to learn how that person got that sale, now you need to implement the same strategy in your work and you solve somebody else's problem. Does that make sense? Give me a yes. Right? So at any given point of time, don't be lost कि यार ये चीज शायद मेरे लिए applicable नहीं होगी, because the answer is that every single thing that will be shared in this session is going to be applicable for you. You know, sometime maybe when you are in your bathroom, एकदम से light bulb चलेगा, अच्छा ये चीज तो मैं भी कर सकता हूँ, and then you immediately, you know, apply that simple little thing. ठीक है? All right. So in this session again, we are going to discuss how to get your first and your next customer or client. All right. So this is the agenda for today's session. At the end of the day, you know, for this session to be useful for you, you have to be selling something. I mean, see, the only way you can help people is by actually selling them something, and you know, you give them the solution to the problem that they are into. So you have to be selling something. I mean, I believe everybody sitting in this session has figured out one way or the other in which you are able to at least sell something to somebody. Give me a yes if you have, you know, figured out a way that yes, this is something that, you know, I can give to somebody. Give me a yes. Okay. And in some cases, in some rare cases, okay, you know, I feel that there would be some people who would still be figuring out कि यार मेरे को क्या करना है. Do we have some people like that? Give me a 0. But you have some ideas in your mind. You have some sort of ideas in your mind कि यार, you know, this is something that I can do. The first and foremost thing that I would like you to tell is that, you know what, just go ahead and start selling something. I mean, whatever is there in your mind, just go ahead and start selling something. And still, if you need some help, still, if you need some ideas, you know, I can share some of the business models. I can share some of the business ideas with you at the end of the presentation after all the speakers are done. And then I can help you with some ideas that these are the things that, you know, I feel they are the best opportunity for anybody to jump into. And you should definitely be doing this. And please remember, at any given point of time, does that sound good? Give me a yes.
So those of you जिनके दिमाग में अभी idea exactly नहीं पता है कि यार मेरे को exactly क्या sell करना है, so I can share those things with you at the end of the session, right? And the third thing is, what you need to remember is that, you know what, again, like I said, whatever ideas do you have in your mind, just go ahead and start implementing them. You know, just start selling. It is every time, you know, you have my permission and you have the permission in entrepreneurship that it is okay to change your field, you know, in the future. So even if you start with something, it is not hard and fast कि you cannot change it in the future. So it is okay. All right. Many people just you know, they don't take action just because of the fact that they want things to be absolutely perfect. Only then they are going to start. But that is not the case. You just start and then the things can keep on evolving over a period of time. Does that make sense? Give me a yes, everybody, so that I can go ahead and, you know, we can start discussing. All right, perfect. So like I said, you have to be selling something. So for it all, you know, the things that you can sell in the future, if you are not selling something, just in case, it can be a product, it can be a service, it can be a course, it can be an ebook, it can be some affiliates things, or it can be anything. I mean, we can discuss about that towards the end. Let's first talk about, you know, what we can start doing right now. All right. First of all, I would like to start with a simple script. Okay. I would like to start with a simple script. And that script is this. I'm going to share it with you in the chat box. And let me show to you, let me prove to you that how easy it is to sell something. And when you are in this session, you know, I want you to participate. I want you to be somebody who is taking action. Do I have your commitment? Give me a 1. Give me a 1. Because, you know, we cannot get anything out of this session if I don't have your participation. Right? So I just shared a script with you and I give you 1 minute, just 1 minute, 60 seconds. That has started right now. Don't think anything. Just copy the script, go to your Facebook, post over there. Go to your Instagram, post over there. Go to your WhatsApp, post over there in the WhatsApp story. Do it very, very quickly and come back. And you will see, you know, for some of you, not for everybody, but I believe that for a lot of people sitting in this house right now, you are going to start getting a lot of inquiries right within this session. That's just the first thing that I'm sharing with you. I have so many things to share with you myself, and then I'm going to be sharing a lot of things with so many people with you right over here. Give me a 2 in the chat box once you have done. Okay. So you post in the Instagram story. You do it right now. Okay, you do it right now. You post in your Instagram story. You post in your WhatsApp story. You post on your Facebook. And don't worry. Don't bother about the fact कि यार ये काम मेरे को नहीं करना आता है. It's okay. Because आपको नहीं आता है तो बहुत सारे लोगों को करना आता है. Okay, you just take the contract. You just make the deal. And then you give it to somebody and you divide 50-50. Simple. We have so many people in the group who can do this work. If you, just in case, if you don't know how to do it. All right. Does that make sense? Do it very quickly. You have 40 seconds left, and then we are going to go ahead with the next set of things. Let me know. Give me a 2 once you are done. Okay. So I can see the 2s coming in. Some people are saying that they are not able to copy. So if you're not able to copy, just type it. Just type it very quickly. See, I'm not sure if that why you are not able to copy, but at the same time, we can type, right? So it does not matter. Just copy. Just type. Done. Okay. So I can see a lot of dones coming in. So many people are done. And okay. So I can see more dones coming in. Good. And we are going to see a lot of people making money right now within this session. Okay. That's my promise to you. And another commitment that I want from everybody in the house is that all these strategies that you are going to learn, you know, sale getting strategies, client getting strategies,
customer getting strategies. Almost 50 plus strategies you are going to learn, at least bare minimum, in today's session. I want a commitment from you, and that is that out of 50 plus strategies that you are going to learn in today's session, at least 3 of them you are going to implement before the end of this weekend. All right. Do I have your commitment? Give me a 3 in the chat box. And then you share the results in our Facebook group, FlexiPreneurs Device Community. All right, let's go ahead. Okay, so I guess we are good to go. The next thing that I want to tell you is that, you know what, in the world of marketing, when you are supposed to selling something to somebody, to anybody out there, you don't need to get confused. You know what platform should I use? Should I be using Facebook? Should I be using LinkedIn? Should I be using Instagram? Should I be using YouTube? Should I be using what platform? It does not matter. Aapka kaam sirf ek hai, and that is that whatever message that you have, whatever communication that you have, anything that you want to share with people, you post anywhere and everywhere. See, when it comes to me, my single message goes on every single social media platform, and I do not care about the fact कि मेरे कौन से social media platform पे मेरे को कितनी reach मिलती है. It does not matter. Even if from one particular platform, I just get, let's say, you know, one particular person who is seeing my content, that is more than enough. That is good enough. Kyunki the most important thing that you need to understand is that the social media algorithms are so powerful that your content, when you are posting some content, you know, your content is seen by the most targeted people. So if there is somebody jiska content millions of log dekh rahe hain, let's suppose somebody in the entertainment niche, because that is something which is most easy to get viral, versus when you are somebody who is doing some sort of boring kind of work, jaise hamara, jaise aapka, you know, helping people with so many different things, so which is not really entertainment, right? So you need to remember that your content will be seen by a far less quantity of people, but at the same time, those are targeted people. So it is so very important that you post everything that you have on every single communication channel. Does that make sense? Give me a yes. Right? So, I mean, you just start doing this simple little thing and you will start making more money. That's like the easiest, you know, hack that I can give to you right now. So I want to share with you so many different types of experiences that I have had in my life, you know, जिसकी वजह से या तो मैंने सेल खुद करी है या फिर मैंने सेल होते हुए देखी है. So one of these experiences was I was in Dehradun, like I come from Dehradun, you know that, right? So I was in Dehradun and I was sitting with a restaurant owner. उस restaurant का नाम है Barbecue Nation. It's in Dehradun. So I was sitting with the owner. And I mean, 2 people came over there, 1 boy, 1 girl, and one of them showed them a website. कि हमने आपके लिए वेबसाइट बनाई है. Now the owner of the restaurant, मयंक नाम था उनका, वो उनको नहीं जानते थे, उन्होंने उनको आज तक देखा भी नहीं था. Okay, and the very first interaction that those 2 people had with Mayank, who is the owner of the restaurant, it was कि मैंने आपके लिए वेबसाइट बनाई है. So now think about it. There is one thing that people do, and that is, you know, of course, they are people who are website developers and they came there to pitch their website development services, of course. लेकिन instead of the fact कि वो वहां पे आके simple website development services pitch करें, उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनके लिए एक website पहले से बनाई और वो लाके दिखाया. So you know what, when you show something to somebody visually, the experience is much better, and then the probability of that person saying no to that offering is far less. And naturally, my friend that, you know, that Mayank, he immediately took that offer. He said that I would like to have this website. I would like to use this website. And the sale was done. So again, you know, this is something which is a good learning for you. And that is, you can create multiple templates. Let's suppose niche specific templates. Let's suppose agar aap web, you know, is tarike ki services de rahe ho, and you can show people to something, whatever you are offering visually. And it will become so very easy for them to grasp it and then, you know, take the opportunity from you. Make sense? Give me a 1. Next thing is my, I don't remember, ये मेरे पहले client थे, मेरे दूसरे client थे, but one of my, you know, one of my best clients in ये इनकी website है TSX.
इनसे मैं मिला था, आप सब लोगों को पता होगा, बिफोर कमिंग इनटू द ऑनलाइन वर्ल्ड आई यूज्ड टू डू कूपन वाला सेलिंग, राइट? आई यूज्ड टू डू कूपन वाला सेलिंग एंड आई मेट देम एंड इन दिल्ली and I pitched him about my coupon wala business that we can take a coupon discount from you and we can give it to our customers. वो उनको समझ नहीं आया था, वो उनको अच्छा नहीं लगा था. He did not do that deal with me at that particular point of time. However, the best thing that I did at that particular point of time was मैंने उनके साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर लिया था. All right, I connected with him on social media, specifically Facebook. I connected with him on Facebook and we never chatted. I mean, he was somebody who was like, one of the premium sellers in India, and I was somebody who was just starting out. So of course, we were not friends. It was a big thing for me to just get connected on Facebook, right? They were my very early days. I just got connected, and then 2 years down the line, 3 years down the line, when I started learning about online business, when I started learning about, let's say, WordPress, about Facebook ads, about online marketing. So I started posting all those things that I was learning on my social media. And here he was, who was looking at my content. And then one day he reached out to me that, Saurabh, I need help in Facebook ads and online marketing services. Since I had met this person 3 years back, so he trusted me, he knew me, just that 3 years back, the services that I had to offer him, that was not up to his liking. But 3 years later, when he needed something that I had to offer, and when I started learning, मैंने अच्छी चीज क्या करी, मैंने 2 अच्छी चीजें करी. पहला, मैंने सोशल मीडिया पे उनके साथ कनेक्ट करा, एंड दैट वाज माय हैबिट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे. आई यूज्ड टू कनेक्ट विद एवरीबॉडी वेयर आई कुड सेंस कि यार यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए. आई यूज्ड टू कनेक्ट विद एवरीबॉडी ऑन माय सोशल मीडिया. एंड दूसरी अच्छी चीज ये करी कि आई वाज रेगुलरली पोस्टिंग कंटेंट ऑन माय सोशल मीडिया. एंड डू यू नो द काइंड ऑफ कंटेंट दैट आई वाज पोस्टिंग ऑन माय सोशल मीडिया? इट वाज नथिंग, इट वाज सिंपल कंटेंट दैट आई वाज लर्निंग ऑन अ डेली बेसिस. Very simple content. For example, today you learn something out of this session, you just post that in your social media. That's it. Every day, whatever new thing that I was learning, which maybe, दुनिया में लाखों लोगों को आती होगी, but it was new for me. So I just kept posting that on my social media. And then, I found a person जिसको की वो चीज चाहिए थी, and we got in a contract. Does that make sense? So 2 lessons for you: connect with people on social media, meet people physically if you can, wherever you can, and then if you cannot, just connect with good people on social media and then post a lot of content, right? By the way, I'm really happy to see this. Have a look at this. Rushi Patel has messaged that I'm not sure if she or he, but Rushi Patel has messaged, got 1 query on WhatsApp. Do you see? A person can only buy something from you when you offer them something to buy. They cannot buy something from you until and unless you offer them something to buy. Does that make sense? So please ensure that you come, overall, over a period of time, you give multiple opportunities to people, and you keep posting and you keep, reaching out to people to give them the opportunity to buy from you, because only then they can buy from you, right? Tanu Kumari has messaged that even she got 1 query on WhatsApp, right? So again, when you put out messages in the world, automatically, you get sales. Got it? So, by the way, for everybody listening in this session right now, Rushi Patel and Tanu Kumari are already sitting on at least, अगर एक deal minimum crack होएगी तो 20-25 हजार रुपए की, or on a higher side there is no limit, 50,000, 1 lakh, 2 lakh, 5 lakh, or maybe a long-term partnership deal, just by doing something that I asked them to do in the beginning of this session, and they implemented that. So the best thing that you can do is, whatever we are sharing with you today, you just implement that, right? Kaushik Nagar is saying that I got a query as well, right? Does that make sense? All right, so keep making notes. There's going to be a lot of learning for you. Next thing is, एक हमारे मेंबर है FlexiFunnels के, उनका नाम सुयोग है. पिछली बार मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ था, and he did something which was, which is logical, but of course, a lot of people, I heard it from him for the first time that he did that. And what he did was, इन्होंने FlexiFunnels सॉफ्टवेयर लिया, इनकी अपनी लैपटॉप की शॉप है, सेकेंड हैंड लैपटॉप की शॉप है इनकी अपनी सिटी में. सो इन्होंने FlexiFunnels सॉफ्टवेयर लिया, अपना खुद का लैंडिंग पेज बनाया. खुद का लैंडिंग पेज बना के इन्होंने क्या करा, उसमें अपने सारे लैपटॉप्स की फोटोग्राफ्स डाल दी, उसके प्राइस डाल दिए, सारी डिटेल्स डाल दी,
And once he got the website ready, once he got the landing page ready, उसके बाद इन्होंने अपने WhatsApp पे जितने भी contacts थे उन सारे contacts को एक broadcast list में बनाया WhatsApp के अंदर, all right, and then he did the broadcast to all of them that, hey, you know what, this is a website. We have second-hand laptops over here. If you're interested, you can buy over here. Simple message, nothing, exceptional. But then he did almost 6,90,000 rupees sale within around 30, 40, 50 days, something like that. Right? So again, what the learning out of this is that make a page of yourself. आप जो भी चीजें ऑफर करते हो आपके WhatsApp पे जितने भी कॉन्टैक्ट्स है सबको ब्रॉडकास्ट कर दो. See, two things are going to happen. Either they will be interested in buying from you, they will not be interested in buying from you. That is completely okay. But one more thing can happen, and that is there's somebody in their circle जिनको आप नहीं जानते हो, they can be interested in buying from you. So they might, get in a contact with somebody who asks कि यार मेरे को ये चीज चाहिए लेकिन मेरे को नहीं पता कैसे हो सकता है, and then they will tell me, hey, you know what, I know a person and I can connect you with them, and that is how you start getting sales. So again, आपके सोशल मीडिया पे आपके साथ जो भी कनेक्टेड है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, आपके खुद के कॉन्टैक्ट्स हो, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए जिसको आपके वर्क के बारे में, सर्विसेज के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता है. Right? Does that make sense? So far, are you enjoying this session? By the way, give me a 3 in the chat box if you are loving this session so that I can continue. And we are just getting started, right? I can see a message from Manish Vishwakarma that he got a query for the landing page design. Good. Okay. Sham Sundar ji is saying you skipped real estate referral. Okay, my mistake. So sorry. Real estate referral. That was very simple. Again, जो चीज मैंने अभी आपको बोली ना कि there can be somebody who can be a mutual contact, so वो पर्सन आपको सेल लाके दे सकते हैं. So this was my breakthrough client, I would say. This was my breakthrough client जिनके लिए मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग, नॉट सोशल मीडिया मार्केटिंग, इनफैक्ट फेसबुक एड्स एंड अदर थिंग्स, इनका वेबसाइट डेवलपमेंट सारी चीजें मैंने करी थी. दिस वाज अ क्लाइंट बेस्ड इन नोएडा, and I mean, so many stories, forget about that. The thing is, how did I get this sale done, right? And the way I got this sale done was one of my early days mentors who was working as a HR in this company. Okay. So when this company decided that now they want to do online advertising, so they were working on a real estate project. And now that project got done, so now they wanted to do real estate, their project marketing, whatever flats they had made. So they were looking for somebody. And again, this mentor of mine who was a HR in that company, he referred that, you know what, I know a boy who is pretty good at this stuff, and he can help you with that. I got a referral from there. I went for the meeting, cracked the sale. I want to share that story with you as well. कि वो sale कैसे crack हुई थी. Cracked the sale. And then, I was able to get started with them. So again, आपके अपने खुद के पर्सनल सर्कल में तो सबको पता होना चाहिए कि भाई कौन बंदा क्या काम कर रहा है, आप क्या काम कर रहे हो, सबको पता होना चाहिए. That is like way too important for you, right? Way too important for you, right? So when I went for that, let me tell you about that meeting, okay? That how did that meeting go? So basically, I was talking to him. And since that was a real estate, see, always you need to remember that, it does not matter कि आपका कितना time, effort किसी चीज में लग रहा है to get that thing done. And one of the reasons कि आपका time and effort किसी चीज को करने में कम लग रहा है, if कम लग रहा है, one of the reasons for that is that now you have become good at it. And that has happened with practice, right? So you always need to charge based on the value that you are providing. So this was a real estate client. I knew that they were selling flats. The minimum flat value was 50 lakh rupees. So even if I get them one sale, that is 50 lakh rupees. That's a lot of money, right? So what I did was, for me back then, I mean still now I would say, but उस समय का ये मेरा सबसे बड़ा सेल था. So मैंने उनसे request करा that I would be needing 1 lakh rupees a month, right? Which I was like dead scared in my mind, कि मेरे को 1 लाख रुपीस बोलते हुए भी डर लग रहा था कि मेरे को 1 महीने का 1 लाख रुपीस चाहिए. But I was like very scared. But then somehow, I behaved confident in front of them.
And the person whom I was dealing with, he said, nahi hoega, 25,000, 30,000. I kept saying no. Then the negotiations kept on happening. 40,000, 50,000. I kept saying no. मैंने कहा नहीं होएगा. In my mind, I was like कि यार कर लेते हैं यार. You know, 50,000 rupees is a big amount for me. उस समय तो मैं लोन पे था, right? If you know my story. So मैंने कहा कर लेते हैं अंदर से. लेकिन my friend Gaurav was also there. He was also supporting me कि नहीं भाई 1 लाख रुपीस का हिट करेंगे, हो जाएगा. So again, from there, I also got some extra confidence, and finally that deal was cracked. और उसमें पता है एक चीज और हुई थी. I was sitting in the meeting with him, with the person, and he said कि Saurabh, मतलब मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मिल जाते हैं, जो कि 25,000 रुपए 30,000 रुपए में वेबसाइट बना देंगे. मैंने कहा सर बिल्कुल मिल जाएंगे 25,000 30,000 रुपए में वेबसाइट बनाने वाले. एट द सेम टाइम मैं भी मेट्रो से आया था, तो मेट्रो से जैसे ही मैं निकला था वहां पे एक पोस्टर लगा हुआ था 5,000 रुपए में वेबसाइट बनाइए. तो मैंने कहा आप 25,000 30,000 रुपए भी क्यों खर्च करना है, आप 5,000 रुपए में बनवा लो. तो मैं जाता हूं यहां से, मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट भेज दूंगा. एंड ही वाज लाइक, see what we need to understand is, what I told him was that you know what, मैं आपको वेबसाइट बना के नहीं दे रहा हूं, मैं आपको वो वेबसाइट बना के दे रहा हूं जिससे आपके पास रिजल्ट्स आएंगे. So are you just looking for a website जिससे कि it's just there for the sake of it, like millions of websites on the planet, or are you looking for a solution? Are you looking for the website that is going to give you leads, that is going to give you sales? And that was my pitch point. Again, does that make sense? Okay. Next thing is more content on social media. I mean, you just keep on posting a lot of content on social media. The more amount of content that you post on social media, you know, automatically you will keep on making more money. It's like very, very simple. Sometimes that is not going to happen immediately, because see, अभी लोग आपको जानते नहीं, अभी लोग आपको maybe इतना पहचानेंगे नहीं. लेकिन as they keep sharing you and seeing you over a period of time, over and over and over again, right, automatically they will start trusting you, and automatically the algorithm, जो social media का algorithm है, even that algorithm is going to start showing your content to a lot of new people. Because अगर आपका content gradually, see again, even your content will become better over a period of time. Do you agree? Give me a yes. Do you agree? You all of you agree to this, that your reel number 100 is going to be far better than your reel number 1, right? So how many of you are waiting to post your reel number 1? Give me a 0 in the chat box. How many of you are still waiting to post your reel number 1? I mean, when you know the roadmap, when you know the reality that your reel number 100 is going to be so far better than reel number 1, then why are you delaying that reel number 100? Just post. Do I have your commitment? Everybody, do I have your commitment that today you are going to post your reel? Today you are going to post at least 1 reel. All of you. Does not matter whether it is going to be your first reel. Does not matter whether it is going to be your 100th reel. But today I want a reel to be going on your social media, on your Instagram today. Do I have your commitment? Because things can never be perfect. Your reel can never be perfect. Your pitch can never be perfect. Your social media content can never be perfect. Your services can never be perfect. Nothing can be perfect. But what can be done is we can start, right? Before we learn to fly, let's learn to crawl, and then let's learn to walk. And that's how, eventually we learn to fly. But to learn to fly, we first need to learn to crawl. That's how it is. All right. After that, simply we started doing a lot of webinars, right? We started doing a lot of webinars. So basically what we started doing was we started running ads. So once I started entering into the world of digital products, okay. So, once I started getting into the digital products, maybe some softwares, maybe some courses, for this particularly, I started, doing webinars. Webinars is something which is one of the best ways to sell your products and services. And the reason for that is that it gives you a lot of time and the buyer a lot of time to understand the product. See, if your product is a commodity product, जिसको आपको समझाने की जरूरत नहीं है, for example,
So, and so in that case, you can sell it even without webinars, even without anything. But if your product is something जिसमें एक अच्छा खासा explanation required है, then it is ideal that you to start doing webinars for it. Does not matter आपके webinar पे 10 लोग आए, 20 लोग आए, 50 लोग आए, 100 लोग आए. Does not matter if you are getting started again. But just start doing some webinars, right? Automatically, again, same thing. Do you agree that your webinar number 100 is going to be far better than your webinar number 1? Whatever it is that you are going to be doing, right? The number 100 is, you can call it the rule of 100, right? Whatever it is that you are going to be doing, it is going to be far better than what you will do today. So let's go and try to achieve that. Does that make sense? Give me a yes. All right. So next thing is, by the way, I have commitment from all of you, and it does not matter whether you gave me a yes when I asked you for a commitment, or whether you were just hiding behind the laptop, right? I don't care. If you are in this webinar, I have your commitment. I need at least 3 revenue generation activities from your side before the end of this weekend. I don't care. You are in this session. I am with you. You have to be doing that. All right. The next thing that, that started giving me a lot of sales was affiliates. And that is one more thing through which I started giving a lot of sales to some more people. So basically, आपको ये चीज figure out करनी है कि ऐसे और कौन लोग हो सकते हैं जिनका की ऐसा business model है जो कि complementary है, right? जो कि complementary है. For example, complementary है and उनका target customer एक ही है. So then you can do cross promotion of each other. So basically, let's suppose, think about it. Let's suppose अगर आपकी केक की शॉप है और किसी की फ्लावर की शॉप है, do you agree that the target set of customer is the same? So basically, these two shops can promote each other. अगर आपकी केक की शॉप है, किसी की फ्लावर की शॉप है, both of you can promote each other. Do you agree? Mostly both of these things, people purchase them on some occasion, right? Whether it's a cake, whether it is the flowers. So ultimately, these two people can promote each other. So you need to make, think in your mind what exactly I'm offering. What exactly I'm offering, which is something that somebody else would be selling a complementary kind of product to my exact target market. And in the same vice versa, ऐसा और कौन सा business है जो कि exactly उन्हीं customers को sell कर रहा है जिनको कि मुझे भी sell करना है, जो कि मेरा competition नहीं है. And then you can come into an agreement with each other, and then you can cross promote each other. And at the same time, you can come into agreement with a lot of people. And now suddenly, automatically, you have hundreds of people who are sending sale to you. Is that something that is going to increase, your number of sales? Do you agree? How many of you have some ideas in your mind at this particular moment? Give me a yes. Just with this particular model, just with this one single model, I have done a lot of sales. My majority of my sales in my early days when I went into a digital product, it came with this model. All right. Again, like I said, you need to be posting content on a lot of places. And one of them is, of course, my Instagram story. अभी हमारा recently business growth हुआ था. And हमारा जो business growth mentoring program है, हमने गोवा में करा था. So in our business growth mentoring program, which is, where we help customers one-to-one, we only take 8 people in a business growth program, right? So the 8 people who were supposed to come for the business growth program, one of them backed out because something happened in their family, some medical emergency came up, and one of them had to back out. So we were not left with a choice, just other than to market for one more seat. So the easiest thing that I could do was, मैं उस समय जब मेरे को वो information मिली, मैं उस समय पौंडीचेरी से चेन्नई travel कर रहा था in a car. I was in a car, okay? मैंने अपना फोन निकाला, Instagram story खोला, मैंने उसमें एक post डाला, hey, that what, our business growth is happening next week in Goa, and we have one more seat left, and if you're interested, you can come over there, and the link to apply is right over here.
we got some applications. By the end of the night, we had one more person who came into our business growth, and it was a sale of about 3 lakh rupees. And more importantly, we were able to help that person. And as of now, as per my information, that person in the last 50, that same person who came to our business growth in the last 1.5 months has made more than 10 lakh rupees already. So again, it's good business for both of us, right? Okay, great. Ujjwal Baranwal is over here. See, I can give you validations over and over again. Ujjwal Baranwal is over here. He's saying कि मैंने भी अपनी Instagram story पे डाला था, and he sold 4 $5,000 के items. So for him also Instagram story worked well. The thing that is going to work well for you, the biggest thing that is going to work well for you, that is that you post everywhere. बिकॉज जो सेम स्टोरी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी, वही सेम स्टोरी मैंने अपने व्हाट्सएप पे भी डाली थी, वही सेम स्टोरी हमने टेलीग्राम पे भी डाली थी, वही सेम स्टोरी लिंक्डइन पे भी डाली थी. Because we know somebody can watch us somewhere. Does that make sense? All of you, give me a yes. By the way, I got a message from Ashwani that he also got a message for the services. Again, when you put out messages in the world, automatically they take notice and you start getting sales, right? Next thing that we started doing was call booking. So basically, when we were doing our sales, a lot of sales we were doing through our webinars. Lekin webinars mein, if you would know that, let's suppose almost 98% people, almost 98% people are not going to buy in your webinars. That's like plain and simple. That's okay, right? The number of leads that you generate, out of that, 98% people are not going to buy. So what we did was, after let's say 2 months, 3 months of after we generate the lead, we invite them for a Zoom call booking. That, hey, you know what? If you need some more clarification, if you need some more details, if you need more information about this product, about this services, or whatever it is, or maybe it can be an educational call, you can book a private call with us. And in that private call, I can help you understand the product better. I can help you understand the service better. Or you can just call it as a free consultation call. See, let's suppose if you are a dentist, there is a reason why dentists, they offer you a free, dental consultation. If you are a gym, there is a reason why gyms, they give you a 2-day free trial, let's suppose in the gym. Because if there is a certain portion that you can give for free, and if a person can come and interact with you, there is a very high probability that, you can crack that sale. So a person who has already said that, I'm not going to buy a product, let's suppose after 1 month, after 2 months, you can give them the opportunity to book a call with you. You can easily use Calendly for this, book a call with somebody, use the Calendly software, book a call with the person. And once they come for the call, you can ask some qualifying questions. Once they come for the call, automatically, they are sitting there because there is a problem that is supposed to be solved. And in that call, if you can prove that you are the person who can solve that particular problem, automatically you can make that sale. Does that make sense? Give me a yes. By the way, there is one more. Sudesh is saying, because of the message I sent, I got an inquiry for website designing, right? Neelam says, on WhatsApp status, 25 views I have got till now. Great, right? Vishwarup Das is saying, what is the conclusion of the Instagram story? The conclusion is simple. Whatever it is that you have to sell, just post on your Instagram story. All right. Okay. So now this is something which is Jagannath says, LinkedIn is the best platform for client closing. I somewhat agree. And the reason I somewhat agree for that is simply because it is also one more good platform for selling. But it does not mean that it is the best platform. For me, the best platform is where my customer is. If my customer is, if I know about my customer, and if I know that that customer goes to the gym at 6 p.m. and that is the gym, I will go there and crack that deal right over there. I mean, it does not matter whether it is LinkedIn, whether it is the, whatever social media platform it is. मेरे को बस ये समझना है कि मेरा customer कहाँ पे है. And if I know that, मैं उसे वहां पे ढूंढ के लेके आऊंगा जहां पे वो है. Right? It's not the platform. It is the message that you need to communicate. Whatever platform it is.
So that is the reason why I post my messages on every single platform. And let me tell you the benefit of consistency. The big benefit of consistency is, you know what? For the last 2 years, we are posting at least 5 to 6 posts on my Facebook page on a daily basis. Okay, for the last almost 2 years. Facebook page की reach पिछले 2-2.5 सालों में dead है. I mean, it's like dead, right? And because of the Facebook algorithm. So no reach over there. लेकिन suddenly, I mean, see, it's all about the game of algorithm. अभी suddenly Facebook ने Facebook pages को reach देना start कर दिया in the last couple of months. Just in the last 2 months, we have gained 100,000, 1 lakh new followers on my Facebook page. And that's the power of consistency. 2 साल से हम वहां पे रेगुलरली कंटेंट डाल रहे थे, हार्डली पेज पे 5 लाइक 10 लाइक एक पोस्ट में. But we did it. We kept doing that for 2 years. And now in the last 2 months, 100,000 new followers. You can do the mathematics, how much revenue, how much business that is going to generate. Right? Anil Wang is saying, can we use Zeal for business development? Why not? Why not? My question to you is, why not? Right? Going to the shops directly. See again, a lot of my examples are going to be, because I come from a marketing background. So a lot of my examples are going to be about marketing. Of course, of giving or, selling some sort of product or service which is related to marketing. Of course, that is how most of my examples are going to be. However, what you need to understand is that how you can implement the same knowledge, how you can implement the same learning in front of your customer, whatever your customer is. For example, let's suppose, what do I mean with this example is going to shops directly. The thing that I mean with this example is, for example, think of it that I am a Facebook ads person. Okay, I'm a person who provides marketing services. Think of it. So let's suppose if I'm somebody who is into marketing services, what I will simply do is I will go to a lot of places, and wherever I will go, I will talk about my work, and indirectly. And it's not even, maybe it's not even the primary reason that I went over there. So for example, let's say if I went to a dentist, if I just went to a dentist, I will suddenly notice something that, hey, your website is not ready. Your social media page is not active. And then I will start talking to them. I'm not even pitching them. But you know what? When you talk to somebody, and when you're not even pitching, there is a very huge difference. Okay, when you're talking to somebody without pitching, but you still show them the benefit of doing that exact thing, they are more receptive to hearing to you. Do you agree? They are more receptive to hear to you. I mean, so basically you're talking to them, but you're not really pitching. So now it's a normal conversation, and it's an equal conversation because you are a customer. You came there, you took a service, and you are just talking. अरे यार आपके जिम में मैंने देखा आपको कोई वेबसाइट नहीं था बाहर. अच्छा मैंने अभी आपका वेबसाइट खोला, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है. I mean, you are losing out on so much of revenue. You are losing out on so many customers. Why are you not advertising on Facebook? I have never seen your ad on Facebook. वो तो मैंने अभी, let's suppose I go to a gym. मैं तो यहीं पास में था, तो मेरे को पता चल गया आपके जिम के बारे में. लेकिन how would people get to know? And then they will automatically, they will start getting engaged with you. Okay, tell me more about it. And then that's where the conversation starts. I mean, see, I no longer provide any services, okay? But I have a habit that whenever I go somewhere, I talk to people. And, I recommend them things ki jo unko karni chahiye. And the fact that I'm no longer offering the services, is the fact that I'm not working with them. But a lot of times, whenever I give ideas to people come back to me that, can you do it for me? And a lot of times, my answer is no, because I am not providing that as a service. But, this has happened to me so many times now that it's even hard for me to recollect that, how many times it has happened to me. Does that make sense? Right? Kushal says, sir, बात करने से डर लगता है. Right? I agree. बात करने से डर लगता है. सबको लगता है. पहली बार सबको लगता है. But what we need to do is simple. We just need to start. See, again, I agree that जब मैं पहली बार selling करने गया था, तब मेरे को भी डर लग रहा था, because we are not habitual of doing that, right? पहली चीज वो ये है कि यार, whatever you are offering,
just remember that that thing is going to be very helpful for them. It is they who are into the profit. It is they who are into that pain that you are solving for them. It is them, who wants that thing desperately. I mean, if you help somebody with your Facebook ad, with some marketing services, with some health-based services, with some, whatever it is, and they desperately need that. So again, you are actually doing them a favor by talking to them. And when you are not doing a favor, every single moment you are not talking to them, that is the time in which you are not doing them any favor. So please go ahead and talk to people. That is how you are going to be benefited. They are going to be benefited. And also remember that, you just take it as a simple conversation. Don't even think in your mind that you're going to sell. Just think of it as a normal conversation. And don't even try to pitch. I mean, when you are going and talking to people directly, just like that, don't even pitch. Just build a relationship. And somehow, somewhere down the line, they will come back to you themselves. क्या ये सबके साथ हुआ है? किसी के साथ हुआ है यहाँ पे? Yogendra says, I'm a creator, not marketer, इसलिए marketing में कुछ समझ नहीं आता है कैसे करूं. The biggest thing that you can do is marketing, the best marketing that can happen for you, or that you can do, that is, you can do with your mouth. Wherever you have the opportunity to talk, wherever you have the opportunity to talk about your work, you do it. Simple. That is the best marketing. So चाहे आप किसी से, किसी गैदरिंग में मिले हो, चाहे किसी इवेंट में मिले हो, चाहे वो आपका कैमरा ओपन करके आपने कोई वीडियो बना के डाल दिया, whatever it is, just talk about it. That is the best marketing. Forget, a lot of times we get so much engrossed into assuming that there is some secret sauce, into assuming there is some secret strategy, into thinking that these marketers are some sort of geniuses and they know something which is so much exceptional. But that is not true. If I need to record a Facebook ad today, I will simply record a Facebook ad that, hey, you know what? This is something, I'm doing a presentation in which I'm going to teach you Facebook ads. I'm somebody who has done Facebook ads for quite some time. I have helped a lot of clients. I have done it for myself. And in this workshop, I'm going to teach you how you can get lead sales and more revenue with the help of Facebook ads. The link is right over here. Go ahead and join the workshop. You tell me, in my entire ad that I just recorded right in front of you, you tell me, इसमें मैंने क्या marketing logic लगाया, क्या दिमाग लगाया, क्या strategizing करी? Nothing. The biggest thing that you can do is just be consistent and be in front of people over and over and over again. The more they see you is the biggest and the best marketing that you can do for yourself. Does that make sense? Give me a yes. All right. The next thing that you need to do is start making a lot of different style of videos. Okay. You start making a lot of different style videos. So basically, आपका जो भी product है, आपका जो भी services है, आपका जो भी offering है, of course, whatever that product, whatever that service is, whatever that offering is, उसमें कुछ benefits होंगे उसके. So you make a video in which you highlight the benefits of that. Then you make another video in which you highlight the demo portion of that. The demo can be anything. I mean, let's suppose अगर वो course है, तो you just show the course area. अगर वो course है, तो you show the course area. Somebody, Philip says, how for real estate? You show the land. You show the property area. And if I talk about real estate, I can make a video based on real estate talking about the benefit. Let's suppose if I'm promoting my real estate from the investment perspective, then I will tell people that, in the last 10 years, the real estate property rates has gone up at least 100 times or 50 times or 20 times. And when you put your money in the bank, the interest that you get is 3%, 4%, 5%, whatever it is. So it is the best thing that you can do if you want to scale, grow your money. It is to put into real estate. And if you need my help, I'm a real estate consultant. If you need my help, I can allow you to book a free call with me. You click on the link, come with me, and I will, suggest you and help you with that. Simple. Just keep things very, very simple. And then run this thing as an ad on the Facebook. Simple. Does that make sense? Give me a 1. So for every single thing, whether it is real estate, whether it is some services, commodity product, courses, softwares,
ebooks, whatever it is, you can create a video based upon the benefit, based upon the demo, based upon the features, based upon the membership area, based upon the customers, right? You can show the happy customer stories and just show that in front of the people and make a video based on that. Done. But the point is that you keep doing it over and over and over again. And you keep putting it out into the world over and over again. Right? Sapna says, very important info. I was stuck with that. I'm happy that it has just helped you. And Sapna is going to be one of the speakers today. So you are going to learn a lot from her. Huh. Thank you. Jitendra says, a lot of love for such good session. Thank you. And we are just getting started, right? We are not even 25% done. All right. Hanji, Groot. Okay. So the next thing that you can do is sales and the offers. What you can do is, again, come up with a lot of offerings and a lot of selling opportunities. A lot of offerings and a lot of selling opportunities. All right. So basically, think about it in this way, that how can you come up with some sort of offering? So basically, one of the mentees, he, over a period of time, he's using a call booking funnel, by the way. Okay. He's using a call booking funnel, and he is into helping people with, one second, PCOD. So he's helping females. So there's some female doctor that he is working with. PCOD होता है, PCOS होता है. PCOS, yes. So sorry. So he's helping people with PCOS, okay? So over a period of time, there were quite a lot of people, those, who had booked a call with him, but they never turned up for the call, okay? They never turned up for the call. So what I suggested to him was that do one thing, पिछले 6 महीने में जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपके साथ कॉल बुक करी थी लेकिन वो कॉल पे नहीं आए हैं, just do a promotion for them. Okay, just do a promotion for them and offer them some discount, maybe 10%, maybe some 15%, whatever it is. And he did that, and he generated about 4-5 lakh rupees within the 7 to 8 days promotion period. Simple, right? So basically, again, there are people inside your list. There are people inside your audience who may be looking for some, let's say some sort of sales offering. So if you offer that to them, automatically they become inclined. And one of the reasons that you can come up with some offer in front of the people is that, it gives you an angle to get in front of them, because sometimes the product remains the same. Okay, remember that. Sometimes the product remains the same, but you need to wrap that same product with different covers. जैसे कि एक गिफ्ट होता है ना जो पहले आपके घर में आता है, फिर आप उसका कवर निकाल के उसी गिफ्ट में नया रैपर चढ़ा के आगे पास ऑन कर देते हो, स्पेशली जो सोन पापड़ी आती है. So that same thing, right? So you need to wrap the same product with the different wrappers over a period of time, and you keep on passing it to different people, and you keep on bringing it in front of different people. And automatically one wrapper is going to attract one person and another wrapper is going to attract another person, right? Does that make sense? So basically, if I talk about flexi funnels, okay? So the way I am going to do the marketing, let's suppose in front of one person, I'm going to tell them that, what, this is a product that is going to help you to launch your course, which it does, of course, I'm telling them the genuine thing, right? So, but to another person, जो audience में से freelancing के बारे में सुनने के लिए आई है, to that person, I'm going to tell them how flexi funnels is going to help them with their freelancing. So again, same product, but different wrapper. Another example for that is, let's suppose if I'm selling a mattress, so to one person, I'm going to tell that this mattress is going to help you in getting a better sleep. But to another person, I'm going to tell that this mattress is going to help you with your back pain. Same product, different wrappers. So think about it. Think about all the different kind of benefits. Think about all the different kind of angles you can use to present the same product in front of different people. And then if you can come up with some, limited time offering, so again, you can keep doing that. Does that make sense? Give me a yes. All right. Sir, FB ads के लिए different ways क्या रहेंगे? What do you mean by FB ads के लिए different ways क्या रहेंगे? If you are a part of Flexi Funnels, वहाँ पे मेरी Facebook ads की detailed training already available है. Just go and watch that. Start implementing. Start running your ads. Right? That's how so many people are doing.
right? All right. You can create a benefit-driven series. How many of you have seen 0 to 1 crore series on my YouTube channel? Give me a yes. How many of you have seen my 0 to 1 crore series on my YouTube channel? So that is one series in which I have shared everything, a lot of details, okay, a lot of details regarding, how you can go from 0 to 1 CR. All right. That is one thing that I've shared in that series. But at the same time, I have shared that how you can do all those things using FlexiFunnels. And at the same time, I have shared, how FlexiFunnels is your best solution to be able to do that. So basically, what I have done is, I also understand that there is a set of audience who needs more information regarding the product, who needs more information regarding how this product is going to help them. So now think about it. If you are a yoga trainer, can you make a big series? So by the way, the 0 to 1 crore series is on my YouTube channel. This is a 15 video ki series. In that 15 video ki series, it's almost 4 se 5 ghante ki series. It's a very thorough, very detailed series with a lot of actionable input, with a lot of learning. Of course, when I'm putting content on YouTube, I'm putting my best stuff, of course, right? And then over there, multiple times, I've told people about FlexiFunnels. So you think about it, let's suppose, what you can create a content about in which you can tell a lot of things that your product, your service, or in general, the people, the customers in your niche who are there, they can consume from you. Because if you can show to people that you are the best person to help them about something, then automatically, you are going to be the person whom they would love to buy from. So basically what you need to do is, some people always think that, should I post my free content should I post my most valuable content on my social media? Should I post it for free? And the answer is yes. You should post it for free. You should post a lot of extra content. At the same time, you should post your best valuable content. The people, see, again, what people are becoming a part of with your offering is your personal access, your personal, time, the personal structure in which you have provided things inside your offering. Maybe it's your direct service, one-to-one. Maybe it's a course, whatever it is. But they are becoming a part because of the extra fast manner in which they will be able to do things because of the full thing that you are providing to them, whether it's a course, whether it's a service, whether it's a one-to-one done for you service, done with you service, whatever it is. Okay. Next thing is a niche specific group. You become a part of a lot of Facebook groups. You become a part of a lot of LinkedIn groups. You become a part of a lot of forums on the internet. And just be there with one single agenda. And that agenda is that you do a lot of value sharing over there. That's it. That's your only agenda. Don't even think about pitching. Just keep on sharing a lot of value over there. Just keep on sharing a lot of content over there. Just start commenting on people's posts over there. Okay. You tell me how many of you, give me a yes. Okay. Give me a yes. How many of you have got at least one client or customer because of the content that you posted or some comment or value sharing that you did in a Facebook group? I can see so many yeses coming in over here. It is bound to happen. It happens naturally. Just engage with people, because at the end of the day, you need to remember a person does business, a human being does business with a human being. So first, if you can get connected with a person at a human level, the business takes care of itself. So if you can position yourself as an authority, and not by thinking of positioning yourself as an authority, just by remembering just one simple thing, and that is that you are in that group just to share value. That's it. Just share value inside that Facebook group, inside that YouTube, inside whatever comments or whatever it is. If a person has asked a question, help them with a reply. They will themselves go ahead and check your profile, and if they feel something worthy enough that they should be a part of, they will. Right? Vishal says, many clients I got from the group. Great. Right? See, every single thing that I'm telling you has worked for me and has worked for, so many of our members who are sitting over there. How many of you are aware of BNI?
There are BNI groups in your local city. There's so much money that is sitting right over there that you can make right in your area where you are. Just go and search for the BNI group. Okay, so there is a member over here, SP, and he says that I am a member of BNI. Right. So basically, these are the communities in your area you can become a part of, and they will, what if somebody says what is BNI? Just search on Google, you will get to know. They will give you access to a private community, to a private good community of good people, educated people, good people who are doing good things. So when you are in front of people, again, remember, selling, first of all, is ultimately you getting connected with people, especially when you have the kind of work in which there is more one-to-one kind of selling. That in that case, it becomes way too much important that you are in front of people, where you can interact with a lot of people physically. I mean, don't leave any opportunity like that. If your work is something in which, digital selling, online selling is more prominent, in that case, you can hide behind your laptop. You can do a lot of work from your laptop. You are going to be okay. But if your work involves a lot of personal level work, then, take every single opportunity where you can go and talk to people, or maybe you can go and meet people, and especially that is a good place, right? So you do that. There are events that are happening in your niche. You go and become a part of that. Not because of the content. Maybe the content is not even great, but just because of the networking, you just become a part of it. I'm just curious. I'm opening the chat for everybody right now. Give me a yes, all of you, those who have got a client or a customer because you went to some event. See, that's what happens. Right? I'm closing the chat because I don't want anybody to be spamming anyone. Right? So again, by the way, एक chat बाद में आई थी. मैं उस समय मैंने एक chat disable कर दी थी. But Hemant Vyas says, this is my main source of acquisition. Do you see? Raghav says, I closed 1 lakh rupees of client from FGS. So that was our event that we did in January. आप क्यों नहीं आए उस event में? Those of you who did not come, those of you who did not come to the event, my question to you is, आप क्यों नहीं आए उस event के अंदर? Sharon का यहाँ पे मैसेज आया है. By the way, good to see you. From FlexiBunnel event, I collected 2.2 lakh rupees. Again, my question to you is, आप क्यों नहीं आए इस event में? जो लोग वहाँ पे नहीं आए थे, you have to be there. You have to be there. Harsh Gupta is over here. Wow, happy to see you. I closed the high ticket client as well. Great, right? Sudesh, again, so many stories, right? All right, Toastmasters, आप सबकी सिटी में it is hardly कितना होता है इसका फीस? 4,500, 5,000 rupees for 6 months. 5,000 रुपए इसका 6 महीने का फीस होता है. By the way, I have 2 more messages. Wow, I'm happy to see this. Anupriya says that I closed 2.2 lakh worth of services from FGS, and Chirag says I closed more than 10 lakhs till now after FGS. Awesome. And by the way, Umapada says, one second. Umapada says, I got a query on Facebook just now because of the message that I just asked you to post. And Prabsharan says, I got 5 high ticket clients from FGS. And Mohammad Amay says, I closed 1 CR. Wow. Tapash said, after FGS, I earned 40 lakh rupees. Again, stories right in front of you. What is FGS? That's an event that we did in the month of January. I mean, forget about FGS. If we have any product, any offering for you, you should take it blindly. That is the level of confidence that I have. And the reason for that is because, we deliver. That's like the most important thing that we do. All right. So let's come back. Toastmasters. आप सबकी शहर में, आप सबकी city में, so many places. It is hardly 5,000 rupees for 6 months. I was a part of Toastmasters when I was doing my USP वाला work. जो हमारा coupons वाला work होता था ना, हम लोग उस समय मैं Toastmasters करता था देहरादून के अंदर. And we did an event. I used to go to Toastmasters. I went there for almost 1.5 years. That was the time when I used to be a very shy person, when I used to be a very, I wanted to speak in front of people, but I could not. So I wanted to improve on that. See, again, if you cannot do something, if you are not good at something, what's the only way of making, of changing that? The only way of changing that is you practice that. It's as simple as that, right? So I was not good at public speaking. So I went to Toastmasters and I started practicing public speaking. I did that for 1.5 years.
And naturally, I became a better speaker. I became a bit more confident, right? At least good enough to be speaking in front of you, if not the best. And then the next thing that I did was I cracked this person who paid me 3 lakh rupees for the title sponsorship. I'm still confused. I'm not sure 3 lakh rupees tha ya 3.5 lakh rupees tha. I'm not able to remember. But जो हमारा event हुआ था देहरादून में, the last event that we did in Dehradun back then, उसमें इसने हमें 3.5 lakh rupees का sponsorship दिया था as a title sponsor, right? Not the basically Toastmaster ने नहीं दिया था. One of the persons just like me who used to come and join the Toastmasters meeting. Somebody says, Prableen says, what is Toastmaster? Prableen, Toastmaster is a body. It is in almost, I don't know, more than 100 countries. And it is basically for public speaking and, your communication. It helps you with your communication, with your public speaking. And more than that, more importantly, it gives you a network. I mean, see, two benefits. Number one, you are, they help you with your communication. Number two, they give you a network where you can talk to people, meet people, good people. And of course, people who are coming there are, well-qualified people, and you make good network. And, the first benefit in itself is so very good enough for you to be going there. And when you are there, if you also crack a sale out of that, that's like, what do you call the brownie on top of the, whatever you call it, or maybe the vanilla on top of the brownie, right? Sharon says it's like a Rotary Club. Yes, it's like a Rotary Club. All right. So next thing is you go to meetup.com, you go to websites like Eventbrite. There are so many meetups that are happening in your local area. So whenever you get time, whenever you get the opportunity, or, you make time, you always get time for things that are your priority, right? So if you can make time, of course, you make time for that and go to the events that are happening in a local area, and they are in your niche, specifically if they are in your niche, and specifically if you are in the kind of work that involves, if you are in the kind of work that involves a level of, personal communication with the customer. So you should not leave any opportunity of going to the meetups, of going to the events, of going to these gatherings or whatever it is. So meetup.com, Eventbrite, you keep checking that. You will definitely find some sort of event happening in your city. You go and meet the person over there. Make sense? Deepa says, and Abhinandan says, cherry on the cake. Cherry on the cake. ये भी अच्छा है, पर मेरे को vanilla on the brownie ज़्यादा पसंद है. So I will stick to that. Okay. So next thing is, if you are an agency, if you are a service provider, if you can help people with your some sort of marketing services, what you should do is, this is something, that I'm not even saying you should. I'm saying that you do it. Just go and do it. All right. Just do a local workshop for people, whatever it is. Whatever it is that you can teach to people, just go and do a local workshop, and you will be surprised to see, the people who would be coming over there, they will be so desperate to be working with you. And the next thing that you can do is, first of all, you start doing the generic kind of workshops. Let's suppose a generic workshop, I don't know, maybe on whatever it is, whatever you teach, maybe, Facebook ads, maybe photography, maybe yoga, maybe whatever, XYZ, whatever it is that you are teaching, and time management, XYZ, just do a generic workshop, maybe designing, maybe, calligraphy, whatever it is, whatever you are teaching, just do a generic workshop. You will be surprised to see so many people to come over there, and you will be surprised to see so many people who would be interested in working with you. All right. So you do it, you are going to see the impact. And the next thing that I would like you to do is that you do it for a very specific set of people. You do it for a very specific set of people. For example, if you're providing Facebook ad services, so you provide Facebook ad services, and let's suppose you are doing a meetup. You do a generic Facebook ad, services meetup. And then next time when you do a Facebook ads meetup, you do it for a particular niche. And, that the meetup is Facebook ad meetup for doctors, Facebook ad meetup for, let's say, real estate companies. And now what is going to happen is a lot of very targeted people are going to come into that workshop. Of course, the attendance is going to be low, but they are going to be super targeted, and they are going to be people who are qualified to pay you money.
because they have money. See, the people who can pay you money are the people who have money, right? And the people who can pay you high ticket money are the people who are making more money. So ultimately, if you do the meetup specifically targeting the kind of people who who come into high income brackets, again, real estate people, colleges, let's say both dentists, chiropractors. I mean, simple examples, right? Real estate. And you just promote to them, automatically, they are going to be more than interested to be working with you. Does that make sense? All right, have a look at this. Sharon says, I did a casual meetup for my inner circle. 5 people showed up. One person became my mastermind program client after a year. Yes, that's what happens. I mean, is Sumit over here? Sumit Kashyap, are you here? Sumit Kashyap ne abhi group mein recently post dala tha. He made over 33 lakh rupees using FlexiFunnels. And I met him in a meetup that I did in Delhi. So I did a meetup over there almost, it was back in probably 3-4 years ago. Around 20-25 people showed up for that meetup. And Sumit Kashyap was one of them. He ended up buying my course, Timeline Nomination. And 3 years later, he has made 33 lakh rupees. He became a customer. I got a good customer. He is able to help so many people. I was able to help him. That's like, the ideal thing that can be done, right? In fact, Arman just told me that he's going to be joining us today. Right. So let's suppose, when he is joining, we will talk about that experience. Next thing is I'm coming towards the end of my PPT, and then I'm going to start inviting the speakers that we have. Right. The next thing is you do the reach outs. If you are sitting idle, if you are done creating the content, if you are done, reaching out, if you are done posting, if you're done anything, just start reaching out to people. I mean, you have Instagram, you have LinkedIn, you have WhatsApp, you have so many places. And it does not matter if you have reached out to a person before. If you have reached out to a person before, it does not matter. If you have reached out to a person before, you reach out to them again. You do it. And then you will see a better response from them the second time you reach out to the same person. You will see a far better response from a person, to whom you are going to reach out for the third time. Some people are going to ignore, for sure. Some people may even, say some bad words. Does not matter. Right? Because what matters is the person who is really looking to get that help from my side, you reach out to them, and maybe you reach out to them in the state of mind in which they really need your help at that particular moment. And that is when, they will be more than receptive to your message. And that is when they are going to be working with you. Does that make sense? So basically, you keep reaching out to people. Does that make sense? Give me a yes. Come on, give me a yes. अभी हमको ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर तो हो चुका है, 1.25 घंटा हो चुका है. And how many of you have made a lot of notes so far? Give me a 3 in the chat box. I am left with 2 more slides. This is something that I've already covered. Meet people in the events. In fact, I was about to take the names of people जिन्होंने कि अभी आपके सामने खुद comment कर दिया है. Harsh Gupta, he got some amazing clients from the event. Chirag got some amazing clients from the event. Umang got some amazing clients from the event. Gopal says 8 pages of notes. Great. Love to hear that. Right. Benefit driven. I mean, those of you who are the customers of FlexiFunnels, what you can simply do is, if you are a service provider, what you can simply do is you can go to the groups. You can go to the groups like, of different companies. Let's suppose Elementor, let's suppose Divi. I mean, different companies that are out there on the internet, and just show them the difference that when they start using FlexiFunnels, unko kitna benefit hoega. The simple way to do that is, for example, in one of my trainings, I showed you GT matrix, right? If you have seen the trainings, you would be aware of GT matrix. How many of you are aware of GT matrix? If you are not, just go and check. So basically, if you go and check the pages that are made on GT matrix, the pages that are made on FlexiFunnels, and if you put them on GT matrix, you will see that FlexiFunnels pages are automatically by default far more optimized, way too much more optimized than any page that you make using any platform. And the proof is GT matrix. You go and check it, you will get to see the real proof. So basically, you can talk to people who are using different companies, who are using different kind of softwares, and you can just show them that when you start using FlexiFunnels, automatically you are going to start making more money. I mean, we have case studies right over here. Have a look. Pranav is a customer who was using Elementor with WordPress, right, with some templates. His website used to take 4 to 6 seconds to load.
And, every single click was costing him more than 100 rupees. And then what he did was he shifted his same exact page on FlexiFunnels. His page speed automatically became very, very fast, 2 to 3 seconds. And automatically his cost per lead, it went down. He was able to retain the client and, he started making more money. So simply since all of you are a part of FlexiFunnels community, you start reaching out to people, show them the benefit. You show them, these are people who are already using some platform. If you show them that, when you start using this and you give them your affiliate link. So basically you will start making recurring commissions with your affiliate link because they bought because of your link. And not just that, you are helping them with a better platform. Again, Avinash over here, he shared recently that he used the cart abandonment feature of FlexiFunnels, and with this particular feature alone, he made 58,000 rupees. In fact, iska abhi kal bhi post aaya tha that just with the cart abandonment feature of FlexiFunnels, he made more than 90,000 rupees. Again, there's so many things that we have done inside FlexiFunnels, jiski wajah se you get more sales. So you pitch them to your customers, to your clients. Customers of different platforms, and they will be more than happy to work with you if you can prove them that this is a better platform, and they will become your clients ultimately, right? I have come to the end of my content, which was not even planned until 2 hours ago. Okay. And then I just took out my diary and I just planned, okay, you know what? I thought there will be so many mentees of mine who will be sharing so much content, but even I have some good content to share with people. Let me also share my experience. And then I made all these notes. So I'm happy. By the way, a lot of learnings for you so far, right? And Yogesh, are you there? Can we start inviting people? And if you can help me with the list so I can start inviting people one by one. All right. Okay, so Chirag, we will call you first. Chirag says, sir, please allow me to share my story first because I have a sales webinar within 15 minutes, but I genuinely want to share my story. Chirag, we will definitely call you. So I'm going to unmute Chirag. 1 second now. Chirag, okay, I can see two Chirag. 1 second. Yeah, hi, sir. Yeah, Thank hi, you so Chirag. much for giving me the chance. Most welcome. So, Chirag, kahan pe based ho aap? By the way, I like your DP. Sir, ये FGS की है basically. You remember I met you over there, and basically मैं दिल्ली से ही हूँ. अच्छा, okay. Yeah, of course I remember. मैं उस फोटो में है, तो मेरे को तो याद है. Yeah. Yes, Chirag. So, yes, would love to hear your experience. And Yogesh, if you can share, if you can ask everybody, get their PPTs. I will download it and I will start sharing when they are speaking. Yeah. Chirag, I don't have your PPT, so let's continue without the PPT of yours. She will share. Can I share my screen if possible? I'm not sure if you can share because you are. 1 second. Let me check. Chirag, I just promoted you as a panelist. So can you? I am not sure whether just as a direct member whether you can share or not, but probably as a panelist you can definitely share. Yogesh, एक बार सबसे PPTs ले लो और मेरे mail पे डलवा दो, so that I can keep sharing when they are talking. Yeah, sir, I have joined with this access. Okay, can I start? Yeah, of course. Go ahead. Yeah, sure. Thank you so much. Not able to share the screen yet. It's not visible or what? The sharing option is not available. Host is not allowing. Arey yaar, 1 second. Check now. Okay. Now I can share. Thank you so much. Yogesh PPT madipreneur@gmail. Okay, I hope so. Like मेरी screen visible है आप सबको? Yes, now it is.
Okay. Yeah. So hello everyone. Thank you so much, sir. First of all, for giving me this opportunity. And like guys, I have less time, so मैं उस time के अंदर try करूँगा आपको best deliver करने का. And yeah, basically myself चिराग छाबड़ा, and I'm a sales closing specialist. मेरी expertise sales में है, closings में है, webinar selling में है. And yeah, recently guys, मैंने अभी तक 800 से भी ज्यादा लोगों को obviously सिखाया है about my sales and all through my workshops and through my courses and mentoring programs. And yeah, let's proceed further guys. मैं डायरेक्टली आपको जंप इन करता हूँ अपनी फर्स्ट क्लाइंट की जर्नी पे. कैसे मैंने अपना फर्स्ट क्लाइंट क्रैक किया. गाइस मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी आप लोगों की तरह ही कि कैसे मतलब फर्स्ट क्लाइंट्स फर्स्ट सेल लेके आ सकता हूँ मैं 2.5 साल पहले. ठीक है, तो उस टाइम पे मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ खास अच्छी नहीं थी एंड आवाज थोड़ी बच्चों जैसी थी. 17 साल का था मैं उस टाइम पे एंड 2.5-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको. ठीक है, तो उस टाइम पे डील्स क्लोज नहीं हो रही थी एंड ये सारी प्रॉब्लम्स थी. तो मैंने एक सिंपल सी चीज वहां पे करी कि मैंने क्या किया, मैंने फ्री 30 मिनट्स की कंसल्टेशन देनी शुरू करी और मैंने 3 से 4 लोगों के साथ ही किया. ठीक है, क्योंकि मुझे ये आइडिया सौरभ सर राहुल सर से ही मिला था कि कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यू दो लोगों को. एंड मैंने वही किया, 30 मिनट्स की कंसल्टेशन देनी एनीवेज मैंने शुरू करी. 2020 की मैं बात बता रहा हूँ. तो उस टाइम पे मैंने 3-4 लोगों को दी ये कंसल्टेंसी एंड उनको मैंने बोला कि देखो बेस्ड ऑन द कंसल्टेंसी दैट आई गेव यू, जो भी मैंने आपको सिखाया है इस 30 मिनट के अंदर, तो क्या आप मेरे लिए सिंपल सा एक काम कर सकते हो कि मेरे लिए 1 मिनट की एक वीडियो बना दो. ये लोग पेड मेंबर्स नहीं थे गाइस, ये मेरी लीड्स थी जिनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया कुछ. देखो आपको ही पता है फ्री ऑफ कॉस्ट कौन मना करता है, कुछ उन्हें मिल रहा हो तो राइट. तो मैं बेसिकली उन्हें सेल्स के रिगार्डिंग नहीं, उस टाइम पे मैं एक प्रोडक्ट एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा था, उसके रिगार्डिंग कंसल्टेंसी दे रहा था मैं. ठीक है, सो उसके रिगार्डिंग मैंने चीजें शुरू करी. 1 मिनट की वीडियो उन्होंने मेरे साथ शेयर करी. मैंने उन्हें बोला सिंपली इतना बताओ इस वीडियो के अंदर आप कौन हो, आपको जो मैंने आपको सिखाया अभी उसके बेस पे आप अगले 1 साल में क्या कर सकते हो, क्या प्रॉफिट रेवेन्यू टर्म्स में मनी बना सकते हो, बस उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दो. पोटेंशियल मनी जो आप बना सकते हो गाइस, आप भी ये कर सकते हो. फ्री में लोगों को कंसल्टेंसी दो, 3-4 लोगों को बोलो कि मेरे लिए एक टेस्टिमोनियल वीडियो बना दो, एक फीडबैक वीडियो रिगार्डिंग द वैल्यू दे गॉट फ्रॉम यू. मैंने अपनी वहां से उन वीडियोस के थ्रू क्रेडिबिलिटी बनाई कि ठीक है लोग मेरे को ऑलरेडी जानते हैं, ये सारी चीजें हो चुकी हैं. एंड मैंने अपना फर्स्ट लो टिकट क्लाइंट वहां से क्रैक किया एंड मैंने कॉन्फिडेंस ग्रैब किया कि ठीक है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया सेल्स का. एंड मेरे लो टिकट क्लाइंट तभी आया जब मैंने लोगों को पहले फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज करनी शुरू करी. इट डजंट मीन कि सबके लिए ऐसे ही काम करेगा, हो सकता है आपके लिए डायरेक्टली आप जाओ सेल्स कॉल पे, आप में कॉन्फिडेंस है, आप इजीली क्लोज कर पाओ. मेरे पास इतना मैं कॉन्फिडेंट नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने इस तरीके से अपनी फर्स्ट सेल क्रैक करी. एंड ग्रेजुअली मैंने अपने प्राइजेस को भी बढ़ाया. ठीक है, मैंने अपने प्राइजेस को तब बढ़ाया जैसे जैसे मेरे को कॉन्फिडेंस आता रहा. राइट नाउ आई एम चार्जिंग हाई टिकट एंड हेल्पिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड टू क्रैक हाई टिकट डील्स ऑब्वियसली. एंड गाइज मैंने कोचिंग इंडस्ट्री में भी तभी एंटर हुआ मैं जब मैं खुद से 6 फिगर्स इनकम रेवेन्यू टच करा एंड हाई टिकट डील्स क्रैक करी. तभी मैंने सेल्स भी ऑब्वियसली सिखानी शुरू करी. एंड अगर मैं आपको हाई टिकट अपने क्लाइंट का एक यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, मैंने क्या किया ना, मेरी एक कोर्स पहले मैं बीच में सेल कर रहा था सिर्फ. उस टाइम पे मैंने एक डिस्कवरी कॉल करी एक लेडी के साथ. उन्होंने मेरे को मैसेज किया चिराग आई वांट टू टॉक विद यू एंड ऑल द स्टफ. मैंने सिंपली उनके साथ बात करी, सारी चीजें हुई एंड उन्होंने मेरे को ना कैलेंडली पे होता है, आप सबको पता है कैलेंडली पे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. मैंने उनसे पूछा था कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो कि नहीं. मैं लॉन्च कर रहा था अपना हाई टिकट प्रोग्राम उस टाइम पे. ठीक है, तो तब की बात है. एंड उन्होंने लिखा चिराग मेरे पास 500 रुपए हैं. अभी भी मेरे को याद है कैलेंडली पे उन्होंने लिखा था. एंड मैंने वहां पे क्या किया, आई यूज रिवर्स साइकोलॉजी. रिवर्स साइकोलॉजी मीन्स मैंने कहीं ना कहीं उन्हें ऐसे प्रिटेंड किया कि हम कॉल पे अगर आ भी जाते हैं तो आई डोंट थिंक सो अगर मैं आपकी हेल्प कर भी देता हूँ. मैंने उन्हें बताया कि ऑलरेडी हमारा मेरा क्या पर्पस है, सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करना, लोगों की हेल्प करना, राइट. तो मुझे चाहिए कि आपको मैं रिजल्ट दिलवा पाऊं, बट आपने कहा आप तो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे, तो शायद इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू. तो उन्होंने मेरे को रिवर्स साइकोलॉजी जब मैंने यूज करी, उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं नहीं चिराग आई कैन मैनेज, मैं लोन ले सकती हूँ. हमने कॉल करी, उन्होंने मेरे साथ अपनी सीट लॉक करी 24,000 रुपए से 50,000 के प्रोग्राम के लिए मेरे विद इन 35 मिनट्स. एंड गाइस आपको भी मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, जस्ट सिंपली गो. जैसे सौरभ सर हमेशा बोलते हैं जस्ट शो अप. जाओ मार्केट में, क्लाइंट्स के पास जाओ, लीड्स के फ्री में काम करना, फ्री में करो, कोई दिक्कत नहीं है. आगे चल के लोग आपको लो टिकट भी पे करेंगे, हाई टिकट भी पे करेंगे. एटलीस्ट वर्क फॉर देम, राइट. अगर आपको पता है आपके पास स्किल सेट्स हैं तो, राइट. एंड या एक और क्लाइंट की मैं यहाँ पे अगर आपको शेयर करूं,
जो मैंने अपना फर्स्ट हाई टिकट क्लाइंट क्रैक किया था, ये जो हमने थोड़े टाइम पहले रिसेंटली लॉन्च किया था उसके बारे में, एंड ये मेरा लाइक डिफरेंट हाई टिकट डील मैंने क्रैक करी थी। जब मैंने लॉन्च क्यों किया हाई टिकट, मेरे को एक पर्सन ने मेरे वेबिनार में से कॉल किया, नंबर निकाला मेरा वहां से, एंड ही कॉल्ड मी, और कॉल करके बोलता, चिराग आपका ना कोर्स है, लेकिन मेरे को ना आपकी 1-on-1 कंसल्टेंसी चाहिए, मेरे को पर्सनल आपसे सीखना है, पर्सनल बैठ के। मैंने कहा लाइक मेरे दिमाग में चल रहा था मेरा तो कोई ऐसा प्रोग्राम ही नहीं है हाई टिकट, तो मैं क्या दूंगा उसको। लेकिन जब मैंने उसके साथ कॉल पे आया, मैंने उसको ये नहीं कहा कि मेरे पास नहीं है, मैंने इन फ्रंट ऑफ हिम ऑफर बनाया, उसको बोला, सारी चीजें बताई कि मैं आपकी 1-to-1 कैसे हेल्प कर सकता हूँ। उस बंदे ने मेरे को 15,000 एडवांस पे करे फॉर माई 50,000 रुपीज प्रोडक्ट, राइट। देन मुझे कॉन्फिडेंस है कि यस आई कैन स्टार्ट विद दिस। और मैंने वीएसएल फनल फॉलो किया। वीएसएल फनल का एक छोटी सी लाइन में आपको समझा देता हूँ कि लाइक वीएसएल फनल का मतलब, आपने एक 20 से 30 मिनट की वीडियो बनाई जहां पे लोगों को वैल्यू दी। अब वैल्यू लेने के बाद आपके साथ लोग कॉल बुक करते हैं, कैलेंडली को यहाँ पे हम यूज करते हैं, एंड उस कॉल पे हम बेसिकली अपना हाई टिकट ऑफर पिच करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल वीएसएल फनल। ओके, एंड या इफ आई टॉक अबाउट माय लेटेस्ट क्लाइंट और कस्टमर स्टोरी, रिसेंटली मैंने एक फ्री वेबिनार जो मेरा हर हफ्ते चलता है, अभी भी इस वेबिनार के बाद है, उसके अंदर मैंने लाइक ऑन द स्पॉट 50,000 रुपीज लाइक जनरेट करे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू विद इन 3 आवर्स। एंड नाउ गाइज अभी मैं स्केल कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग ऑन इवेंट फनल, कि हम 3 दिन का एक लाइव इवेंट करते हैं हर महीने 2 महीने में, और वहां पे अपने हाई टिकट सेल्स करते हैं। बट आपको मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप एक फ्रेशर हो, लाइक गो विद वीएसएल फनल, सिंपली इट्स अ बेस्ट फनल। लाइक सिंपली आपने लोगों को वैल्यू दी एक वीडियो के थ्रू और कॉल बुकिंग लाइक करवाई, एंड यू आर सेलिंग ओवर देयर, राइट। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं यही आप लोगों को भी कहूंगा, ये चीजें आप कर सकते हो। फोकस ऑन मोर ऑन स्किल्स, राइट। इट्स सिंपल। मैंने स्टार्टिंग में अपनी जर्नी में मिस्टेक क्या करी थी, मैं पैसे पे फोकस कर रहा था कि सेल क्यों नहीं हो रही, पैसे क्यों नहीं आ रहा। इंस्टेड फोकस ऑन गाइस की मेरी टोनालिटी अच्छी तक क्यों नहीं है कॉल पे, मैं ऑब्जेक्शंस में क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या मैंने ढंग से फॉलो अप नहीं लिया। जब आप इन चीजों पे फोकस करोगे ना, छोटी छोटी चीजों पे सेल्स की, तो देन आपको रियलाइज होगा यस आई एम डूइंग नाउ नाउ आई एम गेटिंग रिजल्ट्स। तो देन आपको सिंपली क्या करना है, फोकस चेंज करना है। सॉरी फॉर फॉर्मलिंग। ओके, सो राइट नाउ गाइस, Basically, we keep on improving over a period of time, जो कि हमने अभी अभी भी डिस्कस करा था, that your whatever you do for the 100th time is going to be much better than what you do for the first time. So वो सारी चीजें अपने आप improve होती रहेगी. But the most important thing is that we start doing something. We have got a lot of ideas. We just go and implement it. That's the most important thing. Everything will keep on happening. Absolutely. That's what you have to do. राइट, एंड राइट नाउ गाइस, मैंने अपना लाइक 5,000 से शुरू करके, 5 भी नहीं 3,000 कहूंगा, स्टार्टिंग उससे करी थी। 3,000 से अभी अपने प्राइजेस रेज करे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है हमारे, एंड लाइक हमारा हाई टिकट वाले प्रोग्राम का प्राइस अभी 50,000 हम रेज कर चुके हैं, ऑल जस्ट बिकॉज द नॉलेज आई गॉट फ्रॉम एसबी सर, आरबी सर, एंड या फ्रॉम different mentors. And yeah, thank you so much guys. Like remember, just consistency beats everything, right? So keep working hard. Awesome. Let's give a quick 111 for Chirag in the chat box. And in the meantime, we have our next speaker ready. Chirag, hum log quickly, we will keep on sharing. I really want to say thank you, and I want to say thank you to everybody. But the problem is that we have so many speakers lined up, and they also have their webinars and things. So I'm grateful to everybody who has taken out their time, and they are willing to share their learning with so many people. So of course, thank you so much. So thank you so much. Bye bye. Take care, guys. Meeting. All right. So, Beshu, are you there? Yes, I'm here. Can you see me and hear me? Yes, we can see you loud and clear. So happy to see you. And I believe you can share your screen. Yes. Let me just share it. Okay, so let me know if you're able to see my screen. Yes. Okay, so this is me, Beshu Bhargav, and I started as an author coach, and now I am a Ho'oponopono healer. So I'll keep it very short and simple so that everyone is able to understand. So this is how I started, everyone. As I told, I began as an author coach. So I posted on my Facebook and WhatsApp regarding my free workshop, and from that workshop, I got 2 paid students. So this is the post I created, which I have given a screenshot also. Simply, I gave points and the link to register. I created a Google form because that's the only thing that I had. I had Flexi funnels, but I was too scared to, go into the all details of it and building pages and all. So I started this way. Then
this is how I got my highest ticket client. Once I got result with the first 2 students, I started posting those results in the various communities that I'm part of, and also on my Facebook platform, on my WhatsApp, just like sharing success stories. So if you can see on the left hand side is a success story from the first students, and on the right hand side is the DM that I got automatically from the community that I'm part of. And she herself said, "Ki, please be my guru." And this was, I guess, on Guru Purnima last year. So that is how I got this particular person. Next is I started with becoming a Ho'oponopono healer. So the current latest scenario that I would like to share with you all is, actually I'm not a very open sharing kind of a person. Only these kinds of platforms that I'm invited to, I go back and check क्या क्या हुआ. So I'm really grateful for SB giving me this opportunity. मैंने देखा ट्रैक किया तो मुझे लग रहा था कितना सारा कुछ हो गया है. So for my healing program also, I started organically with Facebook groups, paid communities where I'm part of. And if you remember, I shared Twinkle's story with you last time, which touched I remember it, and I love that. And that is like one of my motivations, Yes, please go ahead. Yeah, so that forced me to do this at a grand level. And then after your आपने बोला था कि promise me that you'll start running FB ads, उसके पहले मैं सिर्फ Facebook पे ही कर रही थी. So I started running Facebook ads, then landing pages and the course automations. Everything was done with Flexi, and I started doing 4 free webinars in a month. So because I was not able to do many, so I started with at least 4. So today I have 200 plus paid students. Actually, they are 300, 400 plus. And we were checking, we have reached 20 lakhs plus in revenue in just 6 months after we have started those ads in November. आपने जब मुझे डाटा था उसके बाद से. So I need mentors to, push me. I start buying courses very easily, but implement करे में I'm the last person. But once I start, I do it good. So thank you so much. So here is the screenshot. See, I started with Facebook again. I am doing a free Ho'oponopono workshop and all those, and I invited people. And this is the landing page screenshot, which I've created on Flexi. So this is the Flexi, how I used it. And this is the most beautiful result which I've got. And I have 300 or 400 plus students. यहाँ पर आपको सिर्फ 300 दिख रहे हैं. We have more on WhatsApp group. And this particular picture I wanted to share with you, especially मैं आपको भेजना भी चाहती थी, but I could not. I'm not a very open kind of a person, so I thought let's use this opportunity. So this is Deep's sister's daughter. Ketki is his sister's name. And throughout her pregnancy, she was dealing with very complicated issues. And उनको अगर फिर से surgery करना पड़ता, she already had one surgery. अगर एक और surgery होती, तो she might have lost this baby child, which we are, seeing here. So throughout the 6 months of her pregnancy, we kept healing her. And while she was getting delivered, that time also the delivery was very complicated, and all the techniques that I was teaching, she applied. She asked her husband to apply, and this beautiful baby girl was born. It's no less than a miracle, and that is why she has sent this beautiful picture. Her name is Rahi. The girl's name is Rahi. So I wanted to share it with you. So that's it. So I want to take the screenshot of this. Thank you. तो लास्ट टाइम जब मेरा बेशु के साथ इंटरेक्शन हुआ था, सो बेशु की जो जिनके बारे में अभी ये बता रही थी ट्विंकल, सो वो इनकी मेंटी हैं बेशु की. एंड ट्विंकल वाज समबडी हु laughed, not even laughed, maybe smiled after 6 months. I mean, after 6 years. After 6 years. So sorry. Yes. I mean, she is Beshu's mentee, but that story is so much close to me because Beshu told us that she made a page on Flexi, and that's how she was able to reach to her. So indirectly, it gave me a lot of satisfaction in my heart that what the kind of work that we are doing, indirectly, directly, it is reaching out to so many people and creating that level of impact. And now this beautiful photograph, I mean, that's I mean, it just motivates. I don't have anything more to say, but it just motivates and makes you so happy. Thank you so much. It's all because of you, the systems that you have brought, and the
push that you give to all of us. And मुझे नहीं पता मैं आज आपको किस बारे में डांटू, so I don't even have the time today. So we will keep that for some time बाद later. में डांट लेना मुझे. So if you can see on the right hand side, we are getting automated enrollments today as well. So all this is now automated. So like last का अगर आप देखोगे रेशमा and Janvi, we have got these enrollments today itself. So now the students have started coming automatically. So that's the beauty of the system. I was very scared to run ads, even though I had Flexi. मुझे लगता है जब बीटा फेज में चल रहा था तो मैंने खुद से आके ले लिया था. Nobody forced me to buy Flexi. I was very interested, but I was not getting that confidence to run ads and automate the system. But once you gave that push, I started doing it, and here we are. So thank you so much, and lots of love to you and to everyone those who are part of Flexi Funnels to do great jobs that we all are doing. Thank you. And thank you so much to you. And yes, consistency beats everything. And a quick takeaway out of this is that you need to get out of your comfort zone. आपको नहीं समझ में आ रहा है Facebook ऐड कैसे चलाना है? The good news is जिसने आज तक नहीं चलाया है किसी को नहीं आता था. And the better news is that once you do it for the first time, you will become better at it. And when you keep doing it, you will keep becoming better at it. So the best thing that you can do to yourself at this particular moment is that just do it for the first time. And you will be here sitting and impacting people's life. Thank you, Beshu. Thank you. Bye bye. Right, thank you. Sumitra ji, you are here. If you can open your camera, if you can share your screen. Hello sir, good evening. Yes, we can hear you. Thank you so much sir, opportunity देने के लिए. और मैं screen share कर देती हूँ आपके साथ. Okay. So hello everyone, this is me Dr. Sumitra. सबसे पहले तो सौरभ सर थैंक यू सो मच. एक्चुअली फ्लेक्सी फनल में जब मैंने एनरोल किया था मेरी जर्नी एक नॉन टेकी पर्सन से शुरू हुई थी, बट अभी आज अगर मैं मेरी जर्नी देखती हूँ तो 700 मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि विद इन 8 मंथ के स्पैन में कभी ये होगा पॉसिबल. और पॉसिबल हुआ है तो सिर्फ फ्लेक्सी फनल के वजह से ही पॉसिबल हुआ है, क्योंकि सारी जो चीजें होती है वो सीखना बहुत जरूरी होता है. और मेरी जो जर्नी शुरू हुई है वो आपके कोर्सेस देख के मैंने लिया था. फ्लेक्सी फनल एज ए टूल लिया था कि करना है करके, बट जो जर्नी शुरू हुई वो आपकी 0 to 1 CR सीरीज देख के शुरू हुई. जो छोटी छोटी चीजें होती है ना कि कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए क्या चाहिए अगर ऑनलाइन बिजनेस करना है तो फिर वो कॉन्फिडेंस अगर मेरा बढ़ा है तो आपकी जो 0 to 1 CR सीरीज है वो देख के बढ़ा है. और वहां से फिर मैंने ऐड लगाने के बाद मेरा फर्स्ट वेबिनार हुआ. फर्स्ट वेबिनार में जो एक्साइटमेंट थी कि वेबिनार लेना है, सक्सेस तो वो मतलब लूंगी तभी पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आने वाला है. और लिया, लैंडिंग पेज रेडी किया था मैंने फ्लेक्सी फनल से मेरा फर्स्ट, और फिर बाद में वहां से लीड कलेक्ट करके हुआ मेरा फर्स्ट वेबिनार. आए थे 3 एनरोलमेंट हुए थे, जर्नी शुरू हुई, रिजल्ट्स क्रिएट होते चले गए. जैसे कि एज अ डॉक्टर हम लोग बोलते हैं ना, घर में सब लोग खुश थे कि डॉक्टर हूँ ऐसे वैसे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऑनलाइन वर्ल्ड में जो अभी ट्रेंडिंग में है वो सारी चीजें मुझे खुद को एक्सपीरियंस करनी थी. वो मतलब मेरे लिए वो मैटर कर रहा था कि अगर कुछ करना है तो जो अभी है वो मुझे करके देखना है. तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बट जब मैंने फ्लेक्सी फनल में एनरोल किया तब मुझे पता चला कि यार राइट डायरेक्शन है क्या. एक डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है. अगर आप आपका टाइम दे रहे हो, टाइम सबसे प्रीशियस है. फ्लेक्सी में अभी अगर मुझे एनरोल करना है 30,000 कुछ भी नहीं थे, अगर हम लोग देखने जाए तो 1 ईयर के लिए कुछ भी नहीं है, राइट. वो 2-3 हजार मेरे लिए मैटर नहीं कर रहे थे. बट अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो अपॉर्चुनिटी मैंने ग्रैब कर ली थी फ्लेक्सी से एनरोल करके, सर मैं बता नहीं पा रही हूँ कि पर मंथ 10 लाख रेवेन्यू मेरे लिए, मेरे फैमिली में कोई नहीं कर रहा है जो मैं कर रही हूँ, कोई नहीं कर रहा है. और किसी को मेरे ऊपर मतलब भरोसा नहीं था कि मैं ये करूंगी, क्योंकि होता है ना एक पर्टिकुलर टाइम भी देना पड़ता है. 15,000 से शुरुआत होते गई. एक वेबिनार लिया, पहले वीकली 1 हो रहा था, फिर 2 हो रहे थे, फिर धीरे धीरे आपकी कम्युनिटी, आपकी टीम, आपका सपोर्ट
जो कुछ होते जा रहा है मेरे लाइफ में, अनबिलीवेबल, अभी तक मैं खुद विश्वास नहीं कर रही हूँ ये जो सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि 15,000 से शुरुआत की थी तो जर्नी ऐसे हुई थी ना कि 15,000 इट्स ओके, चलो मतलब कनेक्ट तो कर रहे हैं हम लोगों से, अच्छा तो हो रहा है। धीरे धीरे करते करते वो 3 स्टूडेंट से लेके अभी ये 8 मंथ में जर्नी इतनी अच्छी हुई है कि बहुत सारे रिजल्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। 100 स्टूडेंट्स क्रिएट करना 7 महीने में, वो सिर्फ हुआ है। हम लोग कितना भी बोले ना सर, घर से सपोर्ट मिलता है, बट वो सपोर्ट जब हम लोग बोलते हैं ना, कुछ कुछ चीजें होती है, मुझे राइट डायरेक्शन चाहिए, मुझे गाइडेंस चाहिए, और वहां पे अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो मुझे करना है, तो हम लोग डीमोटिवेट होते जाते हैं, वो प्रोसेस को हम लोग छोड़। मेरी जर्नी मैंने शुरू तो की थी कि करना है करके सोच के, एनी हाउ प्रोसेस में थी, कर रही हूँ बट वो राइट डायरेक्शन मिलते चला गया कि प्रोडक्ट कैसे चाहिए आपके साथ। बहुत सारे मतलब वेबजीएस में मैं आई थी तो इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज मैंने वहां पे देखी, उनकी सक्सेस देखी। आज मेरा विजन क्या है, तो मेरा विजन यही है कि मेरे सामने ऐसे मेंटर्स, मुझे आज पता है कि मेरा कॉन्फिडेंस है ना 1 CR में अचीव कर लूंगी, वो सिर्फ 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 फ्लेक्सिफनल में एनरोल करने की वजह से ही हुआ है। मैं वो एनरोल नहीं करती, आज मैं होती ओपीडी जाना है, पेशेंट्स को देखना है, 60,000 1 लाख रुपीज, दैट्स इट, खत्म ऐसे। बट आज मेरे ड्रीम्स अलग है, आज मेरा विजन अलग है। और वो एक नहीं बोलते, हमारी जो सोचने का तरीका होता है ना, वो तो मेरा पूरा बदल गया। मतलब पहले मुझे था कि मेरी बेटी भी डॉक्टर बने, बट अभी मेरे माइंडसेट में पूरी मतलब चेंजेस हो गए। अभी मेरी बेटी को कुछ अच्छा देना है मुझे, तो उसकी स्किल क्या है, उसको क्या करना है, उसके ऊपर फोकस करना है मुझे। और बहुत सारी चीजें सर, एज ए नॉन टेकी पर्सन हमें नहीं पता होती है, तो हमें राइट मेंटर को चूज करना, एक राइट प्रोडक्ट को परचेज करना, एक राइट डायरेक्शन में जाना, वो सारी चीजें मैटर करती है। क्योंकि टाइम हम लोग देते हैं ना, वो टाइम प्रीशियस होता है। तो मेरा वही है, मैंने सही टाइम पे एकदम सही सॉफ्टवेयर को चूज किया, फ्लेक्सिबल है, और मुझे पता है I कि would मेरी लाइफ चेंज I हो would रही है। I would like to interrupt just a little bit over here, and that is सही टाइम कुछ भी नहीं होता है honestly. The सही टाइम टाइम actually वो नहीं वाला होता है, टाइम बट होता है ना जब आप स्टार्ट करते हो, you just start, because there is nothing like सही टाइम। क्यों सही टाइम के चक्कर में हम लोग ये सोचते रह जाएंगे कि सही टाइम चला गया, वो ऐसा कभी भी नहीं है। जस्ट स्टार्ट, आपने स्टार्ट करा, वो चीज इंपॉर्टेंट थी, एंड दैट इज द रीजन दैट बिकेम योर सही टाइम। सो या दैट्स इट। एक्चुअली सर, एक्चुअली थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली ना मैं टाइम का क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे सामने ना सर अपॉर्चुनिटी बहुत बार आते हैं, बहुत बार आते हैं, बट पता नहीं वो सारे अपॉर्चुनिटीज को ना सोचते वक्त लोग क्यों इतना सोचते रहते कि ये वो। मेरा वो था कि फ्लेक्सिफनल लॉन्च हुआ, लॉन्च के दौरान मैंने एनरोल कर लिया, 8 मंथ में ये जो मेरी लाइफ चेंज हो रही है ना, ये मेरी, मैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ सर, 15 साल से, वो अभी तक नहीं हुआ मतलब मेरे साथ जो मेरे 8 मंथ में हुआ है। और नई चीजों को सीखना, खुद को अपग्रेड करना, वो सारी चीजें मैंने आपके कम्युनिटी में एंट्री करने के बाद ही सारी चीजों को अडेप्ट करना सीखा है। कहीं ना कहीं मेरी भी एक अलग माइंडसेट थी, बट ये बहुत बहुत नेसेसरी है, जो अभी है उसको सीखना चाहिए, दैट्स इट। मैं वही कर रही हूँ, और मुझे पता है मेरा ड्रीम मतलब ऑलमोस्ट पूरा होते हुए मुझे नजर आ रहा है। अभी अगर मैं सोचूं कि क्या मैंने क्या किया है एक्स्ट्रा, तो फ्लेक्सिफनल की वजह से जो जर्नी शुरू हुई थी, 15,000 मैंने पर मंथ मेरी अर्निंग थी 15,000। तो अभी आज मेरे मई मंथ की अर्निंग क्या थी, तो ऑलमोस्ट 13.5 लाख, और 13.5 लाख बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। और जबकि मुझे पता है वहां पे मैंने 100% नहीं दिया है, अगर मैं 100% दूं तो और अच्छे रिजल्ट्स मैं क्रिएट कर पाऊंगी। और सर मुझे अभी भी याद है, जर्नी शुरू होने के लिए ना मेंटर सही होने बहुत जरूरी है। जो आप
गाइडेंस करते हो, जो आपके कोर्सेस है, सारी छोटी छोटी चीजें ना कि एड कैसे लगानी है, वेबिनार कैसे लेने हैं, प्रोडक्ट कैसे होना चाहिए, कॉपी राइटिंग कैसे करनी है, फनल कैसे रहने चाहिए, वो सब कुछ मेरे पास एक साथ आ गया, राइट। और 0 to 1 CR सीरीज जो मैंने देखी थी, अगर मैं बोलूँ मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हुआ, तो मुझे ना ऐसे चाहिए था कि एक साथ पता चल जाए कि करना क्या है मेरे को ऑनलाइन। थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ेगा एंड actually we have more people who are waiting. So I mean I can listen to you all day and so many people, but कुछ लोगों को हमने और बुला रखा है and they are waiting actually. So to summarize, अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो सुमित्रा जी ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज नॉन टेकी, लेकिन नॉन टेकी, a mother, a housewife, less time, but सबसे इम्पोर्टेंट चीज एन एक्शन टेकर. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इन्होंने अपना पेज बनाया, इन्होंने अपना एड चलाया, एड चला के इन्होंने एक वेबिनार लिया, वेबिनार पे लोगों को बुलाया और वेबिनार पे लोगों को बुला के जो इनकी ऑफरिंग थी उसके बारे में लोगों को बताया एंड ऑटोमेटिकली पीपल बिकेम अ पार्ट ऑफ इट. इनके पहले वेबिनार में 3 लोग पार्ट बने थे, मे बी किसी को नंबर कम लगे, लेकिन मैंने उनको, जब ये पहले इनके वेबिनार में 3 लोग पार्ट बने थे, मैंने इनको पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट करा था. एंड the reason for that is because if you know how to do it something once, you can just keep on multiplying it and automatically वही चीज हुई. 7 महीने पहले, 8 महीने पहले, it was 15,000 rupees in a webinar. Today it is 1 lakh plus in a webinar, every single webinar probably, and the journey has continued. So the most important thing is make an ad. Does not matter कितना खराब ad बन रहा है, just put it on the social media platform or just put the content out on your social media platform, and then you invite people maybe to book a call with you, maybe to do a direct communication with you, maybe if you are doing a webinar, just do a webinar for it, but then you start telling people about your services, about your offerings, and this is where it can lead you to. That's the whole message, right? Sumitra ji, do you have the so ये आपका प्रोडक्ट है, right? Can you go to the next image? Can you show the next image? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सिखाती हूँ मैं, और ये मेरे रिजल्ट्स है जो मैंने बहुत ही कम डाले हुए, बट बहुत सुबह उठते ही ऐसे मतलब मुझे मैसेजेस आते हैं, मैम आपकी वजह से ये प्रोडक्ट मेरा रेडी हुआ, ऐसे हम सेलिंग कर रहे हैं। और अगर कोई है घर में रह के, वो लोग भी अगर 30,000 50,000 अर्न कर रहे हैं, तो सर बहुत अच्छा लगता है. Amazing. And you are able to help so many people now. So that is the most important thing. Actually, thank you so much sir. आपके वजह से जर्नी शुरू हुई है, फ्लेक्सी के वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ा है और अभी बहुत कुछ अच्छा करके दिखाना है. 110%. And all the best to you and many congratulations to you. Thank you so Everyone, much. let's give a 111 to Sumitra ji in the chat box. And in the meantime, Rexy, are you there? Sumitra ji, thank you. Thank you so much sir. Thank you so much. Yeah, bye. Bye. Yeah, Rexy, are you there? Yeah. So can you hear me? Yes, I can hear you. Can you open your camera if possible? Yes. And by the way, we are interacting for the first time. Until now, everybody who had come, I have had at least one interaction with them before, but this is the first time that I'm getting a chance to interact with you. So many congratulations, by the way, for your results. Would love to hear from you. Thank you, sir. My name is Rexy Margaret. I am a cosmetics formulator and trainer, and I am from Hosur, Tamil Nadu. I am a big fan of you. I have been following you for a long time, but haven't interacted with you. So I have a training center in Hosur, that is near Bangalore, actually. And yeah, I run online courses in cosmetic science. I'm a cosmetics formulator, basically. I teach a lot of like skincare products. So I usually from 2015 onwards, I have started my business. Previously, I used to run offline workshops in Bangalore and Hosur. So after COVID, my business, I was forced to shut down my business because I was not able to keep my business running. People were afraid to come out of their house. So that time I moved online to continue my business. So I ran my business through FB ads and like Instagram ads. So that time I started my course for 999 rupees, my online course.
So I was not aware of webinars that time. It was just through ads, FB ads, and to just not video ads, just a picture which I created through Canva. So after that, till now, I think it is 4-5 years till now. I have created 2 courses. I have 2 courses in cosmetic science. I teach my basic course. I teach 50 types of products. I help them to create 50 types of products. My customers are mostly doctors, dermatologists, cosmetologists. And my advanced course, I teach them to create like 100 types of products. And doctors, they prescribe my products to the patients. Now my latest course, which was launched before 6 months, it is 9,999, and that also through Facebook and Instagram ads only I acquire my audience. And now after so many years, if I don't run my ads, also through reference I get many many students. And I have moved to FlexiFunnels the day it was launched. I was waiting for it. Before that, I used many platforms because I've been doing online from 2019, 20 and all. But it used to close like 30 days, 6 months, it gets closed. I know your product will be consistent. So after moving to FlexiFunnels, I'm getting more students, more enrollments, and my landing page is super fast. My course platform is also super fast. Everything I can do it in my mobile itself if I'm outside also. And now I am running in around the world. I get students through my latest student was a doctor from United States. So from everywhere, from cosmetologists and dermatologists, they join my course. So I have many reviews which I posted in my landing page, my Google page, everything. That is my main trust factor. And for my business, I have not done a webinar till now because since I have a institute, I have a multiple business, I'm not able to focus completely on online course. But in my online course, everything is automated. I do nothing. I just post 1 month of ad in one day and I get enrollments. I make like 5 to 6 lakh per month every year. That is past 5 years, 5 to 6 lakhs per month. I know if I move to webinar, it will double or triple, but I am working on it. I'm not getting a confidence. So I same Facebook ads, but I use one ad copy that is just which I created in Canva using the reviews. The same ad I run for years together because for me, in my experience, I believe because it has every single ad of mine will have thousands of comments and likes. I think because of that, it creates a trust and people enroll in my course. It is automated. I don't know how it happens. It is like automated. Tatu in FlexiFunnels, it is very easy to automate everything. So thank you so much for that. Thank you so much for keeping my business growing, and thank you so much for helping everyone for their business. Tatu, for women, it is very difficult to run a business. Your platform is really good. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you so much for sharing so much amazing knowledge over here and motivating a lot of people over here. And now it's my turn to motivate you. Just like, I had to do for Beshu some time ago when I interacted with her. And Okay. I see when we are interacted for the first time, it should lead to some, consequence after that, right? Okay. So ultimately, I cannot take that for an answer that I'm scared doing the webinars. So what your target this week, okay, this week, you don't have time for next week. You don't have time for next to next week, this week, this Saturday or this Sunday, you will be doing your very first webinar. Do I have your promise? Sir. Sure, sir. I will do that. I will do that. Thanks a lot. And then you will share the results in the Facebook group. I would look forward to do that and to see that. And please tag me over there. So, not this week, sir. Today I'm leaving to Maldives. Once I come back, immediately I will do that and I'll post the result in... So till when you are there? Till Tuesday, I'll be in Maldives. Till Tuesday, you will be in Maldives. And so till Tuesday, you will be in Maldives, 4 days. Are you consistently traveling in Maldives? Yes, sir. Inside the resort only, not anywhere else. I'll prepare for the webinar. Once I come back, immediately I will do that. And thank you so much. I need a date. I need a date. Because if we keep saying कि वो हो जाएगा, वो कभी भी नहीं होता है. We have to give it a date to make it happen. Friday I will do, sir. Surely I will.
Yes, sir. Yeah, done. So I will see you next Friday. Sure, sir. Thanks a lot for your motivation. Thank you. Most welcome. And I will wait for your webinar, okay? Sure, sir. Sure. Done. Done. Thank you. Thank you. Tapash, are you there? Yes, sir. Okay. So Tapash, बहुत handsome लग रहे हो आप. And if you can share your screen. मतलब आप हमेशा ही लगते हो, ऐसी बात नहीं है. सर ओके, अभी तक तो मैं शेयर कर पा रहा हूं. लेट मी शो यू. देख वहां पे शेयर होएगा. सेकंड सर, ये रहा, हो गया. Yes, sir. So, hello everyone. I am Tapash Raut and I am a professional cryptocurrency trader, and I help people to earn regular and passive income from cryptocurrency trading. And मुझे जो पहला इसमें से प्रॉफिट्स हुआ था वो हुआ था 8 अक्टूबर 2022. मैंने जो स्टार्ट किया था, मतलब कि वराइजन साइंस से आने के बाद वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड मिला, मिस्टर उमंग. उन्होंने मुझे वो जो है मेरा फेसबुक और इंस्टा का एड चलाए थे, और मुझे फर्स्ट टाइम 260 मतलब 5,000 रुपीज का मैंने क्लाइंट मतलब 5,000 रुपीज का मैंने एड चलाया था, जिसमें 267 मुझे वो मिला था, क्या बोल रहा है, लीड्स मिले थे, जिसमें आप देख सकते हो 93 लोग ही मेरे वेबिनार में आए थे. लेकिन वेबिनार से पहले ही मुझे एक सेल मिल चुका था, जो कि थे, मैंने इनको रिमाइंडर्स कॉल किया था. रिमाइंडर्स कॉल के बाद ही मुझे एक सेल मिल चुका था. मतलब मैंने उनको 1 बजे करीब कॉल किया था, और शाम को 7 बजे वो खुद ही मुझे कॉल करते हैं. कॉल करने के बाद बोलते हैं कि मुझे ट्रेडिंग सीखना है. तो वो उन्होंने मुझे मैसेज किया. फिर मैंने क्या किया, उनको जूम मीटिंग में ले लिया. पहले कॉल किया था, कॉल करने के बाद मैंने उनको जूम मीटिंग में ले लिया. तो क्योंकि मुझे खुद ही स्कैर्सिटी था कि अगर मुझे अगर ये नहीं मिलता है तो मेरे लिए चैलेंजेस हो जाएगा. फिर एट द एंड ऑफ द डे मैंने उनको 10,000 रुपीज में कन्वर्ट कर दिया. पहले मेरे कोर्स का प्राइस ओनली 5,000 रुपीज ही था, बट मैंने उनको 10,000 में कन्वर्ट किया 1-to-1 के लिए. और ये जो है, ये मेरा हाईएस्ट टिकट कस्टमर भी है, क्योंकि इन्होंने ही मेरे फर्स्ट मेंटी भी थे और मेरा हाईएस्ट कस्टमर भी थे. और अगर आप देखोगे मेरा लेटेस्ट कस्टमर सेल स्टोरी, तो ये है मिस्टर अविनाश, जो कि वन ऑफ माय टीम मेंबर है. इन्होंने आज फॉलो अप किया था और मेरा वन ऑफ कोर्स बेचा था 7,497 रुपीज का. और मैंने क्या डिफरेंट किया था, क्योंकि ट्रेडिंग तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी का, स्टॉक मार्केट का, पर मैंने बहुत ही ज्यादा डिफरेंट चीजें किया था. जैसे कि मैं वीक में जो है 3 अलग अलग टाइप का सेमिनार लेता हूँ. जैसे कि मंडे एंड थर्सडे को रात को 8 बजे मैं लाइव ट्रेडिंग क्लास लेता हूँ. आज रात को भी है, और क्योंकि 1 घंटा पहले मुझे रेडी होना पड़ता है. और सैटरडे को मैं Q&A सेक्शन भी लेता हूँ, जिससे कि लोग बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म्ड रहते हैं. और उसके बाद एवरी 15 डेज के अंदर मैं 5 आवर्स मैराथन ट्रेडिंग क्लास भी लेता हूँ. जो लोग अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट नहीं भी कर पाते हैं, मैं 5 आवर्स का मैराथन ट्रेडिंग क्लास भी लेता हूँ. मंडे एंड थर्सडे को 8 बजे रात को मैं लाइव ट्रेडिंग क्लास भी लेता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिफरेंशिएट है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे इंडस्ट्री में कोई कर रहा है. अगर आप भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप भी इसमें ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो. और लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा, remember consistency beats everything, so keep working hard. Yes sir. And it is not about अगर आप भी ट्रेडिंग कर रहे हो, what matters is कि आप क्या कर रहे हो. आप जो भी काम कर रहे हो, whatever Tapash has done and whatever all the members have done, if you will see, you will find some common patterns. And the most common pattern over there is कि भाई आपका जो भी मैसेज है, whatever it is that you have to sell to people, that you can help people with, you bring it in front of the people. That is the most important thing. Because if you bring it in front of people, automatically only then there is an opportunity that somebody can become a part of it. तपस ने कुछ नहीं करा, तपस ने एक फोन घुमाया एंड एक कॉल करके उस कस्टमर को क्रैक करा. अगर वो फोन कॉल नहीं जाएगा, वो सेल नहीं आएगी. That is what you need to do. Yes sir. Right? So yes Tapash. So one second. So basically our next participant will be over here in the next 1 minute, but before I am gonna invite him, okay, I will promote him as a panelist. He will be sharing his screen and whatever, but before that I want all of you who are attending this session right now, okay, I want all of you to drop a WhatsApp message to anybody जिसको कि आपको follow up करना है, and you have not dropped them a WhatsApp message for quite some time. You do it right now, okay? You do it right now. As soon as Tapash leaves, you drop them a WhatsApp follow-up message. जो भी आपके लोग हैं, जो भी आपके follow-up वाले स्टेज पे हैं, जो कि आपके कन्वर्ट होने की ब्रिंक पे हैं, या फिर आपका कॉन्वर्सेशन उनके साथ स्टार्ट हो चुका है, and they can get converted, you do it, and then we will continue with the session, and you give me a yes in the chat box that you are done with that.
Yes, Tapash, any last final message? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो फ्लेक्सी फनल था उसने मेरे को बहुत ही ज्यादा हेल्प किया था, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे पास सर मैंने EBW2 ज्वाइन किया था, उसमें आपने एक ऑफर भी दिया था। तो सर मेरे पास EBW2 के बाद पैसे ही खत्म हो गए थे सर। मैंने जैसे भी जुगाड़ बना के हम लोगों ने फ्लेक्सी फनल लिया था सर। और क्योंकि वो मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था सर। अगर फ्लेक्सी फनल नहीं होता तो सर मैं वापस अपना जर्नी स्टार्ट नहीं कर पाता, क्योंकि सर मैं स्टक हो जाता। और दूसरी बात ये भी था सर कि जब मैंने स्टार्ट किया तो सर खुद सब कुछ खुद ही करना पड़ा था। तो सर सभी लोग मतलब कि सभी लोग सही समय का वेट कर रहे मतलब करने लगते हैं सर, ऐसा नहीं होता है। मैंने रिमाइंडर्स कॉल भी किए, सेल्स कॉल भी किया है, सभी चीज सर मैंने किया है मतलब 9 अक्टूबर 2022 से। और सर विद इन 8 मंथ्स के अंदर मेरा रेवेन्यू जो है 52 लाख रुपीज का हो चुका है सर। और फनल ग्रोथ के बाद ही 40 लाख रुपीज का हुआ था। तो इसीलिए सर आपको बड़े बड़े इवेंट्स में भी जाना चाहिए। ऐसे ही बड़े बड़े इवेंट्स में मुझे उमंग मिला था, जो कि मेरा अभी सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है, सभी चीज वो मेरा हैंडल कर रहा है सर। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि सर आपको पहले खुद ही सब चीज करना पड़ता है, फिर तब आपको दूसरा चीज आपको मिलेगा सर। 100%, एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली। पहले तो आपको सभी सारी चीजें खुद करनी पड़ेगी, बाद में सारी चीजें आप धीरे धीरे करके डेलीगेट करोगे एंड आप बाकी लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे, राइट? जी सर। डन। जी सर। ठीक है। एंड बाय द वे, यू नो व्हाट, डॉक्टर सुमित्रा इज ओवर हियर, बेशु इज ओवर हियर, तपस इज ओवर हियर। आपको पता है इन तीनों का आज वेबिनार है, खुद का इनका सेल्स का वेबिनार है, बट दे हैव टेकन आउट टाइम बिफोर दैट एंड दे आर ओवर हियर जस्ट टू हेल्प ऑल ऑफ अस। लेट्स गिव अ 111 टू Tapash in the chat box and everybody who has taken out their precious time, just to help us over here. Thank you Tapash. ओके सर, थैंक यू। राइट। प्रभशरण, मैंने आपको पैनलिस्ट बनाया है एंड यू कैन ओपन योर कैमरा। एंड इन द मीन टाइम जो मैंने आप सबको टास्क दिया था, प्रभशरण, वी विल वेट फॉर 20 सेकेंड्स। अभी हमने सबको टास्क दिया है दैट दे नीड टू सेंड अ फॉलो अप मैसेज टू देयर प्रोस्पेक्ट, जो भी अभी उनके पाइपलाइन वाली स्टेज में है। गिव मी अ डन इन द चैट बॉक्स वंस यू आर डन विद दैट एंड डू इट। Just send a hi message, just send hey, what's the update? Just send a simple message that what do you think about this? Just send a simple message, for example, any update on this, whatever it is, whatever comes to your mind, but do it right now. So प्रभशरण, आप कहीं बाहर लग रहे हो मेरे को यार। यस, एक्चुअली मैं अंबाला से चंडीगढ़ अप डाउन कर रहा था डेली बेसिस पे, तो अभी टाइम हो गया था जाने का, तो काफी देर मैं सोचा ऑफिस में डिले करता हूँ, बट फिर मैं अभी बीच में था तो मैंने कहा यार पार्क करता हूँ गाड़ी और तसल्ली से थोड़ा सा फ्रेश व्यू आएगा व्यूअर्स के लिए भी, थोड़ा जो स्क्रीन पे घुसे रहते हैं सारा दिन। So अभी आप रोड पे, बेसिकली अभी आप रोड पे हो? हाँ, मैं साइड पार करके गाड़ी पे लैपटॉप रख के फोकस होके, बिकॉज लाइफ में वही है, जो काम करना है परफेक्टली करो, अदरवाइज मतलब मत घुसो उस चीजों में। But at the same time, I want everybody to notice the kind of commitment that he has, because he is here to share things with you that are going to help you. वो रोड पे है, रास्ते पे है, and he has stopped his bike, standing over there on the road so that he can share things with you. Wow. Yes, माय नेम इज प्रभशरण सिंह, और मेरे को जो फनल ग्रोथ समिट ने एक नाम दिया है डॉक्टर फनल का, जिसने मेरी लाइफ को काफी ज्यादा बूस्ट किया है। तो मेरे को ज्यादातर जो कम्युनिटी के लोग हैं डॉक्टर फनल के नाम से ही जानते हैं, और बेसिकली इसके पीछे रीजन क्या है कि इवेंट के आने से पहले मेरे को अवार्ड मिलना था वहाँ पे, एक बहुत ही अच्छा अवार्ड, मेरा लाइफ का पहला ही अवार्ड था। ना स्कूल में कभी कुछ मिला, ना लाइक कॉलेज में मिला, तो घर वाले भी कहते हैं कि चल जिंदगी में कहीं तो सफल हुआ, बट ऑब्वियसली जो मेरा पैशन था ना, जो मेरा स्किल था, वही अवार्ड मेरे को मिला, और जो मैं चाहता था, अदरवाइज मेरे को दूसरे अवार्ड चाहिए ही नहीं थे कभी भी। एनीवेज, तो मैं बेसिकली फनल बिल्ड करने लगा हूँ बिकॉज ऑफ फ्लेक्सी फनल, और पहले से जो मैं 10 सालों से कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था, और मैं ट्रेनर भी हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ। तो फनल बिल्डिंग और ये सब आपको अभी मैं बताता हूँ कि जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, जो मेरा पहला क्लाइंट था ना, मैं लाइक कॉलेज स्टार्ट करने से पहले की बात है, मैंने जस्ट एक फ्रेंड सर्कल के थ्रू मेरे को एक रेफरेंस मिला था कि एक वेबसाइट बनानी है। सो वो एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, तो मैंने 20 के चार्ज किया था, एक फॉर्म बनाना था और स्टूडेंट्स का डाटा सबमिट करना था, दैट्स इट, इतना बड़ा काम नहीं था। बट द थिंग इज दैट कि मैंने 20,000 कमाए उसमें, इट्स ओके, बट उस टाइम पे मेरे को ना वेबसाइट बनानी आती थी, ना मेरे को कोई स्किल था, ना एक्सपीरियंस था, कुछ नहीं था। द थिंग इज दैट मैंने अपने आप को, जो सर्कल था ना, उनको बस हवा बना रखा था कि भाई मैं वेबसाइट बनाता हूँ, मेरे को ये आता है, मैं IT कंपनी, ये वो, मतलब मैंने अपने आप को दिखाया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब मेरे सर्कल में किसी को रिक्वायरमेंट आई, तो उन्होंने मेरे को रेफरेंस दिया कि हाँ ये बंदा है जो वेबसाइट बनाता है,
तो वो रेफरेंस मेरे पास आया और मैंने वो वेबसाइट जब प्रोजेक्ट हायर कर लिया, मैं डरा नहीं कि मेरे को आता है नहीं आता, मैंने ऐसा था कि क्लाइंट आया आ जाएगा, देखी जाएगी क्या होगा, रिफंड कर दूंगा एट द एंड ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने उससे अमाउंट ले लिया और उसके बाद ना पूरा शहर घूमा मैं ऑलमोस्ट 1 हफ्ते तक कि भाई वेबसाइट किसी को आती है बनानी तो बना दो, मतलब मेरे को हेल्प करो। सारा 20,000 ले लो, मेरे को नहीं मैटर, बट मेरे को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए। सो द थिंग इज दैट मतलब वो पहला एक्सपीरियंस था ना मेरा, वो पहला दिन था और आज ये दिन, मतलब धड़ाधड़ दिन की मतलब 2 से 3 वेबसाइट रेगुलर बेसिस पे मैं डिलीवर कर रहा हूँ। मेरे को कोई अब वो नहीं है कि अब ऐसा कि वेबसाइट का नाम लेता हूँ तो आ जाओ, जिसने आना है जितना बड़ा मर्जी प्रोजेक्ट ले आओ, डजेंट मैटर। और अभी मैं लाइक 99% मेरे जो क्लाइंटेज है वो आउट ऑफ कंट्री ही है। इंडिया में हम लोग मतलब बिल्कुल डील नहीं कर ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरेंस नहीं रह पाती है उस वजह से। सो यहाँ पे जो लेसन था मेरा वही था कि आपको ना मतलब अपने लाइफ का जो मिसिंग पीस है ना उसको उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा और उस पर फोकस करना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पे क्या हुआ था कि ये प्रोजेक्ट मैंने ले तो लिया, सब कुछ हो गया, और मेरे को यहाँ से एक चीज सीखने को क्या मिली थी कि मेरा कौन सा स्किल है जिसकी वजह से मैं ये चीज को और बेटर कर सकता हूँ कि मेरे को दूसरों पे डिपेंड ना होना पड़े। एंड आफ्टर दैट प्रोडक्ट मैंने प्रोजेक्ट के बाद मैंने एक वेब डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन किया और अपने स्किल को बेटर किया, और उसके बाद मैंने उसको एज अपना मतलब एक स्किल सेट मतलब लाइफ लॉन्ग अपने आप को उसके साथ जोड़ लिया। सो ये एक चीज है। और मेरा जो हाईएस्ट अगर मैं बात करूँ ना तो क्लाइंट क्या था, वो बेसिकली इसी बेसिस पे ही कुरुक्षेत्र में एक वो होता है गीता महोत्सव होता है, जिस दिन गीता जयंती होती है ना तो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे उसको सेलिब्रेट करते हैं। सो कुरुक्षेत्र इज द प्लेस जहाँ पे वो ओरिजिन था सारा, तो उसका डिजिटल मार्केटिंग का पूरा टेंडर मेरे पास था। तो उसमें मेरे को लाइक महीने का 15 लाख रुपया मिला था, जिसके अंदर मेरे को पूरा उनके कैंपेन्स मैनेज करने थे, डिजिटल इन्विटेशन, सारा जितना भी डिजिटल मीडियम था वो सारा मेरा था। और उसके अंदर लाइक इतना कुछ सीखने को मिला ना, वो जो प्रेशर गवर्नमेंट का होता है ना वो लीगल ये सब, मतलब उसने जो डीसी थी उस एरिया के, उन्होंने मेरे को बोला कि तितुर को हीरा बना के निकालना है। लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इनविटेशन मैंने डिजाइन करके भेजा था, वो मेरी अचीवमेंट थी। और वो पूरा मिस वर्ल्ड मानिशी चिल्लर थे, उनका जो लाइव इंटरव्यू सेशन अरेंज कराना था वो सारा मेरा कंट्रोल था। सो इतना खतरनाक लेवल का वो काम था ना, बट ओब्वियसली उसने बहुत कुछ सिखाया। और अगर मैं अभी करंटली बात करूँ ना तो ये मैं मेरी पार्टी कहाँ है? तू मेरे को अवार्ड के बाद पार्टी देने वाला था, अभी ये सारी चीजें हो गई, मेरे को बताया भी नहीं है, ना कुछ आया। सोन पापड़ी भिजवा दे, मैं आगे भिजवा दूंगा, कम से कम आएगा तो सही। नहीं मैं डेफिनेटली, मैंने एक्चुअली वहां आना था थाईलैंड वाले अपने प्रोग्राम में, बट वो एक लीगल केस आ गया तो मेरे को इंडिया से बाहर अलाउड नहीं किया कोर्ट ने। तो वो भी मतलब वो बेसिकली ना इस क्लाइंट की वजह से हुआ। एक छोटा सा मैं एक और सबके साथ कि आप लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई है, मेक श्योर डिजिटल कोई भी काम कर रहे हो ना तो अपनी जो क्लाइंट्स है ना उनको वेरीफाई जरूर करो, क्योंकि डिजिटल मोड में आपके पास काफी सारे फ्रॉड क्लाइंट्स भी आएंगे जो आपके बैंक अकाउंट्स, आप कार्ड बाय करते हो, डोमेन्स ये सब, तो आप यूज करते हो अपना नाम, और वो फ्रॉड अगर वो करता है तो आप वहाँ पे साइबर क्राइम में पकड़े जाओगे, जो मैं पकड़ा गया हूँ। तो मैं अभी लाइक पटियाला उसमें मेरा केस चल रहा है और लाइक हर 6 महीने बाद हेयरिंग होती है, तो इसलिए मैं अपने हर बंदों को यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि बी अलर्ट, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग में हमें क्या होता है, प्रोजेक्ट चाहिए बस पैसा दे दो हम कुछ भी कर देंगे, तो वो थोड़ा फिल्टर आउट जरूर करो। अब करंटली मैं क्या कर रहा हूँ, जो चीज के लिए मैं वेट कर रहा था, मैं यही चीज शेयर करना चाह रहा था, सबसे मेजर चीज कि अभी ना मैं बिजनेस कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो मैंने रिसेंटली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने लास्ट मंथ सब कुछ बंद करके मैंने सारे काम बंद करके फेसबुक एड्स पे फोकस किया, बिकॉज ये मेरा एक पार्ट था जो मेरा वीक हो रहा था थोड़ा सा, और खुद के पर्सनल बजट इतने ज्यादा मैं एक्सपेंड नहीं कर पा रहा था, उसकी वजह से मेरे एक्सपेरिमेंट एक लिमिटेशन में थे। तो मैंने अभी क्या किया, इमिग्रेशन के क्लाइंट्स है मेरे पास, तो मैंने उनको क्या कर रहा हूँ, लाइक अभी ऑलमोस्ट मंथली 10 लाख का बजट मैं उनका हैंडल कर रहा हूँ मंथली बेसिस पे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा बजट है, जिसके अंदर मैं अनलिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ। तो मेरे को टाइमलाइन डोमिनेशन में मैंने फेसबुक का कोर्स किया था जब, तो वहाँ पे सौरभ आपकी एक बात जो मेरे को वहाँ समझ आई और आज तक मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और कि जो फेसबुक एड्स है ना वो सिर्फ एक कैंपेन क्रिएट करने की नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट्स की है। यू सेट कि आप जो एड सेट्स हैं वो सिटीज के अलग बनाओ, एज के अलग बनाओ, हर एक फैक्टर को जितना ज्यादा फैक्टराइज करके ब्रेक डाउन करोगे आपका कैंपेन उतना सक्सेस जाएगा। और प्रैक्टिकली मतलब मैं एक ऐड के हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन, पंजाबी वर्जन, लाइक हर एक चीज, मतलब एक डायरी पेन लेके पहले उसको स्क्रिप्ट करता हूँ, एक हायरार्की बनाता हूँ कि कितने फैक्टराइज होंगे, एंड देन वो कैंपेन रन करता हूँ। और सीरियसली मानोगे नहीं, हम लोग इमिग्रेशन को डेली की 1000 to 1500 लीड्स दे रहे हैं जो अब्रॉड जाना चाहते हैं लोग। सो उस लेवल पे काम ना, अपना कॉन्फिडेंट अब ऐसा है कि यार दे दो ऐड, जो चलानी है बोलो, मैं बैठा हूँ, मतलब वो कॉन्फिडेंट लेवल सोचो आप, बिकॉज आई नो द स्ट्रेटेजी जो मेरे मेंटर ने शेयर की। out of 1000-1500 per month की leads, they would at least would be making 1 CR से 2 CR minimum per month.
एक ही क्लाइंट 3 कंपनियां खोल के बैठा हुआ है बिकॉज वो एक फेज से इतना पैसा नहीं कर सकता वो. So Right. that's Again, that's the power of taking action, right? All the things are right in front of you. I'm talking to everybody. All the things are right in front of you. The learnings are right in front of you. TD के अंदर, Flexi के अंदर हमने सारे courses डाले हैं, lessons डाले हैं. Just go ahead and implement it. That's it. I mean, it's super there. एक्चुअली पता है क्या स्टूडेंट्स सोचते हैं कि आप शायद टीडी में ना मतलब वो हाथ पकड़ के सिखाओगे कि इस पे क्लिक करो उस पे क्लिक करो. मैं सबको ये कहना चाहता हूँ आप स्ट्रेटजीज के ऊपर फोकस करो कि सौरभ आपको बताना क्या चाह रहे हैं कि आप वो लॉजिकली उस कॉन्सेप्ट को समझो कि उस टूल को यूज कैसे करना है. क्योंकि आप अगर लॉजिक समझ गए ना तो आप चाहे फेसबुक ऐड है, गूगल ऐड है, टिकटॉक है, लिंक्डइन है, कोई भी ऐड है, आप उस चीज में मास्टर कर जाओगे. अगर आप सिर्फ फेसबुक पे स्टिक लोगे कि नहीं सौरभ ने बोला था नेक्स्ट पेज यहाँ क्लिक करना है अब यहाँ करना है तो आप सिर्फ वो फेसबुक तक लिमिटेड रहोगे. सो फोकस ऑन स्ट्रेटजीज नॉट ऑन द लाइक कॉपी पेस्ट थिंग. सो ये फोकस और उसी की वजह से अब क्या है कि मैं गूगल एड्स उसके ऊपर भी लाइक मास्टर हो रहा हूँ. और अगर आपको लीड जनरेट करना आ गया तो लाइफ में लाइक एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो दैट्स अ थिंग आई गॉट फ्रॉम यू लाइक. सो एक छोटी सी स्टोरी, छोटी सी बिल्कुल, मतलब ये वेबिनार के ऊपर है. मैंने स्टार्टिंग में जो एकदम इनिशियल स्टेज पे आपसे लर्निंग लेके एक वेबिनार स्टार्ट किया था तो उसपे क्या हुआ था कि वही मैंने पहले भी बताया था कि वेबिनार मैंने स्टार्ट कर दिया. उसमें लाइक 100-150 स्टूडेंट्स आ गए. उसमें से 30 स्टूडेंट्स लाइक कन्वर्ट हुए थे मेरे. नहीं 30 नहीं 15 हुए थे. और उसके पीछे रीजन क्या, मैं वेबिनार दिया पूरा का पूरा और मैंने बोला कि ठीक है मेरा ये पीछे. तो वो ना स्टार्टिंग में ही कमेंट आने लगा भाई तूने बेचना क्या है वो बोल कि मुद्दे पे आ इतना मत घुमा. कॉमन सी बात है. सो आई वाज लाइक पहला यार मेरा पहला वेबिनार है और उसी में इतना बड़ा चैलेंज आ गया, मैं क्या करूं. कि मैंने ना बिना सोचे बोल दिया नहीं भाई बेचना कुछ नहीं है, आई एम प्रोवाइडिंग अ नॉलेज सो आई विल कमिट दैट थिंग. सो मैंने ऐसे करके उसको फिर एंड में ड्यूरिंग द वेबिनार अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और ये प्लान आउट किया कि अब इसको सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं. देन आई गिव कि मैं ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ज्वाइनिंग नहीं है. जो सीरियस नोट पे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मैं फ्री ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन करो. जैसे ही वो इंटरेस्टेड पार्टी सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए उसके बाद मैंने उनको ना कुछ नहीं बोला, पढ़ाना शुरू कर दिया. लाइक क्योंकि फेल तो मैं हो ही चुका था, उसमें कुछ भी नहीं बचा था कि अब मैं उनको ये बोला कि ज्वाइन करो. और 10 दिन तक मैंने उनको कोई पैसे की बात नहीं की, कोई कमिटमेंट्स नहीं, बस अपनी वैल्यू देनी शुरू कर दी. तो उनको बोला कि अब जो लोग सीरियस हैं और मेरा मास्टर कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं, इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, दे कैन पे मी. सो वहां पे उनको लिंक सेंड कर दिया और लाइक आफ्टर 10 days लाइक 15 स्टूडेंट कन्वर्ट हुए और 10,000 समथिंग फीस थी तो 1.5 लाख रुपया लाइक इन शॉर्ट मेरे पास आया. मतलब एक हाथ से निकला हुआ वेबिनार कैसे कन्वर्ट हुआ वो मेरा एक सीक्रेट फॉर्मूला बना. और आज के टाइम पे लाइक रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम पे रील डालता हूँ, उस पर ऐड चलाता हूँ, उसमें फ्री ग्रुप ज्वाइन करवाता हूँ. 150-200 लोग ज्वाइन होते हैं, 500-700 रुपये लगता है और उन 150-200 लोगों को एक हफ्ते की फ्री ट्रेनिंग में लेके आके उनको कन्वर्ट करा देता हूँ. मतलब ये मैंने अपना एक ट्रिक फॉर्मूला बना लिया है कि ऐसे ज्यादा इजी काम कर रहा है तो कन्वर्जन भी अच्छे आते हैं और क्वालिटी आती है. दिस इज हाउ आई एम वर्किंग राइट नाउ. सो ये मैं चाहता था. और एक लास्ट चीज, व्हाट यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ ऑल इन रिटर्न यू विल गेट द सेम. मतलब कि अगर आप अपने आप को ये दिखाओगे ना भाई मैं सीख रहा हूँ, भाई मैं अभी निकम्मा हूँ, मतलब मैं घर बैठा हूँ वेला हूँ, बता क्या करूँ, तो दुनिया आपको वही समझेगी. सो अपने आप को प्रेजेंट करो. जो सौरभ ने शायद आपने अभी स्टार्टिंग में ही इनको बोल दिया था कि व्हाट्सएप पे मैसेज डालो कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिकॉज जो आप दिखाओगे दुनिया वही आपको देखेगी ना. सो आप ये निठल्ले दिखाना बंद करो अपने आप को और दिखाओ भाई आई एम अ प्रोफेशनल गूगल एड डेवलपर या समथिंग, वेबसाइट डेवलपर, फनल बिल्डर. तो दुनिया ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में जाएगा, वो आपको रीच आउट करेंगे. और अभी कितनों को मैसेज आ भी चुके हैं लाइव. तो ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है. Right. लेकिन इसमें आई वांट टू ऐड समथिंग एंड दैट इज बाय द वे आई लव दिस ट्रॉफी जो आपको मिली थी. सो नेक्स्ट टाइम यू आर गेटिंग अ बिगर ट्रॉफी राइट? डेफिनेटली. अभी आपको कौन सा वाला अवार्ड मिला था? 10 लाख रुपीस वाला? अभी 10 वाला था, लेकिन मेरी अर्निंग्स तो मतलब ऑलमोस्ट 17 के करीब थी उस टाइम पे. तो अब तो लेवल कहीं और जा चुका है. अब तो 10 लाख अगर हम एड स्पेंड पे से खर्च कर रहे हैं तो बाकी तो ठीक है. चलो फिर नेक्स्ट अवार्ड के टाइम पे बात करते हैं. So, लेकिन one more thing that I would like to add over here is that Prabsharan ने see he used his mind and Prabsharan ने लोगों को अपने WhatsApp ग्रुप में बना लिया and then that started working for him and that is still working for him. So you can definitely try that and you do it. लेकिन at the same time आनंद से एक new experiment का option मिल गया. Yes, absolutely. That's the whole agenda. That's the whole point of this session that we are doing, right? So, see, Prabsharan, you have already impacted the life of at least one person. मैं इसीलिए वेट कर रहा था. Wait. But I want to continue. But the thing over here is that, अगर आप वेबिनार पे हो
एंड अगर उस वेबिनार पे आपको सेल करना है, सी इट इज वेरी मच नेचुरल फॉर ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, ओके, इंक्लूडिंग मी स्पेशली इन द अर्ली डेज, कि यार आई बिकम हेजिटेंट टू सेल समथिंग, क्योंकि वो शुरू से आदत नहीं है, शुरू से बचपन से सिखाया नहीं गया है, पता नहीं है लोगों को। ये वाली चीज भी लगती है कि यार सामने वाले बंदे को कैसा लगेगा, एंड स्पेशली व्हेन आई एम इन अ वेबिनार आई देयर इज आल्सो सम सॉर्ट ऑफ गिल्ट फैक्टर कि यार मैंने यहाँ पे इनको बुलाया, टाइम के लिए बुलाया, एंड देन इफ आई सेल देम समथिंग, क्या मैं इनका एम आई यूजिंग देम, समथिंग लाइक दैट, दिमाग उस डायरेक्शन में भी जाता है। बट देन आई नीड टू रिमेंबर वन मोर थिंग, एंड दैट इज कि यार मैं 1 घंटे के वेबिनार में, 1.5 घंटे के वेबिनार में उन्हें वो सब कुछ नहीं सिखा सकता हूं जो कि मैं उन्हें तब सिखा सकता हूं जब वो मेरे प्रोग्राम, मेरे ऑफरिंग का पार्ट बनेंगे। मैं उनको उस लेवल के रिजल्ट्स लाके नहीं दे सकता हूं, द वेरी बेसिक रीजन व्हाई आई स्टार्टेड डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, जब तक वो मेरी ऑफरिंग का पार्ट ही नहीं बनेंगे। सो इट इज not just important for me, it is also important for them that I sell them something. And if you are not comfortable in selling something at that particular moment, then tell that. अपनी ऑडियंस को बताओ that you know what, right now I'm hell scared that that I'm just going to offer to you something, and I'm not very comfortable in selling something. But you know what, even if I'm very scared right now, I can tell you that what I am going to tell you about that, about something, what I'm about to tell you is something which is way too important, way too good, way too exceptional. And if you will just pay attention to it, that is something that can change your life. So please bear with me, as I am not going to be very confident, but I'm very confident about my service, and that's the only reason that I'm telling you today about that. And now your audience will automatically be on your side कि हाँ यार ठीक है, मतलब बंदा genuine है, and that person is open enough. So then you can start selling. That's it. All right. Thank you so much. All right. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. By the way, एक रवि का मैसेज आया. Awesome. So रवि का मैसेज आया. I just got a query by taking action as soon as you told me to put status. Query was for boutique. They want to automate their offline business. Awesome. Now pitch them for at least 6 figures and close them for 6 figures. Great. So next is Tanu Kumari. Tanu, can you please open your camera and share your screen? Yes, sir. Hi Tanu, how are you? Hello, Sam. Good. What about you, sir? I'm really good. Thank you. And thank you so much, sir, for inviting me to share my story, because it's totally different. And now I'm going to share my screen. Thank you so much for joining over here. So now it's visible? Yes. Okay. So basically, my name is Tanu Kumari and I'm a Facebook ads expert. और मैं जो भी कोचेस से हैं उनके बिजनेस को ग्रोथ के लिए वर्क करती हूँ। यहाँ पे जो सबसे बड़ा रीजन था कि मैं अभी बीटेक फाइनल स्टूडेंट हूँ और मेरा बीटेक जस्ट नेक्स्ट मंथ कंप्लीट होने वाला है। और मैंने जो फ्लेक्सी फनल लिया था, जब FDA सबमिट होने वाला था उस टाइम में जो टिकट ले रहे थे, उस टाइम वहाँ पे फ्लेक्सी फनल्स हमें एज ए 3 to 4 months यूज करने के लिए मिल रहे थे। और उसके इनसाइड जो भी कोर्सेज थे टाइम एंड डोमिनेशंस के, तो वो यूज करने के लिए मिल रहे थे। वहां पे क्या हुआ कि जब मैंने टिकट बाय किया और उसके बाद से मैंने जब जो भी कोर्सेज थे, क्लाइंट गेटिंग वर्कशॉप, एड से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज थे, वो सारे मैंने देखना स्टार्ट किया। और जब मैं वहां पे देख रही थी, क्योंकि मैं एक कोडिंग बैकग्राउंड से, तो वहां पे मुझे सारी चीजें मतलब सारी कुछ चेंज हो गई। क्योंकि हम कोडिंग में जब किसी वेबसाइट को या फिर लैंडिंग पेजेस बनाते हैं, काफी एफर्ट लगता है, काफी टाइम लगता है हमें, मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने पड़ते हैं, लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और फ्रंट एंड के लिए अलग लैंग्वेज सीखना पड़ता है। अगर हम सिंपल एक फॉर्म क्रिएट करते हैं उसके लिए हमें एक अलग लैंग्वेज सीखना पड़ता है। तो वो एक काफी ज्यादा टाइम एफर्ट टेकिंग था और ज्यादा चीजें भी ले रही थी हमारी। जब फ्लेक्सी फनल मैंने यूज करना शुरू किया तो वहां पे मुझे काफी चीजें आसान है, क्योंकि वहां पे सिंपली हम यूज और ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात थी कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी था, जो कि कोडिंग से काफी टाइम लगता है और काफी चीजें फिक्स करनी पड़ती है। देन आफ्टर वहां से जो भी फेसबुक एड से रिलेटेड कोर्सेज थे वो मैंने देखना स्टार्ट किया। वहां पे आपने सर ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि मल्टीपल टेस्टिंग कैसे, मल्टीपल एड सेट्स हम बना सकते हैं, डिफरेंट टेस्टिंग कैसे होती है, तो वो काफी सारी हेल्प की मुझे। यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करना चाहूंगी कि कैसे मुझे जो क्लाइंट्स मिले वो मेरे रोडमैप क्या थे। तो सबसे पहले जो मैंने फोकस किया वो लर्निंग पे फोकस किया, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था उस टाइम में। और जब मैंने फ्लेक्सी लिया उस टाइम में जो कोर्सेज थे उसी से सीख के मैंने सब कुछ किया।
जब मेरी लर्निंग कंप्लीट हो गई, साथ साथ मैं इम्प्लीमेंटेशन कर रही थी, और जो कुछ भी मैं सीख रही थी मैं अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे अप टू डेट कर रही थी, क्योंकि जो क्लाइंट गेटिंग वर्कशॉप था वहाँ पे सौरभ सर ने बताया था कि जो कुछ भी आप सीख रहे हो ना, वो चीज आप अपडेट करो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, तो वो काफी एक हेल्पफुल रहता है, और लोग अवेयर होते हैं कि आप क्या चीजें कर रहे हो, उनको ऐसा लगता है कि नाउ यू आर द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। उसके बाद से जब मैंने लर्निंग करी, अब सेकंड जो थिंग्स थी कि एग्जीबिशंस ऑफ योर स्किल्स, तो मैंने उस टाइम क्या किया कि जब मैंने ऐड सीख लिया तो मैंने अपने खुद के लिए ऐड बस टेस्टिंग के लिए कि कैसे वर्क करता है, कैसे सब चीज होती है, वो मैंने शुरू कर दिया, ऐड अपने लिए रन किया। तो वहां पे मुझे सीपीसी सब कुछ बहुत कॉस्ट लो जा रहे थे और अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे। तो वो जो भी स्क्रीनशॉट है वो मैंने अपने सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम पे वो मैंने अपलोड करना शुरू किया, और वो मैं वहां पे बोलती थी कि ये मेरे क्लाइंट्स है जिसके लिए मैंने ये रिजल्ट जनरेट किए हैं। तो वहां से मुझे बहुत सारे क्वेरी आने लगे कि आपने ये कैसे किया, मुझे भी अपने बिजनेसेस के लिए ये सारी चीजें करवानी है। थर्ड थिंग था कि रिलेशन बिल्डिंग, जितने भी फ्लेक्सी के जो एसपीडी और कम्युनिटी है वहां पे मैं एड ऑन हुई, वहां पे जितने भी मेंबर्स थे उनसे मैक्सिमम मैंने सोचा कि 1-to-1 कनेक्शन करो विद हेल्प ऑफ मैसेंजर, फेसबुक और व्हाट्सएप। वहां पे मैंने रिलेशन बिल्डअप करना शुरू किया, और वहां से मुझे फ्लेक्सी ग्रुप से 5 to 6 क्लाइंट्स मुझे वहीं से मिल गए। अब मैं बात करती हूँ कि क्या क्या जो मिस्टेक्स है जो मैंने अवॉइड किए। जो भी रैंडम मैसेज थे वो मैं नहीं सेंड करती थी। मैंने जस्ट जैसे अभी सर ने एक मैसेज दिया था कि आप एक कम्युनिटी में पोस्ट करो, वो करने के बाद जो भी इंटरेस्टेड थे उसके बाद से मैं उनके प्रोफाइल पे विजिट करती थी, फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे जो कुछ भी उनका पेन पॉइंट लगता था उनके बिजनेस से रिलेटेड, वो सारी चीजें मैं उनको एज अ टिप्स उनको शेयर करती थी। जब उन्हें वो सारी चीजें लगता था कि नहीं ये हमारे बिजनेसेस के लिए काफी इनको नॉलेज भी है, तो वो फिर मुझे फॉलो बैक करते थे और मुझसे कॉल करते थे। बट एक जो चीज थी कि सेल्फ डाउट की लाइक क्या मैं किसी को ज्यादा अमाउंट चार्ज कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे बोलूंगी कि आप मुझे इतना पैसा पे करो। तो वो एक काफी ज्यादा मतलब हाई थिंक थी कि मैं इतना कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। और दूसरा चीज ये भी माइंड में था कि एक बीटेक करने के बाद ऑलरेडी मैंने 8 से 9 लाख रुपए स्पेंड कर दिया, ऑलरेडी मेरा कंप्लीट हुआ भी नहीं था, और मैं मलेशियन कंपनी के साथ इंटर्नशिप कर भी रही थी, तो वो मैंने छोड़ दिया था। तो फिर घर वालों का भी प्रेशर बढ़ गया कि नहीं आप मतलब तुम क्यों छोड़ी हो, इतना ज्यादा पैसा तो मिल ही रहा था, फिर इसमें क्या जरूरत थी, डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों करना है तुम्हें, बीटेक एक अच्छा पोजीशन है यहाँ से तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकती हो, तो क्यों मतलब कर रही हो। तो वहां से मुझे मतलब सेल्फ डाउट भी हो रहे थे कि करूंगी कि नहीं करूंगी। लेकिन डेली जो हम पोस्ट देखते थे ना फ्लेक्सी ग्रुप में, तो वहां से काफी मोटिवेशन मिलता था कि नहीं मतलब अगर सब कोई कर सकता है तो मैं तो कर ही सकती हूँ। तो जो भी चीजें थी और जो भी सर ने रोड मैप वगैरह बनाया वो सारी चीजें मैं फॉलो करती थी। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो कुछ भी आप करो, चाहे आप कुछ सीख रहे हो, चाहे आपको कुछ भी अगर लैंडिंग पेज डिजाइन कर रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, ग्राफिक्स डिजाइनर हो, कॉपी राइटिंग हो, कुछ भी आप करो, आप सोशल मीडिया पे अपलोड करो, वहां से आपको बहुत सारे क्वेरी मिलता है। और जितने भी मुझे क्लाइंट्स मिले सारे वहीं से मिले हैं। और मेरे जो फर्स्ट क्लाइंट थे वो आंसर थे, इनसे ही मैंने एक्चुअली स्पोकन क्लासेस सीखा था। बट उन्होंने बहुत सारे जो भी डिजिटल मार्केटर के साथ उन्होंने वर्क भी करा था। वहां पे मैं थोड़ा सा नर्वस थी कि मैं चार्ज करूँ कि नहीं करूँ, बट अल्टीमेटली मैंने वहां पे उनको सेटअप के लिए चार्ज किया 60K, और एड सर्विसेज के लिए 30K पर मंथ मैंने चार्ज किया। एंड देन माय रीसेंट स्टोरी, जब मैंने वो रिजल्ट फ्लेक्सी वाले ग्रुप में अपलोड किया, तो वहां से ये पद्मला मैम है, उन्होंने मुझे क्या कि मैम मैं भी चाहती हूँ कि आपके थ्रू जो भी रिजल्ट जनरेट किया है वो आप मेरे बिजनेसेस के लिए भी वर्क करें। तो ये चीजें क्या होती है, मैं इसलिए ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी आप छोटी छोटी जो चीज अचीव करते हैं ना, वो जब चीज आप शेयर करते हैं तो लोग वहां से अवेयर होते हैं, और फिर वहां से आज आपको एक्सपर्ट ट्रीट करने लगते हैं, फिर आपके पास ऑटोमेटिक क्लाइंट्स आने लगते हैं। फिर सेकंड जो मेरे क्लाइंट से रिसेंट में ही मैंने क्लोज किया था स्टॉक मार्केट का, उनका कंप्लीट सेटअप का मेरा 2 लाख था। एक्चुअली उनके साथ जब मैं सीख रही थी तभी मैंने उनको अप्रोच किया था, वो सामने से मुझे मैसेज किए थे जब मैंने तो फेसबुक पे अपलोड किया था। तो उस टाइम उन्होंने नहीं लिया, वो बोल रहे थे कि नहीं मतलब अभी पैसे का इशू है, फिर जो भी था। बट मेरा क्या था कि जैसे मैंने बताया था कि फॉलो बैक हमेशा करते रहना चाहिए। तो मैं जब भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड था तो उनसे रिलेटेड कुछ टिप्स मैं शेयर कर देती थी कि कैसे स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेनर है वो ऑलरेडी ग्रो करे। जब किसी और स्टॉक मार्केट ट्रेनर का एड रन होता था तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके उनको
सेंड कर देती थी कि ये लोग ग्रो कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आप एक चांस दीजिए। और फाइनली मेरा ये डील भी क्लोज हो गया। तो मैंने 3 मंथ्स में अभी तक मैंने 5 लाख प्लस रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। तो thank you so much for thank you so much sir, because the one thing that was in my mind that 1% daily upgradation is the key to success. I'm so happy to interact with you today, and so many learnings, so many amazing learnings you have shared with people today. How many of you loved her session, by the way? Give me a yes in the chat box. So basically, see, if you will remember, if you will notice, it is the basics that we need to keep doing over and over and over and over again. Basically, what she is doing is, सबसे पहले she started posting inside the Facebook group. वहां से people started taking notice. And then the most important thing, she was honest with her work. She started helping her clients. She started helping her clients getting good results. They got good results. She shared the good results within the group, within the community, within her social media. More people took notice of that, and ultimately that helped her, get more clients. And one more thing, which is very, very important, is that she started see, I don't care. जब आप अपनी journey start कर रहे हो ना, आप अपनी journey start करते time, let's suppose when she started, she said that she started selling at a very low price, right? True. So it is 100% okay. आपको पता है, the only person, the number one person who undervalues you is you yourself. And it happens to every one of us. It's not just Tanu. It's you who is listening to this video right now, and it is me also. आपको पता है, जब मैंने अपना पहली बार एक प्रोडक्ट बनाया था, एक इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट बनाया था, जिसमें लोगों को सिखाता था कि आप फेसबुक पेज पे लाइक्स कैसे लेके आओगे, I wanted to sell it, but I was so underconfident. तो मैंने क्या करा, मैंने वहां पे 2 ऑप्शन डाले कि आप इसे डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, अगर आप खुद साइन अप करो और 3 लोगों को और साइन अप करवाओ तो आपको फ्री में मिल जाएगा। और वहीं पे ही साइड में मैंने एक और ऑप्शन डाला, दैट यू कैन परचेज इट फॉर 1199 रुपीज। 1200 रुपए भी नहीं, 1200 रुपए भी मेरे दिमाग में ऐसा था बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1199। मैंने इतने रुपए में वहां पे डाला, और वहां पे मैंने ये, और वो भी 1199 मैंने पता है क्यों डाला, वो इसलिए डाला ताकि जो मेरा फ्री वाला ऑप्शन है वो नो ब्रेनर लगे। थिंक अबाउट माई माइंडसेट कि फ्री ऑप्शन को भी नो ब्रेनर दिखाने के लिए मैंने साथ में उसके प्राइस्ड ऑप्शन डाला। एंड देन there were so many people जिन्होंने फ्री में साइन अप करा था, बिकॉज ऑफ कोर्स द गोल वाज लिस्ट बिल्डिंग, लेकिन there were about 10 or 12 people जिन्होंने कि उस प्रोडक्ट को बाय करा। 1199 रुपीज फॉर द फर्स्ट टाइम डिजिटली ऑनलाइन मैंने अर्न करे, एंड दैट वाज सच अ मैसिव कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर मी। मैंने डरते डरते उस प्रोडक्ट के प्राइस को 1199 से 1499 करा, फिर 19999 करा, एंड ग्रेजुअली उसमें और लेसन्स ऐड करे, और वही बढ़ते 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 ग्रेजुअली आगे जाके वो टाइमलाइन डोमिनेशन में कन्वर्ट हो गया। जो प्रोडक्ट आगे जाके 28,000 में भी सेल हुआ था, वो स्टार्ट 1199 से हुआ था। एक सिंपल चीज मैं उसमें सिखाता था कि दैट यू कैन हाउ टू ग्रो योर फेसबुक पेज लाइक्स। That is the amount of undervalue we do ourselves, but that is completely okay. See again, अगर मैंने वो चीज भी नहीं करी होती ना, तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। So the most important thing is, even if you are underconfident at this particular point of time, just start, sell it at such a low price that you don't have that guilt factor, you don't have that confidence factor जिसमें you lose confidence कि मैं इतने प्राइस पे सेल कर रहा हूँ। Does not sell it at a low price in which you are comfortable, and then gradually you will see there will be so many people who will become your buyers. They will come to you themselves कि सर मेरे को इसमें भी हेल्प चाहिए, मैम मेरे को इसमें भी हेल्प चाहिए। And when you keep helping them more, they would be more than happy to pay you more. And then automatically you will start reaching out to more and more people. That's how the journey starts. That's how the journey scales. But for the journey to start, just today only, you have got so many ideas. Just go and implement. Most important thing is go and implement. Right, sir. और वन थिंग आई वांट टू शेयर, जैसे कि हमें लगता है ना कि हम जो भी पोस्ट करते हैं कि हमारे फ्रेंड सर्कल देख रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे, है ना। तो वहां पे ये चीजें क्या होती थी कि एक्चुअली हमारे फ्रेंड सर्कल भी हमारे लिए क्लाइंट्स लेके आ सकते हैं जब हम पोस्ट करते हैं। मैं जब पोस्ट करती थी, मैं सोचती थी कि अब तो मैंने बीटेक कर दी, मैं पोस्ट कर रही हूँ, सब सोचेंगे कि लाइक कोडिंग छोड़ के इसमें आ रही हो। अब ऐसे सोच रही थी कि मैं करूँ या नहीं करूँ। एक दिन जब ऐसे ही मैं डेली फेसबुक से रिलेटेड जो भी मेरे क्लाइंट्स होते थे उनके मैं स्क्रीनशॉट सेंड करती थी, अपलोड कर देती थी, ग्राफिक्स का अपलोड कर देती थी। तो मेरे एक फ्रेंड ने मैसेज किया कि मुझे अपने ब्रदर के बिजनेसेस के लिए फेसबुक ऐड रन करवाना है और ग्राफिक्स बनवानी है।
तो मुझे वहां पे वो चीज रियलाइज हुई कि मतलब मेरे फ्रेंड्स सर्कल में भी जो लोग हैं वो लोग भी हमारा पोस्ट देखते हैं, और उनके माइंड में भी एक चीज है कि हाँ ये जो भी है वो अब फेसबुक एड रन करती है, इस फील्ड से रिलेटेड है, तो अगर कुछ भी हमारे पास बिजनेस है या कुछ टाइप से रिलेटेड क्वेरीज है तो हम उसके पास जा सकते हैं। तो ये काफी हेल्पफुल होता है जब हम किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे अपना सब कुछ अपलोड करते हैं। तो ट्रू। आई मीन बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जो है आपके पास जो भी कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं, जस्ट पुट योर मैसेज आउट देयर। वीडियो बना सकते हैं, वीडियो बना के डालो, पोस्ट डाल सकते हो, पोस्ट डालो, पीपल आर गोइंग टू नोटिस। एंड आपने एक और चीज बहुत सही बोली थी, वो ये कि व्हेन यू पोस्ट समथिंग पीपल स्टार्ट लुकिंग एट यू एज एन एक्सपर्ट, एंड व्हेन यू कीप पोस्टिंग automatically their perception becomes more and more strong. So you just keep posting. That's the whole thing. Thank you, Veena. Thank you so much, sir. Okay, so before I go ahead, I have Sid with me. So I have a couple of things that I want to do. Number one is Himshika is asking me, tell me about the Facebook ad service. Himshika, I'm not into Facebook ad services, but people are in this webinar inside our group. So see, number one, you are already a member of FlexiFunnels, so you can learn Facebook ads from the trainings that we already have inside the FlexiFunnels members area, and then you can start running the ads yourself, just like so many other people are running, right? They learn from the group, they learn from the Facebook ads training that I have inside the group, the Flexi members area, and then they run the ads. You can do it, or else you can start working with so many people who are into services. For example, Tanu just came over here. Now see, I don't know personally, I'm not endorsing her services, I don't know her services personally, but I'm sure she would be doing a good job. Or if you find somebody, somebody else with whom you resonate better, you work with them. Ultimately, just don't get stuck. Start working. That's the most important thing. Okay, so before I go ahead, Sid, 1 minute there. Let's call some more people over here. I'm going in my Facebook. मैंने यहाँ पे post already लिखा हुआ है. मैं इस post का link आप सबके साथ share करूंगा. And I have asked the question over here, how is the client getting session going? How many ideas you have got so far? So I'm giving you the link, and then I've also given the link over here for people to join this webinar. Let's see when, if one more person can see this post and joins this webinar and gets to learn something, let's invite that person, right? So I'm going to give you the link for this post. Quickly post a comment over there, and then we will start with the session again, okay? Once again, I'm sharing the link in the chat box. And in the meantime, Sid, are you there? Are you ready? Good to go? Yes, sir, I'm ready. I'm ready. Okay, perfect. So Sid, we are going to give 30 seconds to everybody, and they will come back, they will post, they will come back, and then we'll start with the session, with your session. Okay. So I've shared the link. This is the Facebook post link, and you can post your comment, and then very quickly we'll start with the session again. Himshika says how to contact to Tanu for Facebook ads. You can just reach out to her in the Facebook group, Tanu Kumari, or maybe 1 second. Tanu, can you or maybe just share your contact? I will share with her. You can talk to each other. By the way, this is the link. How to get clients using FlexiFunnels with paid ads. We have so many trainings. We have so many trainings inside FlexiFunnels members area. And आज आपको इतने सारी training already और मिल चुकी है. Just go and implement. Right? Fairs. All right, quick. Let's post very quickly so that we can come back and we can continue with this session. Okay, so let's have a quick countdown. 15, 14, 13. ये मैं end तक करूंगा क्या? 12, 11, 10, 9, 8. Quick. जल्दी से comment करके वापस आते हैं यार. Quick. All right. कहाँ पे थे अपन? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sid, let's start with your session, okay? Sid, I'm going to stop sharing my screen. And you can start sharing your screen.
Sure. First of all, thank you so much, sir, for giving me this opportunity. And good to have you over here. Good to see you over here. Okay. So guys, first of all, I would like to appreciate every one of you. 2.5 घंटे हो चुके हैं, and you guys are like just consistent learning. So guys, let me just share my screen. Can you see right now? Sorry, is visible here? Guys, could you please type visible in the chat box अगर ये visible है तो? Yes. So guys, hey everybody, you can see this handsome guy. It's me, Saurabh, and yes, you can call me sales and marketing guy. And मैंने जर्नी स्टार्ट किया था मार्च मंथ में 2020 को, एंड मुझे आज भी याद है कि मैंने सर्कस सेशन अटेंड किया था इंटरनेट मार्केटिंग वर्कशॉप इन 2020 31 मार्च. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई गॉट टू नो अबाउट दिस वर्ड निश. तो निश को मैं पढ़ रहा था ये नीचे मतलब क्या होता है. तो मेरे कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि आज से 3 साल पहले जर्नी मैंने अपना स्टार्ट किया था, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वाज लाइक कंप्लीटली डम्ब, एंड आई बिलीव कि आप अभी मेरे लेवल से काफी ज्यादा आगे होगे. सो गाइस, no BS, I will be completely direct. In the last 3 years, I have done 3 businesses: affiliate marketing, consultation, and right now I'm selling digital products and my program, which is my signature program. Okay, तो मैंने कैसे अपना first customer close किया उसके बारे में right now भी हम बात करेंगे. So when I was doing affiliate marketing, it was a like Indian affiliate program. So उस point of time पे ये है 2020 की बात है. I had less followers, मतलब 100 से भी कम followers थे. मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कैसे बात करूँ prospect से, and I was just creating videos and just creating videos and sharing on social media like Facebook group or what is it like on stories and Instagram, and ये proper चल रहा था. And when I started affiliate marketing journey, तो उस point of time पे there was one person who was watching me. One person was consistently watching me, consistently watching my videos. And जब मैंने अपनी journey start किया तो I started talking to a couple of people about my affiliate प्रोडक्ट जिस टाइम में प्रमोट कर रहा था. एंड लाइक आफ्टर टॉकिंग टू 10 पीपल, उस पर्सन का नंबर आया, मैंने उससे बात की प्रॉपर्ली, एंड वो मुझे बोल रहा था कि हाँ मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, आई वाज वाचिंग योर वीडियो, यू आर कॉन्फिडेंट, ब्ला ब्ला सारी चीजें हुई बात हुई. एंड आई वाज लाइक कि मैं से क्या बात करूँ, मैंने हल्का फुल्का बताया, उससे मैंने चीजें बात करी प्रॉपर. एंड मुझे आज भी याद है उस दिन बारिश हो रही थी, रात का टाइम था, प्रोडक्ट का प्राइस कुछ 4130 के आसपास का था, एंड मैंने 3000 का कमीशन जनरेट किया था. आई वाज लाइक, जब उसने लिंक सेंड कर दिया, उसने पेमेंट कर दिया, आई वाज लाइक व्हाट द हेल जस्ट इट हैपेंड. मतलब कि कितना अमेजिंग है, 3000 का कमीशन एट द सेम टाइम मेरे पास आ चुका था. And this is how I close my first sale in affiliate marketing world. Okay, and lesson यहाँ पर ये कि start creating content, just share your message with everybody across all social media platform. It doesn't matter how many followers you have right now. There are some people जो कि आपको consistently watching कर रहे हैं. कभी भी अपना offer आप create करोगे, there will be some people who would love to buy your product, right? और ये बात है हमारी 2020 की. 2020 इस केस में I was into affiliate marketing world. So how I got my first sale, एक पर्सन मुझे प्रॉपर वॉच कर रहा था, एंड आई वाज कंसिस्टेंटली क्रिएटिंग कंटेंट. उसके बाद फिर मैंने 2021 के एंड में मैंने अपना स्टार्ट किया कंसल्टेशन. सो आई यूज्ड टू कंसल्ट पीपल अबाउट द सेल्स, अबाउट द ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, अबाउट द पर्सनल ब्रांड. एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने ये स्टार्ट नहीं किया कंसल्टेशन. देयर आर सो मेनी पीपल हु वाज आस्किंग मी कि सर आप 1 घंटे का कितना चार्ज करोगे, घंटे का कितना चार्ज करोगे. एंड आई वाज लाइक यार क्या हो अगर बेसिकली मैं पूरा 1 मंथ का प्रॉपर अपना कंसल्टेशन प्रोवाइड करूं, जहां पे मैं अपनी एक 30 मिनट की मीटिंग दूंगा, ठीक है, मंथ में 2 बार, एंड मैं 1 मंथ सपोर्ट करूंगा. एंड आई वाज चार्जिंग क्लोज टू 5000 रुपीज एट दैट टाइम. ओके, तो सिंपल है, मैंने वहां पे स्टोरी लगाई अपने इंस्टाग्राम के ऊपर. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वाज हैविंग लाइक कपल ऑफ फॉलोअर्स, लाइक 4000 से प्लस में कुछ फॉलोअर्स मेरे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. एंड उसके बाद फिर वहां पे मैंने अपना स्टोरी लगाया, हाउ मेनी ऑफ यू आर interested in my consultation, I would love to grow your business, I would love to teach you all sales and organic lead generation strategies, right? ठीक है. एंड आई रिमेंबर कि मैंने वहां से एक स्टोरी से आई क्लोज 5 बट इज लाइक प्रोस्पेक्ट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. एंड इस तरीके से जर्नी में स्टार्ट किया अपना कंसल्टेशन बिजनेस के अंदर में. तो लेसन यहाँ पर ये आप लोगों के लिए कि आई वाज कंसिस्टेंटली क्रिएटिंग कंटेंट, दैट्स व्हाई मेरे पास कुछ फॉलोअर्स थे. एंड जस्ट बिकॉज कि मैं कंटेंट कर रहा था क्रिएट, तो लोगों के माइंड में वो ट्रस्ट बिल्डिंग हो चुका था, वो अथॉरिटी वाला फैक्टर बिल्ड हो चुका था. ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कि आई वाज डॉक्यूमेंटिंग माय जर्नी कि मैं ये रिजल्ट क्रिएट कर रहा हूं, और मैं अपने कंटेंट इसलिए लगातार बनाया जा रहा था. दैट्स व्हाई विद द हेल्प ऑफ जस्ट वन स्टोरी आई क्लोज्ड लाइक 5 पीपल मैंने क्लोज किया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. एंड एवरी सिंगल मंथ आई वाज, एवरी सिंगल वीक, एवरी सिंगल डे आई वाज गेटिंग लाइक सम सेल्स फॉर द कंसल्टेशन. बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगेन ये चीज था कि मैं अपने टाइम के मतलब मैं पैसे के लिए अपना टाइम सेल कर रहा था. सो वो एक स्केलेबल बिजनेस नहीं था. सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने इसको 3 मंथ किया, जनरेटेड 2 to 3 लाख के आसपास में. उसके बाद प्रॉपर्ली मैंने स्टॉप कर दिया. ओके, तो ये था मेरे कंसल्टेशन का, हाउ आई क्लोज माय फर्स्ट क्लाइंट और सेल यू कैन से इन कंसल्टेशन. नाउ so guys, अभी right now I'm running my program, okay, which is a signature program, okay, and अभी मैं अपना डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ. सो मैंने ये कैसे क्लोज किया, तो ये कोई पहला क्लाइंट क्लोज नहीं हुआ था. मैंने एक वेबिनार किया था इन 2022 में किया था बेसिकली मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. एंड 2021 में मेरे ख्याल से मैंने किया था, कि मुझे प्रॉपर अभी राइट में याद नहीं है. तो जो उसका प्राइस था वो था 299 के आसपास में. मेरे ख्याल से उस टाइम पे फ्लेक्सी फंडा लॉन्च ही हुआ था. ओके, नहीं उस टाइम फ्लेक्सी फंडा लॉन्च नहीं हुआ, तो उससे पहले की बात है. ओके, तो मैंने 299 में उसका प्राइस रखा था, एंड 230 लोगों ने इसके लिए रजिस्टर किया था. लाइक मैंने आपको बताया कि आई एम लाइक
कंसिस्टेंट इन कंटेंट क्रिएशन, ओके। तो दैट्स वाई मेरी जो ऑडियंस है वो हल्की फुल्की बिल्ड हो रही थी। 230 लोगों ने रजिस्टर किया एंड हमने लाइव वेबिनार में उस पॉइंट ऑफ टाइम, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब मेरा कोई प्रोडक्ट था भी नहीं, मैंने जस्ट बोला दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इन द नेक्स्ट 30 डेज 40 डेज के आसपास में, एंड दिस इज द प्राइस। प्राइस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 5,000 के आसपास था। वेबिनार में कुछ लोगों ने एनरोल किया, सेकंड डे मैंने कॉल किया, सेकंड डे काफी सारे, और ये 35 40 50 लोगों के आसपास में लोगों ने प्रॉपर्ली एनरोल कर लिया था उस वेबिनार के अंदर में। एंड कोई लैंडिंग पेज नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जो वेबिनार था बेसिकली मेरा मीटिंग था, मैंने बाय किया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। उससे पहले मैंने बस मीटिंग करी थी, मतलब कि ट्रेनिंग, कोई मैंने वेबिनार नहीं किया था। इट वाज माय फर्स्ट वेबिनार एंड वीक, और वो सारे गंदी चीजें हुई थी मेरे साथ वेबिनार के अंदर में जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट इसके बाद भी इट वाज लाइक रियली अमेजिंग एंड आई क्लोज 35 to 40 सेल्स, और हमने 2 दिन के अंदर में क्लोज टू 2 लाख का उसका रेवेन्यू किया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एक वीक के अंदर में थोड़ा सा बेसिकली वो और बढ़ चुका था प्रॉपर। ओके, लेसन यहाँ पे तीनों अगर मैं कंबाइन करूँ चीजों को, तो द बिगेस्ट लाइक वी कैन से कि जो मेरा लेवरेज था विच वाज कंटेंट क्रिएशन, वो ही कंटेंट क्रिएशन ही बेसिकली मुझे हेल्प किया इन ऑल द बिजनेसेस, लाइक एफिलिएट में, कंसल्टेशन में एंड प्रॉपर्ली मेरे डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में। ओके, तो बस अभी राइट नाउ माय हाई टिकट क्लाइंट, और यू कैन से माय हाई टिकट डे, क्योंकि मैं सर्विस में नहीं हूँ, मैं प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर में हूँ, तो मुझे आज भी याद है कि वी मेड 2.5 लाख प्लस इन जस्ट वन डे। वेबिनार बेसिकली मैं किया था, ये लास्ट ईयर की बात है, मई मंथ की 14th में 15th में को हमने अपना प्रोग्राम लॉन्च किया था मेन, ओके, मतलब लाइव कर दिया था। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी मेड 2.5 लाख इन जस्ट वन डे। ओके, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमने फ्रंट एंड का प्राइस रखा था, इट वाज 500 रुपीज के आसपास में। इट वाज अ सेल्स वेबिनार एंड आई वाज टीचिंग अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग। ओके, सो अगेन काफी लोगों ने एनरोल किया था, तो हमने लाइव में ही बहुत अच्छे से सेल क्लोज किए, और जस्ट हमने एक वीक के अंदर में वी जनरेटेड क्लोज टू 3.5 मतलब 4 लाख से 5 लाख के बीच में हमने एक वीक के अंदर प्रॉपर्ली जनरेट कर दिया था। ओके, एंड 2020 में मेरा ड्रीम था कि मैं 30,000 पर मंथ अर्न करूं थ्रू गवर्नमेंट जॉब, एंड देयर वाज अ टाइम इन माय डे, देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ कि मैंने एक दिन के अंदर ही 2.5 से लेकर 3 लाख प्रॉपर अर्न किया। नाउ द बिगेस्ट पॉइंट ओवर इज कि अच्छा वो बात है इसलिए हाउ आई क्लोज माय रिसेंट सेल्स। अभी मैंने कल ही लाइक 2 से 3 सेल प्रॉपर क्लोज हुई, 30,000 का रेवेन्यू हमारे कल रात में आया, तो वो लाइक हमारा लास्ट डे था, और उसके बारे में राइट भी हम बात करूंगा प्रॉपर्ली। कि अभी सर से मेरी जब मीटिंग हुई थी, सर ने बोला था कि आप एक काम करो कि आप एक प्रॉपर प्रोमो रन करो अपने बिजनेस के लिए, मतलब कि एक मेगा सेल आपके, मतलब अगेन आपके बिजनेस के अंदर में डिफरेंट आपको एंगल निकालने चाहिए इन ऑर्डर टू सेल योर प्रोडक्ट, राइट। और आपका बेसिकली एक मेगा सेल भी आना चाहिए, जैसे फ्लिपकार्ट में, अमेजॉन में आता है, तो वो 5 से 10 डेज का प्रॉपर होना चाहिए। सो मैंने किया कि मैंने एक वीक का प्रॉपर निकाला, और उस 10 डेज की जर्नी में लाइक वी जनरेटेड लाइक क्लोज टू 1.3 1.5 लाख 4 लाख के आसपास में, विच इज लाइक प्योर प्रॉफिट, कंप्लीटली ऑर्गेनिक लीड्स हमने काम किया था। और ये अभी एक वीक पहले की बात है, 8 दिन पहले की प्रॉपर बात है, और दिस इज हाउ लाइक अभी हमने रिसेंट प्रॉपर क्लाइंट हमने प्रॉपर क्लोज किए। एंड गाइस यू, एक मेरी तरफ से एडवाइस आपके लिए, इफ यू वांट टू क्लोज योर फर्स्ट सेल, फर्स्ट क्लाइंट, मैं हमेशा बोलता हूं अपने मेंटीज को, अपने लोगों को, कि जस्ट टॉक टू योर फर्स्ट 100 कस्टमर। अपने लोगों से प्रॉपर बताओ, लोगों के अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्च के बारे में, अपने आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं पहले 100 लोगों से बात कर लूं, और मैं पेपर पे लिख दूंगा कि एट द एंड में आपके पास 3 से 4 सेल होंगे। एक की बात ही नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, आपके पास 3 से 4 होंगे, बट आपका जो बेसिकली आप प्रोसेस पे ध्यान दोगे, आपका जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आना चालू हो जाएगा। So that's it from my side. Thank you so much. Best of luck. Remember, consistency beats everything. So keep working hard. And again, thank you so much, SBSO, for everything. I'm really grateful. Sir, आपकी आवाज नहीं आ रही. Okay, now you can. So thank you so much for so many amazing learnings. At the end of the day, मेरे को एक ही चीज समझ में आती है यार, आप सबको इतने सारे आइडियाज यहाँ पे मिल रहे हैं, आपके पास पहले से भी हैं, just keep implementing things. आप implement करते रहोगे चीजें, आपके पास रिजल्ट्स आएंगे, and just like Sid very rightly pointed out, you talk to 100 people, you are going to get results. It's very very simple. And even if you, Sid ने बोला 4-5 रिजल्ट आपको मिलेंगे, I don't care 4-5 मिले या ना मिले, सबसे बड़ी चीज ये है कि 100 लोगों की पाइपलाइन आपकी रेडी होगी। आपने एक और चीज सुनी होगी, अभी तक 4-5 बारी आप सुन चुके होंगे, मेरे मुंह से भी आपने सुना था, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपसे बात आज करते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट फ्यूचर में जाके होते हैं, मे बी 6 महीने बाद, मे बी एक साल बाद। आई हैव कस्टमर्स जो मेरे को 3-3 सालों से जानते हैं, एंड देन दे बिकेम अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ माय ऑफरिंग्स। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू कीप टॉकिंग टू पीपल. So maybe out of after talking to 100 people, you will crack 10 sales, or maybe you will crack 1, but it does not matter. The most important thing is the process. You talk to 100 people, and then you talk to more, and then you keep talking. And by talking to so many people, you will keep becoming better, and automatically, you will start cracking so many sales. That's how it is. And guys, last message I want to share with all of you, right? कि हमने जब फ्लेक्सी फनल में एनरोल किया था, मैंने एनरोल नहीं किया था, सिस्टर ने एनरोल किया था, मुझे पता नहीं था कि ये फ्लेक्सी फनल एक्जेक्टली है क्या। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा कोई यूज भी नहीं था, एंड मुझे आज भी याद है कि जब हमारा फर्स्ट लैंडिंग पेज ना था, इट वाज लाइक सबसे खराब लैंडिंग पेज था प्रॉपर्ली। बट द ओनली पॉइंट टू इज कि आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जस्ट ग्रैब इट, एंड इफ यू हैवंट बिकम द पार्ट ऑफ लाइक फ्लेक्सी फनल येट, सो मेक श्योर गो अहेड एंड बिकम द पार्ट ऑफ व्हाट इज लाइक फ्लेक्सी फनल टुडे.
Thank you. Thank you, Sid, and thank you so much for sharing all the knowledge. And I'm sure a lot of people will be implementing that. 100%. Thank you so much, sir, again. Thank you. Have a great day. Have a great day, everybody. Okay, 1 second. Okay, I want to take the feedback so that from all of you, so that I can put on my Instagram story. All right, I'm gonna go to the dual mode over here, and so I'm gonna ask you the question that how is the session going, and then you tell me how is that going. Okay. So अभी हमारा एक session चल रहा है जिसमें कि we are teaching people how to get clients, and I want to ask everyone who are attending the session, how is the session going? And how many client getting ideas you have got already? Just give it a number. 40, 50, 60. Just give me a number. 10, 15 new ideas, whatever it is. Wow. I also saw a message. I already got one client within the session. Okay. So I'm doing one thing. मैं अभी यहाँ पे story में आपको link दे रहा हूँ because the session is still going on. I'm making this story at around 7:51 p.m. and ये session अभी करीबन 1.5 घंटा 2 घंटा और चलेगा. So if you want to join and if you want to grab the learnings, you can join the session right now. And see again, message to the audience is that's how you keep doing the promotion at the same time. I just made an Instagram story right in front of you, right? That's it. You just make a story. जो आपके दिमाग में है, just make a story. जो आपके दिमाग में है, just post the content. जो आपके दिमाग में है, just talk about it. And that's how people will start taking notice, right? All right, Vishisht, are you ready? Are you good to go? हाँ भैया. हाँ जी, क्या हाल तेरे? हाँ बढ़िया हूँ. हम लोग आ गए देहरादून. You can plan whenever you want to. इस बार तेरे को क्वारंटाइन करके नहीं रखेंगे हम. Sure. Okay. So hi everybody. I'll just share the screen. It's something for you guys. So this is Vishisht. You can see with Rahul sir, Saurabh sir. I've been a part of team RB and SP previously. So sales बहुत अच्छे से सीखे कोड के भी हम लोगों ने. That is one thing which has helped me a lot. And कैसे मैं बताता हूँ आपको, because after like starting my own thing, things went very haywire. पता नहीं था चीजें कैसे होनी है, रीच आउट कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करनी होगी. अभी तो अपना खुद का काम है rather than talking about someone else. So it was very difficult for me. तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ. We usually help coaches and consultants to build their outstanding brands and help them to monetize on social media platforms, and that too organically, no ads. So अब ये फर्स्ट जर्नी, जो फर्स्ट क्लाइंट की जर्नी थी, ये मैंने मैसेज बनाया था, मैंने देखा था कहीं पे, एंड आई जस्ट यूज दैट मैसेज. आई वाज वेरी अफ्रेड कि लोग रिप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, बट स्टिल आई पिच देम. और पिच भी नहीं किया डायरेक्टली. द मेन मोटिव ऑफ दिस मैसेज इज टू कनेक्ट. लोगों के साथ कनेक्शन बनाना शुरू किया. मैंने यहाँ पे सीधा मेंशन किया कि ओके, यू आर शेयरिंग ग्रेट एंड अमेजिंग कंटेंट ऑन योर पेज, स्टे कनेक्टेड, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माय सेल्फ. मैंने इंट्रोड्यूस किया. मैंने 2 नवंबर को ये मैसेज डाला था 2021 में, एंड बहुत टाइम तक कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं आया. एंड आई वाज लाइक, मैंने करना ही बंद कर दिया था, कोई रिप्लाई नहीं कर, मैंने कोई भी मैसेज नहीं किया. 19 तारीख को इन्होंने खुद पूछा कि वेयर यू आर लोकेटेड है. आई वाज सो एक्साइटेड. रात के 1-1:30 बज रहे थे, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, एंड ये मैंने उन्हें रिप्लाई किया. इसके बाद का जो कॉन्वर्सेशन मैं आपको बता देता हूँ. मैंने उन्हें बताया कि आपके प्लेटफॉर्म पे क्या क्या चीज़ों की कमी है, व्हाट ऑल थिंग्स यू आर लैकिंग राइट नाउ. तो उन्होंने बताया कि विशिष्ट, मेरा जो मेजर बिजनेस है वो लिंक्डइन से होता है, एंड यहाँ पे मेरी 53K की मतलब 53,000 की ऑडियंस है. मेरा खुद का अच्छा खासा प्लेटफॉर्म बन रखा है, विच इज मेकिंग मी ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी. बट शी लाइक द एनालिसिस दैट आई डिड फॉर हर. आई वाज ऑस्ट्रक एक तरीके से, क्योंकि आई डिडंट न्यू कि क्या होगा. तो उसके बाद ना 3 घंटे तक मेरी उससे बात हुई ओवर द मैसेजेस ओनली. उन्होंने अपना नंबर मुझे शेयर किया, उन्होंने मेरे से पोर्टफोलियो मांगा. मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था. हम लोगों ने खुद के प्रोफाइल पे जो भी काम किया था, हम लोगों ने वो रिजल्ट का पोर्टफोलियो बनाया और शेयर किया. एंड आप ये देख सकते हो, द टिकट साइज वाज $1,100 पर मंथ. उनके लिए हम लोग बहुत सारी चीजें कर रहे थे. इट वाजंट अ वेरी हाई टिकट फॉर मी, बट हाँ,
इट वाज अ बिग डील फॉर मी, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था। एंड एक चीज मुझे वहां से समझ आई कि यार बस लगे रहो। 2 तारीख को मैसेज करके जब वो बंदा मेरे को 19 तारीख को खुद रिप्लाई कर सकता है, आई शुड हैव टेक्स्टेड दैट पर्सन प्रीवियस, तो आई शुड हैव कनेक्टेड बाय माय ओन साइड, नॉट वेटेड फॉर हर। वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम दिस क्लाइंट। सेकेंड थिंग इज कि हाईएस्ट पेड क्लाइंट कौन सा रहा। अभी 7 मंथ पहले व्हाट वी डिड इज कि वी वर एबल टू क्लोज वन पर्सन जो कि हमें 700 यूरोज पे कर रहा है फॉर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक मैनेजमेंट इटसेल्फ। हमें कुछ और नहीं करना होता, सिर्फ मैनेज करना होता। एंड इन्हें मैंने ये मैसेज भेजा था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज वन मैसेज विच हैज जनरेटेड ग्रेट रिजल्ट्स फॉर मी। ओके, एंड यहाँ पे एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। स्टार्टिंग में आई अप्रिशिएटेड देम, सेकंड पैरा में या मैसेज सेकंड line में I introduced myself, and third line में I gave them a case study, and a very solid case study जहाँ पे I have literally helped my client to generate good leads for a product worth of $2,500। तो उनकी वहां पे 7 sales भी आई थी after this। So ये करने के बाद I just told them अगर आपको same result चाहिए type yes। This one small thing has helped me to generate great amount of leads, great amount of sales regardless of whatever I'm doing। Okay, ये उस समय क्लोज नहीं हुई थी, ये 17 अगस्त 2022 की बात है। शी गॉट क्लोज्ड इन दिसंबर। हम लोगों ने दिसंबर से काम करना शुरू किया था, नवंबर या दिसंबर से, एंड ये 7th मंथ उनके साथ चल रहा है हम लोगों का। शी इज वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंट्स दैट वी हैव। आई एंड टू बी ऑनेस्ट, इससे पहले वो जिस मार्केटिंग एजेंसी के साथ काम कर रही थी, आई वोंट से द नेम, बट वो बहुत बड़ी एजेंसी है इंडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स अराउंड इट। एंड उन्होंने बताया था द वे यू प्रेजेंटेड योरसेल्फ विशिष्ट, द वे यू express what you are, what you're doing in the field of the things that you're doing, उन्हें बहुत पसंद आया, and that very thing got us this client। So make sure आप जैसे भी हो सच्चाई बोलो, सच बोलो, कुछ झूठ नहीं बोलना कि हम लोगों ने ये किया वो किया। say that if you haven't worked with anybody, tell them I haven't worked, but I can bet you if I work with you, I can get you good results। Don't pay me till you get results। ऐसा करने की कोशिश करोगे ना, आपको अच्छे लोग मिलेंगे और अच्छे लोग आपको अच्छा भी पे करते हैं। ओके, सो दिस इज वन एग्जांपल। जो लेटेस्ट क्लाइंट है मैं आपको वो बताता हूँ, जो मैंने फर्स्ट क्लाइंट क्लोज किया था, जिसका मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, जैसे मेरा उनके साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ था। उनके साथ हम लोग पिछले साल मई में हमारा काम करना बंद हो गया। शी नो लॉन्गर नीडेड आवर सर्विसेज। फिर वापस आई और someone else's LinkedIn प्रोफाइल, उनके पास कोई और प्रोजेक्ट था। उन्होंने बोला विशिष्ट ये प्रोजेक्ट है, आप करना चाहते हो तो बताओ। उन्होंने झट से हाय बोला कि ओके कैन वी गेट ऑन अ कॉल। 2 साल तक हम लोग एक अच्छे कॉन्वर्सेशन में रहे, अच्छे रहे। अभी इट्स लाइक सेकंड मंथ है उनके दूसरे क्लाइंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। दैट्स द लेटेस्ट क्लाइंट। एंड जहां आई रिमेम्बर उन्होंने $1,000 या $1,100 मेरे को बहुत सारे काम के दिए थे, अभी $800 शी इज पेइंग for a single profile on LinkedIn, nothing else। So what I mean to say is, be honest with the work that you're doing, be honest to the people that you're working with, and stay true। That's what I've learned from Team SB and RB। मतलब I remember जब मैं first time वहां गया था, मैं fake it till you make it वाली चीज लेके जाता था मैं, and धीरे धीरे बहुत चीजें improve की। But हाँ, एक आपकी खुद की एनर्जी होती है। When you show something in front of anybody, जब मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ, मैं इतने confidently, इतने मतलब इतनी closely चीजें इसलिए बता पा रहा हूँ, I've done it, I have that confidence। So I believe in one thing, that whatever you are, be honest and share the honesty with others। Stay humble, that's it। And thank you for the whole presentation। Thank you Saurabh bhaiya and Rahul bhaiya, you have given me a lot of knowledge। एंड नॉलेज से ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज आपने दिए हैं, ये प्लेटफॉर्म बनाया है, I can't even tell you how grateful I am, how grateful my mom, dad is, my brother is, my entire family loves you guys। Thank you so much। And yes, consistency is one thing that I have learned from these people। अगर आप लोग भी कंसिस्टेंट रहोगे गाइस, आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी हम लोग रिसेंटली एक अवार्ड सेरेमनी में गए थे। We got one of the best women-owned agency in Delhi। तो हमारे एरिया में हमें बेस्ट एजेंसी का अवार्ड मिला था। So she is my business partner हुए।
So yes, guys, this was it. I hope you got a lot of value out of it, and thank you, Bhaiya. Thank you so much. एंड विशेष कंसिस्टेंट भी है, ऑनेस्ट भी है, और साथ साथ विशेष बॉलिंग भी अच्छी करता है। तो हमारा एक अच्छा बॉलर चला गया टीम से, लेकिन ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैंने आपके अलावा मैं कहीं कहीं क्रिकेट नहीं खेला मैंने कोई नहीं जानता मुझे क्रिकेट में, फुटबॉल खेलता था, बट आपके लिए भी मैं अच्छा बॉलर और कोई। पर लेकिन फुटबॉल में तो हमने तेरे को हरा के भेजा था लास्ट मैच में। मैंने तो ठीक है, कम ऑन कम ऑन, कैसे जीते तो वो भी पता है। चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट इवनिंग, सॉरी। Okay, Sharon, are you there? Hello. Yeah, hi Sharon. Yes, I am there, sir. Okay, good to see you, Sharon. How are you? Yeah, I'm good, sir. And how are you? मैं मस्त हूँ यार। So, sir, am I audible clearly? Yeah, you are audible clearly. You can share your screen. Okay, cool. So मैं start करता हूँ, guys. So, just a second. तो मैंने actually जब मेरी journey की like शुरुआत की थी ना, hello. Yeah, Sharon, we can hear you. Okay, तो मैं बताता हूँ exactly मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ। तो I specifically help coaches, और mostly मेरा जो like clients है वो fitness trainers and nutritionists है। मैं उनको help करता हूँ to how they can actually reach their first say like 6-figure business. So जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं एक्चुअली बताता हूँ हाउ एग्जैक्टली मैंने लाइक ये टेक्निक यूज की थी टू गेट माय फर्स्ट क्लाइंट, एंड एक्चुअली यू कैन आल्सो लाइक डू द सेम। इनफैक्ट आप फ्लेक्सी फनल की मदद से इनफैक्ट आप यूज कर सकते हो। मैं बताता हूँ एग्जैक्टली मैंने कैसे मेरा फर्स्ट क्लाइंट क्लोज किया। तो मैंने एक बेसिकली लाइक मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट था, शी वाज बेसिकली अ पेरेंटिंग कोच एंड हर नेम इज वीना बीके बाय द वे। एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हर, इन फर्स्ट 3 months शी रीच हर 6-figure रेवेन्यू। और वो जब मेरे साथ आई थी वो 150 रुपया लाइक लिटरली 149 रुपीज वो कर रही थी। तो मैंने उनको 3 महीने में अप टू 6-figure लाइक करके दिया था। एंड इनफैक्ट मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट अटैच किए हैं, तो दैट एक्चुअली हेल्प मी टू गेट माई लाइक फर्स्ट क्लाइंट। तो मैं क्या करता था ना, तब मैंने नई नई चीजें सीखी थी। इनफैक्ट मैंने सौरभ सर का सबसे पहले कोर्स ज्वाइन किया था, तब दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने टीडी ज्वाइन किया था। तो जब मैंने टीडी ज्वाइन किया था ना, उसमें कई सारी चीजें थी, कई सारे टास्क थी। ओके, तो स्टार्टिंग में तो मेरे पास रिजल्ट नहीं होते एंड ऑब्वियसली किसी के पास नहीं होते। तो मैं क्या करता था, जो चीजें मैं अप्लाई करता था ना, उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था या वीडियो रिकॉर्ड करता था। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है जब मैं कोई फनल टूल सीख रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको 15 घंटे में सीख दिया और मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर दिया कि जो फाइनल लाइक फनल है उसका मैंने लाइक स्टोरी बना के मैंने पोस्ट कर दिया। ओके, और फिर मैंने ऐसे ही 2-3 हजार रुपए की एड रन की थी जस्ट टू ट्राई आउट, एंड उसमें मुझे लीड्स आए थे एंड कुछ लीड्स 17-18 रुपए कुछ थी तब पॉइंट पे। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाला एंड बाय सीइंग दैट स्क्रीनशॉट मुझे 2-3 इंक्वायरीज आई थी। मतलब मैं इतने सारे मतलब जो मैं लर्निंग हर रोज अप्लाई करता था। इनफैक्ट सर का एक मॉड्यूल है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, मे बी सर आपको एंड में बताएंगे वो किस में है। तो उसमें ना सर बोलते हैं कि आप कॉपी राइटिंग सीखो जो डेली लाइफ में प्रोडक्ट यूज करते हो। तो मैं क्या करता था, वो डेली लाइफ में जो प्रोडक्ट यूज करता मैं उसका कॉपी राइटिंग करता था लाइक ऑन गूगल डॉक्स, और उसका मैं वीडियो या रील या पोस्ट बना के, मतलब तब रील्स नहीं थे तो ऑब्वियसली तो पोस्ट है, तो मैं उसके बना के डाल देता था। तो लोग काफी मतलब इंटरेक्ट करते थे यार, और उनको इंटरेस्ट था तो मुझे इंक्वायरीज भी आती थी। मतलब जो लोगों से मैं बात नहीं करता था सालों सालों, उन लोगों ने भी मेरे को मैसेज करना स्टार्ट किया। तो मेरी एक पोस्ट थी, तो इससे ये लेडी ने मुझे मैसेज किया था। तो दैट लेडी, और मैंने ना उनको एक मतलब, और तब पॉइंट ऐसा हुआ था, तब मैंने मेरा जॉब भी छोड़ दिया था एंड आई वाज़न्ट मेकिंग एनी मनी। तो मैंने ये लेडी को एक्सप्लेन किया हम आपका काम कैसे करेंगे, और मैंने उनको कुछ नहीं पूछा, और उन्होंने पूछा कि तुम कितना चार्ज लोगे। तो मैंने रैंडमली एक नंबर बोल दिया लाइक दैट्स 20,000 रुपीज, एंड मैं फोन रखने ही वाला था। इनफैक्ट वो फोन रखने से पहले ही लाइक ओके मैंने पेमेंट कर दिया। तो आई वाज लाइक शॉक, यार मैं देख रहा था ओके ये मेरा ही अकाउंट है क्या, ओके यार ये इससे सच्ची भेज दिया है क्या मैम ने पैसे मुझे। एंड ऑफ कोर्स शी एंडेड अप मेकिंग हर 6 फिगर, एंड इनफैक्ट बाद में उनको ऐसे रिजल्ट्स आए, तो शी सो फार उनका जो हाईएस्ट रेवेन्यू है उन्होंने 13.50 लाख लाइक 13.50,000 रुपीज उन्होंने ये किया था। एंड ऑफ कोर्स मैंने यूट्यूब पे उनका लाइक डाला गया टेस्टिमोनीज। तो दैट इज समथिंग, जैसे अभी आप फ्लेक्सी फनल आपके पास है तो आप डिफरेंट डिफरेंट फनल बनाओ, या मे बी एक पुराना फनल है उसको रीडिजाइन करो, अगर इफ यू कैन डिजाइन इन अ बेटर वे, आप उसका बेसिकली लाइक रिकॉर्ड करके कहीं पोस्ट रील डाल सकते हैं। सो दैट विल हेल्प यू टू बेसिकली फैच लाइक सम लाइक इंक्वायरीज। तो अभी मैं ये लेटेस्ट क्लाइंट का बताता हूँ कि इनफैक्ट जब मैंने ये बेसिकली ये फनल फ्लेक्सी फनल का इवेंट था, मैं उसके लिए गया था, इनफैक्ट मुझे अवार्ड भी मिला था। तो मैंने इनफैक्ट स्क्रीनशॉट भी डाले हुए हैं, तो यू कैन एक्चुअली डू द सेम। तो सबसे पहले ना मैंने स्टेप क्या किया था, तो मैं डिसाइड करके गया था कि सबसे पहले इवेंट में मेरे को कस्टमर मिलने वाले,
तो मैंने ऐसा नहीं किया कि यार मैं हर किसी को रैंडमली अप्रोच करूंगा। अगर मैं करता था ऑब्वियसली कर पाता था, बट वो मेरी एनर्जी वेस्ट होती थी। तो मैंने क्या डिसाइड किया, मैं जितने जितने लोगों से मिलूंगा ना, मैं 30 लोगों की लाइक लिस्ट बनाऊंगा, टॉप 30 पीपल की लिस्ट। और मैं क्या करता था, मतलब इतने सारे लाइक टाइम से मैं कुछ नए नए बुक्स पढ़ रहा हूँ, तो मैंने जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा, ओके, तो मैंने ना क्या किया, तो ये एक लेडी है, वो एक साइकोलॉजिस्ट है, तो मैंने ये बुक पढ़ी थी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ना मैंने वो कुछ नहीं कहा, मैंने बोला कि मैंने एक रील शेयर की थी फ्लेक्सी फनल के बारे में, मुझे अचीवर अवार्ड मिला। एंड देन उन्होंने मुझे मैसेज किया लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल। तो फिर ना ये बुक है एक्चुअली ना, ये काफी सारे डिजिटल मार्केटर्स पढ़ते हैं। आई लाइक माइट बी सम पीपल नॉट बी लाइक नोइंग इट, बट ये बुक है, मतलब अभी ऑब्वियसली वो साइकोलॉजिस्ट थी तो वो जानती थी इस बुक के बारे में। तो मैंने बोला यार रिमेंबर आई टॉक अबाउट द बुक, तो ये मैं बुक के बारे में उनसे बात कर रहा था। तो फिर मैंने उनको भेज दी 2-3 दिन बाद, और फिर 3-4 दिन बाद मैंने मैसेज किया कि ए हाय, कि हम कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं क्या। तो फिर ऐसे ही 3-4 दिन बाद हुआ, तो मतलब और एक हफ्ता हो गया, उसके बाद उनका खुद ही मैसेज आया कि दैट लाइक वी कैन कनेक्ट ऑन अ कॉल। फिर मैंने उनको कॉल पे कनेक्ट किया ना, क्लोज टाइम अप टू 70,000 to 1 लाख रुपीज के बीच में मैंने उनको क्लोज कर दिया था। और ये एक्चुअली ये मेरा फ्लेक्सी फनल पे मैंने ये पेज बनाया था। तो ये बेसिकली टीडी जैसा ही है, मतलब जब टीडी सर लाइक बेचते थे तो उसमें लिटिल रिजल्ट थे, तो इसमें मैं लिटरली सब रिजल्ट ही डाले जस्ट लाइक अ टीडी पेज। ओके, तो कमिंग बैक टू दिस, तो फिर और मैं अपने को एक रेस्टोरेंट लाइक स्टोरीज बताता हूँ। लाइक ये सबसे पहले ना मैंने एक काफी फेमस यूट्यूबर है, तो मैंने उनको अप्रोच किया था। ऑफकोर्स आई कांट टेल द नेम क्योंकि मैंने उनके साथ एनडीए साइन किया हुआ है। तो हाँ, तो बेसिकली ना मतलब ये कई सारे लोग क्या करते हैं ना, अभी मान लो आपके पास कोई स्किल्स है, मान लो आपको फ्लेक्सी फनल करने आता है या फेसबुक एड, और कोई यूट्यूबर है या कोई इन्फ्लुएंसर है, तब आप उनको अप्रोच करते हो ना, मतलब लाइक लोग नेचुरली डर जाते हैं, ओके यार यार दिस पर्सन इज सो हाई अचीवर, और अब खुद को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो फिर मैंने तो मेरा माइंडसेट ऐसा बना गया था, ठीक है सी, अगर मेरे को फेसबुक ऐड आता है अच्छे से, अगर वो बंदा मेरे पास आए, भली लाइक ही इज मेकिंग लॉट ऑफ रेवेन्यू, या भली वो स्टेटस में मेरे से कभी अच्छा हो, अगर ये एरिया में अगर मैं वो मुझसे हेल्प मांगने आ रहा है ना, आई एम द बॉस ओवर हियर, तो आई रियली डोंट केयर। और फिर अगर आप ऐसे बिलीव रखोगे कि यार ये स्किल में मैं बॉस हूँ, भली फिर उसका पेचर, ऑफकोर्स मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट करने नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर आप ऐसा माइंडसेट रखोगे यार ये चीज मुझे आती है, आई एम द बॉस ओवर हियर, तो लिटरली मतलब आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ेगा। एंड देन मेरी जो लेटेस्ट क्लाइंट है, मतलब मैंने जो लेटेस्ट शैरन, एक बार अपनी पीपीटी को फुल स्क्रीन मोड पे कर दो, वो दिख नहीं रहा है लोगों को ठीक से। ओके जस्ट सेकंड सर, मैं लाइक ये वाला स्लाइड या उससे पहले वाला भी स्लाइड ये करूं? एक बार क्विकली सारी स्लाइड्स को क्विकली कर लेते हैं, एंड आई विल रिकमेंड पीपल टू क्विकली टेक द स्क्रीनशॉट। अभी सब रीड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोबारा से टाइम लगेगा। टेक द स्क्रीनशॉट, गिव मी अ वन इन द चैट बॉक्स। ये वाली स्लाइड का हो गया स्क्रीनशॉट। क्विक 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 क्विक। वेट शैरन, एक बार वापस स्लाइड पे चलते हैं उसी पे। लेट्स वेट फॉर वंस फ्रॉम पीपल। एवरीबॉडी टेक अ स्क्रीनशॉट, गिव मी अ वन। हाँ, ये वाली पोस्ट है एक्चुअली उस पर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दिस इज माय चैट, मैंने ये उनको वाला यहाँ आ से गया, किया था। ठीक है, गिव मी अ टू once you have taken the screenshot of this slide. Sharon, wait for me, I will tell you when to move next. Okay sir. Give me a 2 when you have taken the screenshot of this slide. Quick, done. Okay sir, should I move forward? Yes, one more second. Yes, yeah. ओके, तो ये एक्चुअली ये मैं बताता हूँ, ये एक्चुअली काफी एक फेमस यूट्यूबर है। मैं उनकी स्टोरीज नॉर्मली रिप्लाई करता था कि तो सच जानता था, तो उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, तो मैंने पूछा ए हाय यू आर गेटिंग लीन, बोलती यस। तो फिर मैंने उनको उसके बाद भेजा था कि जस्ट क्वेश्चन, आई एम क्यूरियस टू नो क्या फेसबुक एड्स क्यों नहीं रन करते, यू आर अ गुड ऑडियंस सेट। और मैंने उनको ये स्टार्टिंग में मैंने कुछ फनल बनाए थे खुद के लिए, मेरे तब सर ने मुझे कहा था कि ये सॉफ्टवेयर परचेस करो, तब मैंने ये सॉफ्टवेयर परचेस किए थे। और मैंने खुद के लिए बनाया था ऐसे ही, मतलब लाइक मैंने तब कुछ प्रोडक्ट रेडी नहीं था, बस ऐसे ही मैंने लैंडिंग पेज बनाया था, तो मैंने उनको वही भेजा था। एंड देन आफ्टर फ्यू डेज आई एंडेड अप क्लोजिंग हर। और फिर ये मेरी लेटेस्ट क्लाइंट की स्टोरी है। मतलब करंटली मैंने जैसे लाइक फैक्ट्री फनल के जो इवेंट हो गया था उसमें मैंने अराउंड 5 कोचिंग क्लाइंट क्लोज किए थे। ओके, तो दिस इज समथिंग माय लाइक ये लैंडिंग पेज। और फिर इवेंट में ये बेसिकली जैसे सर ने लाइक स्पीकर को इन्वाइट किया था, उनका नाम रायन है वैसे, तो उन्होंने कहा था कि तुम इंस्टाग्राम रील से कैसे ये कर सकते हो। तो मुझे थोड़े बहुत वीडियोस, मतलब मैं इतने अच्छे से तो नहीं बना पाता हूँ, मतलब इनफैक्ट मुझे आते भी नहीं वीडियोस बनाना। तो मैंने सोचा यार क्या करूँ, तो मैंने सोचा यार मुझे देखो पैसे कमाना, मतलब कैसे पैसे कमाते वो अच्छा है, तो क्यों ना मैं उसके बारे में ये वीडियोस बनाऊं। और फिर मैंने एक चैलेंज लिया कि 100 डेज में मैं आपको लाइक 5 लाख रुपीज अचीव करके दूंगा, और मैं उसके बारे में रील्स बनाने लग गया। तो वहां से भी काफी इंटरेक्शन है और मुझे कई सारे इनबाउंड इंक्वायरीज आए। एंड फॉर टुडे, फिर उसके बाद मैंने पूरे साल में, मतलब ये कुछ 1 साल पहले की बात है, तो मैंने अराउंड बेसिकली
कुछ लगभग रेंज ऑफ 40,000 रुपीज टू 70,000 रुपीज, ये रेंज में मैंने लगभग अब तक 50 क्लाउंट क्लोज किए थे। एंड ऑफ कोर्स उसके लिए मुझे एक फ्लेक्सी फनल में लेके अवार्ड दिया था, दिस इज द फोटो दैट आई एंडेड अप मेकिंग 13 लाख टू 13.5 टू बी वेरी स्पेसिफिक, मतलब तब जब मुझे अवार्ड मिला था। ऑफ कोर्स अभी उसमें मैंने काफी ऐड किया। एंड हाँ ऑफ कोर्स, तो बेसिकली तो या यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। और मैं आपको सच्ची बताऊं तो अगर आपको नहीं आता है कुछ, लिटरली जो नहीं आता, मतलब जो भी आप कर रहे हो, तो उसका वीडियो बनाओ, पोस्ट बनाओ, कहीं पे भी पोस्ट करो, लिटरली फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं पे भी। तो सी मतलब क्योंकि आपका जो आइडियल कस्टमर होता है ना, वो आपका फर्स्ट वर्जन होता है, और फिर वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है। तो फिर लेट सपोज कि जो मेरे क्लाइंट होते हैं वो ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट वर्जन हो गए, उनको मेरे से हेल्प चाहिए, तो वो जरूर इंटरैक्ट करेंगे आपके पोस्ट से। मतलब कुछ भी करो आप, उसके पोस्ट बना के कहीं ना कहीं तो डालो, ऑफ कोर्स दैट विल बेनिफिट यू। और फिर मैंने 2 वीडियोस भी बनाई, एक सेल्स का किया था, जब मैंने क्लाइंट्स को मतलब लास्ट में फिनिश करता हूँ सर, तो मैंने 2 वीडियोस बना थे। एक मैंने सेल्स का मतलब वर्कशॉप लिया था, मैंने उसका वीडियो बनाया और हम सेल प्रैक्टिस कर रहे थे। और फिर मैंने लाइक मुझे फ्लेक्सी फनल अवार्ड मिला था, मैंने मेरी अचीवमेंट शेयर की और मैंने पूरे साल में क्या किया। और फिर जब भी मेरे साथ कोई सेल्स कॉल पे आता है ना, तो मैं लिटरली उनको बोलता हूँ, तो वो बोलते हैं आई नीड टू थिंक, टेक टाइम। तो मैं उनको बोलता ठीक है कोई बात नहीं, सो इज इट ओके इफ आई गिव यू सम होमवर्क, और मैं बोलता हूँ, वो बोलते हैं यस। और फिर मैं उनको 2 वीडियोस भेजता हूँ और नेक्स्ट मीटिंग सेटअप करता हूँ, और फिर वो 2 वीडियोस से भी लाइक लोग आते हैं वापस, एंड आई एंडेड अप क्लोजिंग देम। Wow, that's another very good learning. So again, a lot of learnings. सबसे पहली चीज follow-ups. सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉलो अप। आपको FGS का अवार्ड मिला, आपने जाके उन्हें फॉलो अप में डाल दिया। अब बहुत लोग बोलेंगे मेरे पे अवार्ड नहीं है, डज नॉट मैटर। आपके पास जो है, आपने कोई नया सोशल मीडिया का कंटेंट डाला, आप वो लोगों को भेज दो। आपने कोई नया अच्छा लर्निंग, कोई नई चीज सीखी, आप वो लोगों को भेज दो। आपने जैसे वीना ने बताया था, आपकी किसी क्लाइंट से बात हो रही है एंड देन आपने सिमिलर एक क्लाइंट का कोई एड देखा, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया, वो आप उन्हें भेज दो। फॉलो अप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप हर बार लोगों को यही बोलो कि यार लेट्स स्टार्ट वर्किंग। फॉलो अप का मतलब है जस्ट स्टे इन टच, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टे इन टच। चाहे आप कुछ भी उन्हें भेजते जाओ, समथिंग विच इज लॉजिकल एंड समथिंग विच मेक सेंस अराउंड योर वर्क। एंड अगर वो मेक सेंस नहीं भी कर रहा है ना, तो भी वहां पे कुछ ना कुछ भेजते जाओ, ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू कन्वर्ट अ लॉट ऑफ पीपल। एंड अगेन इट्स अ स्किल इन विच यू कीप गेटिंग बेटर। एंड जस्ट लाइक Sharon said, you know, there one more good idea for you right over here is, and that is, जैसे Sharon ने बोला, इसने एक अपने 100 डे की सीरीज निकाली कंटेंट की, एंड 100 डे की सीरीज में इसने बोला कि मैं लेट्स सपोज 100 डेज में 5 लाख रुपए रन करूंगा, और वो मैं सबको सामने अपने इंस्टाग्राम पे सबके साथ शेयर करूंगा। You do a series like that, whatever it is that you are good at, right? Start with a series. आप इससे आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी of making the content on a daily basis, and you know, लोग उसे नोटिस भी करेंगे। लोग उसे नोटिस करके आपके पास इनबाउंड क्वेरीज लेके भी आएंगे। They will become your clients, they will become your customers, and automatically, you know, you will start, आपके social media follower base भी आपका बढ़ता जाएगा, which are again, you know, you get the opportunities to help so many more people. So whatever that is the end outcome that you can help people with, just take a challenge, 30 days challenge, 60 days challenge, and start with a series like that on your social media. That's another brilliant idea. हमें वैसे भी content तो बनाना ही था, लेकिन अगर हम उसको कोई नाम दे देंगे, तो a lot of people will, you know, you will start getting a lot of eyeballs just because of the additional name that you give it. So that is one more thing that you can start implementing. Again, great idea, Sharon. सर मैं और एक चीज ऐड करूंगा, तो मैं ना फॉलो अप कैसे करता हूँ ना, अभी इतने सारे लोग आते हैं तो लोग भूल जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, वेडनेसडेज और सैटरडे डे रखता हूँ फॉलो अप के। तो जो भी मैं कंटेंट बनाता हूँ ना, तो उसका पार्ट मैं हर मेरे क्लाइंट को वेडनेसडे को भेजता हूँ और हर सैटरडे को भेजता हूँ, सो दैट मैं भूल नहीं पाता हूँ, और वो पाइपलाइन में रहता है। मैंने उनको वॉइस नोट भेजा, रील भेजा या कुछ टेक्स्ट भेजा, तो वो मैं लाइक ऐड करना चाहता हूँ। I mean, the idea is that we keep sending something. See, we do the same thing. मेरे जैसे सोशल मीडिया पे कंटेंट जाता है, इंस्टाग्राम पे जाता है या यूट्यूब पे जाता है, हम लोग हमारी जितनी पूरी ईमेल लिस्ट है हम उनको मेल कर देते हैं that I recently posted this content, because number one, they get some learning out of that. Number two, they get reminded about you. So there are going to be people, 99% people, or maybe even more than that, are not going to do business with you in the very first time they are going to see you. But as you keep reminding them about you, and as they keep seeing your good work, they will work with you. So the most important thing is that you stay in front of them. And that's why your content on any platform, Facebook, YouTube, Instagram, email, WhatsApp, Telegram, Instagram story, WhatsApp story, जहां हर जगह पे, ये नहीं सोचना यहाँ डालना है, यहाँ नहीं डालना, हर जगह पे डालना है. And that's how your work will keep going.
And then of course the ads, वो तो करना ही करना है. That's ads is like it's like the firepower. पहले organic start करो. That's like that will give you the initial boost, and then you start with the ads. एक बार आपने ads funnel को crack down कर लिया, just like Rexy was doing, right? And she was like अभी Rexy was there and she was saying कि अभी मुझे भी नहीं पता सेल कहाँ से आती है, लेकिन मेरा Facebook ad चल रहा है, रोज सेल आती है. Again, just run the ads. That's how you will start getting sales on a daily basis, and you will start getting the boosted reach जो कि आप organically उनके पास नहीं पहुंच सकते हो. So again, use every single medium. Yes, thank you, sir. Thank you, Sharon. Good to see you. Okay, so next we have Dr. Swapna over here. Good to see you too. And you can share your screen. Yes, thank you so much, sir, for inviting me. Okay. The screen is visible, everyone? Okay, so myself, Dr. Swapna Marathe. I'm a tarot card reader, numerologist, and angelic healer. So basically, I started my journey a few months before, in August, when I joined FlexiFunnel. So that time, there are so many things in my mind. I am basically dentist, so I wanted to start my journey online, but I was a little confused about things. But somehow, I got Saurabh sir in one of the webinar where I have joined him. And that day I took a decision. I started with FlexiFunnels, and then I started my journey. First thing, I got my first client with my webinar. Now you have, listened so many times, like you have to start somewhere, you have to start your journey. And that motivation also, I also got, because that fear was always there. I'm a dentist. So I started my journey. First, I was very, very fearful to take webinars. And that day, somewhere I started my journey. I ran my Facebook ad, created landing page, and I got 3 students for my webinar. First day, I was so बहुत ज़्यादा घबरा गई थी उस टाइम पे. But somewhere, वो 3 लोग थे, 3 में से 1 conversion हुआ. And after in a second webinar, there was 2 students. So here you can see I'm teaching one student. तो जब जर्नी स्टार्ट की थी, 1 ही स्टूडेंट थे मेरे, और उसके बाद धीरे धीरे स्टूडेंट्स बढ़ने लगे. एंड हाई टिकट वाज लाइक फर्स्ट तो कुछ चीजें हुई नहीं. एंड आफ्टर दैट आई टुक बिजनेस ग्रोथ जाने का डिसीजन, जो सौरभ सर और राहुल सर का एक प्रोग्राम है, वहां पे आई स्टार्टेड माई जर्नी देयर. आई गॉट वंडरफul push, we can say. And that after coming back from Pattaya, I literally started my online journey, real online journey, we can say. So I earned 1.25 lakhs in just 2.5 hour webinar. And from that day afterwards, I got almost 300 students. Before that, I don't have 25 students also. So from one, I started my webinars. I was so much fearful that day. But now I'm taking webinars in front of so many people. It's like, 200, 300 people were there. And now we are having students from teenagers to old people. There are so many people. So it's kind of, tarot, it's kind of a taboo topic for all of people. They feel like, it's kind of future telling tool. But it's not like that. So many people are going through traumas, and I am helping those with the help of meditation, deep healing. So people are getting results and they are helping others. So it's my motive to start this journey. And somewhere, I'm just following Saurabh sir, because I know having a mentor in our life, it plays a major role. Somewhere we need that push, we need that motivation, and he's always there to guide us, guide me, always there. So this is how I started my journey, and I'm so grateful and so thankful to sir. And thank you so much, sir. That's it for now. And from my side, journey is like, obstacles will be always there. You just have to go ahead, and you just have to face it, because
सर को भी पता है मैं कितनी बार जाती हूँ उनके पास, सर ये हुआ है वो हुआ है, बट yes, someone is there, you will find out the way, and I am guiding my students that way only, and the way he is guiding, I am trying to be a mentor like him only. So thank you so much for everything. And I have one question for you. I know that we are somewhat let's say uncomfortable हमारे revenue numbers share करने में. मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, but it is important for motivating so many people. So अभी जब से आपने start करा है, अगस्त से अपनी journey start करी थी, अभी जून की starting है, so almost 10 months. तो अभी 10 months में कितना revenue आपका हो चुका है? More than 15 lakh. More than 15 lakhs. And इसमें last 6 months में I guess majority जो share है. 3 months. Last After 3 months. Pattaya. After Pattaya only. Last 3 months. Before that 1 lakh, 2 lakh we can say, but after the major growth is happened after Pattaya only. Business. So basically we are on the rise. तो अभी ये number हमारा अच्छे से और बढ़ने वाला है. Right. Yes, definitely. And at the same time, she is doing such good work. She is a tarot card reader. She helps people उनको heal करने में, उनको mental level पे support करने में, अलग-अलग चीजें जहाँ पे वो अपनी life में अटके हुए हैं, वहाँ पे उन्हें support करने में, in multiple places. I had a chance to personally interact with her, so I got to know about her work. And again, it's so very important that all of us good people who are sitting in this webinar, we take initiative and we start reaching out to people, because honestly, you won't realize this, but the world needs our good work, and you are doing them a disservice if you're not reaching out to people. So reach out to people, create content, run ads, create your funnels. So important. True. And everything is happening just because of Saurabh sir and FlexiFunnel. Because मैं join नहीं करती तो आज मैं यहाँ पे होती ही नहीं. And might be there are some people who miss me in their life. So thank you so much. Thank you so much for amazing learnings. Everyone, let's give a one-on-one to Swapna, Dr. Swapna. Thank you everyone. Bye. Bye. Okay, so our next speaker would be Gauravjeet. Gauravjeet, can you... Umang to ready था, लेकिन Gauravjeet का नंबर पहले है यार. So Gauravjeet, Gauravjeet, आपका mic mute पे है. Yes, yeah. Now we can hear you, and you can share your screen. Yes, sir. Awesome. Sir, is my screen visible now? Yes, it is absolutely visible. आप बहुत अच्छे लग रहे हो और yes. I love this photograph. Yes. Gauravjeet, by the way, you know what? I will one second. I will tell everybody. Gauravjeet is the person. जब communication mastery राहुल भैया का program start हुआ था, तो Gauravjeet attended one of the sales webinars of communication mastery, and Gauravjeet को phone पे मैंने sell करा था. So उस समय राहुल भैया की sales team नहीं थी, so I was helping him with his sales. And उस समय मैं इंडिया में काम नहीं करता था, so I helped him and I contacted Gauravjeet and I pitched him about communication mastery, and he became a part of communication mastery, then so many other things. So I remember him as one of my sales on the phone. Yes. 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 Hi everyone. I am Gauravjeet Singh. So basically, I create websites and funnels for coaches and trainers. Currently, I found an agency, Short Videos Pro, where we create Alex Harmozy style and Dan Koi style video editing we are doing for influencers. So here is my first client story. So basically, about my story, like till 2019, 2020, till 2020, I was doing job. So I passed my engineering in 2017. From that time till 2020, till Corona time, I was doing job. And when I was in Pune doing my job, since Corona came, so company told me to start working from home. And after 15 days, they told me that we are not going to continue you. We are laying off. So since then, as I was during Corona, I was in Pune. From that time, I came to my hometown.
since then I tried to create my Fiverr account. And though I created my Fiverr account in maybe May, June, but I got my first client in November 15. So here was the first message which I got from a client from in Italy. So I created a landing page for him, and after 4 days I completed it, and it was a $60 project. So I completed it, and I received $48 by after deducting all the commissions from the Fiverr. So this was my first client through Fiverr, and so this was recently I got an high, not recently, I got an high ticket client. The client messaged me on Fiverr. He asked me for my portfolio, and though I provided him a portfolio page link, on portfolio page there was my calendar link. So on Fiverr he was with a different name, and on Calendly he booked with some different name. So I was confused whether to get on a call with him or not, because the rule on Fiverr is you cannot communicate with a client outside of Fiverr. If they are finding such type of activity, they are blocking accounts. So he booked a Zoom call with me, and I missed that call. And another day I got an email from him. So I replied him, and so through email conversations only, I closed him for $620. So this was his first email, which I got through email after missing a Zoom call. Apart from Fiverr, now I'm doing cold outreach for my short form content agency, and people who are looking for looking for their first client can start with Fiverr. So these are the steps. You can take a screenshot, like you have to create your profile on Fiverr. As an initial seller, you can publish up to 7 gigs. Do the computer research who are offering similar services, so that you can get idea what pricing experienced seller is putting. And if you are a new seller and you are not having some portfolio to show, so you can start with less amount, but definitely Fiverr will help you to create portfolio, because uh, there are good clients. Maybe the pricing is less, but I also started with $60. Now I'm using $600 projects for the same activity, same services which I had offered in 2020. You can use ChatGPT for creating gig descriptions. So what is gig? Gig are the services and the variation of that services which you publish on Fiverr. You can use Canva for creating gig image. Once you publish the gig, be online on Fiverr and promote the gig on social media. Also, the bonus tip is here. Once you receive a message from any prospect, try to reply within first 30 seconds, because you are not only on Fiverr, there are many competitors who are uh, there on Fiverr. So client not only message you, he at a time he message and freelance. So if you are replying as early as possible, so there is a possibility you can start a conversation with that prospect. And mostly Fiverr has US people, so you can also use the auto reply feature, because most of the time due to our time difference, uh, you have to mention that I am working from this to this timing. So instead of messaging 10 other different freelancers, if he's seeing your portfolio on that your Fiverr profile, he can wait for some time, and he can continue the conversation with you. And if you are not replying as early as possible, he can switch to other freelancers also. So also I am going to share with you bonus trick which helped me a lot to work with influencers in India. So if you have worked and provided great services, and through your service client is happy, and he definitely liked your work, and you are also confident your work 100% for him, and he is happy, so you can ask for a shout out. So here is a script which you can use to ask
you can send this to your client. So it may be like this. Hello client, I hope everything is going well. I wanted to check in and see how you feel about the work I did for you. Your opinion is important to me, so I would appreciate your feedback. If you are pleased with the outcome, would you mind giving a shout out on your social media? It would mean a lot to me. Thank you. So this helped me to get a review from client which I was working. Uh, so I was working for an YouTuber. So he is having a channel. Since there is a transparency, but I'm sharing here so that you can get idea that what it means to ask for an shout out, because most of the people don't ask, but if you ask, then only you will receive. So I work with a YouTuber. His channel is Knowledge TV Hindi, though it was a faceless channel, but he was having his course. So I set up a membership, online membership, course membership site for him and entire funnel for him. And after I was doing his work, I have posted this on my Facebook profile. And he genuinely shared his review that how he liked working with me. And though he was having a good network of influencers, YouTubers in India, after posting, I got like 25 to 30 friend requests on my Facebook page. And from that, I got two clients for landing page and funnel designing. So that's it. Uh, in this way, you can get clients. This was my story. And thank you. Remember, consistency beats everything. So keep working hard. Thank you. 100%. गौरव जी एक बार स्लाइड में वापस जाएगा, मैसेज आया है, लेट्स अलाउ पीपल टू टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट. एक बार वापस जाना. यस, नहीं यही वाला जो लेटेस्ट स्लाइड था. And by the way, how many of you want to say thank you to Gaurav ji? Give a 111 in the chat box. इतने सारे pointers he has made for you so that he can help you. He has shared with you Fiverr related, message related, ad related, so many things he has shared with you. And I just got to know from Yogesh. So कि गौरव जी यहाँ पे आने से पहले थोड़ा सा घबरा रहे थे. And गौरव जी, you did amazing. You were like superb. And you shared so many learnings. How many of you agree? Let's show to Gaurav कि उन्होंने कितने अच्छे से यहाँ पे हमें इतनी सारी चीजें सिखाई हैं. Give 111 to Gaurav, everybody, right? And that's the power when we come out in front of people, right? And Gaurav, be happy before, when you go to sleep today, that a lot of people are going to be impacted because of the knowledge that you just shared today. It's like goosebumps at this moment. Thank you, sir, for this opportunity. Definitely, whenever I get an opportunity, I have learned from you. It's once you get the opportunity, try to over deliver. So that's what I do every time. With this also when I work with my clients. Right. Amazing. Nice meeting, Gaurav. अभी next time मिलते हैं ऐसे जल्दी. And see you with the next award. Definitely. Awesome. ठीक है, Umang, you are here. Thank you. Umang, you are here. And by the way, before we call Umang तो यहीं रहे, अब तो वीडियो मत बंद कर देना एकदम से. Yogesh is with me over here. And यहाँ पे आना जरा. And Yogesh is somebody who has helped in managing this entire event that we have done for you today. How many of you would like to say a quick 111 thanks to Yogesh? Yogesh is over here. And the team, I mean, I was like कि यार कुछ ऐसा प्लान करते हैं, let's do it. And then मैं अपने चीजों में लग गया. Arman, team, everybody over there, they started reaching out, created the webinars, did the entire backend configuration. Yogesh reached out to everybody. जितने लोग अभी यहाँ पे आके आपके साथ learning share कर रहे हैं, this is the guy. He works tirelessly inside the Facebook group. आप सबने इसे देखा है. It works tirelessly inside the Facebook group to share a lot of learning with you. And he's like super consistent over there, right? So just good thanks. And by the way, ये पता है तब से यहाँ पे खड़ा हुआ है भाई. ये चेयर ले यहाँ पे जा. And he is managing the entire things with me. ये चेयर उठा यहाँ पे लेके रख.
All right. So, your Umang is over here. हाँ जी. हेलो. How are you? टोटली ग्रेट. आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया. अभी उमंग से रिसेंटली मुलाकात हुई थी गोवा में, so he was there with Tapash, and good to see you now. And let's start. बिल्कुल. तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग गुप्ता और मैं भी फिलहाल कोचेस की हेल्प करता हूं उनका वेबिनार फनल सिस्टम बनाने में. लाइक अगर उनका वेबिनार फनल नहीं है तो वो सेटअप कराने में, और है तो उसको स्केल कराने में. ठीक है. बट दिस इज नॉट हाउ इट वाज कि हर समय से ऐसा नहीं था. ठीक है. मैं आपको बताता हूँ लास्ट ईयर मैं राइज एंड शाइन में गया था. राहुल सर जो देहरादून में करते हैं, ठीक है, तो उसमें मैं गया था. एंड जब तक मैं वहां गया था मैं एजेंसी नहीं चलाता था, मैं क्लाइंट्स का काम नहीं करता था, मैं खुद के लिए डिजिटल प्रोडक्ट्स का काम करता था, कुछ सेल वगैरह करता था और मैं उससे अच्छा खासा रेवेन्यू करता था. ठीक है. बट मैं जब राइज एंड शाइन में वहां पर गया तो वहां पर हमें काफी सारे टास्क दिए गए राहुल सर की तरफ से. फिर वहां पर हमें बिजनेस ग्रोथ के बारे में बताया गया. मैंने बिजनेस ग्रोथ लिया भी, बहुत जुगाड़ वगैरह करके. ठीक है. फिर मुझे एक तो मेरी थोड़ी सी मेंटालिटी थोड़ी सी अलग थी. मेरी विकास सर से बात हो रही थी वहां पे, एंड मैं उनसे बोल रहा था सर मैं एजेंसी का काम तो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता हूँ और मैं तो अपना ही काम करता हूँ. तो उन्होंने मेरे को बताया कि उमंग, एजेंसी में आप किसी के नीचे काम नहीं करते हो, आप इंडिपेंडेंट होके दूसरे के साथ वर्क करते हो, एंड यही आपको करना है आगे. बिकॉज स्किल आपके पास सारी हैं. जो भी मैं फनल चलाता था उसमें बहुत सारी स्किल लगती थी. ईमेल मार्केटिंग, फनल डिजाइनिंग, एड सेट, सब कुछ लगता था. वो सारी मेरे को आता था. उन्होंने बोला उमंग अब आप इस सर्विसेज को दूसरों को देने लगो, एंड अब आपको यहाँ से अपना ऐसा एजेंसी बिजनेस स्टार्ट करना है. तो मैं वहां से स्टार्ट करा. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कर रहा था, वीडियोस बना रहा था. तो अब मेरे को अपना पहला क्लाइंट मिला एंड मैंने उनको पिच भी नहीं किया. मेरे पास आके बोला उमंग भाई मेरे को ना आप सोशल मीडिया में हेल्प करो, मेरे को कुछ भी नहीं आता है. तो मैंने उनको बोला ठीक है करते हैं. तो वहां से हमने उनको ऑनबोर्ड करा. ये आप मेरी पिक्चर भी देख सकते हैं लास्ट ईयर जून की ही बात है ये. उसके बाद जो हमारा हाईएस्ट टिकट क्लाइंट है वो भी हमारे वही है जो हमारे फर्स्ट क्लाइंट थे. ठीक है. उसके बाद भी हमने काफी सारे क्लाइंट्स के साथ वर्क करा है, बट हाईएस्ट वही है अभी तक. क्यों? क्योंकि हमने उनका स्टार्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग से करा था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उनके और भी काफी सारी चीजें स्टार्ट करते गए. जैसे हमने उनका अक्टूबर नवंबर में एज अ वेबिनार स्टार्ट कराया, कोचिंग बिजनेस स्टार्ट कराया, एंड वी स्टार्टेड देम विद 5,000 रुपीज एड्स. हमने उनका 5,000 रुपए का एड्स लगाए थे एक हफ्ते के, मतलब वीकली एड लगाया था. और उससे हम स्टार्ट करते हुए गए, ग्रेजुअली स्केल करा. एंड यू डोंट बिलीव कि कल दोपहर बैठ के मैंने उनका एड जो है शेड्यूल करा था फॉर 40,000 रुपीज पर डे. तो ये 5,000 से 40,000 की जर्नी मतलब बहुत अच्छी रही है, और उसमें काफी सारे उतार चढ़ाव भी आए. तो ये भी मतलब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे उन क्लाइंट के जो लास्ट मंथ का रेवेन्यू 15 लाख था, एंड वी आर ऑन द वे टू स्केल इट टू 1 करोड़ पर मंथ. ठीक है. सारी चीजें पॉसिबल है जब आपको नंबर्स क्लियर होते हैं. एंड राहुल एंड सौरभ सर से हमने यही सीखा है कि आपको नंबर्स अपने पता होने चाहिए कि अगर आपके पास इतने रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं तो इतनी कन्वर्जन आपकी होनी ही होनी है, चाहे वो फॉलोअप लगा के हुई चाहे बिना फॉलोअप के. ठीक है. उसके बाद मेरी एक लेटेस्ट क्लाइंट की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ. तो लेटेस्ट मेरे को एक क्लाइंट मिला था लास्ट मंथ के एंड में ही, और वो भी रेफरल से. ठीक है. और मेरे को सिंपल मैं काम कर रहा हूँ अपना, मॉर्निंग की बात है, मेरे को कॉल आता है कि हाय उमंग, मेरे को आपका अच्छा बताया कि मैं अभी ये सब करता हूँ. एंड वो बिना एड्स के ही काफी अच्छा रेवेन्यू कर रहे थे. तो अभी हमने उनको ऑनबोर्ड करा है जस्ट फ्रॉम रेफरल. तो यही चीज है कि जब आप किसी एक क्लाइंट के साथ काम करते हो और उसको रिजल्ट्स लाके देते हो, तो आपको नए क्लाइंट्स की रीच आउट करने की नीड ही नहीं पड़ती है. वो एक ही क्लाइंट आपको 10 क्लाइंट और लाके दे देता है. आपके रिजल्ट्स ही बोलते हैं बस. ठीक है. और मैंने एक चीज पे ज्यादा फोकस रखा कि मैं 10 क्लाइंट से अच्छा है एक क्लाइंट के साथ वर्क करूं पर उनको रिजल्ट्स ला के दूं, प्लस साथ के साथ मैं अपना नेटवर्क भी बिल्ड करता हूं, जिससे मैं कोई भी इवेंट ऐसा होता है ना जहां पर मेरी टारगेट वैल्यू
नहीं मिल रहा ना कंटेंट में भी, लेकिन मैं फिर भी वहां पर चला जाता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल, कि वहां मेरी ऑडियंस मिलेगी, मेरे को वहां पर लोग मिलेंगे जो कि मेरे को इन फ्यूचर कभी ना कभी कोई ना बेनिफिट तो मिलेगा ही। तो ये चीज है। उसके बाद मैं आपको एक डिफरेंट स्टोरी बताता हूँ कि मेरे को रेफरल से अलग और कैसे एक क्लाइंट मिला था। तो मैं नॉर्मली अपना कंटेंट पोस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम पर, तो मैं अभी रिसेंटली नहीं कर रहा हूँ। तो बीच में मैंने एक करा था, एक वीडियो डाली थी, हाउ टू इंक्रीज योर वेबिनार कन्वर्जन्स। और जैसे ही वो वीडियो मैं डालता हूँ तो मेरे को 1 घंटे बाद एक लेडी का मैसेज आता है कि उमंग हेल्प मी विद माय लीड जनरेशन। उनका सारा फनल रेडी था, उनके एड्स नहीं चल रहे थे, तो हमने उनसे कॉल पे बात करी, उनका समझा चीजें, एंड देन वी ऑनबोर्डेड देम फॉर एड्स। तो ये चीज है, मतलब आप जो भी करते हो ना, कंपाउंड इफेक्ट आपको दिखने लगता है। और वो लेडी मुझे किसी पिछले साल एक इवेंट में मिली थी और वो अब आगे मेरे से क्लोज हुई थी। तो सारी चीजें हैं। उसके बाद अभी लास्ट मंथ हमने एक पॉलिटिशियन के भी साथ वर्क करा था, और वो भी मेरे एक फ्रेंड का क्लाइंट था, तो उन्होंने हमें आउटसोर्स करा था। तो ये सारी चीजें हैं, जब आपके पास टीम होती है तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। ओके, उसके बाद हमारा एक छोटी सी चीज कि कैसे राहुल सर एंड सौरभ सर ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। मैं जब स्टार्ट करा था, मैं एक नॉर्मल स्कूल किड था, अभी भी मेरी एज 19 है। लास्ट ईयर जब मैं राइजन में गया था तो मैं 18 का था। तो उसके बाद से काफी सारी, और जब मेरे को ना ये वाला अवार्ड मिला था, तो ये मेरे को 10 लाख वाला अवार्ड मिला है। मेरा रेवेन्यू उस टाइम 25 लाख था। और वो कैसे था कि जो मैंने आपको बताया कि जो मैं राइजन से पहले करता था वो सारी चीजें। तो उसके बाद मैंने और ग्रो करा। अब मैं ऐसे चल रहा है कि मतलब एक स्किल आ गई है कि किसी का भी वेबिनार कराना, उसमें कैसे सेल लानी है, पीपीटी कैसे बननी है, ये सारी चीजें आप एट द टाइम सीख जाते हो। और ये स्किल्स के ही पैसे हैं, ठीक है। तो यही मतलब बहुत सारी चीजें हैं बताने को, ड्यू टू द टाइम मैं नहीं बता पाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ना अपने नॉलेज, नेटवर्क और स्किल्स के ऊपर काम करते रहना है, उस पर इन्वेस्ट करते रहना है, ठीक है। और थैंक यू सो मच राहुल एंड सौरभ सर फॉर बिल्डिंग फ्लेक्सिबल फनल्स, चेंजिंग माय लाइफ, होस्टिंग फनल ग्रोथ समिट, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग, सो कीप वर्किंग हार्ड। 100%, yeah. Again, so many learnings once again. Again, if you will see the common theme, Umang, 19-year-old, by the way, I'm so happy and so proud of you. सबसे पहली चीज, and so many common learnings you will see over and over again. एक वीडियो बना के डाला, how to increase the webinar conversions, automatically it will reach out to the right person जो कि उस कंटेंट को देखना चाहता है. And when you do that, you will start getting inquiries. That does not mean कि आपको हर बार इंक्वायरी मिलेगी, but the most important thing is the process, and the process is that you put out the content. The process is that you reach out to people. The process is that you go to the events and you meet people over there. You build your network. The process is that you create stories. The process is that you run ads over and over and over again. The process is that you create something जिससे कि सामने वाले पर्सन को किसी ना किसी तरीके से हेल्प होगी. And when you do that, and it is not even necessary that you are the top-notch expert in doing that. No, it is not. Do not wait for the time jisme ki you will be the top notch expert in doing that XYZ thing. What is important is you start, if you can help just a few people in doing so, even if you are not the top notch expert, that is completely okay. Understand this thing. Please remember, for example, remember when you were in your school days, जब आप अपने आसपास let's suppose ट्यूशन टीचर इसको ढूंढते थे, right? Do you and the tuition teacher where you went to learn mathematics or science or whatever, commerce, मेरे मुंह से e-commerce निकल रहा था, अब तो हैबिट भी ऐसी हो गई है, but again commerce, I mean I don't know, but I don't think जो भी आपके local area में थे, they were the best mathematics teacher, they were the best whatever XYZ teacher, but the fact is that they were teaching because they knew more than you, so they could teach you. And that's the simple philosophy. If you know a little bit more than what the other person does not know, you can teach them. You can create things for them. You can get in front of them. You don't need to be the best person to be doing that exact same thing, as long as you are committed to provide that person with the best knowledge that you have, and you are committed to provide them with the best service that you can provide them.
If you're honest, just go ahead, put it out in front of the world. It will start creating the impact. That's the most important thing. And if you're again waiting for the permission to become an expert to do that, that's not required. I give you the permission to start creating content and start creating your products and services based upon abhi jitni knowledge aapke paas hai. Whatever knowledge you have, you start doing things based on that, and gradually you keep on becoming better. Awesome. Umang, thank you so much. बिल्कुल सौरभ सर, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा. यस, जस्ट एक चीज लास्ट में, ये मैं कोई शो ऑफ के लिए नहीं बोल रहा. एक चीज जो मेरे माइंड में आई कि आपको बतानी चाहिए, कि जैसे मैं इवेंट्स में जाता रहता हूँ, तो अभी जून में भी एक इवेंट है जो कि मैं मुंबई में जा रहा हूँ उसे अटेंड करने. तो जस्ट बिकॉज कि अभी उस कैपेबल हम होने लगे हैं, तो सबसे पहली बात तो कि मेरे मतलब पूरे खानदान में आज तक कोई फ्लाइट में नहीं बैठा. दूसरी चीज, एक सेकेंड, आवाज कट गई है क्या? नहीं, वी कैन हियर यू. दूसरी चीज कि अभी मतलब मैंने अपने लिए प्रीमियम इकोनॉमी क्लास बुक करी है. तो मतलब ऐसा है कि जब आप काम करते रहते हो तो आपको अपने ऊपर लाइक इन्वेस्ट भी करते रहना चाहिए. इसलिए मैंने करा है वो, आप डांटना मत उसके लिए. तो बस यही बताना था सर आपको. नहीं, सी एज लॉन्ग एज आई मीन सी मेरे को खुद को रिवॉर्ड देने में इशू नहीं है. जस्ट आई मीन सी आई हैव वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसमें मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में बोला है. So let's suppose if I want to reward myself, first of all, before rewarding myself, I will give myself a target, and I will hit that target. I will do whatever it takes to hit that target, and then I feel eligible enough. ठीक है, अब मैं अपने आप को रिवॉर्ड कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को भी रिवॉर्ड करें, लेकिन उसका एक पर्पस होना चाहिए. And then the satisfaction is much more when I reward myself, after achieving something, after hitting something. वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज. दूसरी चीज, whatever is the amount that I'm spending on, even making myself happy, but that amount should not be the amount जिसकी वजह से मेरे वर्क में आज या अगले 6 महीने में इम्पैक्ट पड़ सकता है. नॉट जस्ट टुडे, बट इन द नेक्स्ट 6 months. अगर आपके पास इतना कोटा है, लेट्स सपोज फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट, फॉर द नेक्स्ट हायरिंग दैट यू कैन डू, फॉर द नेक्स्ट बेस्ट एजेंसी यू कैन वर्क विद, फॉर द नेक्स्ट लेट्स सपोज न्यू सेट ऑफ ads that you want to run. If you have that quota, then a little bit here and there investment upon yourself, that is good enough. You can do that. अगर वो नहीं है तब तो डांट पड़ेगी. Got it? चलो ठीक है. All right. So okay. All right. Thank you, Umang. Rakesh is over here. Rakesh Kumar Saiba. राकेश पनासा आपके साथ हम नेक्स्ट करेंगे. पहले राकेश कुमार साहिबा के साथ हम लोग करेंगे. राकेश, वी कैन नॉट हियर यू, आपका माइक म्यूट पे है. एंड यस, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा सेशन का. द रिकॉर्डिंग विल बी पोस्टेड इनसाइड द फ्लेक्सिबल मेंबर्स एरिया, सो ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू वॉच इट ओवर देयर. राकेश, कैन यू ट्राई एंड स्पीक नाउ? या, हाय, गुड इवनिंग एसबी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल बढ़िया. हाउ आर यू? Thank you. Yeah, I'm good. I'm doing great. Awesome. So good to see you, and we can start. Yeah, let me share my screen. Hope I'm able to share my screen, right? It is getting started. 1 second. Yes, now we can see it. All of you can see it. Give me a 1. Yes, we can see it, Rakesh. Yeah, hi everyone. This is me, Rakesh Kumar Saiba. I basically provide lead generation services to local businesses, especially into automobiles and automotives. So I have started my journey back in 2021. It was a very late start because I was already enrolled into time nomination and had some other products too, but I started really late. It was my first client that I worked with in 2021. So what I did is it was the first experiment that I did. So I made a landing page which using the knowledge that I have using Elementor, and I used the same image of that local store, and I made a video explaining all the
problems that they are facing in reaching more people in the locality, and explain them the solution that we can help them with our services. So this is the screenshot of the landing page. It was real basic because I was just starting out then. So I shared this link. I just directly visited the store and asked the owner contact number, and then I took the number and dropped the link to the owner, and I asked them like, if you are interested, we can meet. Immediately he replied me that yes, yeah, we can meet and we can schedule a call. Then I visited him, and actually I was pitching him for this local store, promoting like they have invested some 50 lakhs of rupees to build that store, and they were not promoting online. So I told them like, I can help you with this. Actually, I went for this deal, and to my surprise, I closed other two big deals because the same business owner had a couple of other businesses which are into automotives. He asked me like if he can handle. Then it was a deal for 40,000. It was a starting client starting deal which I took, and it went. Now we still have that client, and we retain him from last 3 years. And this client now pays us 70,000 for one business. Now we deal with one of his businesses, that is Hyundai. He's a Hyundai dealership. So we do lead generation services for this client, and uh, we have generated a revenue of around 5 crore in last 1.5 year to 2 years. And this is the screenshots of the website that, and this all the landing pages we have built on flexi funnels, because previously he was using WordPress websites for his business. So I proposed him like, this is the best tool, and I showed him the difference, how fast and how responsive the pages are on flexi funnels, and he was convinced. And he's now we are hosting all his landing pages on FlexiFinance, and recently we closed these two deals. Like uh, the same owner, he has started a couple of other businesses, and he eventually ended up, closing the deal, asking us to handle them, and we have closed another two deals. Now this single client pays us around 1.2 lakhs monthly recurring, and this is my highest ticket client too, because as I told you, like I just visited this client for closing the local store deal, and now ended up having this high paying client for me from past 2 to 3 years. So that's how the things work for me. And coming to my listed client, as I was optimizing my local pages and all, one of lead called directly to my contact, and he was asking me like, can you provide establishing our business online? So he was into eye care clinic. So I just went up to him and explained all the things that are necessary. So one thing I learned from SB, always like talk about the value that you can give them, because it's not about money all the time. So clients always thinks about from their perspective, so what they are getting out of it. So what I did is like I just went to him and I explained like, okay, you are a clinic and you need this kind of services, not that fancy things. So he was like completely convinced with the way that I presented him the services that exactly needed by him. And one of the services I asked him to start is the WhatsApp marketing and automation for his existing patient. So he was convinced with that and he was happy. And we closed the deal then and there, and it was like 1 lakh one-time setup cost, and then it would be recurring 13,000 per month from next month. So it was a recent client. I think it's this 25 days back we closed the deal. So it was through online. Like this is why I believe like in local business, people search and they believe in people who are uh, you know can help them personally, not in like online things, because they believe in person-to-person interaction. So I believe in that, like getting into in front of them and explaining the things exactly what they need. So that played a key role in this deal. And he accepted the same thing, that he got a quotation from the metro city that is nearby our town, and he denied that because of the way that I presented, and he appreciated that because there is no hype that I talk, and I just clearly mentioned that this is the service you need and this is the charges. That's it. So that was a good appreciation that I received. And this is a typical story that it was against when I was just starting out. When I cracked the first deal, I was in a motive to continue that
momentum. So I just went to a place that was just recently launched. It is back in 2021. So after COVID, the things were just settling down. And this business were already they have invested some 2 crores of investment into this place, setting up and all this. So I just took one of my friend and I got the shoot done for all the entire places the store has, this business has. And then I created some graphics and videos out of it. I shared them on WhatsApp and told like, this is what I can do for your business. And this is exactly that will help you reach more people in the town and more people will visit your place. He was totally convinced. And again, here the same thing happened. Like he denied the proposal that is received from the metro city and he was happy to deal with us. At first, it was a very low amount that we started with, but it was just a second client I deal. And I was so happy to crack another deal with the same strategy. So this is how I thought like sometimes we just need to go out of the comfort zone and do the things differently because it got some investment for me when I took a photographer and got the shoot done. And he was surprised when I cracked the deal and we were dealing. He just paid the amount for me, and he was asking like, "How did you do that? Even you don't know whether we are dealing with you or not. You're so confident that you went ahead and you invested into this and you got the shoot done." So I just told him one thing like, I know that you need this, so that is the reason why I have got this done, and that is the reason why you are now closed. So he accepted it, and he was appreciating me for that. So I think this is a good strategy that we can use for closing local clients. And yeah, this is it from my side. And of course, FlexiFunnels and the event FGS has got a lot of impact on my psychology and my mindset. Now, from past 3 months, 3 to 4 months, I'm working on my own business, building some funnels for my own things so that I can scale up my business and go to the next level. As of now, I'm just dealing with local clients and local businesses because these were the people have seen really bad when COVID hit really strong and they were like really hit hard. There was no revenue floating and they were struggling to get online. And that's where I thought like there's a real opportunity to help them. And as it had said, like the mindset, this is the learning that I keep it for my lifetime. I got it from SB and RB, like always and always try to help the people and that will eventually get you the results because it's not about money all the time. Money is the byproduct. You'll get the results eventually, but the first motive is that we are trying to help them with their business, and that's what I believe all the time. This is it from my side. Thank you. A lot of good learnings. I would like to summarize it over here so for everybody, and at the same time let's give him a 111 in the chat box, right? So first thing that I did, first cry वाला जो इनका client था, again जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, what you need to do is you need to show people visually what you can do for them. Don't just tell them, you show them, because when you show people, automatically they become more inclined to get that thing. It is so very critical. So you show people what you can do for them and they will be far more interested rather than when you just tell them. So for the first guy client, he made a landing page and he just showed it to them. Automatically, that single client has paid him almost how much that single client would have paid you so far? It is around 70,000 per month. I think it's around 20 lakhs. Around 20 lakhs. 20 and then his other businesses also, no? Yeah. So that also came because of that. So Yes, probably just because of that one single thing that you created, maybe more than 50 lakhs just because of this? Around 30 to 35 lakhs. Around 30 to 35 lakhs because of the simple effort that he took. And what he did, he made the landing page and then he showed. He didn't go there and told him that I can do it for you. He did it and then he showed it to him. And the same exact thing he did for that that Nizamabad wala jo aapka wo tha, workstation wala. He did the same thing. Again, he showed them what he can do. And then automatically they became inclined. And of course, very basic little things. आपको कुछ नहीं यार, आपको basic चीजें करनी पड़ती है. The third thing that he has done is that he has created his Google Map listing. वो आप अभी कर सकते हो, आज कर सकते हो, अगले 1 घंटे के अंदर आपकी गूगल मैप की लिस्टिंग वहां पे चली जाएगी. आपके वहां पे राकेश के यहाँ पे 13 रिव्यूज हैं. दैट्स इट.
आप अभी 13 रिव्यूज अगले इस संडे तक खत्म होते होते ले आओगे. इनफैक्ट for some of you, you can bring these 13 reviews by the end of this night. अपने friends, relatives सबको बोल के लेके आ जाओ वहां पे. When somebody is searching in your local area, they will see your ranking over there. Whatever it is, just put it over there. And automatically you don't know, you won't even realize, from one way or the other you will start getting inquiries, from one way or the other you will start getting business. Our job is to be in front of people in all the places. That's what our job is. And automatically you start getting business. And I also remember, Rakesh, जब हमारा Q&A session था, एक आपने मेरे से एक बार क्वेश्चन करा था कि सर मतलब मैं उनके साथ बिजनेस करता हूँ, लेकिन मेरे को उनको समझ नहीं आता है कि मैं उनको कितना रेवेन्यू दे रहा हूँ और वो मेरे को ज्यादा पे करने में इंटरेस्टेड होंगे नहीं होंगे. एंड आई रिमेंबर आई टोल्ड राकेश, इफ यू कैन कंट्रोल देयर बिजनेस कंप्लीटली, then you will be getting paid far higher. And I told him that you don't just generate leads for them, you also convert the sales for them. So you generate leads and then you convert sales. So automatically now you are helping their business with everything that they need. Automatically you will be paid higher and you will always be aware कि आप उनको कितना revenue generate कर रहे हो, and based on that you can of course charge higher. So Rakesh, if you would like to share that story with everybody, वो जो हमारा discussion हुआ था. Definitely. So it was into Q&A sessions that were happening every Thursday for timed and domination members, and luckily, as I told, like I was a member into this course, and I was attending every Q&A because I know that I don't have some questions, but I can hear the questions of others. So eventually in that process, I had a query in my mind. Like always, I was thinking to ask, but I never had that intention to take action. So I was listening to the questions, and when I thought like, okay, now let's ask and let's see how the reply comes. So this was happening. Like I was working with this client, the Hyundai dealers, for I think one year crossed, but I was not able to see how much impact that I have got to the business, because there is a lot of process behind, and these clients, they were already in dealing with some other agencies from Chennai and from Delhi also. So a lot of confusion, like how conversions are getting from my side. So I asked SB like, but how can I track this? Because I am not able to ask them. Even if I ask, they don't have any control and they don't have any intention to share that. It was like mixed up. So SB just given me one suggestion, like take the control of the business, so that you can understand like how it is going and how impact you're creating. Then I went to the store and I sit with the sales manager team, a sales team, and then I talked to one person who is a team leader, and I told him like, yeah, I need information from your side, like how much impact that we are creating, like how the leads are converting from our side. Then we created a complete system in the backend, like the sheet that I'm generating the leads, that sheet is shared to them, and the people will update the status on that. And I was shocked to see the result. Like it was February 2021, SB has given me this suggestion, and I immediately started implementing that. In May 2021, I was seeing that we already crossed 3 crore of revenue. I was totally shocked to see like this is the impact that we are getting, and I don't know. So then I showed the results to the owner, like, okay, this is what we have done in past 1 year, and he was totally surprised, because that was not even the business that they are generating from biggest of the agencies in the country. I don't want to take the names of that agencies, but the benefit that I have here is like I was the local player, and I know what is happening in the store and what is happening around the location. So I was instantly acting on that, and I was generating quality leads, and that eventually resulted into a big impact. And from past 2 years, if I calculate from 21 to here, we have already crossed 5 crore for this single business, and it was a huge revenue. And that's where the total game changed. And I told him like, when we are creating some good impact, we also wanted to increase our charges so that we can be more valuable and more dedicated with your services. So he accepted that. And even one more surprising thing happened. Like I proposed him like, if we can share us some revenue or incentive kind of thing, so that our team will be motivated with that. So he accepted for that, and we have generated around 60,000 last year for just 6 months of work. Like it's a just incentive that we are getting on top of the
monthly recurring. So that was an extra income, and it's not about the money, but the motivation is like so high, and we are like in front of him, we are like a super good player in the market with good results. And eventually he started couple of businesses recently, and two of the businesses now we are handling, and we are charging him some additional charges for both of the business. And and he has referred some 2 to 3 clients of similar category, and that's how the things have changed entirely with that one Q&A session that happened back in 2021. So that's the value of suggestions from mentor. I love that all the time. Yes, and the most important thing is that you took action and you implemented the suggestion. That is the ultimate most important thing. And all of you see, FlexiFunnels तो हमने आपको टूल दे ही रखा है जिसमें आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, रन कर सकते हो, पूरा ऑल इन वन मैनेज कर सकते हो. The overall all in one business can be run inside just one single platform, and everything out there is the best, whether it is the pages, whether it is the membership area, whether it is the automation, everything. Your all in one business can be run on one single platform. And more importantly, आपको FlexiFunnels के अंदर ही जो मेरा कोर्स है टाइमलाइन डोमिनेशन, जिसके बारे में अभी इतने सारे मेंबर्स ने बात करी है, हमने आपको उसका भी एक्सेस दिया है. Initially we used to sell just the timeline domination course for 28,000 rupees. After FlexiFunnels, we merged both the things. आपको timeline domination, आपको FlexiFunnels दोनों चीजें एक साथ मिलती है. So you already have access to it. If you are a member, please watch all the trainings that are there inside timeline domination. It will help you so much in growing your business. And अभी राकेश ने जिस Q&A session के बारे में बात करी है, during timeline domination, I used to take a Q&A session for all the TD members every week. तो वो, and I did it for about 2 years. तो वो 2 साल के जितने Q&A सेशंस हैं, उन सब के रिप्ले हमने FlexiFunnels के मेंबर्स एरिया में डाले हुए हैं. Now I don't want you to watch all the replays 2 साल का वो जो पूरा कंटेंट है हर हफ्ते का. What I simply want you to do is, आपका जो भी वर्क है, पहली चीज अपने वर्क रिलेटेड यू पिक द ट्रेनिंग्स टाइमलाइन डोमिनेशन के अंदर जो आपके वर्क में हेल्प करेगी, एंड देन यू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दोस ट्रेनिंग्स. अगर आपको नहीं पता है कि आपके वर्क में कौन सी ट्रेनिंग्स हेल्प करेगी, देन गो अहेड एंड वॉच द स्टार्ट हेयर ट्रेनिंग. FlexiFunnels में जैसे ही आप लॉग इन करोगे, देयर इज अ स्टार्ट हेयर ट्रेनिंग. ओके, लेट मी जस्ट शो यू वेरी क्विकली. Rakesh, I will just share my screen, okay? Yeah, no problem. So the start here training is something that is gonna show you कि आपका जो भी वर्क है, फॉर एग्जाम्पल आपका वर्क है, लेट्स से यू नो यू आर अ कोर्स क्रिएटर, या फिर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, या फिर आप एक कंसल्टेंट हो, या फिर आपको प्रोडक्ट सेल करना है, या फिर आप एक न्यूबी हो एंड यू आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है. तो इन दी स्टार्ट हेयर ट्रेनिंग, दिस वन, इन द वेरी फर्स्ट लेसन आई हैव शेयर्ड विद यू कि कैसे आप अपनी जर्नी की शुरुआत करोगे एंड कौन कौन सी ट्रेनिंग्स आपको देखनी है. तो अगर आप एक कोर्स क्रिएटर हो, दीज आर द ट्रेनिंग्स दैट यू नीड टू वॉच इन दिस स्पेसिफिक ऑर्डर. अगर आप एक कंसल्टेंट हो, दीज आर द ट्रेनिंग्स दैट यू नीड टू वॉच. अगर आप एक फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, दीज आर द ट्रेनिंग्स दैट यू नीड टू वॉच. बिकॉज इवन आई अंडरस्टैंड कि आपको सारी ट्रेनिंग्स नहीं देखनी है, बट यू नीड टू वॉच दोज वेरी स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स, एंड विद इन 7 days, within 5 days, you can start setting up your work and you can start selling your products, your services. That's it. I mean, in some cases, it would be hardly 3 days, 4 days. So you watch this training, which is the start here training, and this will give you the idea कि आपके वर्क के अकॉर्डिंग, आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपको कौन सी ट्रेनिंग शुरुआत में देखनी है. एंड देन विद इन द टाइमलाइन डोमिनेशन मेंबर्स एरिया ओनली, आई विल जस्ट शो यू. यहाँ पे आपको Q&A वाला एक कोर्स दिखेगा. डू यू सी दिस लाइव Q&A सेशंस? आपको दिख रहा है इसके अंदर 1945 लेसन्स है. तो ये सारे क्वेश्चंस जो आज तक राकेश ने and all the other members who have, you know, asked me, I have replied to all the answers over here. What you can simply do is, आपके work के according, you can, you know, there are so many questions. You don't need to watch the all the questions. आप simple एक काम करो. Let's suppose you search for something. Let's say you search for real estate. Okay, you search for real estate. Any advice while meeting real estate clients? Just an example. आप अपने कीवर्ड से सर्च करो, आपको किस चीज का आंसर चाहिए, and you will find the answers over here, and just watch that particular answer. 2000 क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे करे हैं जो आपके सामने हैं. आपको अपने मतलब के क्वेश्चन का आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा ना यार. And these are the personal answers that I have given based upon the work that you are doing, right? So Anishek says, wow, was not aware of this. See, again, the most important thing is that you go inside the platform and at least explore it. अगर मैं कोर्स वर्ड यहाँ पे सर्च करता हूँ, so 87 answers. You are going to get to learn so many things over here. Just get inside the live Q&A sessions.
do this quick search and you will get the answers. Right? Let me just quickly search meeting. Do you see a meeting? Meeting ke liye, any advice while meeting real estate client? I have a meeting with a client, any suggestions? And I have suggested so many things, so many answers over here. So just inside the timeline domination, we have given you everything जो आपको सारी knowledge चाहिए, जो आपको सारी learning चाहिए in order to grow your work, in order to scale your work, or to start your work. But you need to watch it, you need to implement it, and get started. That's the most important thing. Thank you, Rakesh. Thank you very much. For the amazing learnings. Yeah, thank you very much. Take care. Yeah. So next we have Rakesh Panasa. All right, Rakesh, you have been waiting for quite some time. So happy to see you over here after meeting you in Goa some time ago. Yep. How are you, sir? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ यार, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सर. मेरी वॉइस आ रही है मतलब क्लियर? बहुत अच्छे से आ रही है, क्लियर आ रही है. So yeah, so first of all, thanks for this opportunity to be to live see इतने लोगों का webinar देखते हैं backstage पे. That is a great kind of opportunity, and thanks to Yogesh and especially thanks to you for giving this opportunity. And so let me, shall I share my screen? Yeah, of course. Please go ahead. Right. Right. So myself, right. So myself, Pantha Rakesh, Chief Client. I want to call myself as Chief Client Specialist because I'll come to that. So my name is Pantha Rakesh, Chief Client Specialist, agentsondemand.in and reflow.com. So what agents on? First, I'll give you a one minute what I do and what we serve, so that I can share you how like you can benefit from this. Okay, so we help insurance professionals to recruit new agents and produce more business in year on year in Bharat across India. And अभी हमारे पास 300 से ज्यादा clients है. मैंने 30,000 से ज्यादा Facebook leads generate करे हैं, और हम क्लाइंट्स के लिए क्वालिफाइड इनबाउंड एजेंट लीड्स, एजेंट लीड मैनेजमेंट सिस्टम, एजेंट अथॉरिटी वेबसाइट, एजेंट लीड नर्चरिंग सिस्टम, ये सारी चीजें करते हैं. राइट. सो आई थिंक व्हाट आई डू, एक क्लैरिटी आ गया. सेकंड, सो जैसे इस मीटिंग का टॉपिक है माय फर्स्ट क्लाइंट स्टोरी, हाउ आई गॉट माय फर्स्ट क्लाइंट स्टोरी. फर्स्ट क्लाइंट, द क्लाइंट नेम वाज देबज्योति दत्ता. वो जो है असम के लास्ट पॉइंट पे थे. उनका नाम, वो जो एरिया का नाम था तिनसुकिया था. सो हाउ आई गॉट कनेक्टेड विथ हिम, कि मैंने सिर्फ जो नीश रिलेटेड फेसबुक ग्रुप्स होती है वहां पर मैं गया और एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मैसेज मैंने टाइप करके ड्रॉप कर दिया, saying कि want to recruit more agents in your local area, comment your contact. राइट. तो ऐसे करने से, एक बार करने से, दो बार करने से वहां पे 10-15 कॉन्टैक्ट्स मिली. और क्योंकि मैं थोड़ा सेल्स में अच्छा था, या मैं सेल्स में लाइक आई वाज लाइक कि मुझे करना ही था, तो मैंने 10 to 15 जो भी लीड्स आई उस पे मैंने कॉल करा. लाइक आई ट्राई टू पिच द लीस्ट आई कैन, कि लाइक मैंने 15 डेज का या 30 डेज का जितना कम हो सके मैंने उतना पिच करा, और मुझे वो एक क्लाइंट मिला. और उस ग्रुप में मैंने एक और चीज करी कि उस ग्रुप में जो सिमिलर सर्विसेज के लिए अगर वेबसाइट, अगर किसी ने उस ग्रुप में सारे वो इंश्योरेंस वाले ही थे, जिसने भी किसी चीज के लिए भी कांटेक्ट डाला मैंने सबको कॉल करा. ठीक है. तो वहां पे मुझे फ्री में लीड्स मिले. ऐसे मैंने लाइक 2021 के अगस्त से लेकर के जनवरी दिसंबर तक यही चीज करा. इससे मेरा एक प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया, जिससे मेरे को एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं क्लाइंट को क्लोज कर सकता हूँ. दूसरा, मेरे को ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं क्लाइंट को डिलीवर कर सकता हूँ. और तीसरा, मेरे पास कुछ क्लाइंट रिजल्ट थे बोलने के लिए कि हाँ मैंने इस एरिया में काम करा, मैंने उस एरिया में किया. तो अगर कोई भी लोकल नीश में हो या किसी भी नीश को आप टारगेट करो, और सबसे पहली बात, अगर आप नए एज अ शुरू कर रहे हो, एज अ बिगिनर, इंटरमीडिएट, व्हाटएवर लेवल आप शुरू कर रहे हो, तो मैं ये लाइक दिस इज हाउ आई डिड दिस. सो अगर आप शुरू कर रहे हो, एक नीश पकड़िए. ठीक है. उस नीश में आप टारगेट करिए. ठीक है. अगर आप कोर्स सेलर के हो, कोर्स सेलर वाले ग्रुप में जैसे सौरभ सर ने बताया, वहां पे कंटेंट डालो. ठीक है. बट मैं इस स्पेसिफिक नीश में था, वहां पे मैं कितना भी कंटेंट डालता, लाइक राइट, मैंने और भी कंटेंट डालते, बट दिस आई पोस्टेड, दिस जनरेटेड लीड्स, एंड मैंने
कॉल करें। दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी जो काम कर रही है और आज भी हम इससे बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो जैसे दो चीजें मैं बताऊंगा कि एक सबसे बेस्ट जो चीज वर्क, देखिए कितना भी कर लो, द एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज इम्प्लीमेंटेशन। सो व्हाट द you should be from day one itself, you should always be a sales person. अगर आप सेल्स पर्सन हो तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप सेल्स पर्सन के माइंडसेट से सोच रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि लीड्स नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही। आप ये सोचोगे यार मैं उसको कॉल पे जाके ऐसा क्या बोलूंगा कि वो मुझे इंटरेस्टेडली 10-15 मिनट सोचे। तो तब आपको दिमाग में आएगा कि मेरे पास ऑफर होना चाहिए। तो ऑफर जो कि मैंने यहाँ पे बताया, ये जो था मैसेज, अगर लेट्स आप मार्केटिंग कर रहे हो, लेट्स आप कॉल पे किसी को जाके पिच भी कर रहे हो, तो आप वहां पे एक मैसेज आप आपको बोलना पड़ेगा, राइट। तो वो मैसेज ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर ये, जैसे मैंने ये एक बीच में एक ऑफर निकाला था, I help growth driven SBS with employees and personal office get 7 to 12 new life agents recruit every month without having generate, call, prospect, qualify, follow up agent leads for begging for referrals with our done for you agents on demand service। तो अगर आप ऑर्गेनिक मेथड जैसे मैंने बताया आप वैसे कर रहे हो, साथ में आप अपना मार्केटिंग मैसेज जो कॉल पे बताओगे, आपका ऑफर इस तरह का हो सकता है, राइट। जो मैंने ये करी है, जैसे आई हेल्प लेट्स से रियल एस्टेट ओनर्स या real estate brokers get like 30 to 40 or like 10 to 15 appointments, meetings or like site visits every month without them having to generate call or whatever। उनको जो चीजें पसंद नहीं है, जैसे कोर्स बेचने वाले को कोर्स लाइक उनको वेबिनार लेना अच्छा होता है, बट वो जो बाकी सारी चीजें उनके लिए ऑटोमेट अगर हो जाए तो वो चीजें जो उनको ना करनी पड़े और उनको पसंद नहीं है वो सारी चीजें विदाउट में डालो और विथ में आपका अट्रैक्टिव नेम जो आपका ऑफर है वो आप डालना। तो ये आपका मार्केटिंग मैसेज होगा, ठीक है। ये ऐसा मैंने बनाया। देन लाइक अगेन दिस आई हेल्प रिजल्ट दैट यू विल जनरेट इन स्पेसिफिक टाइम एंड टाइम इट विल टेक विदाउट ऑल द थिंग्स दैट दे हेट डूइंग और डोंट लाइक डूइंग विथ नेम ऑफ योर ऑफर। ये मैंने चीज करी। देन मैंने सिंपल जाके फेसबुक एड्स चलाया, राइट। तो मेरा एड भी ये बताता हूँ, यही था मेरा एड, मेरा 1 साल तक यही एड था, ठीक है। तो मैंने ये सेम चीज फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करी, वहां से क्लाइंट उठाया। जब मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, मोरल बूस्ट हुआ, थोड़े पैसे आए गवाने के लिए, तब जाके मैंने ऐड चलाई, ठीक है। और दिन में मैं 100 रुपया, इंडिया में आप चला रहे हो 100 रुपया 200 रुपया इज मोर देन इनफ, आप उसमें से 2 से 4 लीड आराम से निकाल लोगे, राइट। तो मैंने ये ऐड चलाई कि हे LIC so and so want to recruit more agents in your local area, increase your agent team right size in the same area। आप सेम चीज किसी भी नीश में, अगर नीश बाय नीश जा रहे हो, आप सेम चीज कर सकते हो। ज्यादा फैंसी, जैसे सौरभ जी, मैं आज 5 बजे से मैं वेबिनार देख रहा हूँ। सौरभ सर ने बोला है कि मल्टीपल टाइम्स आप ऐड चलाओ, आप सेल्स पे बात करो, लीड्स पे बात करो, लीड्स पे। एट द एंड ऑफ द डे वही चीज करनी है और मैंने भी वही करी है। तो आप देखो मैंने कुछ और फैंसी मेथड नहीं करा, ऐसे करके ये सेम ऐड मैंने 800 लीड मैंने जनरेट करी है। 800 लीड, आप मेरे को ज्यादा भी लीड कॉस्ट नहीं मिला। देखिए अगर आप देखो GST भी ऐड कर लो या 18% भी ऐड कर लो, वो 20 रुपीज गिरता है पर लीड। तो इसमें मैंने लाइक फर्स्ट ईयर में अराउंड 18-20 लाख का बिजनेस जनरेट करा फर्स्ट ईयर में, जो कि लाइक वो टाइम पे मतलब लाइक वो टाइम पे मैं 1500 रुपए का वेबसाइट भेजता था एक महीने के लिए। कंपेयर टू दैट लाइक 20 लाख जनरेटिंग 20 लाख का रेवेन्यू इन 1 ईयर इज फार बेटर। वो तभी पॉसिबल हुआ जैसे आज सौरभ सर बोल रहे हैं कि आपको लीड जनरेट करनी है, लीड्स पे बात करनी है। जैसे राहुल सर इज सेइंग कि लीड्स पे बात करो, सेल्स करो एंड हाउ सौरभ सर इज सेलिंग रन एड्स एंड जनरेट लीड्स। दोज आर द 2 थिंग्स यू नीड टू फिगर आउट। एक छोटा सा नीश पकड़ के, कोई भी आपको नीश से रिलेटेबिलिटी है, दैट्स इट, ठीक है। यही चीज मैंने करी है इसी से लाइक। और एक और चीज, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, आज भी हम इससे फायदा कर रहे हैं, आज भी सेम चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और ये चीजें कर करके, जैसे आज मैं सौरभ भटनागर के बिजनेस ग्रोथ, राहुल भटनागर एंड सौरभ भटनागर के बिजनेस ग्रोथ ग्रुप में हूँ, राइट। तो थिंग्स आर सिंपल, you don't overcomplicate, just don't focus about all those things, just focus what RBI and SBI are saying,
सेल्स एंड मार्केटिंग. सेल्स फिगर आउट कर लो, मार्केटिंग लीड जन का एक सिंपल फेसबुक लीड पे लीड जन एड चलाना सीख लो, मोर देन इनफ. एंड अगेन एंड हाईएस्ट क्लाइंट का हम अभी जो है 44,000 ईयरली बेच रहे हैं. तो हमने वेबिनार करना शुरू करा, 1 to many सेल्स पे फोकस करा. ठीक है, तो हमने फ्लेक्सी फनल मैंने खरीदी थी जब ये लॉन्च हुआ था. एंड आई एम अगेन ग्रेटफुल फॉर दैट बिकॉज आई नो वर्डप्रेस बट इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग. और लाइक उसमें वो सारी स्टार्टर मटेरियल नहीं मिलते, आपको बैठ के करना पड़ता है, एक स्क्रैच से बनाना पड़ता है. तो दैट इज नॉट फ्रेंडली. और इससे अच्छा ये कि उतना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा एक अच्छे टूल पे जैसे फ्लेक्सी फनल में इतना सारा रिसोर्स, इतना सारा कम्युनिटी एक ही जगह पे मिल गया. और लाइक इट इज अ मोरल बूस्ट. सो दिस इज हेल्पफुल. इतना अच्छा ब्यूटीफुल फनल जो है मैंने बनाया और मेरे टीममेट ने. इससे इस फनल से हम आज 44,000 रुपीज का जो टिकट प्राइस है सोल्यूशन इंस्टॉलेशन का, वो हम बेच पा रहे हैं वेबिनार के थ्रू. और हर वेबिनार पे हम लाइक 5 से 6 सेल कर रहे हैं. राइट. और या दिस इज लाइक सेम अगेन, जहां पे मैं लीड्स आती थी, लीड्स पे कॉल करके मैं बात करता था, उनको मैं आज वेबिनार पे लेकर आ रहा हूँ. 20-30 लोगों को वेबिनार पे लेकर आ रहा हूँ, 40-50 लोगों को वेबिनार पे लेकर आ रहा हूँ. उनको मैं पूरा ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उनको मैं लाइक एट द एंड पिच कर रहा हूँ. एंड बाद में हमारी टीम्स उनको कॉल करके, उनको सोल्यूशन देके, उनको 1-on-1 बात करके उनको क्लोज कर रही है. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. Still date I am not doing anything fancy. Still date I am just focusing on those two things that which Rahul Bhatnagar and Saurabh Bhatnagar are saying. One is saying about sales, one is saying about marketing. Those are the two things I am doing. वो हमारा थोड़ा फैंसी क्यों लग रहा है? क्योंकि फ्लेक्सी फनल का टोन आ गया, तो लैंडिंग पे थोड़ा ज्यादा अच्छा इंप्रूव हो गया प्रेजेंटेशन. अगेन आई एम सेइंग, देखो इंडिया में अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो किसी भी नीश में, ज्यादा पैसे नहीं लगने हैं. इट्स ओनली स्टॉपिंग यू इज कि आप शुरू करो. ठीक है, तो अगर आप जैसे देखो ये वेबिनार रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट जो है हमको लाइक 22 रुपीज में आ रही है, 25 रुपीज में आ रही है, 20 रुपीज में आ रही है. तो अगर इतने लीड्स आ रही है, आप लेट्स से इसमें से कितने आप यू कैन फिगर आउट, राइट. सो द ओनली थिंग इज implementation. So how I am getting my clients right now is like I run webinar ads. They go to landing page, they register, they come to webinar and the sales. So one different way to get, the first I showed about organic way, second I started lead gen, then अभी मैं webinar कर रहा हूँ. And another जो strategy हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है वो है referral. जब मैं शुरू करता था, जो 10-15 लीड्स आ रही थी ऑर्गेनिक ग्रुप्स में से, अगर लेट्स से उसमें से एक क्लाइंट भी क्लोज हो रहा है, भले ही उसने लाइक 500,000 रुपया 1,500 रुपया देकर की उसने शुरू करा है, उसको मेरे पे भरोसा ही नहीं है, फिर भी उसने शुरू करा है, फिर भी मैं उससे रेफरल मांग रहा था. राइट. तो आप अभी शुरू कर रहे हो, नहीं शुरू कर रहे हो, अगर आपका वो दोस्त भी है उससे भी रेफरल मांगो. ठीक है, पहले फेसबुक ग्रुप्स में पोस्ट करो, दूसरा सिंपल लीड जन ऐड चालू करो, अगर वेबिनार कर सकते हो करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर एक से रेफरल मांगो. ठीक है, अगर कोई भी रैपो है उसके साथ, अगर क्लाइंट है तो क्लाइंट तो देगा ही देगा रेफरल, अगर आपके नेटवर्क में भी कोई है उनसे भी रेफरल मांगो. दिस इज द अदर थिंग. एंड अगेन जो अभी एजेंट्स ऑन डिमांड जो सिस्टम लॉन्च कॉल होता है, जब हम पहला कोई भी क्लाइंट आता है, लास्ट स्लाइड हमारा यही होता है, रेफरल प्रोग्राम. ठीक है, so this is so these are the things that work out very well. आप बिगिनर लेवल पे हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो, एकदम एडवांस लेवल पे हो, every day and age, these are like timeless, these things work. And the things which Rahul and Saurabh are teaching are timeless things. सेल्स एंड मार्केटिंग आप कल 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो, 2 करोड़ रुपए कमा रहे हो, तब भी आपको ही फिगर आउट करनी है. तो इट्स बेटर यू फिगर आउट फ्रॉम द डे वन. So you start by going to that. This is how I went. Start by going to Facebook groups, post there, get some momentum, then run ads. 100-200 रुपया इन्वेस्ट करो, 500 रुपया इन्वेस्ट करो, generate some leads, ऑफर पे काम करो, like deal close करो, then come to agency. That's what I did. And getting started मंत्रा यही है, create a offer, like the way this is offer. I help like people in specific time without doing all these things with my offer. Right, create your offer, launch. देखो एक और चीज, अगर आप फेसबुक ग्रुप में कर रहे हो करो, आज हम भी कर रहे हैं, आज भी टिल डेट वी आर पोस्टिंग इन फेसबुक ग्रुप. टिल डेट 300 क्लाइंट है, आज भी हम कर रहे हैं. ठीक है, करो, हमेशा करो, क्योंकि लाइक पता नहीं एक क्लाइंट से कौन 3-4 क्लाइंट मिल जाए, कोई गारंटी नहीं, लाइक कब क्या होगा पता नहीं. तो
जैसे एसबी बोल रहा है, जैसे राहुल बोल रहा है, लीड जनरेट करो, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। 500 रुपया सोचो, 500,000 रुपया सोचो कि लाइक आपने 2-3 पिज्जा नहीं खाया, राइट, 2-3 बर्गर नहीं खाया, नो प्रॉब्लम, वो पैसा एड्स पे इन्वेस्ट करो, इंडिया में चलाओ, लीड जन करो, 60-100 लीड्स पे काम करो, दिन का 1-2 लीड पे काम करो, प्रैक्टिस करो, वर्क ऑन दोज लीड्स करो, ठीक है, क्लोज का इन करो, जब उनको फुलफिल करो, जब भले ही एक क्लाइंट भी क्लोज आए उनको रेफरल मांगो, ठीक है, और ये रिंस एंड रिपीट करो, कभी भी नेवर स्टॉप लीड जनरेशन फॉर योर बिजनेस, नेवर स्टॉप इन द सेलिंग मोड। ये 2 चीजें कभी मत करना, ये कभी मत बंद करना। एंड अगेन रिमेंबर, generating new leads for your business and selling and practicing and improving your sales skill with consistency will always beat everything. And yeah, that's it. Thank you. And yeah. Amazing, Rakesh. I loved your session and so many insightful learning. If I just want to summarize, simple ads. Rakesh, can you go back and show your slide once again? And I want to point out the ad जो आपने चलाया था. It was such a simple looking ad. I mean, one of the simplest of ads जो मैंने आज तक देखा होगा probably. लेकिन the point is that when you run ads and when you reach in front of the right people, जो कि it is so easy with the help of Facebook ads and Instagram ads and YouTube ads and Google ads. By the way, all the learnings are shared inside the timeline domination platform. You start generating so many results for yourself. ये ad इसका तब से चल रहा है. And today, like he said, he is selling 44,000 rupees ka done for you service. Every single webinar, he is selling to about 6 people, 5-6 people. So every single webinar, he is generating 2.5 or maybe 2 lakh rupees. And just again, simple ads. Sub number one, journey ki, that is like what he is doing right now. Journey की शुरुआत कैसे हुई? Content डाला niche वाले groups में. आप सबको पता है कि आपके निश के ग्रुप्स कहाँ पे अवेलेबल है, वहां पे जाओ, कंटेंट डालो, और सिर्फ वहां पे मत डालो, अपने सारे सोशल मीडिया पे डालो. लाइक आई हैव बीन रिपीटिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, वहां पे हर जगह पे कंटेंट डालो, सोशल मीडिया ग्रुप्स में कंटेंट डालो. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट्स. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट so many inquiries automatically. And then third, the last strategy that he shared, I totally loved it, and that was the client referral strategy. So that is something that he's the only one who has shared so far, and he's getting clients out of that. So maybe the people who are not ready to become his customer right now, वो अगर खुद नहीं बन रहे हैं तो वो किसी को लेके आ रहे हैं, those who can become his customers. So ultimately that is also giving him some results. I want to take a commitment from so many people sitting in this session right now, जिन्होंने आज तक अपना कभी कोई ad नहीं चलाया है. How many of you are going to start running your ads after watching this today's session? Give me a 1 in the chat box that you are going to start running your very first ad. All right. And the homework for you is that you need to run your very first ad. Okay. You need to run your very first ad before Saturday. Okay. Before the end of Saturday. Somebody is saying मेरे को नहीं आता है. आपके पास टाइमलाइन नॉमिनेशन, फ्लेक्सी फनल्स के अंदर टाइमलाइन नॉमिनेशन है, वहां पे आप जाओ, उसे पूरा देखो. फेसबुक एड्स का जो सेशन है वो कंप्लीटली मिला के उसमें अराउंड मेरे ख्याल से 30 करीब लेसन्स होंगे, एंड वो ओवरऑल मिला के मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे के होंगे. वॉच दैट एंड देन यू रन योर एड्स. एंड आई एम नॉट विशाल, इट्स नॉट 2-3 days. I am telling you Saturday. That's the deadline. Friday, Saturday. That's it. What ads to create? About your product, about your service, whatever it is. जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका सर्विस है, आप उसके रिगार्डिंग एड्स ला के डालोगे. Got it? Watch the lessons and then run the ads. Every single person who has come over here, Rakesh has come over here, and Dr. Sumitra थी, उन्होंने जिस दिन ad देखा, उन्होंने जिस दिन टाइमलाइन डोमिनेशन का फेसबुक एड वाला लेसन देखा, उसी दिन शाम को अपना ad चलाया. And that's how the journey got started. These simple looking ads, they are more than powerful. Again, we keep waiting for perfection, but that is not required. These ads are more than good enough. Right? But the most important thing is that you do it with the right strategy that is already shared inside the learnings with you. You go and watch it and implement it. And more importantly, just start. सबसे important चीज, niche based groups में content डालो, and then you start running these ads. You keep doing, automatically things will happen. I need 1 week to put ads. We don't give you the permission to do it after 1 week. If you want to be a part of this community, and if you want to, एक और चीज होती है, and that is that you need to blindly follow the mentor. And when I'm telling you that you need to run the ads by Saturday end, that means you need to run the ads by Saturday end. There is no, questioning about it. There is no doubt about it. There is a reason why I'm saying so. And
you need to do it before Saturday end. So you have 2 days, do it, mention in the Facebook group. Everybody. All right. All right. So thank you, Rakesh. Rakesh, quick update. अभी आपका कितना रेवेन्यू हो गया जब से आपने कम्युनिटी ज्वाइन करा है, फ्लेक्सी वगैरह ज्वाइन करा है? अभी जब से मैंने फ्लेक्सी फनल खरीदा लास्ट, तब से हमारा एवरेज जो मंथ हो रहा है, लाइक एवरेज सो अराउंड 2 lakhs to 2.5 lakhs हो रहा है एवरेज अक्टूबर से अभी तक. ठीक है. एंड राकेश, मेरे को एक बार अपना अपडेट्स शेयर करना आफ्टर द बिजनेस ग्रोथ टेलीग्राम में. ठीक है, लेट मी नो हाउ इज इट गोइंग. यस सर. चल ठीक है. ऑलराइट, थैंक यू. Okay, so next we have Musharraf. Musharraf, you can open your camera. Hello sir, how Hi. are you? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ यार. How are you? I'm also good sir. Happy to see you. Good to see you. मैं भी सर बहुत देर से वेट कर रहा था कि कब मेरा नंबर आएगा, एंड मतलब काफी देर से वेट कर रहा था. अभी बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली अभी मैं लाइव हूँ. सो इट्स वेरी लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली. नहीं, अपॉर्चुनिटी मिली है क्योंकि आपने एफर्ट्स डाले हैं, आपने रिजल्ट लेके आए हैं, एंड यू आर एन एक्शन टेकर, एंड यू आर अ वेरी क्विक एक्शन टेकर. ये एक ऐसी चीज है जो मैंने आपके अंदर देखी है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, एंड दैट इज समथिंग दैट आई टोटली लव अबाउट यू. एंड yes, I would love to hear from you all the things that you are doing. Okay, so let's start. So सबसे पहले I run social media marketing agency named Dynamic Growth Agency, and I provide mostly Facebook ads, sales funnel, and business automation services. So like in the last 2 years, I have worked with more than 21 clients, and I have been a part of a Funnel Growth Summit as a VIP, and I also been a part of Saurabh's team for the you can say event work. So till this point, like I have worked with lots of clients in different niches, like whether it's e-commerce, coaching, and consultant, then real estate, then and some other niches also. So yeah, now let's move and talk about the very first client that I got. So जो मेरा सबसे पहला client था, so first of all, like ये मुझे मिला था by putting that post कि I am providing a free services, and it is only for the first 5 people or the first few clients, and then I will not provide this. So वो मेरा post था, and I posted it in the e-commerce group, and वहां से मुझे मेरा first client. And उसके बाद वो बंदा जो भी मेरा prospect था वो मैसेंजर पे कनेक्ट होता है, and whatever queries, whatever problems he was having in his ads manager, in his ads, so I helped him. मैंने उसको help किया, and then we got over a call, and then finally he was closed. But now here is something that I want to add. कि when you are posting, then do not share that you are providing free services, because मैंने ये चीज प्रॉब्लम फेस की कि जब when I say that I'm providing free services, then ऐसे लोग भी आ जा रहे थे जो कि like they are broke, but because वो free services देख के वो आ जा रहे हैं and they don't have the budget. And जब when you are getting started, even though you don't have the results, so do not say you are providing free services. What you can say, I will give the 100% money back guarantee if you don't get the results, or I will work for free for the next month also if you don't get the results. Or you can say if you don't get the results, don't pay me. So you can use these terms, but do not say free word, because I've seen that lots of I got first couple of clients, but they were not like have the budget, and after certain point of time they had all the control. Like when they felt like to stop the ads, so they stopped it. So मैं I was helpless. So I would suggest you कि आप पैसे लो and charge less, it doesn't matter. But initially you give 100% money back guarantee, but try to work with selected people from the day one itself, because तभी आप ज़्यादा अच्छे से qualified लोगों के साथ काम कर पाओगे, and it also becomes easy to bring the results to those people who are qualified and who have the budget. So एक template भी मैंने आपके लिए बनाया है, so you can take a screenshot if you want. So you can use this if you are getting started. So this is what you can do initially. And now let me share with you my first paid client that I got, like जिसने मुझे अच्छा पैसे दिया and with the good budget. So it was from the network, and this network was from the group.
So I have been very active with my content in the group, and I have been very active in the like in the last few months. I'm a little bit inactive, but initially from the very beginning, I try to be one of the person who shares everything, whatever I have learned, whatever things I tested, I just try to share everything. So वहां से अच्छी authority बनती है, and like initially मेरे पास results भी नहीं थे, but just because of the learning and the network जो मुझे अलग अलग ग्रुप्स में ऐड होने की वजह से मिला, and by putting out the content मुझे मेरा फर्स्ट पेड क्लाइंट मिला, एंड यूएस का था. सो बजट भी अच्छा था, लाइक $300 to $500 भी था. लाइक इनिशियली इट्स गुड. देन उसके लिए मैंने एड्स रन किया. आई जनरेटेड 50 क्वालिफाइड लीड्स विद इन जस्ट 10 days स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. सो ये मेरे लिए सबसे अच्छा प्रोजेक्ट था. मतलब इनिशियली फर्स्ट पेड क्लाइंट बना, और यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला. एंड वन मोर थिंग, कि आप लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इनिशियली हमारे पास रिजल्ट्स नहीं है तो हम अच्छे प्रोजेक्ट्स कैसे क्लोज करें. देन यू शुड सेल द नॉलेज, यू शुड एजुकेट द प्रोस्पेक्ट. जब आप उसको प्रोसेस बताते हो, अपना एक्शन प्लान बताते हो कि आप कैसे उसके लिए रिजल्ट्स लेके आओगे, द प्रोसेस इटसेल्फ वो इतना कुछ बता देता है कि क्लाइंट्स डज नॉट इवन वांट टू सी द रिजल्ट्स. मैंने इवन टिल दिस पॉइंट बहुत सारे ऐसे क्लाइंट में क्लोज करता हूँ जिनको मैं रिजल्ट भी नहीं दिखाता हूँ. I just close them just because of the knowledge. I show them how I will bring the results. I show them the action plan, and they are convinced that okay, I can help them. तो मैं आगे भी share करूँगा. But this is what you can do when you're first getting started. Show them the action plan, show them the results, and have that faith on your knowledge that you can do it. So आप starting में ऐसे कर सकते हो, and also put out the content. Okay. Now, the very first thing is the content, and the second thing that brought me the results is the network. Now let me show you another example. So this was the client, and it's also one of my highest ticket client, you can say, in US. So it was closed because of the recommendation. तो जो networks थे, जो लोग मुझे जानते थे because of my content, so one of that person जो मेरा friend भी है अभी, उसने recommend किया in the ClickFunnels when this guy was searching for an ad expert. So इसको मैंने close किया for $1,000 ad service for just 2 weeks. It was not even for a month. It was just for 2 weeks. And if he liked the services, then I quoted like $2,000 per month. So this is what I did, and how it was possible because of the network and because of putting out the value. See, आप जब ये सारी चीजें आपस में linked है, जब आप content डालते हो तब भी लोग आपसे network बनाते हैं, and when you directly communicate with the people and provide value, then also people connect with you and they recommend you. So, and also please make sure you give value to all the people. If someone asks you something and you are expert at something, just give and give, because you don't know from where he will recommend someone and you will get the opportunity. So this is how I got benefited from the content that I put out, and from the help that I did for other people who were stuck in their journey regarding ads. So this was one of the highest client. So it was one of the best project. Then the other, you can say, my latest project, that latest client. So now, as I mentioned कि अभी पहले मैंने बताया कि एक तो content से मुझे अच्छे clients आते हैं, second network, and third अभी जो मैंने start किया है, it is about ads. तो अभी ads से मुझे क्या हुआ, I spent like 8 to 10,000, and I got like first client that is paying me 30,000. So अभी मैंने थोड़ा सा कम charge किया, but the interesting part is इनका ad budget बहुत अच्छा है. They are spending 20,000 per day ad spend. So it's like 8 to 10 lakhs almost per month. So I'm getting this opportunity to work with such an amazing project जहाँ पे मेरे पास budget का issue नहीं है, and I'm free to test lots of things. And they have already spent more than 38 lakhs almost, and within this ad account itself. So it shows कि मतलब कितने अच्छे client मुझे मिले, and I'm sure definitely I can retain them, because it's the second week and I've already given them like results have started coming in. So उनकी जो भी problem थी मैंने sort out किया. Now just see that मैंने results पे hardly 10, even 15,000 पे अगर मैंने spend किया, and I got one client, and who can retain for, let's say, for bare minimum 3 months. Then also I'm getting like more than 3 to 5x ROI. So but I would recommend, once you have the results, once you are confident with your offer, once you know, okay, this is what I have to offer, then ads perform pretty well. You can even test it in the initial days also if you have the budget. And now, what was the funnel? So the funnel was the webinar funnel.
Now, how I closed the client to the webinar funnel. So the very first thing that I did was I brought the people in the webinar. Then I gave them so much value that they were convinced that I have so much value that I can help them with lowering their lead cost. I can help them fixing their Facebook ads problems. I can help them make high quality leads, because this is what I was sharing. So at the end, the client was so much convinced that he dropped his number to get over a call, and we booked a meeting, and it was closed. And also, my quotation was also high, but for the very first month, I just said for 30,000, so that he should be in the funnel. And once I have shown him the results, I'm sure I can definitely charge him way more than that, because I know the value I can give. So ये एक चीज है कि आप ads भी start कर सकते हो in the initial days. If you have the budget, if you have the learning, you can definitely start with the ads. बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि मना करते हैं, like you should not go with the ads, but it's, you can say, a myth. If you have the knowledge, if you have the budget, you can definitely go with it. Just be confident with your value. Then now, let me share with you my different client story. So ये जो client है, ये मुझे मिला. First of all, ये जो client है, इन्होंने in the last 40 days he has already paid me ₹1 lakh. And ये मुझे Instagram search करके मेरे पास आए. Like he searched on Instagram, Facebook ad expert, and he saw my profile. He visited my profile, and from the link in the bio, he booked a call. So I did nothing, honestly. The content that was there on the Instagram, the value that was there on Instagram, he was quite convinced with that value that he booked a call. And you can see this, how qualified he was. He was already making like more than almost 10 lakh, and he had like so much clients for him also that he wanted to outsource, and he wanted me to run his ads also, and uske client ka bhi also, because ye tha fitness coach. So ye services bhi de rahe the to their clients for ads and funnel. So now he outsourced me that also. He matlab unka bhi ads I am managing, ads and funnel, and unke client ka bhi I am managing. So like, just because of the content jo maine, like I have like left it for like more than 3-2 months. मैंने like in the last 3 to 4 months I am not very active, but still I got that results, and it made me 1 lakh doing literally nothing, no follow up, nothing. He just booked a call, we get over a meeting, deal closed. And also in the initial days, like one thing I would suggest, we should definitely charge high. But if you know that if any client can give me more value in the longer run, then there is no harm in charging a bit less in the initial days. Just like for him, मैंने इनको 20,000 कोट किया, but I knew कि ये मेरे बाकी client भी outsource करेंगे, and that happened. उन्होंने 61,000 मुझे बाकी client के outsource work के लिए भी दिया. So collectively, it's the second month that are running. So collectively, I have made like 1 lakh with just one client, and in just 40 days. So this is what I would suggest: give value. And the initial days, if you know that the client has the potential and he can be your long-term client, then there is no harm in charging a bit less in the first month, and you can definitely charge high on the basis of the results, because clients know कि अच्छा तुमने results लाके दिया, you have brought them the results, so they are sure कि okay, this guy can help me further. So this is what you can do, and it was really amazing experience when you get the meetings booked without doing anything, and that's also they are paying you like high ticket, like they are paying you enough, like it's very amazing feeling. So far मैंने अभी 3 चीजों के बारे में बात किया. अगर मैं समराइज करूं, the very first thing is content. Always stick with the content, and कैसा content आपको बनाना है. The very first thing, it should be specific and experiential. अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग talk about generic knowledge, like benefits of running ads and these things. Like, do not talk about generic thing. Talk about specific experiential thing. आपने कोई चीज implement किया, let's say आपने एक campaign चलाया, उसमें आपने क्या observe किया, क्या सीखा, like document that and make a long form content. आप वो पोस्ट करो, and definitely people will see you as an expert. एंड मैं आपको एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ. लाइक जब मैं इवेंट में गया था, सो ऐसे बहुत सारे लोग डायमंड में भी थे, वीआईपी में भी थे. दे न्यू मी, मैं उनको नहीं जानता था, बट दे ऑलरेडी नो मी. वो मुझे बोल रहे थे कि आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने तुम्हें कहीं देखा है. एंड दैट वाज काइंड ऑफ अ वेरी गुड कनेक्शन, क्योंकि वो पहले से ही मुझे जानते. सो इट मेड, तो वो मेरे लिए आसान हो गया टू टॉक विद देम, एंड लाइक इट वाज इजी टू बिल्ड कनेक्शन विद देम. So if they recognize my face, so that was really amazing. कि बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, they are doing amazing. They are making like amazing, money. Like they are
building 7 to 8 figure income, and they know me. So it was really amazing. So content is the very first thing that you should definitely do on the regular basis. It doesn't mean कि आप हर दिन डालो, but when you have something different, when you have something that you have tried, you should definitely post. And second thing is building network. So network आप कैसे बनाओगे? First of all, मीट विद द पीपल जो आपके ऑपोजिट स्किल सेट रखते हो. जैसे अगर इफ आई एम एड्स एक्सपर्ट, सो आई विल मेक श्योर कि मेरे साथ मेरे ऐसे लोग के साथ नेटवर्क हो जो लैंडिंग पेज डिजाइनर है, या जिनको आउटसोर्स करना होगा लेटर, सूनर और लेटर एड्स, या फिर अगर आप लैंडिंग पेज डिजाइनर हो तो आप एड्स वाले के साथ अपना वो टाई अप करो, सो दैट उसके जो आउटसोर्स वर्क हो वो आपको मिले. सिमिलरली अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, देन आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट वाले के साथ टाई अप कर सकते हो. सो इस तरीके से आप अपने ऑपोजिट स्किल सेट वालों के साथ नेटवर्क्स बनाओ, एंड डेफिनेटली इट वर्क्स. सूनर और लेटर आपके जितने नेटवर्क्स बढ़ते जाएंगे, देयर विल बी अ टाइम जब आप इवन यू आर, इफ यू आर नॉट डूइंग द रीच आउट, यू विल गेट द क्लाइंट्स एवरी मंथ. सो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है. एंड ऑल्सो never hesitate to provide free value. अगर कोई बंदा आपसे पूछ रहे, give them the free value. So recently ऐसा हुआ मेरे साथ. I gave a person a free value, you can say 30-minute consultation call, and he recommended some e-commerce guy. So उनका budget, like they were already making more than 20 lakhs revenue. So उनका मुझे recommendation मिला, and like he was quite convinced with the value that I was giving. So ये भी होता है. I never expected this, but just because of giving value and just because of the network, I got the opportunity to even connect with those people who are like already making more than 20 lakhs, and they are quite interested to run ads with me. So ये आपको एक ध्यान रखना है. The third is running ads. See, initially there is a lots of myths की ad budget चाहिए, page चाहिए, and everything. Start with whatever you have. Just like अभी जो हमारे पहले के भी आए थे, उन्होंने भी बताया कि ads run करो. So you should run ads, and it's a number game. कि अगर आप लेट से आपको 1000 लीड में से 1-2 भी कन्वर्ट हो गया, या मान लो कोई भी कन्वर्ट हो गया, यू आर स्टिल गेटिंग समथिंग. सो इंस्टेड ऑफ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है दैट दे क्विट जब उनको क्लाइंट्स नहीं मिलते. सो व्हाई नॉट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, कि कुछ तो आपके लिए वर्क करेगा. सो यू कैन स्टार्ट विद द एड्स इवन इन द स्टार्टिंग ऑल्सो. सो ये जो चीजें हैं अभी तक मेरी, ये सारी चीजें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस करी, एंड मोस्टली मेरे लिए जो 3 चीजें वर्क करती है वो मैंने शेयर किया है. And then thank you to all the attendees जो यहाँ तक अब मुझे सुन रहे हैं, and heartfelt gratitude to Saurabh and Rahul sir illuminating my path to success, because उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता. So far, like I'm working with such a great client, such a great projects, and people are recognizing me because of the content, because of the value that I'm putting out. So it's a very amazing feeling to me. And also the last thing, remember, consistency beats everything. So keep working hard. Musharraf, I loved your session here, and you shared a lot of things, made a lot of detailed notes. You shared the screenshot, you shared everything that you could in terms of learning, in terms of sharing the content, in terms of sharing your exact templates. I mean, if people see this, they implement this, they are going to make money. That's like plain and simple. And these are the exact things that you are doing, and these are the exact things that I'm doing to generate our revenue. And that is what it is. The most important thing is, once again, to get started, implement the learnings, and be consistent. आपने बीच में एक चीज ये बोली थी कि मैंने कुछ भी नहीं करा और मेरे पे रेवेन्यू आ गया पिछले 40-50 दिन में. The reality is that हम लोग इतना सब कुछ करते रहते हैं throughout our journey कि over a period of time we don't even realize we have done so much that generating revenue, it becomes so hard not to generate revenue. I mean, you can do so bad and still you will be generating a lot of revenue. That is how, that's where the game goes into when you are consistent. And when you are consistent and when you are using the right strategies. And I'm happy that you are an action taker. I remember तेरा वो वीडियो भी मैंने देखा था. You took the VIP seat in FGS. उस समय आपका इतना अच्छा रेवेन्यू भी नहीं हो रखा था, लेकिन उस समय भी आपने VIP सीट लिया. आपने वो वीडियो भी डाला था in which your hands were shaking before taking the VIP seat, but you invested. So again, these are some of the traits of a person who is going to win in the future, because that person is not afraid
and that person is willing to invest upon himself, that person is taking actions, that person is doing everything जो कि उसे पता है. Because a lot of people, they keep waiting for that secret sauce कि कुछ नया मिलेगा, but the reality is the secret sauce is आपको जो पता है पहले उसे implement करो, and you keep doing it. जो पहला step आपको पता है, you just do it, and the rest of the things they will keep keep taking care of themselves, and that's what I have seen in you. You keep doing it, and keep making us proud automatically. And so one last thing I want to add कि जैसे मैंने event से आया and जो उससे पहले भी I was running ads, so just by adding the pictures of the event मेरा lead cost वो literally आप कह सकते हो 4 to 5 times कम हो गया, because people were trusting me and the lead cost was quite down. I did not change anything just because of the pictures and just because of the आपके साथ पिक्चर किया and with other VIPs. So वो एक काफी मतलब game changing रहा मेरे लिए. And also like जो भी अब मेरी प्रोफाइल पे जाते थे, trust me more, like they would prefer me over other person if they don't know them, but just because of the experience that I got, just because of the pictures that I got, I'm like literally every time my authority is like up to the mark. Like nobody can ask me, nobody can question that if I'm, maybe they do not even think twice कि ये बंदा genuine है कि, so they trust me up to that level. So वो चीज मेरे लिए बहुत work करी, and I will recommend others also कि you should invest, you should, like it's a risky, definitely initially डर लगता है, but it's worth it. अभी मेरा लीड कॉस्ट कम हो जाता है. क्या रिस्की है? अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना. अगर किसी को रिस्की लगता है देन मत करो काम यार. मतलब खुद के ऊपर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे. अगर मैं खुद अपने ऊपर नहीं इन्वेस्ट करना चाहूंगा और मैं ये सोचूंगा कि दूसरा बंदा, सामने वाला बंदा मेरे ऊपर इन्वेस्ट करेगा, तो आई एम लाइक लिटरली फूलिश. अगर मैं चाहता हूं कि सामने वाला कस्टमर मेरे को पैसे दे, अगर मैं चाहता हूं कि सामने वाला क्लाइंट मेरे को पैसे दे, सबसे पहले मैं खुद के ऊपर, खुद की लर्निंग के ऊपर तो इन्वेस्टमेंट करूंगा ना यार, खुद की ग्रोथ के ऊपर तो इन्वेस्टमेंट करूंगा. इट इज नॉट एट ऑल रिस्की. द बिगेस्ट रिस्क इज व्हेन यू आर नॉट इन्वेस्टिंग अपॉन योरसेल्फ. द बिगेस्ट रिस्क इज व्हेन यू आर नॉट अपग्रेडिंग योरसेल्फ. I don't want to brag, but maybe a little bit. हमने आपको बोला था आप इवेंट में आओ, वीआईपी सीट लो, आपके पास अच्छी फोटोग्राफ्स आएंगी, आपको आपके काम में हेल्प मिलेगी. आपने वो चीज करी, आप आए, आपने वीआईपी सीट ली, आपने सारे स्पीकर का फोटोग्राफ खिंचाई, आपके काम में आपको हेल्प मिली है. दैट वाज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसकी वजह से आपको लाइफ टाइम तक उसका रिटर्न मिलेगा. If again, like I said, not to brag, but again, हमने जितनी भी चीजें लोगों के साथ शेयर करी है, अगर वो आंख बंद करके अपना दिमाग लगाए बिना सिर्फ वो चीजें भी इंप्लीमेंट कर लेना, that's it, nothing else, they will see a far better change, and then you can start experimenting. But the point is that just again, follow the process, trust the process, follow the mentors, do it blindly, and then you are going to see the impact. That's what I can ask people to do. And anyways, the last word I would say कि follow your mentors blindly, like they know what they are saying. Even मैं भी कई बार मेरे दिमाग में आता है, कभी कोर्स लॉन्च कर लेते हैं, कभी कुछ और कर लेते हैं, but then Rahul sir, Saurabh sir say stick with one thing. So फिर वहां से मैं फिर back on the track कि नहीं, अभी इस पे ध्यान दें. So always listen. Do not make this mistake of trying to do two different things at the same time. अभी a lot of time people see short money making opportunities. For example, मेरा कोई कंटेंट अच्छा चला गया, आज आपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी, 10 लोग कल आपको मैसेज करेंगे कि यार मेरे को भी सिखा दो, एंड देन मुशर्रफ के दिमाग में एकदम से आइडिया आएगा, यार मैं क्यों ना एक कोर्स बना के दे दूं, 10 लोग बाय कर लेंगे. 10 लोग बाय करेंगे भी, लेकिन जो काम आपने पहले से स्टार्ट करा हुआ है उसका मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा, एंड देन फिर आप ना यहाँ पे काम कर पाओगे ना यहाँ पे काम कर पाओगे. People always get stuck because of the short-term money-making mindset. But you need to start with one thing and you keep doing it. That's where you get the long-term results. Yes, sir, and definitely. And matlab, this is why like I just follow you and Rahul sir. Where like I don't think twice after. अगर आपने मना कर दिया, that's it. So I think वही मुझे अभी तक work कर रहा है, and that helped me a lot. And definitely I will achieve more, and I will make sure कि मैं next time award लेके आऊँ event में, because I am dedicated to achieve that. नहीं, I'm 100% sure about that. ठीक है मुशर्रफ, we will have to cut it because other people are waiting. So thank you so much. Welcome. Right, Anand, you are there, right? Yes sir, I'm here. Okay, good to see you. Thank you sir. कैसे हो आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, तू कैसा है? बस मैं भी बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. How was the wedding?
बहुत बढ़िया था सर, काफी अच्छे से निकल गया। काफी अच्छे से निकल गया। द बेस्ट पार्ट इज दैट यू वर सो आनंद की सिस्टर की वेडिंग थी एंड ही शेयर्ड इन द फेसबुक ग्रुप दैट ही वाज एबल टू टेक केयर ऑफ not sure complete expenses या फिर a lot of expenses of his sister's wedding, and I was so happy to see that ऑलमोस्ट in the मेजोरिटी ऑफ द पार्ट। majority of the expenses. I was so happy to see that in the group. हाँ जी आनंद। एंड सर एक्चुअली क्या था कि जो मेरा काम करने का एक्चुअल मोटिवेशन ही था, वही एक गोल था जो जिसकी वजह से मैं कर रहा था। सो आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी कि वो कर पाए। सो अभी आप बहुत सही चीजें ओके, करोगे। तो बिल्कुल। सो आई कीप इट रियली क्विक। मैं शेयर करता हूँ अपनी पीपीटी। So as you guys have already know, my name is आनंद प्रजापति। मैं फेसबुक एड्स एंड फनल स्पेशलिस्ट हूँ। कोचेस के लिए हम लोग काम करते हैं। एंड रियल क्विक अबाउट मी, जो मेरा पहला क्लाइंट था वो फाइवर पे मिला। मैंने टीडी जून या जुलाई में आई थिंक ज्वाइन करा था। तो वहाँ से मैं फेसबुक एड्स लर्न करता था एंड फनल्स वगैरह के बारे में प्रैक्टिस करता था, क्योंकि राहुल सर को, सौरभ सर को मैंने देखा हुआ था वहाँ पे यूट्यूब पे एंड बहुत सी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं वो कंटेंट मार्केटिंग था, उसके थ्रू अट्रैक्ट हुआ एंड देन आई गॉट टू नो लॉट मोर थिंग्स अबाउट दैम। तो उसके बाद मैंने कम्युनिकेशन मास्टर पहले ज्वाइन किया, फिर एसमी सर के बारे में पता चला। तो वहाँ पे मैं टीडी में जब ज्वाइन हुआ तो फेसबुक एड्स एंड फनल्स की प्रैक्टिस कर रहा था। तो जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो सबसे बड़ा एक जो चैलेंज आता था कि प्रोडक्ट नहीं था अपने पास। तो मैंने क्या किया कि मेरे को उससे पहले मैं यूट्यूब एंड ब्लॉगिंग्स वगैरह कुछ करता था, तो वेबसाइट बनाना मेरे को आता था। तो वर्डप्रेस पे कुछ प्लगइन्स वगैरह होते हैं, तो मैंने क्या करा कि उनका एक बंडल सा बना लिया वहाँ पे एंड उन्हीं प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा था टू गेट सम आइडियाज कि कैसे वर्क करते हैं, क्या करते हैं। तो वहाँ पे मेरे को लॉस हुआ 8 साढ़े 8 हज़ार के आसपास। तो मैंने वहाँ फेसबुक एड्स में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करे। तो उस टाइम में जॉब करता था, जो भी अर्निंग होती थी वहां से चीजें इन्वेस्ट करता था थोड़ी बहुत। वहां पे लॉस हुआ, बट एक चीज क्या है कि मैं सीख गया कि एटलीस्ट फेसबुक एड्स पे काम कैसे करते हैं, फेसबुक एड्स काम करता है, वो सारी चीजें कैसे। तो जो क्लाइंट गेटिंग वाला मॉड्यूल था उसमें हिमांशु सर वाला भी सेशन था, आपका वाला भी सेशन था। सो वहां पे मैंने जब ये सारी चीजें सीखी तो मैं रीच आउट कर रहा था हर जगह, क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि कहाँ पे कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए वर्क करेगा। तो जैसा कि लाइक आप हमेशा बोलते हैं सर, क्योंकि लाइक शुरू में आप फिगर आउट नहीं कर सकते, तो जस्ट कीप टेकिंग द इम्परफेक्ट एक्शन। तो मैंने क्या किया, अपवर्क पे फ्रीलांसर और फाइवर जितने प्लेटफॉर्म से थे उन सब पे अपने अपना पोर्टफोलियो वगैरह बना लिया वहाँ पे, लिंक्डइन, फेसबुक, हर जगह पे मैं क्लाइंट को देखता था कहाँ पे उनको रीच आउट कर सकता हूँ, पोर्टफोलियो हर जगह बना रखे थे। तो इस तरह से मेरा पहला क्लाइंट मेरे को फाइवर पे मिला वहाँ पे। एंड जो उस क्या कहते हैं, जो मेरा एक क्लाइंट है जो कि कोच क्लाइंट है, जिसकी वजह से अब मैं एक निश फिगर आउट कर पाया, उसके बारे में मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ। तो जो मेरा पहला क्लाइंट था वो फाइबर पे मिले। वो $30 का क्लाइंट था मेरे पास। बट उस क्या कहते हैं कि मेरे को क्लिक फनल के अकाउंट में उनके उनके फनल में थोड़ा सा कुछ चेंज करना था। तो वो मैंने फाइबर पे डाल रखा था अपना प्रोफाइल, तो वहां से मेरे को पहला क्लाइंट मिला। बट ये जो $30 की हैप्पीनेस थी ना, शायद आज जो हाई टिकट क्लाइंट भी क्लोज करते हैं तो वो हैप्पीनेस नहीं होती है। मैं रात भर सोया नहीं था, सिर्फ ये $30 वाला जो क्लाइंट था। तो उसके बाद नेक्स्ट क्लाइंट जो वहाँ पे मेरे को मिला वो भी फाइबर से ही मिला था। तो मैंने यहाँ पे ये कन्वर्जेशन रखे, क्योंकि क्या था कि उस टाइम पे भी कुछ रिजल्ट्स वगैरह नहीं थे। तो वहाँ पे जो चीजें मैंने क्लाइंट ने जब मेरे को अप्रोच किया तो उनके वेबसाइट में, उनके बिजनेस में मैंने देखा तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो आए थे कि उनको सिर्फ फेसबुक एड्स रन करना है, लीड जनरेट करना है। बट मेरे को दिखा कि वहाँ पे उनके बिजनेस में फनल लैक कर रहा है, फनल नहीं है उनके पास, एक लीड जनरेशन प्रॉपर सिस्टम नहीं है, एक वेबसाइट था। तो फनल के बारे में सीख गया था, तो वो चीजें मैंने रिकमेंड करा। तो वो सिर्फ फेसबुक ऐड के लिए आए थे, तो मैंने उनको ये लैंडिंग पेज की भी सर्विस सेल करी। वो $200 का मेरा क्लाइंट था। एंड उसके बाद फिर फेसबुक ऐड का भी इनको सर्विस हम लोग ऑफर किया। जो नेक्स्ट चीज है माय हाईएस्ट टिकट क्लाइंट स्टोरी। अभी जो मेरे रीसेंट क्लाइंट है उनको हमने क्लोज किया। तो बेसिकली कोचेस के लिए हम पूरा सिस्टम तैयार करते हैं, लाइक उनके फनल से बिल्ड करना, ऑफर में कुछ हेल्प चाहिए तो जो ईमेल मार्केटिंग या फिर जो जितने भी रिमाइंडर्स वगैरह जाते हैं, अगर वो वेबिनार कर रहे हैं या फिर कॉल बुकिंग फनल वो चला रहे हैं, तो एवरीथिंग वी मैनेज बैकएंड में, सारी चीजें हम उनको करके देते हैं। एंड उसके अलावा एड्स भी उनके लिए मैनेज करते हैं।
तो ये जो मेरे रिसेंट क्लाइंट है, हमने उनको क्लोज किया था। एंड अभी जो मेरा करंट प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम लोग अभी, क्योंकि पहले क्या था कि रीच आउट करते थे, क्योंकि उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था, तो ऑर्गेनिकली रीच आउट करते थे, कुछ कंटेंट पोस्ट करता था तो वहां से लीड्स आती थी। एंड इनफैक्ट अभी भी क्या है कि हम काम कर रहे हैं, कंटेंट बीच बीच में कभी कभी अपडेट करते हैं, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, तो वो एक विजिबिलिटी बनी रहती है और वहां से भी अभी भी इनबाउंड लीड्स आती है। और बट जो मेन प्रोसेस है, मैंने एक फ्लेक्सी फनल पे एक सिंपल सा फनल बना रखा है, कॉल बुकिंग फनल। मैंने एक सिंपल से सेल्स पेज बना रखा है जहाँ पे मैं बता रहा हूँ अपने सर्विसेज के बारे में। एंड देन वहां से मैंने सारे रिजल्ट्स वगैरह वहाँ पे शेयर कर रखे हैं, तो क्लाइंट आते हैं, देखते हैं, एंड देन उसके बाद वो वहां से कन्विंस होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो लोग आते हैं तो आप जिनको जेनुअनली चाहिए होता है वो सर्विस, तो वहां से वो कॉल बुक करते हैं हमारे साथ, एंड देन कॉल पे उन क्लाइंट्स को क्लोज करते हैं। तो ये एक फनल हमने बिल्ड कर रखा है। इस पे एड्स भी चलाते हैं एंड ऑर्गेनिकली भी इंस्टाग्राम से या फेसबुक से लीड आ रहा होता है। एंड अभी जो रिसेंट ये क्लाइंट क्लोज करा हुआ था, इनको भी बिल्कुल एड्स के थ्रू ही एड चलाया था, वहां से उन्होंने कॉल बुक किया, एंड देन वहां पे हमने उनको क्लोज किया था। एंड एक जो स्टोरी है जो मैंने अभी बताया कि जो मेरे टॉप क्लाइंट है, जो पहले कोचिंग क्लाइंट मेरे को मिले थे, जिसकी वजह से मैं फिगर आउट कर पाया, क्योंकि मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगता था कि राहुल सर, सौरभ सर पहले बताते थे वेबिनार्स के बारे में एंड सारे नंबर्स वगैरह, तो वो चीज मेरे को प्रैक्टिकली करना था। तो फिर क्या हुआ कि एक क्लाइंट मेरे को राहुल वीआईपी कम्युनिटी में ही, वो राइजन साइंस से आए हुए थे, तो सर ने उनको पूरा प्लान दे रखा था वेबिनार का, उनको वेबिनार करना था। बट वहां पे फिर क्या हुआ कि उस टाइम क्वारंटाइन का टाइम चल रहा था, 2000 फेज 2 था, तो लॉकडाउन वगैरह सब कुछ लग गया था उनके सिटी में, तो उस टाइम पे उनके पास नेटवर्क का भी कनेक्टिविटी नहीं था। एंड लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों का इशू उनको हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि यार मुझे नहीं लग रहा है मैं वेबिनार कर पाऊंगा। तो उनको इनिशियली 30,000 पर मंथ पे क्लोज करा था, अब और वो कंसिस्टेंटली जाएगा, बट ये चीजें प्रॉब्लम उनको आने लगी, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि यार अभी स्टॉप करते हैं, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कैसे होगा। तो थोड़ा सा एक वो डिमोटिवेशन वाले जोन में चले गए। तो मैंने क्या करा कि ये चीज उनको मैंने बना के भेजा था कि देखो आप उन क्या, क्योंकि उन्होंने एक लीड मैग्नेट बना रखा था जहाँ पे एक सीरीज ऑफ वीडियोस उनके पास था, तो मैंने वहां पे उनको ये चीज भेजा एंड देन कॉल पे लेके एक्सप्लेन करा कि आपको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि अब एक चीज वर्क नहीं कर रही है तो हम उसको लेके बैठेंगे नहीं, एक डिफरेंट वे ट्राई करते हैं। तो वहाँ पे हम वो वीडियो सीरीज जो उन्होंने बना रखा था, मैंने देखा भी था, तो वो काफी वैल्यूएबल था, तो मैंने कहा इसको एज ए लीड मैग्नेट यूज करते हैं, बाकी बैकएंड में पूरा सेल्स सिस्टम मैं तैयार करके दूंगा, और ये सिस्टम वर्क करता तभी आप मेरे को पे करना, अदरवाइज आप वैसे भी एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, जो करने वाले थे, तो एड्स वगैरह चलाने ही वाले थे। एंड आई एम सो हैप्पी टू से कि ये वाला फनल अभी भी वर्क करता है, अपार्ट फ्रॉम जो हम वेबिनार्स रन करवाते हैं एंड जो कॉल्स करवाते हैं, एवरीथिंग, दिस फनल अलोन ब्रिंग्स अस 15 से 20 हजार का रेवेन्यू डेली उनको उनको करके दे रहा होता है। एंड वो चीज बढ़ते गया, क्योंकि जब स्टार्ट किया था एक दो सेल आती थी, बाद में प्राइस भी रीच करा, तो एटलीस्ट मतलब खराब से खराब दिन में भी 15 से 20 हजार का रेवेन्यू उनको करके दे रहा होता है। सो लाइक दिस वाज जस्ट क्विक अबाउट मी, जो क्लाइंट्स के साथ मैंने काम करा। एंड इफ यू वांट टू गाइस टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ कि ये जो कन्वर्सेशन मैंने करा था, बिकॉज ये एक इनिशियल अप्रोच मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, तो क्लाइंट मेरे पास आया, वो किसी और अप्रोच से आए, बट जब आप इस चीज को समझते हो कि एग्जैक्टली में क्लाइंट को चाहिए क्या, उनको समझ में नहीं आता, बट आप अगर फिगर आउट कर ले जाते हो कि ये प्रॉब्लम है, अगर आप उनको डीपली समझाते हो तो उनको समझ में भी आता है, एंड दे आर मोर देन हैप्पी टू पे यू फॉर दैट। एंड दैट्स ऑल गाइस। एंड एक चीज है, रिमेंबर कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग, सो कीप वर्किंग हार्ड। एंड ये चीज एसबी सर ने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, बट आई से कि कंसिस्टेंसी का एक और फायदा आपको ये है ना कि आपका काम बोलता है, आप जब जो काम कर रहे हो ना साथ में, उसके अगर ऑनेस्टली वो चीज आप एक कंसिस्टेंसी के साथ मैनेज कर रहे हो, तो आपका काम बोलता है। कई कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास क्लाइंट्स मतलब कहीं से वो रेफरल आ जाता है, फिर कई बार ऐसा होता है कि मैं एड्स वगैरह चला भी नहीं रहा हूँ, मेरे पास सीधा ईमेल आता है कि किसी ने कॉल बुक कर रखा है, एंड देन वहां से कई बार होता है कि वहां से ही क्लाइंट क्लोज हो गए। तो दैट्स वाई गाइज, बी कंसिस्टेंट। एंड जैसे इनिशियली मैंने बताया इम्परफेक्ट एक्शन बहुत सारे लोगों ने भी बताया,
So like this is the key. So yeah, this is all about. Right. नहीं आनंद, अमेजिंग सेशन. आनंद अभी तेरा क्या एज हो गया है? 25 sir. 25. अच्छा, नाइस. So much of growth. 25. हाँ. I mean amazing growth. हम लोग कब से 2020 से कनेक्टेड है? 2020 में you purchased timeline domination, right? यस सर. एंड उस टाइम की भी एक स्टोरी है. जब मैंने परचेज करा था तो वहाँ पे क्या था कि मैं जॉब करता था, उतनी अर्निंग भी नहीं होती थी, और जो मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी तो मैं क्रेडिट कार्ड से परचेज नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी लिमिट ही 18,000 थी. तो मैंने 17,000 वहां से परचेज किया, एंड देन बाकी फ्रेंड्स वगैरह से बोरो करके कि नेक्स्ट सैलरी वगैरह आएगी तो दे दूंगा, ऐसे करके. तो देन मैंने वो टाइमलाइन डोमिनेशन में हैंड करा था. I mean, see, a lot of people don't become a part. Let's suppose when it comes to doing the investment, they say कि हम पे money नहीं है. I mean, if success is so very important for you, you will arrange money, and you are the life proof of that. I am the life proof of that. मैंने भी अपनी initial investment बहुत सारी ऐसी करी थी जिसमें मेरे पैसे नहीं थे, but मैंने arrange करा, इधर उधर से जुगाड़ करा. Because again, नहीं है इसका मतलब ये कोई हम नहीं करेंगे, नहीं है इसका सीधा मतलब ये है कि हम arrange करेंगे whatever it takes. So and along with that, so many, to summarize a few quick pointers. आपने मेरा YouTube वीडियो देखा था, वहां से आपको हमारे बारे में पता चला. तो जो चीज मैं यहाँ पे लोगों को बता रहा हूँ, आप अपना कंटेंट डालो, अपने एड्स डालो, वही चीज हमारे साथ भी हुई. अगर मैंने वो YouTube वीडियो नहीं बनाया होता तो you would have never got to know about us. So ना उसमें हमारा बेनिफिट था, ना उसमें आपका बेनिफिट था, right? So making that content is helpful for both the parties. Next thing that I loved is कि आपने अपना टेस्ट प्रोडक्ट बनाया, क्योंकि जब आप कोर्स का पार्ट बने आपको चीजें को प्रैक्टिस करना था. सो यू मेड योर टेस्ट प्रोडक्ट्स, आपने उसे रन करना शुरू करा. यस, उसमें आपको अराउंड 8,000 रुपीज का लॉस हुआ, लेकिन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि वो लॉस नहीं है, वो आपकी इनिशियल प्रैक्टिस है. यू आर नॉट गुड एट इट, एंड द ओनली वे टू गुड एट इट इज यू प्रैक्टिस. सो ऑटोमेटिकली इनिशियली अगर आपका थोड़ा सा उसमें मनी जाता भी है, सो इट डज नॉट मैटर, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज यू आर गेटिंग टू लर्न. Because let's suppose if I talk about the ads, it's not just the ad that is, that is supposed to play the good role. आपका ओवरऑल बैकएंड कितना कन्वर्जन आ रहा है, कितने लीड्स आ रही है, कितनी लीड्स आपके पेज कितना कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद कितने लोगों को कन्वर्ट कर पा रहे हैं, आपका ऑफर कितना ज्यादा अच्छा है. तो वो सारी चीजें मैटर करती है. एंड देन आई मीन आई एम सो हैप्पी. आपने अपना पूरा लिटरली आपने अपना लैंडिंग पेज यहाँ पे लोगों को दिखाया, उसका थैंक यू पेज दिखाया, आपने सारी चीजें लोगों को दिखा दी जिसके ऊपर आप लोगों को बुला के क्लाइंट्स को कन्वर्ट कर रहे हो. आई मीन व्हाट एल्स अ पर्सन सिटिंग इन दिस सेशन नीड्स टू नो मोर. आपका एग्जैक्ट लैंडिंग पेज उसने देख लिया, आपका कॉन्टैक्ट वगैरह उसने, आप कंटेंट की स्ट्रैटेजीज देख लिए. दे जस्ट नीड टू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग द एग्जैक्ट सेम थिंग. दे विल स्टार्ट गेटिंग ऑल दोज एग्जैक्ट हाई टिकट क्लाइंट्स. अलॉन्ग विद दैट, एक और चीज जो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, आपने जो $30 वाले अपने क्लाइंट की स्टोरी बताई थी. I remember जो मेरी पहली ऐसी सक्सेस स्टोरी थी, and when I got that, I remember that amazing feeling. आज की डेट में आपको पता है, आज की डेट में बहुत सारे लोग मेरे को ये बोलते हैं कि सौरभ, I mean, जैसे आपको पता होगा हमारे बिजनेस ग्रोथ वाले प्रोग्राम्स है, 1-to-1 मेंटोरिंग के प्रोग्राम्स है, जिसमें पीपल पे अस 3 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज जस्ट टू सिट विद देम फॉर सम टाइम एंड टू हेल्प देम इन देयर बिजनेस. वहां पे हमें इतने लंबे वेबिनार्स नहीं करने होते, इतने सारी चीजें सिखानी होती है, जस्ट अ फ्यू ट्वीक्स हियर एंड देयर, and I can make a lot of money, far more money doing just that. And a lot of people ask me कि यार, why you are still so excited and so passionate about helping everybody who are starting from scratch, जो कि complete newbies हैं, उनको भी सारी चीज सिखाने के लिए. And initially तो मेरे पे इस चीज का आंसर नहीं था, लेकिन honestly over a period of time मैंने जितना खुद को self observe करा है, the answer to that is that I really enjoy when I get messages from people कि सर आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है. And people like you and so many other people who are there. So I mean, if I can bring all of my experience in front of so many people like you and people who are sitting in this webinar, I can share with them, I mean, there's nothing like it. So that's what I'm enjoying doing. That's why I'm doing it. So again, that's what we need to do, right? And I'm so happy कि आपने वो इतनी सारी strategies अभी यहाँ पे share करी. So I'm sure it will help a lot of people as well. Thank you. Definitely, sir. Thank you so much, sir, and thank you so much, sir, again for this opportunity. Thank you. चल मिलते हैं. Okay, sir. Yeah. Gulshan, are you there? Yes, sir. Okay, so you are all set. Yes, sir. Hi, sir. How are you? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ यार, आपने बहुत हेल्प करी थी.
अरे सर ड्यूरिंग कोविड थोड़ी तबीयत खराब हुई थी मेरी भी, पापा की भी, एंड वी वर हॉस्पिटलाइज्ड इन जयपुर एंड गुलशन वाज ओवर देयर. आई वाज इन द कोविड वार्ड क्योंकि कोविड वाला टाइम था, एंड कोविड वार्ड में था मैं, और वहाँ पे राहुल भैया एंड गुलशन दे यूज्ड टू स्टे ओवर देयर फॉर 24 आवर्स. लेट्स सपोज 12 घंटे राहुल भैया, 12 घंटे गुलशन. गुलशन आई मीन इनसाइड द कोविड वार्ड जिसमें सारे कोविड पेशेंट्स थे, he used to stay there wearing a mask, not caring about his health, not caring about his life, maybe क्योंकि उस समय तो कोविड की वजह से इतना बुरा हाल था, and he was taking care of me. I'm like, I cannot say enough thanks for that. Always there for you, sir. Yes, Gulshan. हाँ जी सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, एक सेकंड. Yeah. Yes sir, my screen is visible. Yes. Sir. So hi guys, my name is Gulshan Saini. So I'm the agency owner, marketing taxes, and we coldly जो हमारी services है वो video services help to reach videos views in millions in an organic way, social media management, SEO and the iOS and Android development. So start जो मैंने initial करा था, मैं अपने first client का आपको email part दिखाता हूँ पूरा, आप लोग भी ले सकते हो, और ये क्लाइंट मैंने कहाँ से लिया था मैं वो भी आपको बता दूंगा. सो माय फर्स्ट क्लाइंट और कस्टमर स्टोरी, मैंने इनको अपनी ईमेल आईडी से, जो हमारी कंपनी की ईमेल आईडी से उससे मैसेज मेल किया था, सिंपल हाय देयर हाउ आर यू, आई सॉ योर प्रपोजल रिगार्डिंग द वेबसाइट डेवलपमेंट फॉर योर होटल. अब जितनी भी फ्रीलांसर्स होते हैं ना वो गलती क्या करते हैं, वो कोल्ड रीच आउट कर रहे हैं. कोल्ड रीच आउट आप कर सकते हो, बट आप पहले देखो कि अगर उनके इंस्टाग्राम बायो में या फिर कहीं पे उनकी वेबसाइट है कि नहीं है. अगर कोई ई कॉम वाला बंदा है, ई कॉमर्स जिनका स्टोर है इंस्टाग्राम पे, अगर उनकी इंस्टाग्राम पे बायो के अंदर उनका वेबसाइट का लिंक नहीं है, तो हो सकता है कि उनकी वेबसाइट नहीं हो. अगर आप उनको करोगे तो वो आपका जो क्लाइंट है वो पोटेंशियल हो सकता है, क्योंकि उसकी वेबसाइट नहीं है. अब इनका मैंने प्रपोजल जो देखा था वो अपवर्क से देखा था. अब मैंने ऑलरेडी देख लिया था कि ऑलमोस्ट 230 लोगों ने उनको अपवर्क पे रीच आउट कर चुके थे. अब उनके लिए भी एक हो जाता है ना कि 230 लोग आ चुके हैं, अब मैं किसको अपना वो गिग जो है वो प्रोवाइड करूं. मैंने इनको पर्सनली ईमेल करा था, और ये वाली चीज भी सर मैंने आप ही से सीखी थी. आपने शायद कहीं पे कुछ डाला था कि आई नीड दिस काइंड ऑफ सर्विसेज, तो 2 बंदों ने आपको अलग से ईमेल पे भी रीच आउट किया था, तो आपने उन दोनों का पहले प्रेफर किया था. देन मैंने इनको मेल किया, इनका मेरे पास मेल आया, ये यूएसए के क्लाइंट थे, और इनका पूरा यहाँ पे रिवर्ट है, मैं आपको दिखा दूं, ये आपको आई थिंक शो हो रहा होगा. देन इनका रिवर्ट बैक आया जून 2 को, और हमने जो एस्टिमेट सर्विस बताई वेबसाइट की $1350, एंड जो 3 जून को जो इनका रिप्लाई आया सर वो आया था आई वांट यू टू नो दैट आई एम ओके विद द एस्टिमेट कॉस्ट, और उसके बाद फिर हमने हमारा पेमेंट हुआ. तो इस तरीके से जो पहला यूएसए का क्लाइंट था मैं बोल सकता हूँ वो हमने क्रैक करा, और इसके बाद से हमने मल्टीपल क्लाइंट रीच आउट करे अपवर्क को यूज करके, बट डायरेक्ट अपवर्क पे मैसेज ना करके उनको पर्सनलाइज मैसेज करके. अब वो मैंने मैसेजेस कहाँ से निकाले, इन्होंने अपवर्क पे अपनी वो दे रखी थी वेबसाइट. मैं snoof.io पे गया, वहां से मैंने इनका ईमेल एक्सट्रैक्ट किया, ईमेल एक्सट्रैक्ट करके मेरे को ये पर्टिकुलर ईमेल मिला, और मैंने इनको रीच आउट कर दिया. अच्छा, snoof.io आपको यही बता देता है कि ये पर्टिकुलर ईमेल जो है ये वेरीफाइड है या कि नॉन वेरीफाइड है. आपको वहां पर वेरीफाइड तो ग्रीन टिक आ जाएगा, तो आप उनको ईमेल कर सकते हो. प्लस आप मेल ट्रैकर यूज करना, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि बंदे ने आपका मेल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा. तो आपको जो सेकंड मैसेज होगा, अगर मान लो किसी का मेल नहीं आ रहा है, आपने देख लिया कि आपका ईमेल पढ़ा जा चुका है ऑलरेडी इतने मिनट पे, तो अब आप उनको फॉलो अप ईमेल ये भेजोगे कि हाय जैक, आई सो यू ऑलरेडी रीड माई ईमेल एट 4 PM. एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो उसको उस बंदे को लगेगा यार बंदे को ये भी पता है कि मैंने इसका मेल 4 बजे पढ़ा है, तो उससे ना वो पर्सनलाइज हो जाएगा, फिर वो आपको मेल करेगा, और सब्जेक्ट लाइन भी यही लिखना, आई सो यू जस्ट रीड माई ईमेल एट 4 PM. एग्जाम्पल ले रहे हैं. अब उसको ट्रिक होगा कि यार एक बार देखता हूँ इसका पहला ईमेल क्या था, उसने गो थ्रू करा होगा और उसने ध्यान नहीं दिया. अब वो गो थ्रू अच्छे से करेगा, क्योंकि आपने सब्जेक्ट लाइन में और पर्सनलाइज कर दिया, आपने उसी को उसी का टाइम बता दिया, उससे ना एक हुक आपने क्रिएट कर दिया. तो जस्ट इस तरीके से हमने इनको रीच आउट करा. ऐसे ही हमने मल्टीपल, अब सबका स्क्रीनशॉट मैं लगा नहीं सकता था वरना मैं मल्टीपल्स में दिखा देता आपको, तो हमने ऐसे $1000 $1500 की वेबसाइट, और ये सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट है, इसको जो मैंने आगे बनवाया 20,000 में बनवाया पूरा, विद इंक्लूडिंग 1 ईयर मेंटेनेंस और सारा सब कुछ, और मेरे को जो पड़ा वो $1350 की डील पड़ी. तो इस तरीके से आप टूल्स को यूज कर सकते हो अपवर्क, फाइवर पे. बेसिकली जो अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं या फिर एसईओ करवाना चाहते हैं, तो वो भी अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं, वहां पर आप उनको पर्सनलाइज रीच आउट करो, और उस वाले पर्टिकुलर फाइवर अपवर्क पे भी आप रीच आउट कर सकते हो. बट मेरे ख्याल से वहां पर ज्यादा ट्रैफिक रहता है, तो आप उनको और पर्सनलाइज करोगे तो आपको प्रेफरेंस जल्दी मिल सकती है, अकॉर्डिंग टू मी. ये मैं करता हूँ फाइनली.
तो ये मेरा फर्स्ट क्लाइंट था यूएसए वाला। जो इससे पहले हम लोग सोशल मीडिया जो मार्केटिंग है उसके लिए मेरे को फिजिकली कॉल से भी मेरे को क्लाइंट मिल गए थे और प्लस रेफरेंसेस पे भी मेरे को क्लाइंट मिल चुके थे, तो उसका मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट एज सच था नहीं। माय हाईएस्ट टिकट क्लाइंट, ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है। जो मेरी कंपनी का सबसे छोटा क्लाइंट था ना, वो मेरी कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट है, जो कि हमको 80,000 रुपए महीने का ऐसी सर्विस दे रहा है। और मैंने उनका कुछ रिजल्ट दिया है लास्ट 6 मंथ का। जो एसईओ हमने करा, ऑर्गेनिक रिजल्ट है गूगल सर्च कंसोल का, विच इज 1.9 मिलियन उनको रीच मिली है, और जिसमें से जो टोटल क्लिक उनको मिले 270K मिले। एंड ही इज लिटरली सेइंग मी कि आप हमारी बैकबोन हो, जो भी हमको बिजनेस मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी वजह से मिल रहा है, बिकॉज ही इज नॉट रनिंग एनी फेसबुक एड और गूगल एड्स। हम बाद में हमने उनका स्टार्ट करा है, जो उनका ये ऑर्गेनिक जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा। अभी इनकी जो ऑर्गेनिक एवरेज पोजीशन अगर आप देख रहे हो 16 मंथ में, तो इनकी एवरेज पोजीशन हमारा 4th पे रही है। ये एवरेज है, तो ये फर्स्ट सेकंड, और जो मैक्सिमम जो ड्रॉप हुआ है इनका वो 4th पोजीशन पे है। और गूगल पे टॉप 3 जो रिजल्ट्स होते हैं उसपे मैक्सिमम क्लिक्स आते हैं, तो ये गेट मैक्सिमम क्लिक्स आउट ऑफ देयर। और बाद में हम लोग इनसे परसेंटेज बेसिस पे भी आ गए। ये वाला अमाउंट जो है ये रेकरिंग सर्विस चार्जेस है, परसेंटेज अलग से है। तो इनका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि, और सारे इंडियंस हैं ये वाले, जितने भी एसईओ वाले हैं अभी इंडियन है। अभी रिसेंटली आई क्लोज यूके क्लाइंट एसईओ के, तो ये वाला तो इंडियन है। तो जो लोगों के माइंड में मिथ बैठा रहता है ना कि इंडियन क्लाइंट पैसे नहीं देते हैं, तो हमारे पास मैक्सिमम क्लाइंट इंडियंस है, और इंडियन से हम लोग मैक्सिमम पैसे चार्ज करते हैं, बिकॉज दे आर पेइंग कैपेसिटी। बस आप लोग उस तक रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, आपका रीचिंग आउट जो सिस्टम है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा नीचे साइड में कि आपको क्या क्या इंक्लूड करना होगा अपने रीच आउट सिस्टम पे। माय हाईएस्ट टिकट क्लाइंट मैं आपको बता देता हूँ। हाईएस्ट टिकट क्लाइंट जो हमारा 8 लाख का था ऐप डेवलपमेंट के लिए। फ्लटर एक लैंग्वेज है। मेरे को बस इतना पता लगा था कि इस बंदे को उसने एक वो है वेबसाइट जहां पर आप जाकर ये पता लगा सकते हो कि किसको क्या क्या डेवलपमेंट करवाना है, क्या नीड है। तो वहां पर मेरा एक फ्रेंड है वो स्क्रॉल कर रहा था, तो उसने बताया भाई इस बंदे को फ्लटर से कुछ चाहिए। तो मैंने उसको पर्सनली मैसेज कर दिया। अगेन मैंने उसको वहां पर कोई मैसेज नहीं करा, मैंने वही वेबसाइट उसकी निकाली। उसने अपना वो दे रखा था पूरा पोर्टफोलियो। मैं Snoof.io को बहुत अच्छे से यूज करता हूँ। Snoof.io एक ऐसा टूल है जिसने मेरे को पर्सनलाइज ईमेल बहुत सारे दिए और पर्सनलाइज कनेक्शन बहुत सारे बनवाए। तो Snoof.io आप लोग यूज कर सकते हो अपने पर्सनलाइज ईमेल के लिए। आपको ईमेल एक्सट्रैक्टर मैं बोल सकता हूँ, वो आपको बहुत हर जो भी वेबसाइट आपको चाहिए आप उस वेबसाइट पे जाओ। उस वेबसाइट पे Snoof.io का क्रोम एक्सटेंशन होता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब उसके अंदर ऑटोमेटेड ईमेल्स भी आ गया, आप उसके अंदर ईमेल सेट करो अपने एक फोल्डर उसके अंदर आप बनाओगे सब फोल्डर, और वहां पर जाकर आप किस पर्टिकुलर क्लाइंट को कौन कौन से ईमेल करना है वो आप शेड्यूल कर सकते हो। अब उसके अंदर ये भी ऑप्शन आ चुका है, तो वो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी तक वो चार्ज नहीं ले रहा है। तो आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत अच्छी सर्विस ले सकते हो। तो ये 8 लाख का जो क्लाइंट है मेरे को कैसे मिला था, मैं पर्सनली उसको ईमेल किया, Snoof.io से मैंने एक्सट्रैक्ट करी। उसने एग्जैक्ट मेरे को रिक्वायरमेंट बताई। मैंने एक बंदे को ढूंढा, मैंने उसको बोला भाई ये वाला जो पर्टिकुलर चीजें कितने बना के देगा। उसने जो मेरे को कॉस्टिंग दी वो दी 2.5 लाख। मैंने थोड़ा नेगोशिएट करवाने की कोशिश करी, मैंने कहा देखता हूँ कुछ नेगोशिएट हो सकता है। लास्ट में जो डील क्रैक हुई वही 2.10 के बीच में। मैंने एक अपना जो मैनेजर है उसको रखा, उसको एडिशनली 20,000 दिया। मैंने कहा मेरे को इसमें नहीं आना है बिकॉज ही इज कोडिंग बैकग्राउंड, तो वो क्लाइंट और जो बंदा जो बना रहा है उसके बीच में वो मैनेज करेगा पूरी चीज। और इस तरीके से जो ओवरऑल बजटिंग है वो 230 का आया, और जो बाकी का जो प्रॉफिट था वो कंपनी के अंदर गया। सेकंड जो रियल एस्टेट क्लाइंट है हमारे, उनकी जो सेल है, हम लोग एसईओ से जो सेल लेकर आए वो 2.5 CR की लेकर आए अभी तक की, और उसमें से हम लोग परसेंटेज लेते हैं, क्योंकि जो भी एसईओ के थ्रू सेल आती है उसको मैनेज भी हम करते हैं और कॉलिंग भी हमारी तरफ से ही जाती है। प्लस जब कॉल उनकी एकदम फाइनल हो जाता है, जब उनकी साइट विजिट हो जाती है, तब हम उनके जो सेल्स हेड है हम उनको वो दे देते हैं लीड कि ये एकदम फाइनल है, अब आप इनसे बात कर लो। देन जो क्लोजिंग होती है वो उनकी तरफ से हो जाती है, बिकॉज वी आर नॉट इनटू द रियल एस्टेट। बस हम लोग जो भी एसईओ से लीड आती है उनको कॉल करवाते हैं, उनको साइट विजिट करवाते हैं, और साइट विजिट के बाद उनको नंबर दे देते हैं फाइनली। और जब वो क्लोज होते हैं तो उस पर हमको एक पर्टिकुलर परसेंटेज मिल जाती है। और जो रियल एस्टेट का जो गेम है वो ऑब्वियसली लैक्स के अंदर होता है। तो उनका जो अभी तक रेवेन्यू हमने जनरेट करा है वो 2.5 CR जस्ट फॉर द एसईओ। हमने कोई एड वेड से नहीं करवाई, ये एसईओ से करवाया। एड उनके अलग है सोशल मीडिया में जो चलते हैं। और जो मैं आपको बता रहा था वीडियोस का मिलियन व्यू, तो ये हमारी कुछ क्लाइंट्स है जिनका रिजल्ट है 3.5 मिलियन व्यूज इन इस पर्टिकुलर वीडियो का जा चुका है, 860 का इसका जा चुका है, 1.6 मिलियन। अभी रिसेंटली क्लाइंट ने एक रील से 8 लाख रुपए जनरेट किए। उनका सर वेबिनार था, उन्होंने फ्री वर्कशॉप की रील बनाई, उन्होंने वो डाली, उसको बहुत अच्छी रीच मिल गई। वहां से जो रजिस्ट्रेशन आए, केवल उन्होंने उसी पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन से वो वेबिनार करा और उसमें 8 लाख की सेल्स करी। तो ऑर्गेनिक कैसे चेंज किया जा सकता है, और ये सब मतलब जो मेरी टीम है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मतलब आई ऑलवेज
से कि विदाउट टीम आई एम नथिंग। टीम जो है वो एकदम बैक सपोर्ट है, मेन पिलर्स हैं आपकी कंपनी के, जो कि आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, आपके बिहाफ पे बहुत सारे काम करते हैं, लाइक वीडियो एडिटर्स हो गए, कंटेंट क्रिएटर हो गए, मैनेजर्स हो गए, जो इंगेजमेंट पर्सन है वो हो गए। इस तरीके के जो काम है वो सब ये टीम करता है और इस तरीके के हम लोग रिजल्ट देते हैं। अभी थोड़े से फंडामेंटल्स के ऊपर मैं बात करूं, जैसे लेटेस्ट क्लाइंट और कस्टमर स्टोरी। तो लेटेस्ट क्लाइंट तो सर अभी आज ही क्लोज हुआ इस मीटिंग से, कितने 5 बजे मीटिंग थी तो क्लोज हुआ है, 40K का मार्केटिंग क्लाइंट है। एंड 2 दिन पहले जब ये CSK का फाइनल था उस दिन ही मेरी क्लाइंट थी, मीटिंग थी यूके के क्लाइंट से, तो हमने $70-50 का उनका यूके का क्लाइंट हमने क्लोज किया SEO के लिए। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हेलो हेलो गुलशन आ रही है। ओके ओके ओके, गॉट इट। सो कुछ लर्निंग्स, जैसे सोशल मीडिया पे मेरे को ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं और मैं इंस्टाग्राम पे हाईली अपडेटेड रहता हूँ, वहां पर बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो मैंने कुछ क्रक्स निकाले क्वेश्चंस का कि प्रपोजल, लोग मेरे से पूछते हैं प्रपोजल कैसे बना सकते हैं और प्रपोजल में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आप जब भी प्रपोजल बनाओ ना तो अपने क्लाइंट को कंपैरिजन वाले माइंड में लेकर आओ। कंपैरिजन मतलब आप उनसे पहले ही कॉल पर, पहले करो आप डिस्कवरी कॉल, दूसरा करो मार्केटिंग कॉल। डिस्कवरी कॉल के अंदर क्या होगा, आप केवल क्लाइंट के बारे में समझोगे, उस बीच में क्लाइंट आपसे बोलेगा आप अपना बजट तो बता दो, क्या आपका इनिशियल बजट है, कुछ बजट मत बताओ उसको, आप बस उनकी प्रॉब्लम सुनो। अब उस डिस्कवरी कॉल के अंदर आपको एक चीज करनी है जो हाईली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये कि आपको उनसे उनके कॉम्पिटिटर्स लेना है। अब वो चाहे सोशल मीडिया के लिए हो, चाहे मार्केटिंग के लिए हो, चाहे एसईओ के लिए हो, XYZ कोई भी सर्विस आप सेल करो, वीडियो एडिटिंग हो, कुछ भी हो। अब आपको उस, जो आपने बोला ठीक है अब मैं और मेरी टीम इसके ऊपर काम करेंगे, चाहे आप अकेले काम कर रहे हो, बट जब आप टीम को इंक्लूड करते हो, टीम बोलते हो ना, तो आपकी अथॉरिटी ऊपर हो जाती है। और आप अपने आप को एज ए फ्रीलांसर मत मानो, आप अपने आप को एज एन एजेंसी ओनर मानोगे ना, तो आप अपनी वैल्यू खुद की नजरों में और ऊपर कर दोगे। फ्रीलांसर भी बहुत अच्छा टर्म है, मैं ये नहीं मना नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने भी अपनी जर्नी एज ए फ्रीलांसर स्टार्ट करी है। बट जब आप ऐसे कंपनी को ऐड करते हो ना, तो आप अपनी जो मैं क्या बोल सकता हूँ, वैल्यू जो होती है प्राइस पॉइंट पे, उसको इंक्रीज कर लेते हो खुद ब खुद ही, क्योंकि क्लाइंट को भी पता लगता है कि ऐसे कंपनी चार्जेस ज्यादा होंगे, ऐसे फ्रीलांसर क्लाइंट भी बोलेगा आप अकेले ही तो आप देख लो सारा सब कुछ। तो इस तरीके से आप उनको बोलना कि मैं, मेरी टीम बैठकर इसके ऊपर काम करेंगे। अब आपको क्या करना है, जब आप उनके लिए प्रपोजल बनाओ ना, वो जो भी उन्होंने एग्जांपल 3-4 अकाउंट दे दिए कि ये मेरे कॉम्पिटिटर है, आप अपने क्लाइंट को ये उस प्रपोजल के अंदर दिखाओ कि हम आपका अकाउंट इस तरीके से कर देंगे। उनकी 1-2 वीडियो पहले से ले लो, रॉ वीडियोस, उसको वैसे एडिट कर दो क्लाइंट की। या फिर हम लोग क्या करते हैं, जो उन्होंने कॉम्पिटिटर दिए हैं ना, उनकी वैसी थीम बना देते हैं। इंस्टाग्राम की एक डमी थीम्स होती है, बहुत सारे ऐप से मिल जाएंगे आपको, वैसे आप थीम बना सकते हो ऑलरेडी। तो अब क्या होगा ना, आपके क्लाइंट को आप कंपेयर करा रहे हो, देखो अभी आपकी जो इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग जा रही है वो इस तरीके से जा रही है, हम ऐसी करेंगे। और वो कैसी होगी, उसने जो कॉम्पिटिटर दिए हैं, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ कि यार ये मेरे से ऊपर है, तभी वो उसका कॉम्पिटिटर हुआ। तो आप उसको रियलाइज करा रहे हो सबकॉन्शियसली कि हम आपको वहां तक पहुंचा देंगे। ये क्या है, बहुत मतलब आप सबकॉन्शियसली माइंड से अगर आप खेलोगे ना अपने क्लाइंट से, आप बहुत इजीली क्लोज करोगे। फिर क्लाइंट रेलेवेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, आप उनसे नंबर्स में बात करो, स्पेसिफिक बात करो कि आपको क्या क्या चाहिए। डिस्कवरी कॉल में आप ये पूछ लो, आपको ग्रोथ चाहिए, आपको ऑर्गेनिक फॉलोअर्स चाहिए, आपको वीडियोस पे व्यूज चाहिए, आपको एंगेजमेंट चाहिए, आपको पर्टिकुलरली क्या चाहिए, वो चीजें लिख लो। क्या होता है ना, हम लोग मीटिंग कर जाते हैं बट हमको यही नहीं पता होता कि क्लाइंट को एग्जैक्टली चाहिए क्या, और हम लोग पोस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर 2 महीने 3 महीने बाद क्लाइंट बोलता है कि यार मेरे को तो ग्रोथ ही नहीं मिल रही। फिर आप उससे पूछते हो ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ व्हाट, तो वो आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछना है कि आपको हमसे एग्जैक्टली क्या चाहिए, स्पेसिफिकली आप पूछो, और उसी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड आप अपना प्रपोजल, आप अपनी पिचिंग सब कुछ बनाओ लास्ट में। और एक और चीज जो मैं अपने जितने भी प्रोस्पेक्ट होते हैं ना उनको बोल देता हूँ कि जब हम आपका सोशल मीडिया स्टार्ट करेंगे ना, तब हम आपको ये चीज और अच्छे से बता पाएंगे। तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में मैंने डाल दिया कि हम आपका सोशल मीडिया स्टार्ट करेंगे, तो उनके माइंड में आ चुका था कि अच्छा जब हम आपके, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को बोल देता हूँ, मैं पहली पिचिंग में बोल देता हूँ कि जब हम आपका सोशल मीडिया स्टार्ट करेंगे ना, तब हम आपको बताएंगे कि ये वाला पॉइंट का एक्चुअल में और मतलब क्या होता है। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्लाइंट के माइंड में पहले मैंने डाल दिया कि हम करने वाले हैं। फिर एज ए कस्टमर थिंग, आप उनके कस्टमर अवतार आपने सब जान लिया। अब ये अगर आप मार्केटिंग उनको दे रहे हो, लाइक उनके लिए फेसबुक एड या फिर कुछ भी रन कर रहे हो, तो आप उनके कस्टमर के जैसे सोच सकते हो कि यार उनका कस्टमर को क्या चाहिए। अब ऐसे एसईओ जब हम करते हैं, तो हम क्लाइंट का जो बिजनेस होता है ना, उसको मेरा खुद का बिजनेस समझ के ये सोचता हूँ कि अगर मैं इनका कस्टमर हूँ तो मैं क्या कीवर्ड सर्च करूंगा गूगल के अंदर, जहां से इनकी वेबसाइट मेरे को टॉप पे आए। क्योंकि टॉप पे लाना इज नॉट अ बिग थिंग, बट
उसके ऊपर क्लिक लाना और वो व्यूअर्स लाना, क्लिक्स लेकर आना, वो बहुत बड़ा गेम है। और प्लस वो कौन से कीवर्ड पे आएगा वो बहुत बड़ा गेम है, तो वो रोल होता है वहां पर। और SEO इज अ रेकरिंग सर्विस, सोशल मीडिया इज अ रेकरिंग सर्विस, आई ऑलवेज प्रीफर रेकरिंग सर्विस। उस पे क्या होगा ना, आपको बार बार वो हंट नहीं करना पड़ता। आपने एक बार एक क्लोज करा, आप उसको रिजल्ट दे रहे हो, आपके पास क्लाइंट 2-2 साल तक, 3-3 साल तक भी रहेंगे, और फिर उन्हीं से आप रेफरेंस भी ले सकते हो। अब हम लोग क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? सोशल मीडिया, मैंने स्टार्ट किया था सोशल मीडिया और SEO से, बिकॉज मैं जॉब करता था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की डोमेन के अंदर एज ए डिजिटल मार्केटर। फिर वहां से मैंने छोड़ा, और वहां से मैंने जॉब छोड़ने के बाद मैंने खुद की ये सर्विसेज स्टार्ट करी थी। 1 साल तक लिटरली कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर राइज एंड शाइन हुई। राइज एंड शाइन के अंदर मैं, वो भी ट्विस्ट है, राइज एंड शाइन के अंदर मैं एज अ स्पीकर, एज अ कोच की मैंने मतलब सेशन ले रहे थे कि मैंने सर से जो भी, राहुल सर से जो भी डिस्कशन किया था, वो एज ए स्पीकर, एज ए कोच बनने के लिए, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक करोगे तो सबसे नीचे जाओगे तो वहां पर आज भी ऐसे वो मोटिवेशनल टाइप और ये सब होता है। बट मैं जॉब कर रहा था डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। वहां से आने के बाद जब रीच आउट का मेरे को सिस्टम समझ में आया, तो मैंने एक बंदे को रीच आउट करा था इंस्टाग्राम पे। वहां से वो मेरे को बंदा क्लोज हो गया वेबसाइट के लिए। उसको हमने वेबसाइट पिच करी 30K के अंदर। फिर मैंने सोचा यार 1 टाइम पेमेंट आया 30 की, ये तो अगले महीने तो फिर 0। तो मैंने उनको SEO के बारे में समझाया। फिर SEO के बारे में उनको समझाया, उनको बताया कि आपकी वेबसाइट इस तरीके से रैंक हो जाएगी, और वो आज भी हमारे क्लाइंट है। तो वहां से मेरे को समझ में आया कि भाई ये तो रेकरिंग सर्विस आ रही है, सब कुछ आ रहा है। तो फिर गेम ही बदल गया। फिर कोविड आ गया था, तो जैसे सर ने बताया कि मैं सर के संग था, तो उस टाइम पे राहुल सर से मेरा बहुत इंटरेक्शन होता रहता था, बिकॉज मैं और सर ही थे वहां पर। और सौरभ सर को तो सर ने बोल दिया था भाई बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, एकदम ध्यान रखना है। तो आई वाज लाइक नथिंग, वहां पर सर का एकदम ध्यान रखा जाता था। तो वहां से फिर मैंने जब सर को ये चीज बताई, तो उन्होंने बोला भाई तू ये सब छोड़, ये कर, क्योंकि इसके अंदर मतलब डिजिटली आपके पास ऑलरेडी रिजल्ट है, आपकी नीश वो ऑलरेडी है। तो फिर मैं उसके अंदर आने लग गया। फिर मैं पर्टिकुलरली, फिर हम लोग स्टार्ट किया, फिर हम लोग को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। देन हाउ टू चार्ज, लोग ये भी मेरे से पूछते हैं कि क्लाइंट आ गया लेकिन चार्ज कैसे करें। बहुत सिंपल है, नंबर्स का गेम है। देखो आपके टीम मेंबर की सैलरी, फॉर एग्जांपल 4 आपके पास बंदे हैं, या फिर फ्रीलांसर भी है फॉर एग्जांपल, और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे आपने पर 4 बंदों को आप 10,000 रुपए उनको सैलरी दे रहे हो। अब 4, और वो एक बंदा आपके 4 क्लाइंट के ऊपर काम कर रहा है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 4 कर लो, तो पर्टिकुलर जो बंदी का जो चार्ज निकल के आया वो आया 2,500 रुपए, राइट। अब 2,500 रुपए एक बंदा ले रहा है, और आपके पास 4 बंदे, एक वीडियो एडिटर हो गया, एक कंटेंट राइटर हो गया, एक आपका डिजाइनर हो गया, और एक आपका जो मैनेज करेगा और जो पोस्ट करेगा। इन चारों की सैलरी 10,000 रुपए जा रही है, और चारों ही एक क्लाइंट के ऊपर काम कर रहे हैं। पर क्लाइंट आपको कितना पैसा आ रहा है? 2,500। तो 2,500 प्लस 4 कर लो, 10,000 रुपए है। तो एक क्लाइंट से आपको मिनिमम ये आपका 10K हो गया, प्लस अब आपको अपना प्रॉफिट भी तो जोड़ना ना इसमें। ये वाली चीज तो आप क्लाइंट को दिखाओगे कि देखो आपके उस पे 4 जने काम करने वाले हैं, उनकी सैलरी इतनी है, और पर वो 4 जनों का काम कर रहे हैं, तो पर जो डिवाइड आ गया क्लाइंट, वो आपका 2,500 रुपए आ गया। 4 10,000 रुपए आपने कर दी। इस तरीके से आप क्लाइंट को दिखाओगे, प्लस अपनी कंपनी की भी उसमें ऐड करोगे, जो भी कॉस्ट होगी, प्लस आपका मैनेजमेंट, आपका टाइम। तो इस तरीके से आप जो भी आपके पास नंबर आएगा ना, वो फेयर नंबर होगा। उसके अंदर आप प्लस माइनस कर सकते हो। मतलब जैसे 2,500 रुपए आ रहा है, आपने 3,000 रुपए ऐड कर दिया, मतलब 500 रुपए ऐड कर दिया। तो इस तरीके से होगा ना, आप चार्ज कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग जो मेरे से उस पे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि हम लोग चार्ज कैसे करें, क्लाइंट तो क्लोज हो गया, अब समझ नहीं आ रहा कि उनको चार्जेस क्या बताए। तो चार्जेस में बहुत सारे लोग फंसते हैं, तो मेरे को लगा ये वाला पॉइंट रखना चाहिए। तो टीम मेंबर की सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लाइंट हैंडल, जो भी अमाउंट आता है उससे आप अपना चार्जेस निकाल सकते हो। देन क्लाइंट आपको कहां से मिल सकते हैं? देखो रेफरेंस बहुत अच्छा सोर्स है। हम लोग पर्सनली, मैं खुद क्या करता हूँ, जो भी मेरे एक्जिस्टिंग क्लाइंट है ना, उनको एक गूगल फॉर्म बनाता हूँ उनके लिए पर्टिकुलर, और वो गूगल फॉर्म पे फिर मेरा ऑडियो नोट होता है ना, वो पर्सनलाइज ऑडियो नोट होता है कि फॉर एग्जाम्पल, हाई एक्स, वी आर वर्किंग फ्रॉम द पास्ट 6 months एंड आई होप यू लव्ड आवर वर्क द वे वी आर प्रोवाइडिंग माई सर्विसेज टू यू। सारा सब कुछ आपने बता दिया। देन मैंने उनसे प्यार से बोल दिया, इफ यू हैव सम रेफरेंस रिगार्डिंग आवर वर्क, हमारे वर्क ये है, केवल सोशल मीडिया आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग SEO, वेबसाइट डेवलपमेंट, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट। इसके रिगार्डिंग भी अगर आपके पास कोई रेफरेंस है, तो आप इस वाले उसको दे सकते हो। और हर एक को अलाउड मत करो कि आपके साथ काम करना है। कोई आपके संग आ रहा है, अब इनिशियली तो देखो मैं भी ऐसा ही था कि जो भी आ रहा है आने दो। 5-5 हजार रुपए के भी क्लाइंट उठाए थे मैंने, और जब मेरी करियर की स्टार्टिंग थी तो 500 रुपए के अंदर वेबसाइट बनाई थी। तो क्योंकि मैं खुद बना रहा था, सीख रहा था, तो वो लर्निंग स्टेज थे मेरे। तो वहां पर तो मैं समझ सकता हूँ कि यार आप लोगों को डर लगता है कि यार अभी तो कोई क्लाइंट है नहीं, जो भी आ रहा है आने दो। बट एट सम पर्टिकुलर ऑफ टाइम ना, एक पॉइंट आएगा जब
मनी मैटर नहीं करेगा आपके लिए आपका पीस ऑफ माइंड और आपकी जो कंपनी की ग्रोथ है, फिर आपकी जो इंडिविजुअल ग्रोथ है, फिर आपके जो टीम मेंबर्स की ग्रोथ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो तो शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा चलो अभी पैसा सारा हमने कर लिया, तो वो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आप पहले ये फॉर्म फिल करो, उसके बाद हम आपसे मीट करेंगे। मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को भी फॉर एग्जांपल अगर आपकी फेसबुक एड्स, अगर आपकी सर्विस है तो आप हर एक के लिए फेसबुक एड चला रहे हो, पर्सनलाइज होना पड़ेगा आपको पर्टिकुलर उसके लिए। देन इवेंट्स से हमको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं, जो नेटवर्किंग होती है, मतलब फनल ग्रोथ समिट से हमको लिटरली बहुत क्लाइंट मिले हैं। इनबाउंड लीड्स का गेम बहुत अलग होता है, आप अपने लिए एड चला सकते हो। देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्टर्स के लिए स्पेसिफिक मैंने वीडियो बनाई। अभी हमारे जो एक असम के अंदर डॉक्टर हैं, उनको 451 उनको कॉल्स आए थ्रू जीएमबी गूगल माय बिजनेस एसईओ, आउट ऑफ विच उन्होंने 41 ऑपरेशन करे। एक ऑपरेशन का कॉस्ट उनको 3 लाख रुपए मतलब उनके पास आया। एंड ही पर्सनली कॉल्ड मी, उन्होंने नया हॉस्पिटल ओपन किया है और वो बोल रहे हैं कि हम आपके फ्लाइट की टिकट विकेट बुक करा रहे हैं, आपको आना ही है इनॉग्रेशन के अंदर। सो लाइक 41 into 3 lakhs अगर आप करोगे तो नंबर आपके सामने होगा। सो लाइक और ही टोल्ड मी कि आप है ना मेरे से ना पूरा वो 10 साल का एग्रीमेंट सब करवा लो, हम आप ही के साथ रहने वाले हैं। तो इस तरीके का अगर जब आप काम करोगे, आपको पता है कि यार हमारे उस काम के अंदर उससे उनको पक्का रिजल्ट मिलेगा, तो फिर आप पूरा, मैं बोलूंगा पूरा घुस जाओ उस काम के अंदर और उनको वो रिजल्ट प्रोवाइड कर दो, क्लाइंट कहीं नहीं जाने वाला। तो वो एड्स का भी मैंने क्या करा, उस पर्टिकुलरली उस वीडियो के मतलब उस वीडियो के अंदर मैंने उनके स्क्रीनशॉट लगवाए वीडियो एडिटिंग टीम से, जो उन्होंने लगा कर दिया, और उसके एड चला रहे हैं। अब उसके अंदर मैं कैलेंडली जो होता है उससे बुकिंग करवा रहा हूँ कि केवल डॉक्टर्स को टारगेट कर रहे हैं हम। और डॉक्टर्स अभी सर मेरे पास जो बुकिंग आ रखी है ना आगे से फॉर दी सोशल मीडिया और दो जीएमबी गूगल में बिजनेस की, वो सर आ रखी है 48 बुकिंग्स ऑलरेडी हो रखी। तो मतलब 48 इनबाउंड लीड्स मेरे पास आई है, मैं किसी के पास नहीं जा रहा हूँ। अब 48 में से मैं मान के चलता हूँ मेरा 10 भी कन्वर्ट हो रहा है, तो 10 रेकरिंग सर्विस की वजह से हो रहा है ना, क्योंकि हम उनको जीएमबी एसईओ पिच करेंगे, तो वो गेम चेंजर हो जाएगा। आपने एक क्लाइंट लिया, आपने कॉल बुकिंग फनल उनके ऊपर चला दिया, सिंपल, तो वो चीज गेम चेंज हो जाएगी। इनबाउंड जैसी लीड आएगी ना, वहां पर आप ऑलरेडी आप अपनी अथॉरिटी बढ़ा चुके हो वहां पर, क्योंकि वो लोग आपके पास आ रहे हैं, आप उनको रीच आउट नहीं कर रहे हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि रीचिंग आउट गलत है, रीच आउट करो। इनिशियली मैंने भी बहुत रीच आउट करा था, बट एक लेवल आएगा जब आपके पास रेफरेंस, इवेंट्स, इनबाउंड लीड्स, एड्स से आप आराम से बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हो। देन एक और चीज हमने करी, पीआर करी। ये मैंने बैंक के जो ओनर है ना, मैंने उनसे जब बात करी थी पर्सनली, तो ही टोल्ड मी कि मैंने उनको अपने क्लाइंट का रिजल्ट बताया था 2.5 CR वाला, तो उन्होंने बोला भाई इसकी केस स्टडी बना दो, आप इसकी केस स्टडी बना के इसके ऊपर आप एड चलाओ, आपके पास इनबाउंड लीड आएगी। तो उसी पर्टिकुलर चीज से हमने 12 जो रियल एस्टेट के जो है क्लाइंट्स, उनको ऑनबोर्ड करा अलग अलग सिटीज के। तो वहां से भी मेरे को एक आइडिया मिला। मैं फनल ग्रोथ से आते ही मैंने तुरंत ये वाला काम करा, अपनी जो टीम है उनसे मैंने केस स्टडी रेडी करवाई, केस स्टडी रेडी करवा के उसका पर्टिकुलरली एड चलवाया, और वहां पर और जो एड चलाते हैं इसके रियल एस्टेट के, वो पर्टिकुलरली रियल एस्टेट के ही बंदे हैं जो पिछले 10 साल से केवल रियल एस्टेट के एड चला रहे हैं। तो ऐसे बंदों के संग आप टाई अप हो जाओ, जैसे ऋतिक बंसल है, वो एड चलाते हैं फेसबुक और उसके, तो जो भी मेरे पास क्लाइंट आता है मैं उनको रेफर कर देता हूँ डायरेक्टली, बिकॉज आई नो कि उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आप टाई अप करो बहुत सारे लोगों से, जो आप काम नहीं कर रहे हो उनसे भी आप टाई अप करो, क्योंकि हो सकता है आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आ जाए और वो आप उनके थ्रू वो काम करवा लो, प्लस आप उससे एक सर्टेन परसेंटेज ले सकते हो, तो इससे आपका रेवेन्यू और ग्रोथ है ना वो चलता जाएगा। प्लस आई ऑलवेज बिलीव कि रेकरिंग सर्विस जो होती है ना, रेकरिंग सर्विस, उसके ऊपर आप जाओ, बिकॉज उसमें क्या होगा ना, आपको एक बार के एफर्ट के आपको रेकरिंग सर्विस आएगी, फिर आप लंबा खेल पाओगे, थोड़ा सोच पाओगे, आपको पता है ये बंदा 3 महीने तक तो है ही मेरे पास। अब ये तो 3 महीने तक है, 20,000 रुपए का आपने एक क्लाइंट क्लोज करा, 60,000 रुपए आपके बन रहे हैं। अब वो 60 की टेंशन नहीं है आपको, आपको लेना है कि एक और क्लाइंट और कैसे लेकर आऊं, क्या मैं ऐड चलाऊं, तो आप रिस्क ले सकते हो ना 10,000 रुपए का, क्योंकि 20,000 रुपए हर महीने आ रहे हैं आपके पास, तो आप वो ले सकते हो। और मैं तो रिस्क नहीं है वो, मतलब इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के ऊपर, तो यार जितना डालोगे उतना ही कम है। मेरे को तो ये लगता है, मतलब 60-70% पूरा कंपनी के उसमें डाल देता हूँ जो भी आता है, तो हो जाता है। मतलब इस तरीके से ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। और ये भी, हाँ, एरिया ऑफ सराउंडिंग्स बहुत मैटर करता है। मतलब आपको पता है वन ऑफ माय भैया, उन्होंने उनसे मेरे को जो बिजनेस मिला है विद इन 2 मंथ, वो मिला है 1.5 लाख का। मैंने उनको अपनी सर्विसेज बताई, मुझे पता था उनके कॉन्टेक्ट्स बहुत हाई हैं। आप लोगों के जितने भी जो लोग अभी सुन रहे हैं ना मेरे को, आप लोगों के कॉन्टेक्ट में एक ऐसा इंसान जरूर होगा जिनके कॉन्टेक्ट्स बहुत हाई होते हैं। आप उनको बताओ अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, वो आपको उनसे कनेक्ट कराएंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप उनको कैसे क्लोज करते हो।
लाइक जयपुर के अंदर बहुत फेमस है राज मंदिर। तो राज मंदिर मतलब लिटरली दे आर ज्वेलर्स सुराना ज्वेलर्स। मैं उनके वहां पे फर्स्ट टाइम मीटिंग में गया, वो सोने के कप में उन्होंने चाय पिलाई। आई वाज लाइक, मैंने अपने पापा को आके बताया, मैंने कहा आज मैं उन्हें उनसे मीटिंग करके आया। मैं पापा वाज लाइक यार उनके पास कैसे तुम मीटिंग करके आ सकते हो, बिकॉज राज मंदिर वाज लाइक हिस्टोरिकल प्लेस राजस्थान टूरिज्म के लिए। अब उनका हम सोशल मीडिया और ये सब मैनेज कर रहे हैं। तो वो मेरे को मिले, मेरे भैया है अर्पण भैया, उनके थ्रू, बिकॉज मुझे पता था उनका जो सराउंडिंग है वो बहुत तगड़ा है। तो मैंने उनको रीच आउट करा, मैंने बोला भैया हमारा ऐसा ऐसा काम है, आप देखो। और उसमें उनको उनकी बेनिफिट पहले ही बता दो कि देखो अगर आप मेरे से केवल मीटिंग करवाते हो, मैं क्लोज कर लेता हूँ, तो आपको इतना परसेंटेज आएगा। अब उसमें उनको अपना फायदा भी दिखा, प्लस उनका तो उनको मिलवाना ही था, उन्होंने मिलवाया। मैंने पूरा गेम बनाया, पूरा सब कुछ, और क्लोज कर लिया। और हम आज उनका एसईओ कर रहे हैं। प्लस उन्हीं के ही थ्रू हमको न्यूयॉर्क के अंदर एक एसईओ है, उनका एक फ्रेंड है जो न्यूयॉर्क के अंदर रहता है, उनका एसईओ आ गया। तो मतलब मैं बोलूंगा कि अब ये मैंने कोई रीच आउट नहीं करा, मैंने बस अपनी सर्विस बताई एक ऐसे इंसान को जिसको मेरे को पता था ये बंदे के पास ऑलरेडी बहुत अच्छे सराउंडिंग है, नेटवर्क है। आप लोगों के पास होगा, आपका कोई फ्रेंड होगा, कोई ना कोई तो होगा। अगर आप सोचोगे ना, नाम लिख लूं उनकी एक जगह पे, 10 लोग आते हैं, 5 लोग आते हैं, सबको अपनी सर्विस के बारे में इन डेप्थ बताओ, प्लस रिजल्ट दिखाओ। आपके पास कोई रिजल्ट होंगे ना, वो दिखाओ। अगर आपके पास कोई रिजल्ट नहीं, आप बिगनर हो ना, तो आपने अपने ऊपर कुछ काम कर रखा होगा, अपने लिए एड चलाएंगे, अपना सोशल मीडिया मैनेज करोगे, कुछ तो आप कर ही रहे होंगे। आप उनको वो दिखाओ कि देखो मैं ये केपेबल हूँ ये सब करने के, और वो अपने कॉन्टेक्ट से आपको कॉन्टेक्ट करवाएंगे। और बिजनेस इज ऑल अबाउट लाइक नेटवर्किंग और कॉन्टेक्ट्स, बस इतना ही मैं समझता हूँ। और अपने आप को मतलब एज ए बिजनेस पर्सन आप देखोगे ना, तो आप थोड़ा सा ब्रॉड सोच पाओगे, मेरा ऐसा मानना है। और ये मैं माय सिस्टर्स ऑफिस स्टोरी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरी दीदी जहाँ पर वर्क करती थी एज ए सोशल मीडिया, तो वहां पर उस टाइम पे उनको यूट्यूब एड्स के बंदे की रिक्वायरमेंट थी। तो मेरी दीदी ने बताया कि जो मेरे भैया हैं वो ऑलरेडी ये सब काम करते हैं। तो मैं उनसे मिलने गया, उनके ओनर से। तो मैंने वहां पर ही यूट्यूब एड चलाया उनके क्लाइंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने कहा ठीक है। वहां से उनको रिजल्ट मिले, उन्होंने मेरे को दोबारा बुलाया, फिर पूरा वो मैनेजमेंट मेरे पास आ गया। फिर उन्हीं के थ्रू मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट आ गई, बिकॉज दे आर हैंडलिंग ये एमएलए जो नहीं होते, जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके केवल अकाउंट संभालते हैं वो भी सारे ब्लूटिक वाले। तो अब उनको इन सब की नॉलेज नहीं होती। तो वहां पर उन्होंने मेरी हेल्प ली। अब मेरा वहां से दिमाग चला, यार ये एक ऐसी कंपनी है, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं है, बट इनके पास अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। इनके पास सोशल मीडिया की सर्विस नहीं है, इनके पास फेसबुक एड्स की सर्विस नहीं है, इनके पास यूट्यूब एड्स की सर्विस नहीं है। तो मैं ऐसी और अगर कंपनी देखूंगा जयपुर में, तो उनके पास भी नहीं होगी। तो मैंने क्या करा, सारी कंपनीज की लिस्ट निकाली, और लिटरली मतलब एक एक को मैंने कॉल किया कि मैंने कहा मैं ये वाली सर्विस का स्पेशलिस्ट हूँ, हमारी कंपनी जो है वो इस वाली सर्विस में डील करती है, क्या आप मेरे से बिजनेस कोलैब करोगे क्या। मैं उनको ये नहीं बोला कि मेरे को आपकी हेल्प चाहिए, सीधा बिजनेस कोलैब, क्योंकि आप अपनी अथॉरिटी वहां बता रहे हो जहां पर ऑलरेडी उनकी है। बिकॉज आप एज ए ओनर, एज ए एजेंसी ओनर बात कर रहे हो उनसे। तो और नई भी होती मेरी एजेंसी, तो उनको क्या पता कि मेरी एजेंसी है कि नहीं, वो कौन सा आकर देखने वाले हैं उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर कॉल पे तो नहीं दिखेंगे ना। बात होने के बाद तो फिर तो बातें आगे बढ़ जाती है। तो मैंने 3-4 लिस्ट निकाली, वहां पर मैंने 5-6 लोगों ने मेरे को यस बोला कि चलो ठीक है अपन मीटिंग करते हैं, और मैं 4 से क्लाइंट लेकर आया, 4 लोगों से, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी लीड्स आती रहती है। जब आप अपना बिजनेस सेटअप कर लेते हो, तो वहां पर उनके पास लीड्स आती रहती है। ऐसी भी लीड्स आती है जहां पर वो वाली सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब मैंने उनको उनका प्रॉफिट पहले ही दिखा दिया कि अगर आप मेरे को कोई लीड देते हो, तो रेकरिंग आपके पास ये परसेंटेज आता रहेगा, अगर वो क्लाइंट जब तक टिकता है मेरे पास, या फिर वन टाइम भी हो सकता है। तो उनका मैंने वो दिखाया, उनके पास ऑलरेडी लीड्स थी, उन्होंने मेरे को प्रोवाइड करी, और मैंने उनको क्लोज करा, तो वो हमको ऐसे क्लाइंट मिले। तो आप ये भी कर सकते हो, ये मतलब थोड़ा सा अलग तरीका है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये जो सारे तरीके बताए आप में से काम कर ही जाएंगे, बट कुछ आप ट्राई करोगे पक्का आपके लिए काम करेंगे। और कुछ ऐसे तरीके होंगे जो आपके माइंड में आएंगे, मतलब आपके माइंड में एक आइडिया आएगा कि यार इस तरीके से मेरे को क्लाइंट मिल सकते हैं। बट आप सोचोगे यार ये तो बहुत ही बेकार आइडिया। लिटरली मैं बता रहा हूँ वो बेकार आइडिया नहीं होगा, क्या पता वो इतना तोड़ आइडिया हो जो किसी ने ट्राई ना करा हो, वो मुझे भी ना पता हो। तो वो आप कर सकते हो। अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। मैंने बहुत करा था, तो उस वजह से मैंने अपना बहुत लॉस करवाया, और पर्सनली भी मैंने बहुत ज्यादा लॉसेस देखे हैं, जस्ट बिकॉज मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता था। तो वो चीज मत करना बस अपने संग, और अपने माइंड में हमेशा चीजें क्लियर रखना कि आप हो, मतलब आपका एग्जिस्टेंस मैटर करता है, और आप बहुत अच्छे हो ऑलरेडी, और आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनने वाले हो या बन रहे हो। क्योंकि हमको ये लगता है सामने वाले के पास पैसा है, तो सामने वाले से तो हम नीचे हुए, वो सब बिल्कुल नहीं सोचना है। वहां से हम हमारी खुद की ग्रोथ रोक देते हैं। क्लाइंट आना ना आना एक अलग बात है, हमारी खुद की ग्रोथ रोक देते हैं। तो आई थिंक ये सब था। लास्ट में मैं बोलूंगा थैंक यू। अपने माइंडसेट के ऊपर जितना हो सके उतना काम करना, क्योंकि माइंडसेट ही आपको बहुत आगे लेकर जाएगा।
I think so. All clear from my end. Yeah. 100% all clear. Amazing session. Everyone in the audience, can we give him a quick 111? He shared a lot of learnings with you. I won't be able to summarize because there were so many things, but I believe that you got to learn a lot, all of you, right? And Gulshan, thank you so much for sharing so many learnings. And I would say so many brilliant ideas, starting from snob.io to so many other things. And मेरे को तो यार जो चीज सबसे ज्यादा देख के अच्छा लगता है, the most important and the most valuable thing for me is that I have seen you from the days when you came to that event of ours, and you wanted to be that motivational speaker, and then वो सारी जर्नी जो चेंज हुई है, मेरे सामने जो सारे डिस्कशंस हुए हैं, I remember we even interacted when I came back to Dehradun, and all the learnings that we were discussing. I remember on that call we were discussing this exact same thing कि भाई you go and start charging recurring, start charging the percentage. उस समय हमारा पूरा one time service वाला work चल रहा था, and since then the amount of growth, the amount of learning, the amount of things, I mean, I'm so happy and so proud. Thank you so much, sir. Thank you so much. Okay, thank you. Chal, bye. See you. Bye, sir. Okay, so by the way, we have I mean the speakers who are coming over here, and they're sharing so many learnings with you. That is something which is of course next level, but at the same time I also want to congratulate everybody who is sitting in this session. हमारा सेशन 5 बजे स्टार्ट हुआ था, अभी 10:40 हो चुके हैं, 5 hours 40 minutes. And those of you who are sitting here from the beginning, I want to give you a quick 111 from my side. I mean, so many things, I really appreciate the effort that you are putting in. And I believe that that shows the amount of determination that you have to generate the results and to generate the kind of results that you want to achieve. So honestly, a lot of times it happens that we are just so close, and sometimes one little spark here and there जो मेरे को कहीं से भी मिल जाती है, that is something that just changes the game. And today I believe that you are getting all those sparks. The only thing that I want from you, the only reason why we are sitting over here, the only reason my team is sitting over here, the only reason I am sitting over here is we can help you. That's the only motive for which we conducted this session. And I really want you, if you really want to say thanks to us for this session, that overall things that we have done for you, just go ahead and implement the learnings. That's it. And just start doing it without thinking, and just implement the learnings. You're going to see tremendous growth. And share by the way, keep sharing in the Facebook group. I want to tell you, if you have not yet started, start with the 30-day challenge. Start with the 30-day challenge in our Doers Facebook group. On every single day, whatever you are implementing, you keep posting over there. I can tell you that 30-day challenge alone is going to change your life. आपने जितनी सारी चीजें करी हैं, जितनी सारी चीजें आप रोज करते जा रहे हो, आप वहां पे डालते जाओ, and you will see amazing growth in the next 30 days. Right? And of course, I already have a commitment from all of you that in the next 3 days, you are going to implement at least 3 new things जो कि आपने इस सेशन में सीखी है. Right? I still have your commitment, right? Give me a 1 in the chat box, all of you. Great. All right. So we have Karan Dudeja with us. I guess, Yogesh, we are left with how many sessions? 2 sessions. Okay. So we are left with 2 sessions. Karan is right over here. Karan, क्या हाल है तेरे? एकदम बढ़िया. आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया. काफी देर से बैठे हो, काफी एनर्जेटिक हो आप लोग दोनों ही, आप भी और राहुल भैया भी हमेशा रहते हैं. क्या खाते रहते हो आप लोग बीच में वैसे? अभी तो हम ये खा रहे थे, बादाम, किशमिश और काजू और साथ में कुछ लेमन टी या ग्रीन टी चल रहा था. ओके बढ़िया. तो वैसे मेरी ये फर्स्ट वर्कशॉप है, मैंने इतने लोगों में कभी ऑर्गेनाइज कभी कुछ किया नहीं है. सो लेट्स सी. ओके, सो थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ मैं. मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी अराउंड मेरे हाई स्कूल कंप्लीट होने के बाद ही. तो आई वेंट टू एन इवेंट इन 2018 जहाँ पे आई सॉ सौरभ सर, और वहाँ पे मैंने काफी सारे स्पीकर्स को रीच आउट किया, एंड ही वाज वन ऑफ देम जिन्होंने रिप्लाई किया. एक्चुअली ही वाज ओनली वन जिसने रिप्लाई किया. तो
वहाँ पे फिर उन्होंने टास्क दिया एंड आई वेंट टू गोवा और वहाँ पे एक इंटर्नशिप करी इनके साथ। तो बेसिकली मतलब ये है कि वो जो इवेंट था वो भी मेरी लाइफ का एक तरह से पहला इवेंट था जहाँ पे मैंने अटेंड किया था, और वहीं पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। इससे पहले मैं कभी किसी इवेंट में भी नहीं गया था, अगर गया होता तो शायद हो सकता है कि कभी कोई पहली अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती, बट मैं गया उसमें जिसमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। एंड आफ्टरवर्ड्स काफ़ी सारी इंटर्नशिप करी मैंने। उसके बाद 2020 में मैंने एज अ फ्रीलांसर काम करना स्टार्ट किया, और उस अभी मैं स्लाइड शेयर करता हूँ उसके बाद क्या क्या हुआ। स्क्रीन विजिबल है? करण विजिबल है? ओके ठीक है, फुल स्क्रीन कर देना यार। हाँ। तो मेरा नाम है करण डुडेजा और मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी रन करता हूँ, जहाँ पे मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड इनफैक्ट यूट्यूब एड्स भी अब प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी है। और मेरा पहला क्लाइंट कैसे आया, एक्चुअली मैंने अपने पापा को बताया कि मैं अपना एज अ फ्रीलांसिंग काम स्टार्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक्चुअल में क्या मैसेज भेजा था अपने क्लाइंट को, जो कि 2020 में था, जो मैंने बताया आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी। और वो ना उस वक्त पे स्टॉक ट्रेडर्स की वीडियोस देखते थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार इन्हीं से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं रीच आउट करूंगा कोचेस और ई कॉमर्स बिजनेस को जो कि मेरे इंटर्नशिप का पार्ट भी रहे थे। तो मैंने इंटर्नशिप में ई कॉमर्स बिजनेसेस के एड्स को रन किया इन इंडिया, इन यूएस एज वेल। तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस था, तो मैंने उसी को लेके यहाँ पे भटका और मैंने लिखा, यहाँ पे आप टेम्पलेट पढ़ सकते हो। एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई रन फेसबुक एड फॉर बिजनेसेस एंड इंक्रीज देयर रेवेन्यू बाय ब्रिंगिंग मोर क्लाइंट्स। आई कैन गेट यू मोर पीपल एंड लोड इन योर प्रोग्राम। तो जो भी उनका प्रोग्राम था, मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, उनका बैकग्राउंड चेक किया और किस टाइप के कंपटीटर्स हैं मार्केट में उनके, तो मैंने उनका चेक किया। तो वो सब चीज़ें मैंने चेक करी और फिर एक ओवरऑल मैसेज क्रिएट किया, एक पर्सनलाइज सा मैसेज क्रिएट किया, ठीक है। और तब वहाँ पे जाके ये आफ्टर 2 मंथ्स मेरे साथ क्लाइंट बने और ये अभी तक मेरे क्लाइंट है। सो माय फर्स्ट क्लाइंट इज स्टिल माय करंट क्लाइंट राइट नाउ, ठीक है। और हाईएस्ट टिकट क्लाइंट ये वाला जो था मेरा ऑलरेडी क्लाइंट था, तो ये मुझे 30,000 रुपये हर महीने पे कर रहे थे, जो कि 2021 में अक्टूबर में कुछ इशू आया था फेसबुक के एल्गोरिदम का और एड अकाउंट्स ब्लॉक होने लग गए थे। Hence, he left for some other agency or freelancer, but he came back in January and मैंने ना टेस्ट करना था, तो मैं टेस्ट करता रहता हूँ चीज़ें काफ़ी सारी। तो चाहे क्लाइंट्स हो या चाहे कुछ भी हो, मैं टेस्ट करता हूँ, आपको भी टेस्ट करना चाहिए। तो मैंने टेस्ट किया कि यार एक बार ना 3 गुना करके देखते हैं प्राइस, देखते हैं ये देता है नहीं देता। तो मैंने ना टेस्ट किया और मैंने कहा कि 30,000 नहीं, मैं 90,000 चार्ज करूंगा मैं इस महीने, मतलब अब से। तो वो रेकरिंग पे 90,000 देने के लिए एग्री हुआ। क्यों? क्योंकि वो उससे ज्यादा रेवेन्यू, कई ज्यादा रेवेन्यू बना रहा था। अगर कोई बंदा 10,000 रुपये स्पेंड कर रहा है ऑन एड्स ऑन अ डेली बेसिस, तो यानी कि 3 लाख रुपए वो महीने का स्पेंड कर रहा है। तो 3 लाख अगर स्पेंड कर रहा है, अगर उसका 10 भी आ रहा है, तो दैट मीन्स कि वो 90 तो तुम्हें दे ही सकता है। तो मैंने ऐसे कैलकुलेशन निकाला, तो ही वॉज रेडी टू पे इट। तो ये इंडियन क्लाइंट है, तभी मैंने, हम सब देख रहे हैं यहाँ से इंडिया से, तो मैंने इंडियन क्लाइंट का ही एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। और मेरा लेटेस्ट क्लाइंट जो है वो अभी मैंने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया है, बीएनआई, शायद बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता भी होगा, क्योंकि टाइमलाइन डोमिनेशन में आई थिंक एक्सप्लेन भी किया है इसके बारे में हिमांशु ने, आई थिंक। टाइमलाइन डोमिनेशन में भी एक्सप्लेन्ड है, और अभी आज के सेशन में भी मैंने लोगों को बोला था बीएनआई ग्रुप्स ज्वाइन करो, वहां से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज के सेशन में मैंने बताया था लोगों को। बढ़िया, ठीक है। तो मतलब लोगों को आइडिया है ऑलरेडी बीएनआई क्या है। तो यहाँ पे आपको बीएनआई ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो आप अपने पास किसी भी बीएनआई से लोकेशन पे जा सकते हो। अदरवाइज आपको नहीं पता है तो आप मेरे से कनेक्ट कर लेना, या सौरभ सर से डायरेक्ट कनेक्ट कर लेना, या उनकी टीम में से किसी के साथ कनेक्ट कर लेना, एंड दे विल रेफर यू जो बीएनआई जा रहा है। और फिर वहां पे आपको रेफर कर दिया जाएगा उस लोकेशन पे। मान लो आप पुणे में रहते हो और मैं दिल्ली में हूँ, तो भी आपको रेफर कर दिया जाएगा पुणे वाली लोकेशन पे। वहां पे क्या होगा, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो सिर्फ आप ही अकेले होगे जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा होगा उस पूरी लोकेशन में जहाँ पे आप जाओगे। बाकी सारे दूसरी इंडस्ट्रीज से होंगे, बाकी सारे दूसरी इंडस्ट्रीज से कनेक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपको रेफर किया जाएगा और अपने कनेक्शन से, और अगर वो लोग आपसे सर्विस नहीं लेंगे, बीएनआई मेंबर्स आपसे सर्विस नहीं लेंगे, तो वो आपको किसी ना किसी को ऐसे रेफर करेंगे जिनको सर्विस चाहिए होगी आपकी। तो वहां पे जाके आप ये चीजें कर सकते हो।
ठीक है, ये मेरा लेटेस्ट वाला था। और यहाँ पे मैंने ना एक कोच के लिए एक मैसेंजर बॉट के लिए ऐड चलाई थी, और हमारे को अराउंड 5 से 6 रुपए की पर क्लिक कॉस्ट पर क्लिक पड़ा था। और यहाँ पे देख सकते हो आप, 16,000 रुपये स्पेंड करके 2500 लोग आए थे, मतलब 2500 कन्वर्जेशन हुई थी। तो अराउंड कॉस्ट पर रिजल्ट हमारा आया 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, ऐसे ही आ रहा था। ऑन एन एवरेज ये आ रहा था। तो पोटेंशियल काफी सारे हैं, आपको बस फिगर आउट करना है कि आपके लिए कौन सी चीज काम करने वाली है। अब आप चाहे तो अपने सराउंडिंग में अपने सर्विसेज के बारे में बताओ। नो मैटर आप वेबसाइट डेवलपमेंट करते हो, अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट करते हो तो आप किसी ऐसे बंदे के साथ पार्टनरशिप करो जो वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं करता, ईमेल मार्केटिंग कर रहा है या एड्स चला रहा है। तो वो क्या रहेगा कि जिसको ईमेल मार्केटिंग चाहिए उसको एड्स चाहिए होगी, जिसको एड्स चाहिए उसको एसईओ चाहिए होगा। तो ये चीज मैंने हाल ही में इम्प्लीमेंट करी है, आप ये चीजें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और एड्स आप एक बार तब चलाना स्टार्ट करना, विच आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ एज वेल, अपने लिए, खुद के लिए, जब आपके पास इनफ रेवेन्यू हो। हाँ मतलब अगर जैसे पहले भी एक बंदे ने बताया था कि जैसे अगर आप 20,000 रुपये कमा रहे हो, आपके पास 10,000 रुपये हैं एड्स में लगाने के लिए, तो यू कैन डू इट। अगर आपका कोई ओवरहेड एक्सपेंस नहीं है, आप कर सकते हो, बिल्कुल करो ट्राई। जहाँ से भी क्लाइंट आए हमारे को क्या दिक्कत, राइट। तो यही है, मैंने काफी छोटा समराइज कर दिया है काफी जल्दी में। आ, काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी काफी सारी सर्विस, काफी सारी बातें एक्सप्लेन कर दी हैं जो कि मैं भी एक्सप्लेन करना चाहता था। आई जस्ट डोंट वांट टू रिपीट इट, इम्प्लीमेंट इट, रीवॉच दिस वर्कशॉप अगेन एंड अगेन, दिमाग में घुसा लो अच्छे से, क्योंकि काफी लोगों की लाइफ चेंज हुई है इन सब चीजों की वजह से पहले, और आज भी चेंज होएगी। एंड आई कैन सी अराउंड 250 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, 250 में से एटलीस्ट 10% का कन्वर्जन रेट तो चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, मतलब 10% यानी कि 25 लोग तो एटलीस्ट यहाँ से सक्सेस होके जाने चाहिए इस वर्कशॉप में। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। It's going to be the number of people who are going to implement all the learnings at the end of the day. And they will keep doing it consistently. They will not worry about कि पहले दिन implement करा, दूसरे दिन implement करा, एक हफ्ता implement करा, एक महीना implement करा, और अगर उससे result नहीं आए, let's suppose immediately, तो वो discourage नहीं होंगे, because everybody, us and everybody needs to realize that, our results are just around the corner. And maybe if not the 38th day, then maybe the 31st day. If not the 100th day, then maybe the day number 101. But ultimately, our job is to try one more day. At the end of the day, we just need to keep trying, and we need to analyze कि अभी तक मैं जो चीजें करी हैं वो कैसी work कर रही है. We need to look at the data. मैंने जो reach out करा, I mean simple little things in business. You will always have multiple inputs that you can look at very closely. For example, मैंने ad चलाया, तो मेरे ad पे कितना open rate, मतलब कितना click rate आया. क्लिक रेट आने के बाद कितने लोग मेरे लैंडिंग पेज पे गए, कितने लैंडिंग पेज पे जितने लोग गए वहां पे कितने लोगों ने साइन अप करा, साइन अप करने के बाद कितने लोग मेरे वेबिनार पे आए या फिर मेरी मीटिंग पे आए, वहां से कितने लोगों ने कन्वर्ट करा. आई मीन you have the numbers in your hands. So every single time when you have the numbers in your hands, you know कि कहाँ पे आपको improvement का requirement है. There is no guesswork over here. You're not going in an unknown territory जिसमें आपको कुछ पता नहीं है. You know all these strategies, you implement these strategies, you keep repeating it, and automatically you will know you will have the exact data where do you need the improvement. You keep on improving that, you keep on improvising that, and automatically your work will keep on scaling. Every single little minor improvement, a minor improvement over here जो आपने अपने ad copy improve करा, थोड़े से click rate उससे बढ़ गया. A little improvement in your ad का creative, थोड़ा सा click वहां से बढ़ गया. A little improvement in your landing page, आपके leads आनी वहां से ज्यादा हो गई. A little improvement in your pitch, आपकी sales वहां से ज्यादा हो गई. And every single minor little improvement in every single piece of your entire funnel, that gives you the kind of results that is nothing but life changing. But again, for that to happen, we just need to be consistent, because at the end of the day, it is shared in all the presentations. वो इसलिए क्योंकि हमने सबको टेम्पलेट शेयर करा था, but again, it is shared in all the presentations that consistency beats everything, and that's what happens. So basically focus on the things जो ऑलरेडी आपके लिए काम कर चुकी हैं. अगर आप बिगनर हो तो आप मल्टीपल चीजें ट्राई कर सकते हो, कुछ भी, मतलब इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो. तो इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट करने का तरीका होता है. लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ जल्दी से, कि आप रियल एस्टेट लोगों के पास जा रहे हो, ठीक है. आप गए इंस्टाग्राम पे, आपने सर्च किया #रियल एस्टेट इंडिया, तो वहां पे जाके आपको काफी सारे ऐसे क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो कि रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं. आप उनको जाके रीच आउट करो, आप बोलो कि यार
ठीक है, आप ऑर्गेनिकली कर रहे हो, बहुत अच्छा है, मैं आपके लिए ऐड चला सकता हूँ, मैं आपकी ये वेबसाइट से कर सकता हूँ, मैं आपको ऑर्गेनिकली एसईओ भी ला सकता हूँ, या फिर मैं आपके लिए वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ। तो मेथड्स काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे आप ट्राई कर सकते हो। ये कुछ मेथड्स से जो मैंने ट्राई करे थे। रेस्ट आप आगे और भी बहुत सारे लोगों से सुनोगे कि क्या उन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया। मैं खुद काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ यहाँ पे, एंड इनफैक्ट मैं काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट भी करने वाला हूँ। सो या दैट्स pretty much it. Okay, so Karan, happy to see you. Happy to see you from the day when you became a part of our internship team back in 2018. And you know what? All of you can say special thanks to Karan right over here. क्योंकि आप सबको पता होगा हमने फ्लेक्सी फनल्स का डेवलपमेंट 2019 के एंड में स्टार्ट कर दिया था। यस, उसका लॉन्च 2022 में जाके हुआ था अगस्त में, लेकिन 2019 से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। And the very first person, the first ever person who started working on flexi funnels was Karan. So he was with me for next 1.5 years. He used to manage the entire backend support, testing, everything जो कि flexi funnels में हमने पहले 1.5 साल तक करी थी. He used to manage all of that. He hired a lot of interns जो कि जिन्होंने कि initially flexi funnels में work करा था. The support director in our team, Siddhant Saini. How many of you love Siddhant Saini? How many of you love his work? How many of you love the kind of support that he provides you inside the flexi funnels support members area and you know, in the chat area, right? So you know what? Siddhant Saini ki hiring Karan did. So there's like so much that goes behind the scenes that we don't even realize, and you know, so many minor little things that keeps on happening behind the scenes, and every single little big thing, it happens with the contribution of so many people and the contribution of so much of efforts that we keep putting on a daily basis. So Karan, really happy to see your growth, and let's keep doing what you are doing. Thank you so much. The credit goes to you. Thank you. चल मिलते हैं. Okay, so Vikas, you are there? I guess Yes, last sir. question left, right? Yes, sir. Okay, so we have 2 more sessions to go, and Vikas is with us. Vikas, try and open your camera. You should. It is disabled by host. Can you check it, please? अब देख. Yep. Hello. Hello, sir. How are you? Yes, I'm really good. How are you? Great, sir. Maybe lighting. चलो कोई बात नहीं. मैं प्रेजेंटेशन के साथ में शुरू करता हूँ. मैं प्रेजेंटेशन के साथ में शुरू करता हूँ अपना सेशन. और सबसे पहले ये कि मैं फनल्स और ऑटोमेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ. और करीब करीब 3 जुलाई को मैंने अपना फ्लेक्सी फनल्स लिया था. उससे ठीक 1 दिन पहले मैंने अपना क्लाइंट क्लोज किया था, फर्स्ट पेइंग क्लाइंट. तो उसके अगर स्टोरी पे चले तो मैं स्क्रीन शो हो रही है सर? हाँ हो रही है. सबसे पहले मतलब जो एसबी इनर सर्कल ग्रुप था, जो पहले जो काफी एक्टिव था, तो मे बी सब एसबी डूवर्स में शिफ्ट हो गया. तो उसमें क्या था कि एक पर्सन थे जिनकी मैंने पोस्ट देखी थी, जो कि बहुत बेसिक क्वेरी थी. उनके पोस्ट से ये लग रहा था कि वो कोई ऐसे पर्सन है जो कि जस्ट अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको भी ठीक से पता नहीं कि वो कैसे करना है सारा. तो फिर मैं जैसे उनके प्रोफाइल पे गया, प्रोफाइल से उनके पेज पे गया, और उनकी एड्स लाइब्रेरी में जो ऑप्शन होता है उसमें जाके देखा कि उनकी फेसबुक एड चल रही थी, लेकिन उसके अंदर कोई लैंडिंग पेज नहीं था. उन्होंने बस क्या किया हुआ था कि सिंपली उसके अंदर अपने फेसबुक पेज का यूआरएल दिया हुआ था लिंक की जगह पे. तो फिर मैंने जाके मतलब उनका व्हाट्सअप नंबर उनके पेज से लिया, उनको मैसेंजर पे मैसेज डाला, उनको व्हाट्सअप पे मैसेज डाला, और उनसे कनेक्ट हो गया व्हाट्सएप पे. और उसके बाद में मैंने उनको 3 मंथ्स की फ्री सर्विस ऑफर की थी. वैसे 3 मंथ्स की आप में से किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने बहुत ज्यादा टाइम की दे दी थी उसमें. 1 मंथ काफी होता है मतलब एक्सपीरियंस के लिए. तो फिर जो मेरा फर्स्ट पेड क्लाइंट है वो भी उनके रेफरल से आ गया था 9 दिन के, विद इन 9 डेज में भी
उन्होंने कनेक्ट करवा दिया था और डील कंफर्म हो गई थी वो। और 3 जुलाई को फिर मैंने उनकी वेबसाइट के लिए, उनके लैंडिंग पेज के लिए मैंने फ्लेक्सी बोनस को परचेज किया था। और इस तरह उसके बाद में मैंने टीडी से लर्निंग ले लेके साथ के साथ उनकी फाइनेंस वाला और जो सारा उनका मैं करने लग गया था। और उसके बाद में मतलब इनिशियली जब मैंने जो पहले क्लाइंट को जो सर्विस पिच की थी वो दरअसल यूट्यूब एड्स की थी। लेकिन यूट्यूब एड्स मेरे को भी इतना बढ़िया नहीं आता था, तो उसके बाद में वो फिर प्रोजेक्ट बाद में ये शिफ्ट हो गया था फेसबुक एड्स, फनल और ऑटोमेशन सर्विसेज पे। क्योंकि क्लाइंट भी शुरू करे थे तो उनको भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो वो छोटी छोटी मिस्टेक्स वो इग्नोर होती गई साथ के साथ में। और उसके बाद में अगर बात करें तो ये मतलब ये था कि मैंने अपना फर्स्ट क्लाइंट कैसे लिया था। तो फर्स्ट क्लाइंट जैसे मैंने ओवरऑल अगर ब्रीफ में बताऊं तो ऐसे भी इनर सर्कल में उनकी क्वेरी आई हुई थी। उसके बाद में मैं उनके पेज पे प्रोफाइल पे गया और वहां से मैंने देखा उनकी फेसबुक ऐड में क्या क्या मिस्टेक थी, और उनको जाके मैंने पिच की कि आपको ये आप ये मिस्टेक कर रहे हो, आप लैंडिंग पेज यूज नहीं कर रहे। अगर आप लैंडिंग पेज यूज करोगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। और अच्छी बात ये थी कि इनर सर्कल में सारे टीडी में नोड मेंबर ही है। तो फिर उसके बाद में उनको भी पता था कि लैंडिंग पेज की इम्पोर्टेंट है काफी। तो फिर उन्होंने वो कंफर्म कर लिया था, और उन्हीं के मतलब रेफरेंस से मुझे अपना पेड क्लाइंट मिल गया था। और उसके बाद में लगभग ये कि जैसे फनल ग्रोथ समिट हुआ था, उसके बाद उस टाइम पे क्या था कि मैं जो एसबी डोस ग्रुप है उसमें काफी ज्यादा एक्टिव था। तो वहीं से मुझे अपना जो हाईएस्ट टिकट क्लाइंट है वो मिला था। अभी तक मेरा हाईएस्ट टिकट क्लाइंट 35,000 का था, जिनकी मैंने फनल्स और ऑटोमेशन की सर्विसेज उन जिनको मैंने प्रोवाइड करी थी। और उस टाइम पे क्या था कि जैसे एक मैंने पैटर्न नोट किया होगी, जैसे जब जब सौरभ सर का कोई भी लॉन्च होता है, चाहे वो फ्लेक्सी फनल्स का लॉन्च हो, चाहे अपना फनल ग्रोथ समिट का लॉन्च हो, चाहे कोई भी लॉन्च हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ग्रुप्स है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो अगर आप उस टाइम अगर कंटेंट पुट करते हो तो उसमें से काफी ज्यादा आपको इनबाउंड लीड्स मिल जाती है, और बहुत मतलब एफर्ट काफी कम रहता है। वैसे तो आपको ये कंटिन्यूसली करते ही रहना चाहिए, बीच में इसको स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे लॉन्च हो चाहे ना हो। लेकिन इतना जरूर है कि जब लॉन्च है तो उस टाइम पे चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको क्लाइंट्स मिल जाए। और वैसे मुझे इनबाउंड से मतलब अपने जो हाईएस्ट पेइंग क्लाइंट है वो आए थे, वहां से मैंने बोर्ड किया था उनको। जस्ट मतलब पहले जैसे मैसेज किया उनको, और उसके बाद में जूम पे कनेक्ट हुआ और डील को कंफर्म कर लिया था। और मेरे लगभग ज्यादातर क्लाइंट्स मतलब फेसबुक ग्रुप से ही रहते हैं कि जैसे अलग अलग जैसे जो फेसबुक ग्रुप्स है, जो प्राइवेट कम्युनिटीज है, जिनका मैं कोशिश करता हूँ कि पार्ट बन सकूँ और उसके अंदर कंटेंट पुट करता रहता हूँ एवरेजली। और अगर किसी की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो उनको जैसे वहाँ पे उनकी जैसे प्रोफाइल में गया, उनकी प्रोफाइल में जाके उनकी वेबसाइट वगैरह पे गया, उनके लैंडिंग पेजेस देखे, उसमें जहाँ पे भी कुछ इशू वगैरह लग रहा है उनका कि हाँ इनकी इनके लैंडिंग पेज में ये इशू है, इनके फनल्स में ये इशू है, या यहाँ पे इनको ये ऑटोमेशन वगैरह यहाँ पे मिसिंग है, तो उनको वो जाके पिच करना। और ज्यादातर मैक्सिमम मैक्सिमम तो मेरे पास में जैसे इनबाउंड सी लीड सी रहती है कि जैसे भी अगर कोई कोच वगैरह मेरे को नजर आ रहा है किसी ग्रुप में कि हाँ ये मेरा टारगेट ऑडियंस है, तो उनको जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, उसके बाद में वो मेरे से कनेक्ट हो गए अपना स्टोरी से जैसे फेसबुक पे स्टोरीज वगैरह जा रही है, और जो पर्सनल प्रोफाइल पे जो कंटेंट जा रहा है वो उससे इंटरेक्ट होते रहते हैं। और उनको जब भी लगता है सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपने आप मेरे को मैसेज कर देते हैं। तो मैक्सिमम 9 बाउंड लीड्स ही आती है मेरे पास में, और वहां से मेरे पास में मतलब क्लाइंट्स आते रहते हैं। और अगर लास्ट क्लाइंट्स की अगर मैं स्टोरी की बात करूँ, तो लास्ट क्लाइंट जो था मेरा वो रेफरल से आया था, और लास्ट वीक इसी वीक की बात है, मतलब लास्ट वीक की। और जस्ट उससे मतलब क्योंकि रेफरेंस से थे तो उनका ट्रस्ट लेवल ऑलरेडी हाई रहता है। तो उनको जैसे जैसे कॉल पे डिस्कशन हुआ और नेक्स्ट डे उनसे डील क्लोज हो गई। और जूम पे मतलब जैसे नॉर्मली जैसे जूम पे कनेक्ट होके वो डील क्लोज हो गई। और उसके बाद में एक दो जो मिस्टेक्स जो मैंने देखी है एवरेज अगर मैं कहूँ, जो मैंने भी देखी है और अपने फ्रेंड्स की भी मैंने देखी है जो फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, तो वो ये मिस्टेक करते हैं कि जैसे कोई भी जैसे अगर उनकी डील वगैरह चल रही है, कोई भी डिस्कशन वगैरह चल रहा है, तो शुरू में क्या है कि बिना एडवांस के या फिर जो बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के जो डील कंफर्म करते हैं ना, उस वो एक बड़ा एक इशू है। क्योंकि जब अगर आपने कोई एडवांस वगैरह ले लिया होगा तो उसके अंदर आपका कोई जो क्लाइंट है उनका कोई कमिटमेंट नहीं है, वो आपके प्रोजेक्ट को सीरियसली भी नहीं रहते। और 1-2 वीक के बाद में जब आप उनको कॉन्टेक्ट करते हो तो आपका फोन वगैरह वो उठाना भी बंद कर देते हैं। तो ये एक मिस्टेक को अवॉइड करना चाहिए।
और जो टारगेटेड कम्युनिटी है ना, वो एक बढ़िया सोर्स है जहाँ से आप इनबाउंड लीड्स दे सकते हो, और उसमें एफर्ट काफी कम है, क्योंकि किसी और पर्सन ने अगर उस कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए न जाने कितनी एडवर्टीजमेंट दी है, कितने उसमें उसने हार्ड वर्क किया हो, और आपको वो मतलब इतनी इजीली मिल जाता है कि आपको जस्ट वहां पे जाके कनेक्ट होना और वहां पे सिर्फ ऑडियंस सॉरी कंटेंट को पुट करना है, तो वहां से आपको काफी इनबाउंड लीड्स मिल जाती है। इसमें ये काफी इजी प्रोसेस है जो मेरे लिए वर्क किया अभी तक का। और अगर एक जैसे एक क्लाइंट का मुझे याद है कि जिनके साथ में मतलब मेरी डिस्कशन वगैरह, मतलब उनके साथ में 3-4 महीने मतलब अच्छा मेरा वर्क चला था। फिर बाद में जैसे जैसे उनका बिजनेस ग्रो हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा उनको जो अपनी जो पेमेंट है उसको इंक्रीज करने के लिए बताया सर्विस चार्ज के लिए, तो उन्होंने उन्होंने शुरू में थोड़ा बहुत मना करते थे, और बाद में वो प्रोजेक्ट एक बार के लिए छूट गया था मेरे मुझसे। लेकिन जो सर्विस मैं उनको प्रोवाइड कर रहा था, वो मतलब उन्होंने 1 महीने के बाद में मुझे फिर से कांटेक्ट किया और बताया कि आप जैसी सर्विस दे रहे हो वो सर्विस मुझे और कहीं से मिली नहीं। उन्होंने 1 महीने के दौरान कई लोगों को ऑनबोर्ड किया होगा, और लेकिन उनको वो जो क्वालिटी थी वो उनको नहीं मिल पाई, तो उसके बाद में उन्होंने फिर से मेरे साथ में वर्क शुरू किया कर दिया। और ये एक चीज है, जब आप अपनी बेस्ट मतलब वर्क एथिक्स के काम करते हो और उनको क्लाइंट को अपनी वैल्यू प्रोवाइड करते हो, तो ये ओवरऑल मेरी जर्नी थी। और मतलब जो ये इतना ही है। थैंक यू। इतना ही नहीं है यार, आपने बहुत सारी चीजें शेयर करी है, और आपने वो चीजें शेयर करी हैं जो आपके लिए वर्क कर रही हैं और जिससे आपको रिजल्ट आ रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड फॉर मी अ फ्यू क्विक हाइलाइट्स। पहली चीज, कंटेंट डालना। कंटेंट डालना इन द सेशंस, इन द ग्रुप्स। आपने वो भी शेयर करा कि जिस समय ग्रुप सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो भी आपका एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है। एंड ऑफ कोर्स आई मीन एवरी सिंगल एंटरप्रेन्योर नीड्स टू रियलाइज द अपॉर्चुनिटीज व्हेन दे आर राइट इन फ्रंट ऑफ देम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड हमें हर समय तो कंटेंट डालना ही डालना है, बट एट द सेम टाइम व्हेन इट इज द हॉटेस्ट टाइम, देन ऑफ कोर्स वी नीड टू पुट मोर कंटेंट। या तो द चॉइस इज नॉट बिटवीन putting no content and putting content. The choice is between putting regular content versus more content. डालना तो है ही, लेकिन उस समय थोड़ा ज्यादा डालना है। दैट्स द होल पॉइंट। सो दैट्स नंबर 1। गोइंग इनटू द टारगेटेड ग्रुप्स, फेसबुक फ्लेक्सिबल वॉइस कम्युनिटी, आप वहां पे कंटेंट डालो, आप बाकी ग्रुप्स में कंटेंट डालो, अपने सोशल मीडिया पे कंटेंट डालो, वेयर एवर यू कैन फील लाइक। एंड देन यू आल्सो टॉक्ड अबाउट, आपने अपने क्लाइंट को देखा, मतलब जो आपके क्लाइंट बन सकते थे, आपने उन फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाके उनके लैंडिंग, वहां पे जाके आपने ये चीज नोटिस करी कि उनके पास लैंडिंग पेज नहीं है। So again, that is again a key observation. You always need to figure out the opportunity. You will always figure out, जब भी आप किसी को, let's suppose अगर सर्विस पिच करना है, I mean there are tons of services that a person can take from you, right? You need to be the person who can provide that services. If not, you need to be in connection with the person who can provide that services, and then you can bridge the gap automatically. So I mean there are so many services that a client can take from you, and you just need to look out for the opportunity. जिसने एक बंदे को एड रन करते हुए देखा, उसने वहां पे गया, वहां पे एड लाइब्रेरी, फेसबुक एड लाइब्रेरी, बाय द वे दैट्स अ फ्री रिसोर्स दैट इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। जितने भी फेसबुक पेज पे अगर कोई भी एड चल रहा होता है, आप फेसबुक की एड लाइब्रेरी में जाके उसे फ्री ऑफ कॉस्ट हर पेज के जो उनके एड चल रहे हैं उनको देख सकते हो। आई मीन जस्ट लुक एट देयर एड्स, suggest them the improvements, and then look out for these many little things. For example, जैसे विकास ने देखा, एक client है जिसका की landing page नहीं है, he just figured that out and offered the same service, and now that client is one of his best clients. Simple little things, that is what we need to do, and we need to do that consistently. That's what, again, repeatedly we need to do that consistently. And I love the fact that, because you also talked about the fact, do your work honestly, because that's what matters at the end of the day. The intent with which you do your work, the intent is, when the intent is to serve your customer, your client, in the best possible manner, चीजें अपने आप होती रहती हैं. That's the biggest intent that we need. All the other things, it's just a matter of consistency. Chal, happy to interact with you, Vikas. And Vikas, SR is asking, have you learned everything from FlexiFunnels? यस यस यस। ये मेरा फर्स्ट एवर कोर्स है जिसमें मतलब मैंने सारी चीजें सीखी थी, और शुरू से लेके बेसिक से लेके यहाँ तक कि जब मैंने अपना फर्स्ट क्लाइंट क्लोज किया था, तब तो मैंने फेसबुक ऐड का कुछ मुझे ज्यादा पता भी नहीं था। ये सारा मतलब क्लाइंट को क्लोज करने के बाद में साइमल्टेनियसली मैं ट्रेनिंग देख रहा हूँ,
वो साइमल्टेनियसली उनको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ के साथ देखा, साथ के साथ में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, मतलब एक तरीके से वो साथ के साथ चल रहा था सारा। तो विद इन 2-3 मंथ्स मतलब मेरे को अच्छा मतलब एक A to Z नंबर्स वगैरह वो आइडिया लगना शुरू हो गया था कि क्या वेबिनार का शो रेशियो है, उसके बाद में क्या उनका मतलब कन्वर्जन रेशियो है, कैसे उसको बढ़ाएं, उसके अंदर क्या क्या रिमाइंडर्स ऐड करने, क्या क्या उसके बाद में फॉलो अप जाने, वो सारी चीजें मतलब फ्लेक्सिबलनेस के अंदर, कम्युनिकेशन मास्टर के अंदर वो सारी दी हुई है ऑलरेडी। Right. You just need to watch it. You just need to implement the things. Results will come. Shall we, guys? Nice to interact. See you in next FGS with a bigger award. Sure, sir. Sure. Chal. Okay. Ravi, are you there? Yeah, hi sir. Hi Ravi, how are you? Yeah, I'm fine. कैसे Yeah. सर आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ यार. You are waiting since 5 p.m. Yeah, actually. Yes. So But I haven't made any PPT बाकी a लोगों की lot of तरह. things. Sorry? Yeah, I haven't made any PPT बाकी लोगों की तरह, but मेरे पास कुछ flexible आप लोगों को डैशबोर्ड पर अर्निंग दिखाऊंगा जो कि मैंने एक क्लाइंट के लिए जनरेट करा 40 days में. So actually I am working with some holistic health businesses and I'm into spirituality. So मैं भी spirituality को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए उनके साथ एक्चुअली विंडोज में ऐसे रहते हैं, एक व्हाट्सएप ऐप खुला होता है, ये मेरी जीमेल खुली, आप देख सकते हैं इसमें फ्लेक्सिबल में Ravi, we सेल हुई cannot है, see वो your आज की screen. है, ये देख सकते हैं 20 to 28 जो कि 10:30 के आसपास की है. Ravi, we cannot see your screen. ओके सर, लेट मी जस्ट शेयर इट. And तेरा वॉइस भी बीच बीच में कट रहा है यार. ओके, लेट मी जस्ट वेट. Hello. Yes. In fact, I'm very happy to see your first email. Yeah, that's what I wanted to show you. So these are recent sales जो कि 10:28 पे हुआ. ये जब से फ्लेक्सी फनल की ट्रेनिंग चल रही, जब से आ रही, देख सकते हैं 4:35 से स्टार्ट हो गई थी, 10 ऐसी चल. वाह, ये देखिए इसकी सारी सेल आ रखी है अभी थोड़ी देर पहले से. ये रोज का सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं मेरे यहाँ पे. कोर्स आप देख सकते हो, कोर्स में एक्चुअली द थिंग इज दैट मैं स्पिरिचुअल सेंटर गया था पहले, तो एक टाइम से काफी दिमाग से मैं टारगेट कर रहा था कि मुझे टारगेट करना है, तो मैं गया था. लकीली उनका था, वो उनके छोड़ के चला गया था कुछ एक्सवाइज रीजन से, उनका बिजनेस. बट आई शोड, आई टोल्ड देम दैट आई मेड फनल्स. Ravi, your voice is cracking. We cannot hear you. तुझे तुक्के से वो चीज मिल गई, उनके सीईओ चला गया, तुझे Ravi, we cannot hear you. Okay. I mean, we were not able to hear anything in the last 30-40 seconds. I don't know. Can you change the internet probably? Are you able to listen now? Is it audible? अभी आ रहा है, थोड़ा सा क्रैक हुआ था, लेकिन try and speak now. Yeah, actually I am into spirituality and मैं spirituality को बढ़ावा देने के लिए मैं spiritual लोगों के साथ काम करता हूँ. तो मैं फनल्स डिजाइन करता हूँ, वेबसाइट डिजाइन करता हूँ, कोर्स क्रिएटर की हेल्प करता हूँ जो कि होलिस्टिक हेल्थ एंड बिजनेस होते हैं. तो आवाज आ रही है मेरी आपको सबको? अभी आ रही है, बेटर है. या तो यही है कि मैं एक स्पिरिचुअल सेंटर गया था, वहां पे क्या हुआ था, उन XYZ रीजन से उनका सीईओ छोड़ के चला गया था, तो उनका बिजनेस एकदम से जीरो पे आ गया था. तो व्हाट आई डिड, मैंने काफी टाइम से वो स्पिरिचुअल सेंटर मेरे टारगेट में था, मैंने फिगर आउट कर रखा था उनकी क्या क्या सेल्स होती है, क्या क्या बैक एंड प्रोडक्ट्स है उनके, क्या क्या फ्रंट एंड प्रोडक्ट्स है, उसको फिगर आउट करके मैंने फनल डिजाइन करी थी. मैंने उनको पूरा लाइव फनल दिखाया कि आपका कैसे मैं बिजनेस जीरो से स्टार्ट करके कहाँ तक लेके जा सकता हूँ. तो अब आप लोग सोचेंगे, कई लोग सोचेंगे ये ऑल माइट बी थिंकिंग दैट भाई तुक्के से डील मिल गई, बट द थिंग इज दैट आई ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. और लाइफ में ना आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यू जस्ट नीड टू ग्रैब. बिकॉज पता है क्या होता है, आप
अपॉर्चुनिटी को तो ग्रैब कर लो, उसके बाद आप फिल्टर लगाओ कि भाई अपॉर्चुनिटी सही है या नहीं सही है। बट द थिंग इज दैट कि और अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती है, ट्रस्ट मी गाइस, एवरी अपॉर्चुनिटी आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। तो ये कोई हवा में उड़ के नहीं आती अपॉर्चुनिटी, जो आप हार्डवर्क करते हो उसी के बलबूते पे अपॉर्चुनिटी आती है। मैं दिखाता हूँ। तो उस बिजनेस के लिए मैंने सेल्स फनल्स क्रिएट करी थी आपको, जैसे या सो दीज ऑल आर द लैंडिंग पेजेस दैट आई हैव क्रिएटेड। सो देख सकते हो आप कितने लैंडिंग पेजेस, कितने वेरिएशंस हमने क्रिएट करे, कितने प्रोडक्ट्स के, कितने फ्रंट एंड प्रोडक्ट्स है और कितने उनके अपसेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। मैं दिखाता हूँ कि ये आज का रिवेन्यू चल रहा है अपना। ये कल 18,000 का था, अभी तक आज की सेल आई है नियर अबाउट 13,000। ओवरव्यू पे जाते हैं हम। मैं डायरेक्ट आप लोगों को रिजल्ट से दिखाता हूँ, जस्ट लोडिंग या। सो कस्टम रेंज में जाते हैं हम। 19 अप्रैल तक कुछ भी नहीं था। मैं आपको 1 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक का दिखाता हूँ कितना रिवेन्यू था, क्योंकि हमने उस टाइम पे स्टार्ट नहीं करा था, तो हमें कुछ फॉर ट्रस्ट पर्पस मैं आप सबको दिखाता हूँ। ये है INR 23, मतलब 23 रुपए का। ये भी टेस्टिंग पर्पस से हमने करा था। अब असली रिजल्ट हमारा स्टार्ट होते हैं, जो कि हमने 20 अप्रैल से लेके आज 1 जून, जो कि नियर अबाउट 40 डेज होते हैं, 41 डेज। तो आप देख सकते हैं मोर देन 5.6 lakhs का हमने कर रखा है। तो ये आप सब देख सकते हैं कितना रिवेन्यू आएगा, जस्ट 40 डेज में आया। तो द थिंग इज दैट मैंने इतनी ऑनेस्टली और हार्डवर्क के साथ काम करा, उनकी सारी फंडल डिजाइन करी। तो एक अपॉर्चुनिटी मुझे उन्होंने सजेस्ट करी कि भाई, उन्होंने ऑफर करा, उन्होंने बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर करी। उन्होंने मेरे रिजल्ट देखे कैसे मैं उनके लिए रिजल्ट ला रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे पार्टनरशिप ऑफर करी थी, जिनमें जितनी भी सेल्स मुझे फ्रंट एंड की आती है उसका रिवेन्यू सारा मुझे शेयरिंग करेंगे वो। देन जितनी मैं उनके एड्स लाता हूँ, मैं आपको एड्स दिखाता हूँ। फर्स्टली मैं आपको लैंडिंग पेज दिखाता हूँ। ये अपना लैंडिंग पेज है। प्रोडक्ट क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, इसमें ऑरा चेकिंग का होता है। देन ऑरा चेकिंग के बाद हमारे कोर्सेज डिजाइन है, जो अपसेलिंग होती है, जो कि अपसेलिंग होती है थ्रू थर्ड आई एक्टिवेशन कोर्स होते हैं। सो दिस इज द वेबसाइट, यू कैन सी this all the website, and this is kind of some not so long page. These all are the, you can see this is a landing page that I've created. These all are the testimonials for authority purpose to show. You can see these all the screenshot, these all the video, and these are the Facebook and Google reviews, and these are the FAQs and like that. And these are the checkout page. You can see these are checkout that I created, and these are the bonuses, and again, and these are the FAQs. So this is the जो बैकएंड में चल रहा है, ये सब काम चल रहा है। और फेसबुक एड्स का मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। फेसबुक एड्स को मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ स्टार्टिंग से। या तो अभी 28 मई को हमने 3-4 दिन पहले एड कैंपेन स्टार्ट करा था। तो ये एड कैंपेन है। या तो आप देख सकते हो 67 वेबसाइट कन्वर्जन आई हमें। 28 को स्टार्ट करा था, और पर कन्वर्जन हमें 106 रुपए की पड़ रही है, और अब तक हमने इस पे 7100 रुपए स्पेंड करी। तो हमें एक लीड 106 रुपए की पड़ रही है, और हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है 751 रुपीज। तो ये नियर अबाउट 12 ROS दे रहा है हमें, एंड वी आर हैप्पी विद दैट। बट हम स्टार्टिंग पे कर रहे हैं। अब अर्निंग पर्पज दिखाऊं तो जैसे कि 40 डेज का हुआ है, 751 की हमारी पर डे हमारी 10 to 12 आ रही, तो एवरेज 10 लेके चले। तो एक दिन की मेरी इतनी इनकम है, 30 से हम करते तो एक महीने की मोर देन 2 lakhs है। और कंसिस्टेंसली हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं। अभी मैं एड बजट हमें इंक्रीज करना है, तो मेरा टारगेट है 50 लीड्स का पर डे का, जो कि एक दिन की हमारा इतना रिवेन्यू होगा, और पूरे एक महीने का मेरा इतना रिवेन्यू होगा, जो कि मोर देन 10 lakhs है। तो ये मेरा उन्होंने ये पूरा, ये हमारी बिजनेस डील हुई है कि जो भी फ्रंट एंड की हमारे लीड्स आएगी, वो मैं उनका रिवेन्यू शेयर करूंगा उनके साथ 100%। बाकी वो आगे अपसेलिंग होगी वो उनका। तो यही है, छोटा सा था, बट मोटिवेशन कुछ नहीं है इसमें। बस ये है कि बस ट्राई करते जाओ। क्योंकि काफी टाइम से पता क्या होता है, आप लोग रीच आउट तो काफी लोगों को करोगे। ये लोग पता क्या सोचते हैं, आप रीच आउट तो करोगे, वो मैसेज भी देख लेंगे, वो सोचेंगे भाई हवाबाजी चल रही है, हवा में बातें चल रही है कि मैं तेरे लिए वो कर दूंगा वो कर दूंगा। आप लोग उनको दिखाओ। आपने डोमेन ले रखा होगा, नहीं ले रखा, आपके फ्लेक्सी का डोमेन मिला होगा, सब डोमेन क्रिएट करो,
उनके लिए फनल्स डिजाइन करो, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में फनल्स डिजाइन करो, उनके लिए डेमो प्रोडक्ट दिखाओ, उन्हें दिखाओ, इंस्टेंट की हवाबाजी करो, तो उन्हें प्रोडक्ट दिखाओ कि भाई फनल ऐसे क्रिएट होती है, ये सब फनल मैंने करा है, और ऐसा दिखाओ कि भाई तुम ही हो मार्केट में, और कोई नहीं है, और कोई नहीं कर सकता, तुम ही कर सकते हो। और सच कहूँ, अगर किसी ने अभी तक कोई निश सिलेक्ट नहीं करी ना, बट स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ, इसमें लोगों को इतना नहीं आता, क्योंकि सब लोग अपने बिजनेस में लगे होते हैं, उनको भाई होता है कि भाई हम अपने बिजनेस में फोकस करें, आप लोग हमारा बिजनेस संभालो। तो यही है, ऐसा कुछ नहीं है कि एचबी सर ने ना, सौरभ सर ने, राहुल सर ने अपने कोर्स में सब कुछ बता रखा है, बस उनका उन्हें भी पता है कि हम लोग जो बताएंगे वो उनसे एक्स्ट्रा नहीं बता सकते, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि इतने साल से वो काम कर रहे हैं। आप लोग कोर्स देखो, दोबारा देखो, अगर देख लिया तो मैं भी रोज देखता हूँ कोर्स, कुछ ना कुछ कंटेंट में से मिस आउट हो जाता है, मैं भी कोर्स देख चुका हूँ सारा, लेकिन रिपीटेड में देखता रहता हूँ। क्यों देखता हूँ? क्योंकि एक टाइम आता है कि तुम्हें अपने ऊपर भी थोड़ा ईगो आता है कि आई नो ऑल अबाउट दिस, इसलिए तुम उस चीज को मेंटेन करने के लिए मैं रोज कोर्स देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि जितनी बार कोर्स देखोगे, जैसे आप कोई मूवी होती है, आप रिपीटिंग मोड में देखते हो, तो उसे ऐसा नहीं है कि एक बार देख ले छोड़ देते हो, आप उस मूवी को एंजॉय करते हो, रोज देखते हो, रोज नहीं तो काफी बार देख लेते हो। तो ये है कि ऐसी कोर्स को देखते रहो, सब कुछ कोर्स में है। इवन मैं और जितने भी लोग अभी तक आए हैं, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बताया हो, जो ऑलरेडी एसबी सर ने कोर्स में बता रखा है। ये कोर्स अभी भी खुला हुआ है, देख सकते हो आप। मैं रोज कोर्स करता हूँ, कोर्स की कुछ ना कुछ वीडियो देखता हूँ, जो भी मुझे पसंद आती है, क्योंकि मैं सारा कोर्स देख चुका हूँ। ये मेरा रोज की ये सारा मेरा डैशबोर्ड ये होता है, व्हाट्सएप वेब, ईमेल्स, फ्लेक्सी का, चैट जीपीटी जिसके थ्रू मैं फेसबुक एड कॉपी क्रिएट करता हूँ, टेलीग्राम, कैनवा, फेसबुक ग्रुप, मेटा, और लैंडिंग पेजेस, बस यही होता है सारा मेरा। सो यही है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है, तो यही शेयर करना था, ऐसा कुछ नहीं है या Ravi, happy to see your presentation and you have shared अभी पारस वघेला का एक कमेंट आ रखा है कि रवि ने बहुत सारी चीजें, इतनी सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर करी हैं, सो मच या ट्रांसपेरेंट एंड मतलब ऑनेस्टली यू आपने लैंडिंग पेजेस भी दिखाए, आपने एड्स भी दिखाए एंड रवि, लेकिन I have a quick piece of advice for you. Right now या you have partnered with people जिसमें कि you are getting the percentage on the front end. या अभी जो पार्टनरशिप हो गई है, दैट इज नाइस एंड गुड इनफ, लेकिन नाउ यू नीड टू पार्टनर विद पीपल जिसमें आपका जो पूरा फनल का वो पूरे का आपको रेवेन्यू शेयर मिलना चाहिए। सो मेक या श्योर नेक्स्ट पार्टनर दैट यू वर्क, बिकॉज अभी आपके पास सोशल प्रूफ है, अभी आपके पास रिजल्ट्स हैं दिखाने के लिए, तो जो पर्सन जीरो पे है उसको अगर आप पिच करोगे और जब उसके साथ आप पूरे फनल की डील करोगे तो दे वोंट माइंड। एंड ऑनेस्टली इट्स गुड बिजनेस फॉर देम, इट्स गुड बिजनेस फॉर यू, क्योंकि या अगर आप भी ओवरऑल कन्वर्जन्स में इंटरेस्टेड हो, अगर उसमें आपका छोटा सा शेयर है, देन यू नो व्हाट, इवन आप भी ज्यादा एफर्ट डालोगे, मे बी थ्रू आउट देयर फनल आप उनकी रीमार्केटिंग करने में ज्यादा हेल्प करोगे, आप या उनको और ज्यादा स्ट्रैटेजीज लाके दोगे जिससे कि उनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा बाय बाय पेइंग, आई मीन लेट्स सपोज जस्ट बाय गेटिंग वन मोर एक्स्ट्रा सेल फॉर देम, मे बी उसमें से 50% आपके पास आ जाएगा। आई मीन ओवरऑल परसेंटेज का अमाउंट अगर मैं सारी सेल का निकाल के डालूं, लेकिन दे विल बी मेकिंग मोर मनी, यू विल बी मेकिंग मोर मनी। So, you know, for the next client onward, you start charging for the full funnel in terms of the percentage. या वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू दैट, देखिए आप कितने सारे वेरिएशन, अभी जैसे आप देख सकते 28 मई को हमने स्टार्ट कर लिया, कन्वर्जन हमें काफी अच्छी आ रही है, और देख सकते अभी तक लर्निंग स्टेज में ही अपनी एड कन्वर्जन, और देख सकते एक ही एड के कितने वेरिएशंस बनाए हैं, कितने एड सेट्स, कितनी एड्स क्रिएट करी है। तो यही है, आप लोगों को वेरिएशंस पे काम करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा लैंडिंग पेज आपका काम कर जाएगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सबसे ज्यादा कन्वर्जन हमें ये वाला दे रहा है, ये लैंडिंग पेज है मेरा दूसरा, ये वन वन ये है, सारे 4 लैंडिंग पेजेस है, उसकी 4 में भी 3-3 कैटेगरीज है, तो टोटल 12 एड चल रही है। मैं आपको फेसबुक एड लाइब्रेरी भी दिखाता हूँ, अगर मैं अपना I'm not sure why this question is coming. Keshav is asking chat GPT का use भी दिखा दो. Sushil is saying, can you share how you create ad copy with chat GPT? Sushil and Keshav, just last week मेरे YouTube चैनल पे 4 घंटे की ट्रेनिंग मैंने डाली थी हाउ टू यूज चैट जीपीटी, and it is also there inside the FlexiFunnels members area. It's there, everything is covered inside the FlexiFunnels members area. आप content देखो तो सही, you are waiting for some magic sauce, it's there already. अभी देखो आप 21 एड चल रही है हमारी करंट अभी भी, जो कि आप देख सकते हो, ये स्टार्ट करी मैंने 31 मई को,
एंड ये 27 में की रात को, जो कि 28 मान सकते हो। तो ये सारी एड्स अभी 21 एड चल रही है हमारी, एक ही लैंडिंग पे, 4 लैंडिंग पेज के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए चल रही है। आप देख सकते हो कितने वेरिएशन पे काम करना पड़ता है, तभी रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो यही है बस, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बट आपको यही थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा। And that is where you get the results. I mean, see, there are 3 categories of people. Number 1, जो कि effort नहीं डालते, that is okay. Number 2, जिनके लिए मेरे को बुरा लगता है वो ये जो कि थोड़ा effort डालते हैं, and after putting some effort they don't put that extra 10% effort, and that is what matters a lot. I mean, see यार, अभी सेशन को करते करते 6.5 घंटे होने वाले हैं, and probably अभी आधे घंटे करीब और चलेगा. I could have easily said कि अभी नहीं करेंगे. I'm not selling anything over here. I'm not pitching anything over here. I mean, it's just for value sharing. But at the same time, you need to remember कि यार वो extra effort, it goes a long way. I know for a fact कि if I am the person who is able to share value, कहीं ना कहीं down the line, I have such a powerful product, we have such a powerful product, there is no choice. You will become a part of that. Because if you want to make tons of revenue online, results online, then FlexiFunnels, timeline domination, ये combination आपको चाहिए. So I'm not afraid of sharing all this value with you. And that's what happens. You become the person who is sharing the maximum value in your community, and you go the extra mile every single time. There is no way you are not going to be successful. There is no way. But you need to be that person, that extra mile. जैसे अभी यहाँ पे रवि ने करा है, landing pages के variations बनाए हैं, ads के variations बनाए हैं. All these things, they matter a lot. They matter a lot. All these things, these are the only things that matter at the end of the day. Going that extra mile. Good, Ravi. Happy to see that. But implement what I just shared with you. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks all to you, SB and Arvind, sir. Thank you so much. Thank you. Okay, so Ajay, Ritik. राम राम बड़े भाई। राम राम। क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। वो का है अवार्ड का है? अवार्ड उस साइड है, दूसरी दीवार पे। अच्छा, यहाँ पे आप हो। अरे दिल के करीबी सारे। जी धन्यवाद। यहाँ पे राहुल भैया। हाँ देख लिया मैंने। अरे हाईलाइट करना था तभी तो रखा भैया। ओके, लेट्स स्टार्ट। सही, चलो स्टार्ट करते हैं ना। अभी मैं और अजय भाई, वी आर डूइंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग, वी आर डीलिंग विद डॉक्टर्स एंड कोचेस। तो हमारा जो फर्स्ट एवर क्लाइंट था वो हमने क्रैक किया था 2021 5th मंथ के अंदर, जो यूएस से थे, रोन रिज, और ये माई फेशियल एक्सपर्ट थे। इनको हमने सिंपल एक मैसेज के साथ अप्रोच किया था, जो मैंने साइड में स्क्रीनशॉट लगा रखा है। हे रोन, जस्ट वंडरिंग इफ यू आर एबल टू जनरेट लीड्स फ्रॉम ऑनलाइन मार्केटिंग। मेरा जो भी है मेथड अभी तक का वो यही है, जैसे भी अप्रोच कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन जरूर डाल दे रहा हूँ सामने वाले के पास और थोड़ा सा अप्रिशिएट कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा थोड़ा बहुत बात हुआ, देन वी केम टू जूम कॉल। हमने जूम कॉल पे बात की, सेम डे ही हमने इनको क्लोज कर लिया था। इनका हमने स्टार्ट किया था वेबसाइट डेवलपमेंट से। वेबसाइट के बाद हम इनके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आए, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बाद हम इनके फनल बिल्डिंग पे आए, देन हम इनके सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे आ गए थे। तो ये सारा फ्लो इनके साथ चला था। और उसके बाद हमने जो हमारे हाईएस्ट टिकट क्लाइंट रहे हैं आज तक के, वो रहे हैं डॉक्टरप्रेन्योर एकेडमी वाले। इनका हमने डायरेक्ट हमने अप्रोच नहीं किया, ये हमारे पास रेफरेंस आए थे, जो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज था बैक इन 2021, जब हम लर्निंग फेज के अंदर थे अपने। तब हमारे पास मतलब काफी लोग थे जिनके साथ अच्छी जानकारी थी। तो एक अब्दुल्ला अंसारी भाई करके हैं, उनके थ्रू हमारे पास ये रिकमेंडेशंस आए थे और इनका हमने स्टार्ट किया था एक पेज से। इनका एक फर्स्ट फनल बनाया था, सबसे पहला काम इनके साथ जो किया था वो फनल बिल्डिंग का था, जिसका हमने चार्ज किया था 18,000 फॉर अ फनल। देन हमने इनका टीचेबल सारा मैनेज किया, उसके बाद एड्स भी रन किए इनके साथ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी किया। अभी सारा का सारा टीम ये इन हाउस ले आए थे जैन के अंदर, तब इनके साथ हमारा वर्क छूट गया था। देन अगर हम बात करें हमारे लेटेस्ट क्लाइंट की, तो अभी उसके अंदर कंफ्यूजन है। ये भी कह सकते हैं कि आज जब भाई ने कहा था, सौरभ भाई ने कहा था कि तुम लोग फॉलो अप करो,
तभी जो यहाँ पर अमंग 30 स्पीकर्स थे, उन्हीं में से एक को मैंने मैसेज किया था। मेरी उनसे कल मीटिंग हुई थी और उनका कहना ये है, मैं मोल्डिव से आने के बाद स्टार्ट कर रही हूँ, और भाई समझ गए मैं किनका कह रहा हूँ, ठीक है। और उससे पहले मैंने आचार्य कार्तिक जी है जयपुर के, इनको सिंपल एक इस मैसेज के साथ अप्रोच किया था, थोड़ा सा रिजल्ट दिखाया था। देन इनका कॉल आया था मेरे पास लगभग 11 बजे रात को, और 11 बजे कॉल आने के बाद इनका सिर्फ ये पूछना था कि हम एक बार जूम पे आ सकते हैं। देन आई अग्रीड। हम लोग जूम पे बैठे लगभग आधा घंटा। इन्होंने मेरा कोई स्टैट्स नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, ये पहले से मेरी रिसर्च करके आ रखे थे। उसके बाद थोड़ी बहुत एक अलग कम्युनिटी की बात चली, जहां पर जब कम्युनिटी की बात चली तो कुछ बड़े बड़े नाम आगे आए, और जो जो नाम इन्होंने लिए वो सभी मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में थे। मैं बताता गया, इनके साथ मैं वर्क कर चुका था, तो इनका सिर्फ यही कहना था, प्राइस वराइस कुछ नहीं पूछा, मेरे साथ भी वर्क स्टार्ट कर दो। इतना काम यहाँ पर हम क्लोज कर चुके हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और थी कि जब ऋतिक ने इन्हें फर्स्ट मैसेज किया, उसके बाद इन्होंने टोटल सोशल मीडिया पे हमारे बारे में रिसर्च किया। जो भी चीज आपकी वजह से और लोगों की वजह से जो भी हमने कंटेंट क्रिएट किया या जो भी सक्सेस स्टोरीज है अभी तक, वो सब देख के उन्होंने रिसर्च किया, और वो ऑलरेडी क्लोज थे। जस्ट उन्हें एक बार हमसे 1 to 1 बात करनी थी, ये समझो, ये चीज हुई वहां पे। तो ये बेनिफिट हुआ सोशल मीडिया पे कंटेंट आने का भी। ऋतिक, अभी मेन हमारा जो भी चल रहा है वो यही चल रहा है कि नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। जब आप अच्छे लोगों को जानते हो, अच्छे लोगों के साथ बैठते हो, तब आपके पास क्लाइंट्स आते ही आते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको आउटरीच करना पड़े। जैसे अब मेरा ये 4th जो केस स्टडी है यहाँ पर, वो ये है, ये भी रेफरल से है। ये वाले क्लाइंट मेरे पास आए हैं डॉक्टरप्रेन्योर अकेडमी से। डॉक्टरप्रेन्योर अकेडमी आए मेरे पास अब्दुल्ला अंसारी की ओर से। तो जब आप अच्छे रिजल्ट्स दोगे लोगों को, तो अपने आप लोग आएंगे, आपको रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप कम नंबर ऑफ क्लाइंट्स के साथ भी वर्क करोगे तो भी आपका काफी अच्छा चलेगा। बट आपको काम जो भी करना है वो करना है आफ्टर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। जब तक आपके पास रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो मुझे कुछ ही दिन पहले भाई से पता लगा था, राहुल भैया ने कहा था कि अगर कुछ चीज रिटर्न में नहीं है तो ये मान के चलो आपने काम किया ही नहीं है। जिसका ये कह सकते हैं कि रिजल्ट अभी हम देख चुके हैं 1-2 दिनों में ही। तो जो भी आप काम कर रहे हो वो रिटर्न ही लेके चलो, और कभी भी इमोशंस के साथ वर्क स्टार्ट मत करो। मेरा तो ये कहना है। और लास्ट मैसेज यही है, सर्व योर क्लाइंट सो वेल दैट दे गिव यू अ लॉट ऑफ रेफरल्स आते रहेंगे, और आपकी लाइफ ईसीजी ग्राफ की तरह कभी ऊपर कभी नीचे चलेगी। अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे। तो बस जो भी करना है, ईयरफोन लगाओ, गाने बजाओ और टूट पड़ो जी। अब भाई बोलेंगे, बस मेरा तो हो लिया। तो भाई यही चीज है, ईसीजी ग्राफ वाली जो बात थी वो मैंने स्पेशली ऐड करवाई थी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप अपने करियर के पीक पे हो, आप उससे ज्यादा क्लाइंट संभाल ही नहीं सकते। बट उसी में भी कई बार क्या चीज हो जाती है कि क्लाइंट आपको छोड़ के चला गया, आप उन पे डिपेंडेंट थे, और आपका वहां पे वो नहीं था, एग्रीमेंट नहीं था रिटर्न। उसके कारण जो मतलब ये कह सकते हो कि फाइनेंशियल जो है वो आपके बिगड़ जाते हैं। बट पाइपलाइन में भी आपको लोगों को रखना जरूरी है, और वो कैसे होगा, जब आप लोगों से कांटेक्ट करते रहेंगे तो आपको वो भी कभी दिक्कत नहीं आएगी। सौरभ भैया, आप इस पे कुछ ऐड ऑन करना चाहें? आप कांटेक्ट करते रहे। मैं वही सोचा था, तुम दोनों भाइयों में से किसने डाली है वो वाली लाइन लास्ट में? कौन से वाली? आरंभ प्रचंड वगैरह वगैरह। ओ मैं हूँ। आपको पता है कुछ बहुत अच्छी लाइन नहीं थी जो इतना चौड़े में तू बता रहा है कि मैं तुम मेरा कौन सा काम है जो अच्छा और मैंने चौड़े में ना बताया हो। So the good thing is कि जो यहाँ पे है, again 2 things. Number 1, you give good results to your customers, you give good results to your clients. That's like the biggest marketing that you can do for yourself. And again, you put the content and you put the ads out there. That's where again अभी जो ये अपने clients को भी result आके दे रहे हैं, at the end of the day they are running ads for them, they are getting customers, they are happy with their service, with their service. तो उसकी वजह से वो अब बाकियों को भी रेकमेंड कर रहे हैं, उनका काम बढ़ रहा है, इनका काम बढ़ रहा है, एंड दे आर लर्निंग दी स्ट्रैटेजीज. What the exact same strategies what you learned today in this session, they learned the exact same strategies, they implemented the exact same strategies, and now they're getting the results. And this is the exact same thing that you need to do. At the same time, they would have learned a lot more strategies in today's session, and अब वो जाके वापस उसे implement करेंगे. But the biggest strategy of them all is when you have started working with your customers, when you have started working with your clients, you work double hard to provide them with the results,
जितना हार्ड आपने उनको क्रैक करने के लिए वर्क करा था. That is the biggest strategy of them all. People put a lot of efforts in cracking the customers, in cracking the clients, in cracking the deals. But then वो थोड़े से ठंडे हो जाते हैं when it comes to service them, when it comes to serve them. That is the time when you need to work double hard. And that is where, you start getting amazing customers, loyal customers who want to stay with you. And they are more than happy to pay you anything. They just become, a part of your community. They just become a part of your life, and they would like to stick with you like over and over and over again. That's what you need to do. So simple life lessons, simple work lessons. That's what we need to do, right? Chal, thank you so much. Milte hain soon. Okay, so we have Feroz with us. All right, Feroz, you need to unmute yourself. आवाज आ रही है सर? Yes, we can hear you. कैसे हो सर? अच्छा दोस्त, आप बताओ. ये your background is something जिस वजह, yeah, you can change the background. जी, मैंने इसलिए पूछा था आपसे कि आप कैसे हो, काफी टाइम से बैठे हो, मैंने सोचा पूछ लें. नहीं, अच्छा करा पूछ के. एंड मैं अच्छा हूँ, एंड थोड़ा सा टायर्ड एज ऑफ नाउ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंटरेक्शन आई एम ऑल पम्प्ड अप. एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट अगेन, जो चीज अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, इट्स द एक्स्ट्रा 10% एफर्ट. सो वही कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू डू. यस. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस महसूस कर रहा हूँ. एक तो योगेश भाई 7 बजे का बोल के 11:30 बजे तक खींच के लेके आए. उसके बाद इतने सारे दिग्गज लोगों को सुनने के बाद मेरे को खुद से फीलिंग आ रही है कि भाई अभी तूने कुछ नहीं उखाड़ा. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं लाइक प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ. मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस फिरोज, वी कैन सी. ठीक है. सो हाय एवरीवन, मेरा नाम फिरोज पॉल है और मैं एक फनल डिजाइनर हूँ पिछले 9 महीने से. और मैं यहाँ कुछ सिखाने नहीं आया, बट जो प्रैक्टिकल चीजें मेरे साथ हुई हैं, जो मैंने चीजें की हैं, जिससे मेरे को जो रिजल्ट आए हैं, वो मैं शेयर करने वाला हूँ. तो तो मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट था, जो कि हाईएस्ट टिकट क्लाइंट भी था, वो मैंने क्रैक किया था. और मेरे को 2 महीने लगे थे. रेगुलर मैं पोस्टिंग कर रहा था ग्रुप्स में, लाइक कनेक्शन बना रहा था, अपनी पर्सनल प्रोफाइल को बिल्ड कर रहा था. एंड उसके बाद जाके फिर मेरे को एसबी जो डूअर ग्रुप है, उससे मेरे को पहला क्लाइंट मेरा मिला. और कैसे मैंने क्लोज किया, मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको कि मैंने क्या डाला था. तो बेसिकली लाइक ये मैंने एक पोस्ट डाली थी सितंबर मंथ में, और जिसपे 51 लाइक्स आए थे, 32 कमेंट्स आए थे. तो मैंने बेसिकली इसमें बताया था कि मैंने 2 महीने में कितना कुछ इम्प्रूव किया है, थोड़ा सा डिजाइनिंग में क्या कुछ किया है. तो उसके बाद मेरे को लीड आती है लाइक मेरे मैसेंजर पे, और मेरे से वो पूछते हैं कि मैंने आपकी लाइक ग्राफिक्स देखे हैं, जो डिजाइन देखा है, क्या आप ये सब बनाते हो. तो उन्होंने मेरे से पूछा और थोड़ी चैट हुई. फिर मैंने उनको बताया कि मैं ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूँ, मैं एक फनल बिल्डर हूँ. और तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप मेरा एक बार ये जो लिंक है इसे चेकआउट कर कीजिए और मेरे को सजेस्ट कीजिए. तो मैंने प्रॉपर वो लाइक चेकआउट किया और एक लॉन्ग वीडियो बना के उनको प्रॉपर पॉइंटर्स में उनको बताया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कमियां हैं. तो उनको वो पसंद आया. उन्होंने मेरे से व्हाट्सएप नंबर मांगा और अपना भी शेयर किया. तो उन्होंने बोला कि आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो या अपना नंबर मेरे को दे दो, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा. देन फिर मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया. वो वाली चैट में यहाँ पे नहीं लगा पाया, बट मैसेज पे बात हुई. मैंने उनको इनवाइट किया सेल्स कॉल के लिए, 1-on-1 कॉल के लिए. और ताकि मैंने उनको बोला कि मैं थोड़ा डीपली जानना चाहता हूँ आपके बिजनेस के बारे में, और लाइक
मैं शेयर करूंगा कैसे मैं वैल्यू एड कर सकता हूँ आपके बिजनेस में, थ्रू फनल्स। तो प्रॉपर एक सेल्स कॉल हुई, मैंने उनको सब चीज़ें शेयर की और मैंने इवेंचुअली उनको क्लोज किया $750, फर्स्ट एवर क्लाइंट। मैंने 17 सितंबर मतलब लाइक 7 सितंबर को उनसे मेरी कॉल पे बात हुई और सारी चीजें शेयर करने के बाद 10 दिनों के बाद उन्होंने डिसीजन लिया और लाइक वो क्लोज हो गए। समझने वाली बात उसमें सिर्फ इतनी थी, मैंने कॉल पे जाके उनको कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं बताई, कुछ वादे ही नहीं किए, बस मेरे को उनका वो पेन पॉइंट जो था, जो पेन था वो मेरे को समझ में आ गया था। तो बस उसी को लेके मैंने उनको बताया कि मैं इस तरीके से जो आपकी फनल्स हैं उनको मैं रिवैम्प करने वाला हूँ। तो सिंगल फनल के लिए फिर लाइक वो कन्वर्ट होंगे उसके बाद। और ये जो क्लाइंट थे ये राइट नाउ 4 to 5 लाख पर वीक जनरेट कर रहे हैं उस सिंगल फनल से, मतलब क्लोज अराउंड 14-15 लाख पर मंथ। उसके बाद लाइक लेटेस्ट क्लाइंट ये बहुत टाइम पहले मेरे साथ कांटेक्ट में थे, तो मैं जो भी लाइक कोई फनल में बनाता था तो मैं अपने कॉन्टेक्ट्स में जो भी कोचेज हैं उनको शेयर करता हूँ, जो मेरे रिजल्ट्स मेरे को आते हैं, मेरे क्लाइंट्स को आते हैं वो मैं शेयर करता हूँ। तो मैं ऐसे इनको शेयर करता था, तो इनका जब टाइम आया तो उन्होंने मैसेज किया कि जस्ट वांटेड टू नो हाउ यू कैन हेल्प अस सेटिंग अप द फनल। तो फिर प्रॉपर एक बात हुई, उनको मैं कॉल पे लेके आया, कॉल पे लेके आने के बाद इन्होंने 15 दिन लिए, बट ये इवेंचुअली क्लोज हो गए, ये पिछले महीने की बात है। और इन बिटवीन लाइक सितंबर में मैंने स्टार्ट किया था फुल टाइम, 3 महीने बड़ा अच्छा चला, बट उसके बाद एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया। 3 महीने तक ये सब अच्छा है, बट बीच में बहुत सारा गलत भी हुआ। 3 महीने घर के फैमिली फंक्शन आ गया, क्योंकि मैं एक फ्रीलांसर था, टीम नहीं थी, तो 2 महीने बिल्कुल काम बंद रहा। अगला महीना मेरे को चीजों को दोबारा से पकड़ के चलने में टाइम लग गया, बट अभी दोबारा से फिर कहानी ट्रैक पे आ रही है। तो या डिफरेंट क्या स्ट्रेटजी यूज करता हूँ मैं अभी, जो अभी रिसेंटली मैंने शुरू किया वो यही है कि रीडिजाइन करके जो क्लाइंट्स हैं, जो मेरे ड्रीम क्लाइंट्स है, ड्रीम क्लाइंट्स का मेरा मतलब है कि मतलब एक हम वो डिसाइड करते हैं कि यार कि क्लाइंट्स अगर कम से कम उनकी इतनी मंथली रेवेन्यू होना चाहिए, ताकि जो हम उनसे जो मांगे तो वो इजिली पे कर सकें। वो एक हमारे माइंड में जो चीज होती है, तो ड्रीम क्लाइंट से मेरा वो मतलब है। तो उनको उनकी जो ड्रीम क्लाइंट्स को एक मैंने देखा था, फेसबुक फ्रेंड है मेरा, और उनकी फनल देखी जो कि बहुत ज्यादा अगली थी, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो मैंने इसको रीडिजाइन किया, मैं अब मैं ऐसी रीच आउट्स कर रहा हूँ, और फिर मैंने उनको सेंड किया। तो ये स्ट्रेटजी आप भी यूज कर सकते हो अगर आप एक फनल डिजाइनर हो, जो भी आपका ड्रीम क्लाइंट है, और उनकी फनल्स में जो भी कमियां आपको लग रही हैं वो चाहे रीडिजाइन करके, चाहे एक लॉन्ग वीडियो बना के उनको सेंड कर सकते हो। तो एक पर्सनलाइज टच जब उनको मिलेगा तो उनको लगेगा कि हाँ यार बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो लाइक क्लोज हो सकते हैं वहां से। तो यही मैंने किया, और अभी इनसे बात चल रही है। ये मैंने 3 दिन पहले किया था, और यही सेम डिजाइन कल मैंने ग्रुप में भी डाला था। एक पर्टिकुलर फनल डिजाइनर के थ्रू मैंने बनाया था, और वहां से मेरे को बहुत सारे लाइक आए। ये कल मैंने डाले था ग्रुप में, और 54 लाइक्स मेरे को ऑलरेडी आ चुके हैं, और वहां से एक लीड भी मेरे को आई है, जैसे नीचे आप देख पा रहे हो, अमेजिंग, आई नीड योर स्किल्स। इनसे आज बात चल रही थी पूरा दिन, और सूनर और लेटर ये भी क्लोज हो जाएंगे। तो दैट्स इट। अभी यही स्ट्रेटजी मैं यूज कर रहा हूँ, रीडिजाइन करके 10 to 20% पार्ट ऊपर का फनल का, और उनको बताओ कि कि दैट्स हाउ आई रिवैम्प योर फनल, और उसको मैं हाई कन्वर्टिंग बना सकता हूँ। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, वी विल वर्क ऑन योर फनल। सो या, so that's it from my side. Nahi, Firuz, I love the session, and very importantly, I'm loving the fact that all the designing skills that you learned in FlexiFunnels, that is something that is helping you right now. And
यू आई मीन सेम थिंग जो चीज हमने यहाँ पे शुरुआत में सेशन की शुरुआत में भी डिस्कस करी थी, एंड दैट इज कि यार अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को विजुअली दिखाओ कि आप जब वो आपके प्रोडक्ट सर्विस ऑफरिंग का पार्ट बनेंगे तो व्हाट इज द एक्सपीरियंस that they are going to get. If they can see it visually, if they can feel it, then automatically, that is the best thing, because we are not selling something जो कि let's say it's not a physical product. You cannot touch it, you cannot feel it, you cannot put it on your hand जिससे आपका हाथ में चोट लग जाए. So you cannot do anything. So the best thing that you can do in front of people is you can show the visual experience, or as close as a visual experience that you can show to people. And if you can do that, then automatically you are giving them the best opportunity to get to know your service better, and automatically you are giving yourself the best opportunity to crack the deal or maybe to crack the customer. तो चाहे वो आपका प्रोडक्ट है, चाहे वो आपकी सर्विस है, उसके डेमोज, उसके मेंबर्स एरिया के डेमोज, या फिर उसका फील, द लुक, व्हाटएवर इट इज, इफ यू कैन शो इट विजुअली, दैट विल ऑलवेज हेल्प योर कस्टमर इन मेकिंग द बाइंग डिसीजन. एंड आई लव दिस स्ट्रैटेजी. आप स्पेशली उनको रीच आउट कर रहे हो जिनके ऑलरेडी लैंडिंग पेजेस है. So again, unko crack karna is something which is far too easy, because they already know the importance of landing pages. They are already into business. So unko crack karke leke aana is something way too easy, because ultimately, you can show them the redesigned version of the page that you have and that you have created for them, and they can also see the day and night difference. Everybody sitting in the session, you can see the page that Feroz made for them. It was far better, right? Give me a one. So if you can show such massive level difference, जो उनके काम में उन्हें दिखेगा, तो यार everybody would be inclined to get it done, because उनके पास already वो पेज है, वो already उससे रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर उनको आप बेटर एक्सपीरियंस दिखा सकते हो, तो नॉट जस्ट टेल देम कि मैं वो बेटर एक्सपीरियंस आपके लिए वो दे सकता हूँ, यू शो इट टू देम, then they will be more than inclined to work with you, or at least give it a try. Maybe at the worst case scenario, you can tell them कि ठीक है, just do one thing, you give this page a try, run it for 1 week and see if it gives you better conversions, and if it does, then you can pay me. If it does not, then it's okay. And that's how you can very easily crack into deals like anything, right? So yes, Feroz, so much, yeah, I mean, especially for the FlexiFunnel users, amazing learning. Thank you so much, sir. Thank you so much. और बिल्कुल, मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो फ्लेक्सी फनल, जब मैंने इंटर्नशिप किया, वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा फनल्स के बारे में. इम्पोर्टेंट जो है वो स्ट्रेटजीज कि किस बिजनेस के लिए कौन सी फनल ज्यादा बेस्ट रहती है, वो चीजें मेरे को क्लियर नहीं थी, वो मैंने फ्लेक्सी फनल से ही सीखी, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट. और आपके लिए भी थैंक यू सो मच. राइट, loved it Feroz. Nice interacting again. चल ठीक है, सी यू, मिलते हैं. सो वी हैव अविनाश, द फाइनल सेशन वी हैव विद अविनाश, एंड अविनाश, यू देयर? Yes, sir. Okay, I'm making you the co-host. Okay, sir. 1 second. Check now. You should be able to open your camera. Yes. Yes, sir. Hi, Avinash. Thank you so much. Hi, sir. Thank you so much for giving me chance, sir. Most welcome, and thank you so much. यहाँ पे you have come over here to educate people. So yes, let's do your best. Actually, sir, मैं तो यहाँ पे उस टाइम से देख रहा हूँ, सब 6 फिगर में खेल रहे हैं, और मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर मैं शेयर करना चाहता हूँ. ऐसा कुछ नहीं होता है यार. We all start somewhere. Yes, and the journey matters. It's not what we are doing right now. The journey matters, because those small things, they go and become better tomorrow. They go and become big tomorrow, as long as you are committed. So आप जो कर रहे हो वो बहुत बड़ी चीज है already. Just keep doing it, and yes, let's share the lesson. Okay, sir. So actually मैं फ्लेक्सी का मतलब FGS इवेंट अटेंड किया था जनवरी में, जहाँ पे मुझे फ्लेक्सी के बारे में पता चला. मुझे फ्लेक्सी के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था, तो वहाँ पे मुझे ज्यादा पता चला फ्लेक्सी के बारे में, जहाँ पे ऑल इन वन टूल है, जहाँ पे हम अपना कोर्स और प्रोडक्ट यहाँ से सेल कर सकते हैं और लैंडिंग पेज डिजाइन कर सकते हैं. तो मैं वहाँ पे सारा चीज मतलब वहाँ से सीखा फ्लेक्सी के बारे में और जाना बहुत कुछ. और जब आफ्टर FGS इवेंट मैं जब घर पे आया, तो मैं उससे मतलब जितने मुझे कोर्स और फ्लेक्सी का एक्सेस मिला था, मैंने सारे कोर्स देखा वन बाय वन, जितने मुझे मिला था कोर्स, मैंने सारा चीज उस पर इम्प्लीमेंट किया. उससे पहले मुझे फेसबुक एड्स आता था, नहीं मुझे लैंडिंग पेज डिजाइन करना आता था. जो मुझे फ्लेक्सी का एक्सेस मिला था उस पर मैंने बस इम्प्लीमेंट करते गया. जो भी ट्यूटोरियल्स वहाँ पे थे मैंने वहाँ पे बनाया, और फर्स्ट अपना लैंडिंग पेज वहाँ पे बना के डिजाइन करके रेडी कर दिया.
उससे पहले मैं ई बुक सेल करता था, बट वहाँ पे उतना ज्यादा स्केल नहीं होता था, वहाँ उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता था। तो फिर मैंने फ्लेक्सी पे अपना सारा चीज बनाया, और 18 मार्च को मैंने अपना फ्लेक्सी का फुल एक्सेस ले लिया, ठीक है। देन उसके बाद मैंने सारा चीज मतलब सीखा है फ्लेक्सी पे, जितने भी कोर्स थे, फेसबुक एड्स वगैरह। देन मैंने अपना डिजिटल, मेरे पास प्रोडक्ट नहीं था खुद का कोर्स, तो मैंने सोचा कि पहले मैं डिजिटल प्रोडक्ट ही मतलब सेल करता हूँ, जो डन फॉर यू आता है पहले से प्रोडक्ट, उसे मैं सेल करता हूँ, जिसमें मैं फेसबुक एड्स भी सीख जाऊंगा। और उसके बाद मैं देख लूंगा कि मुझे कौन सा मेरे पास तो ऐसा स्किल्स आता है जिसपे मैं अपना खुद का कोर्स बना सकूं। देन मैंने डिजिटल प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करना शुरू किया, ठीक है, जिसमें अपना सारा चीज रेडी कर दिया। उसके बाद मैंने एक अप्रैल से मुझे फेसबुक एड्स रन करना शुरू किया था, जिसमें मेरा फर्स्ट मंथ में मतलब 58 के रेवेन्यू आया था अप्रैल मंथ में। जिसमें मैं ये करता था कि मतलब जैसे मैं फेसबुक एड्स रन किया, उसमें मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे बाय करते थे। मान लो अगर 100 लोग वहाँ पे चेकआउट पेज पे जाते थे, तो उसमें से सिर्फ 10 लोग ही बाई करते थे। तो फिर मैं वहाँ पे देखा कि मतलब 100 लोग आ रहे हैं, सिर्फ 10 लोग बाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 90 लोग वहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, लेकिन चेकआउट पेज पर से मतलब किसी रीजन से वो चले जा रहे हैं, लेकिन उनका डिटेल्स फ्लेक्सी स्टैटिक्स में दिख जाता है। तो मैंने वहाँ पे देखा कि मतलब ये लोग का मैं रिटारगेट कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा फेसबुक के थ्रू अगर मैं किया तो मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। तो मैंने सोचा कि इनको मैं जितना CSV फाइल वहाँ से डाउनलोड किया, पर इन जितने भी चेकआउट पेज पे जो छोड़ के गए थे, उनको मैंने अपने ग्रुप में ऐड किया, व्हाट्सएप ग्रुप में। फिर वहाँ पे इनको थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर में मतलब वहाँ पे मैसेज किया व्हाट्सएप ग्रुप में। देन वहाँ पे 60 to 75% वहाँ से बाई किए लोग बहुत सारे। तो मतलब कार्ड अवेंडमेंट फीचर की वजह से मतलब मुझे इतना खासा मतलब अप्रैल मंथ में अच्छा खासा मतलब रेवेन्यू जनरेट हुआ था। देन मतलब मई मंथ में मैंने 91,000 के आसपास मतलब रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें एड स्पेंड था 10,553 रुपीज, और इसमें 80,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था मई मंथ में। जो ये है फेसबुक एड्स का, ये है मेरा स्टेप, जो 10,553 रुपीज एड स्पेंड किया था। सो सर यही है, डेट्स इट। हेलो, सेकंड, यस मेरा माइक म्यूट था यार। सो अविनाश हाउ ओल्ड आर यू? सर मैं अभी 20 मेरा आई थिंक चल रहा है। आई थिंक क्या होता है? मतलब चल रहा है सर, मतलब 20 चल रहा है। ओके, चल ठीक है। सो आई मीन अभी जैसे अविनाश ने बोला ना, बाय द वे इट वाज जस्ट अ सिंपल लिटिल फोर स्लाइड का प्रेजेंटेशन, जिसमें पहली स्लाइड में उसका फोटोग्राफ है, उसका इंट्रोडक्शन है, लास्ट स्लाइड में उसका थैंक यू मैसेज है, 2 स्लाइड का प्रेजेंटेशन है। सिंपल स्ट्रैटेजी है, सिंपल एक प्रोडक्ट है, एक एड, ही रनिंग द एड। जितने लोग आ रहे हैं उसमें जो लोग डायरेक्टली बाय कर रहे हैं वो बाय कर ले रहे हैं, जो लोग नहीं बाय कर रहे हैं, फ्लेक्सी में कार्ड अबैंडनमेंट का फीचर है, उसमें आपको लोगों को दिख जाता है कि कितने लोगों ने बाय नहीं करा। जिसने नहीं बाय करा उसका डेटा हम आपको दिखा देते हैं, एंड देन ही इज रीचिंग आउट टू देम। सिंपलेस्ट, आई मीन it's sometimes we try to overcomplicate a lot of things, लेकिन in reality it is the simplest little things that works for us, that works for you, and it's going to work for you, just that we implement that is what we need to do. And I mean I personally loved it, क्योंकि again you in just 2 slides you just showed the entire business model, and that's what it is. I mean, if I talk about my business model, it's the same, right? We have one landing page, 4 pages है, one landing page, उस पे ऐड चलता है, लोग उस पे आते हैं, लैंडिंग पेज से वो वेबिनार के लिए रजिस्टर करते हैं, वेबिनार पे आते हैं, जो लोग बाय करते हैं ये दे बाय डायरेक्टली, जो लोग नहीं बाय करते हैं वी कॉल देम, एंड दैट्स हाउ वी कन्वर्ट देम। सिंपल, you don't need to overcomplicate a lot of things, just keep things very very simple, and that's what produces results. And when you start doing it at scale, then maybe you can add some team members, you give them the opportunity to work with you, they also generate results, you are able to reach out to more people, and so many amazing things they keep on happening. But again, you keep things simple, that's the most important thing. अभी तो सर फिलहाल मैं अपना हाई टिकट कोर्स भी मतलब डन कर चुका हूँ। मैं 4 या 5 तारीख को मतलब वेबिनार में रखा हूँ। जो मेरे पास एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिनको मैंने अपना लो टिकट कोर्स जो सेल किया था, उन्हीं लोगों को मतलब ग्रुप बना रखा हूँ, उन्हीं लोगों को मतलब अपना फर्स्ट वेबिनार शो अप करूंगा उनके साथ। अगर वहां पे देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद मैं हाई टिकट वाले पे अपना एड रन करूंगा। ओके, गुड गुड गुड। एंड जो आपका प्रोडक्ट है, डन फॉर यू प्रोडक्ट है आपका, आपने वो कहीं और से लिया है, किससे लिया है वो प्रोडक्ट? मतलब यू डोंट नीड टू टेल द एग्जैक्ट नेम ऑफ द पर्सन। नहीं सर, पर्सन का नाम नहीं, उसमें क्या है ना सर, डन फॉर यू प्रोडक्ट पहले से होते हैं, लेकिन उससे मैं क्या देता हूँ, उसमें अपना खुद का 1 वीडियो कोर्स बना रखा हूँ जो 1 आवर का होता है।
और उसमें अपना कोर्स के साथ में उनको बोनस दे देता हूँ जो बंडल्स होते हैं। ओके सो बेसिकली आपने कोई ट्रेनिंग बनाई है ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड इनसाइड दैट जो बंडल में सेल करता हूँ उससे रिगार्डिंग वो कोर्स होता है 1 वीडियो का। बंडल में क्या है बेसिकली? बंडल में सर लाइक होता है टेम्पलेट्स भी होते हैं, जो प्लगइन्स होते हैं इसका वर्डप्रेस का, तो वर्डप्रेस के बारे में बता देता हूँ कैसे उनको यूज करना है, या फिर लैंडिंग पेज का हो गया तो लैंडिंग पेज उनको कैसे इंस्टॉल करना है अपने वर्डप्रेस में, ये सब वगैरह उनको बता। Okay, got it. So basically, again, see, if you will realize this thing, it's he has not overcomplicated anything. One problem, one solution, and that's the best business model. See, WordPress is a community जिसमें बहुत सारे लोग हैं, like millions of people. So he has figured out a market जहाँ पे कि लाखों कस्टमर का डेटाबेस है, जहाँ पे लाखों कस्टमर्स हैं, and उनको he is offering them something that they are already looking for क्योंकि they are already using WordPress. So if he can help them with something, and he has kept the pricing at a very lower price, so price resistance नहीं है बिल्कुल भी, and then he's running the ads to get in front of them, which is like with the help of Facebook ad it becomes so much targeted, which is very very simple actually to do that. And then now he's coming up with a high ticket जो कि is going to help them more because now they have consumed his lower ticket product, and they have already got the value out of it. That's like the easiest and the simplest of business model. Avinash, I also want to ask you one more thing. आपने FGS जब ज्वाइन करा था, and forget about FGS, आपको जब से फ्लेक्सीफाइनेंस का एक्सेस मिला था और वो ट्रेनिंग वगैरह मिलने के बाद कितने टाइम के अंदर आपने अपने इस प्रोडक्ट, आपने इस फनल को लॉन्च कर दिया था आफ्टर गेटिंग द एक्सेस? सर भैया 2 मंथ मुझे लगे थे, मतलब फरवरी और मार्च में मैंने सिर्फ सीखने पे लगाया। फरवरी मार्च में मैंने सीखा और मुझे लैंडिंग पेज कुछ नहीं आता था, फेसबुक एड्स में नहीं आता था, 2 महीने मैंने सारा चीज सीखा और 18 मार्च से मतलब टेस्टिंग करना शुरू कर दिया मैंने। तो उससे पहले आपको ऑनलाइन बिजनेस वगैरह की एज सच कोई लर्निंग नॉलेज वगैरह कुछ नहीं थी? सर मुझे लैंडिंग पेज का उतना आइडिया नहीं था, लेकिन ये पता था कि हाँ ई बुक्स वगैरह सेल होते हैं, तो मैं अपने थीम पेज के थ्रू सेल करता था, लेकिन मुझे फ्लेक्सी के थ्रू ही पता चला लैंडिंग पेज और कैसे इस पे और स्केल कर सकते हैं बिजनेस और अपना खुद का कोर्स भी लॉन्च कर सकते हैं। तो फिर और मेरा माइंड ब्रॉड हुआ, तो फिर ऐसे कर रहा हूँ। एंड वाज दिस द फर्स्ट एवर कोर्स दैट यू एवर क्रिएटेड? यस सर। इज दिस द फर्स्ट एवर कोर्स दैट यू एवर क्रिएटेड? यस सर, यस। अच्छा, ओ वाओ। सो ये पर्टिकुलरली इसी टॉपिक पे कोर्स बनाने का आइडिया कैसे आया था आपको? सर एक्चुअली मैं थीम पेज रिगार्डिंग बना रहा हूँ कोर्स, तो उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया है पहले से भी, तो उसी पे मैं हाई टिकट कोर्स रेडी किया हूँ अभी। Okay, great, wonderful. So ultimately see, the idea over here is कि आपको कुछ चीज ऐसी आती है जो कि एक पर्सन जो आपसे 2 स्टेप पीछे। अभी यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैसेज आया था ऑफ श्रुतिका. I will share the message with everybody. Shrutika says, no matter how small you think your results are, you are the most relatable coach to those who are 2 steps behind you. So the point over here is, you don't need to be the best person in what you are doing. You really don't. You don't need to be the expert. ये चीज मैंने आपको पहले भी कही थी. You just need to be 2 steps ahead of the person जिनको आप उस समय सिखा रहे हो. जो चीज करके आपके पास जो रिजल्ट अभी आ रहे हैं, उनको आप वो चीज करके वही रिजल्ट लाने में हेल्प कर दो जो आपके पास अभी आ रहे हैं. And that's what the whole idea of creating your first ever product is. And then you build upon it automatically. Once you have a bunch of so many people who are happy with your product, with your service, then those same exact set of people, they will come to you themselves कि यार मेरे को कुछ और भी खरीदना है आपसे. I'm sure उनमें से कुछ लोगों ने आपको बोला होगा if you have any other products or services and some kind of trainings, and that's what you need to offer to them at the end of the day. And the most important thing, the name of the game is speed. At the end of the day, you need to do things with speed. आपके दिमाग में ideas हैं, आपके दिमाग में a person sitting over here, Avinash, 20 years old, जिसको पहले लैंडिंग पेजेस का आइडिया नहीं है, जिसको पहले फेसबुक एड्स का आइडिया नहीं है, he has never created a course before in his life. Within 2 months, he learned all these things and then he launched that. That is the thing that matters the most. That is what you are supposed to be doing. All of you sitting over here, you are supposed to be doing. I mean, honestly, Avinash, I'm happy that I have been able to share and teach you a lot of things with the help of my courses. But honestly, you have taught me and everybody sitting over here a wonderful lesson that when there is an idea, you implement it with speed. That's what matters. Because of you, sir, आपने सारा चीज अपने कोर्स में डाल रखा है, तो सर वहीं से सारा चीज मैंने सीखा है. Thank you.
And where are you based? Sir, I live in Noida. अच्छा, you live in Noida. I am from Bihar, but I live in Noida. अच्छा, तो आप वहाँ पे अकेले रह रहे हो? कैसे? फैमिली के साथ फैमिली के साथ रह रहे हो. बट आई रियली लव द सेटअप जो ओवरऑल आपने बना रखा है. दैट्स द काइंड ऑफ सेटअप, दैट्स द काइंड ऑफ सेटअप जैसा मेरा हुआ करता था. अभी तो जैसे कंटेंट वगैरह रिकॉर्ड करना पड़ता है तो चीजों को थोड़ा फैंसी रखना पड़ता है. लेकिन इनिशियली आई हैड दिस एग्जैक्ट सिमिलर सेटअप. ऐसे व्हाइट पेपर मेरे वहाँ पे लगे रहते थे एंड आई यूज्ड टू कीप माय नोट्स एंड थिंग्स ओवर देयर. सो यू आर रिमाइंडिंग मी अबाउट माई सेल्फ. Nice interacting with you, Avinash. And I will look forward to seeing your even bigger success stories in the Facebook group. Absolutely. चलो ठीक है. Thank you. All right. So with this we come to the end. 12 बज गए हैं, by the way. So with this we come to the end of our amazing session. I personally loved it a lot. I personally enjoyed it a lot. And I hope that you also loved it, right? It's a brand new day, exactly. And those of you who have not yet given a feedback in the Facebook group, I would love to get a feedback from you inside the Facebook group. I have shared the post in the group. Please go and share the feedback that, how much you loved today's session, how much of learning you got out of today's session. Thank you, everyone. And see you next time.